Kodial Sports Association presents Arch Pharma Labs GPL Trophy 2024 च्या दोन्ही दिसाक तुम सगळ्यांक स्वागत करता असं आयच्या दिसाच्या सुरवे मॅच मुंबई पल्तान्स आणि कोडियाल युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ह्या दोन्ही टीमांमध्ये आणि थोड्या वेळानं प्रारंभ जाता. So the first match of the tournament will be between Mumbai Paltans versus Kodial United Sports Club, and the news from the center is Mumbai Paltans have won the toss and they have elected to field first. We request the 12th man of both Mumbai Paltans and Kodial United Sports Club to come to the commentators box to assist our scorer. सॉल टीम्स एक GPL 2024 अंतू भाग घेतस. आजी या टुर्नामेंटाचे दोन्ही दिस पायी रात्री 8 घंटेनंतर या टुर्नामेंटाचे फायनल चलचेर आस. पळोवका कोण ह्या पटीचे GPL 2024 ट्रॉफी उबारता म्हणून. हे पुलांतू 4 टीम्स आस. प्रति एक पुलांतू 4 टीम्स आस. ग्रुप एंतू यूके एकादश सारस्वत दोन्ही मॅच खेळणू एक मॅच त्यांनी विन केलेला आस. तशींची सेकंड मॅच टाई जाला. ಒಟ್ಟು यूके एकादश सारस्वताचे पॉइंट्स 3. तशींची मुंबई पल्तान्स एक मॅच खेळणू एक मॅच विन जावन आजी सुरवे मॅचांतू दोन्ही मॅच त्यांनी खेळच्यार आसती. कोडियाल युनायटेड स्पोर्ट्स एक मॅच खेळलेला खाली त्यावेळी मॅच टाई जावन एंड जालेला. तशें जावन एक पॉइंट्स कोडियाल युनायटेड स्पोर्ट्सा लागीं आसा. सो ह्या एक मॅच मस्त क्रुशियल जावन आसता कोडियाल युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबाक. ह्या मॅच विन जावका विन जाल्यार 3 पॉइंट्स तांकां मेळटा. तशींची टीम जयकार स्ट्रायकर्स मुडबिद्री 2 मॅच काल खेळलेल्या दोन्ही मॅच डिफीट जाला. खंयचे पॉइंट्स ना तांगे लागीं. ग्रुप बींतू आबर्न डायमंड्स 2 मॅचांत 2 मॅच विन जाला. मल्पे युनायटेड 2 मॅचांतू 1 मॅच विन जालेल्या. GRS मैसूर वॉरियर्स 1 मॅच काल खेळली ती जाल्यार त्या मॅच त्यांनी डिफीट जाल्ली ती. इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब 1 मॅच खेळला मॅच सोलवाला. ग्रुप सींतू कोडियाल सुपर किंग्स 2 मॅचांतू 1 मॅच विन जाला. उडुपी ब्लास्टर्स 2 मॅच खेळणू 1 मॅच विन जाला. ASKB क्रिकेटर्स बेंगळुरू 1 मॅच खेळणू त्या खाली लॉस्ट जालेल्या. रायझिंग स्टार्स मँगलोरू त्यांनी 1 मॅच खेळली ती बट काल डिफीट जाली ती. तशींची ग्रुप डींतू माळशी स्मॅशर्स 1 मॅचांतू त्या मॅच त्यांनी विन जाल्ली ती. वळालंके फायटर्स मुलकी 1 मॅचांतू त्यांनी त्या मॅच विन जाल्ली ती. रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेट 2 मॅच खेळली ती बट 1 मॅच डिफीट जाला. आमचीगरचर केस 2 मॅच खेळणू दोन्ही मॅचांतू डिफीट जाला. सो पळोवका खंयची टीम ह्या पटी ह्या टुर्नामेंटाचे विनर्स जावन GPL 2024 चॅम्पियन्स जाता ती म्हणून. So Mumbai Paltans, after winning the toss, they have decided to field first. The 12th man of both the teams are requested to come to the commentators box as soon as possible. The scorers are ready. The match will start shortly from now.
एक अनाउंसमेंट हांगा फूड कोर्टा वच्चे रोडारी एक कार पार्क केला कार नंबर KA19M D0577 एर्टिगा कार दयकोर्नु तज्जे ओनरान ते कार तेदुकुनु इमिडियेटली कड़क विंगड वेहिकलक हांगा प्रॉब्लम जत्तस the owner of the car number KA19M D0577 it's a Ertiga car. We request you to clear the car from that place and please park your car in the parking lot. Kodiyal Sports Association presents Arch Pharma Labs GPL Trophy 2024 at tournamentaचे फर्स्ट मॅच आता मुंबई पल्तान्स आणि कोडियाल युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब टीमामध्ये चलचार आसा टॉस विन जावन मुंबई पल्तान्स टीमाचे कॅप्टन दीपक कामतन बॉलिंग चूज केला तशें जावन सक्कड मुंबई पल्तान्स फिल्डर्सान ग्राउंडाक एंटर जावका अंपायर्स रेडी आसा ती जल तितले वगी ग्राउंडा एंटर जावन फील्ड प्लेसमेंट सेट करका म्हणून तुमगेले रिक्वेस्ट करता आसा ती तशीची दोन टीमाचे 12th मॅनान कमेंट्री बॉक्सा येवका GPL सीजन 8चे 13th मॅच आजी प्रारंभ जाता कालचे दिसाक ಒಟ್ಟು 12 मॅच चल्लेले आसा 12 मॅचांतू आभरण डायमंड्स टीमाचे विवेक नायक टॉप मोस्ट स्कोरर जावन आसा 2 मॅच खेळून ಒಟ್ಟು 53 रन्स ताणें काडलेले आसा तशींची आमचे टीमाचे श्रीनाथ कामत हाणें 53 रन्स मारला
2 मॅचांतू. ताजे नंतर उडुपी ब्लास्टर्साच्या विनायक शेणय 50 रन मारला 2 मॅचांतू. UK एकादश सारस्वताच्या चरण कामत 40 रन ताणें काडलेले आसा. तशींची मोस्ट विकेट्स पळोवचें म्हणून जाल्यार UK एकादश सारस्वताच्या पवन तेलांग 2 मॅचांतू 5 विकेट काडून हायेस्ट विकेट टेकर ऑफ द टुर्नामेंट. दोन्ही प्लेसांतू आभरण डायमंड्साचे प्रणव भट्ट आसा 2 मॅचांतू ताणें 4 विकेट घेतिल्ले आसा. तिन्ही प्लेसांतू आभरण डायमंड्साचे अनंत शेणय 2 मॅच खेळून 3 विकेट ताणें घेतला. सो आजी ह्या टुर्नामेंटाचे मॅच नंबर 13 आणि थोडे वेळान मुंबई पल्टन्स वर्सेस कोडियाल युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब. Umpires ready Jalinti. We request the fielders of Mumbai Pultans to enter into the ground immediately. We are already delayed. The match was supposed to start at 10 o'clock, but now it is 10 past 22. So we need your cooperation in this regard. So let us not waste the time unnecessarily. Please cooperate with the organizers. The extra players from both the teams, you are requested to come here in the commentary box. So umpires are making their way towards the crease here. Swaroop Tirthalli and Raghu Kadur are the 2 umpires officiating for this match. And meanwhile, the fielders of Mumbai Pultans are already in the middle having a discussion there. And the 2 openers of Kodyal United Sports Club are slowly marching towards the track. So I have got the scorer Miss Rashmita and Miss Nithal with us in the commentary box, and also Shrikant from Scoring app will be updating each and every statistics of this tournament, and Swaraj from M9 team will be the digital scorer here. Hot sunshine here today at Sahyadri College ground, a beautiful venue. We are witnessing the 8th season of this GPL GSB tennis ball cricket tournament. Narasimha and Aditya are the 2 openers for Kodyal United Sports Club. Narasimha will take the strike and Aditya will be at the non-striker's end. Ratan Kamath will be the opener bowler for Mumbai team. Mumbai Pultans have already lifted the trophies twice in this cricket tournament, GPL tournament. Now a new team is playing under the captaincy of Deepak Kamath. Here is the first delivery of the first over. Narasimha Shanai played that shot towards the gully region. The fielder from the gully area comes across and collects the ball. So first run from the bat of Narasimha for Kodyal United Sports Club. Left-hander will take the strike now. Aditya will be the left-handed batsman who is taking guard from the umpire. 5 men on the onside for Aditya. There is a long on. There is a short mid-wicket, deep mid-wicket, short third man, cover point. Here is the next ball. Played that shot into the vacant region in between the 2 fielders. He finds the gap there and easily single has been taken here.
So Aditya is straight away off the mark. He opened his account. Right-handed batter Konchadi Narasimha Chennai will take the strike now. Narasimha is the backbone of Kodiyal United Sports Club. Again the ball pitching right in the block hole. Narasimha played that shot to the silly mid of region, but the ball went straight to the fielder there, so no runs resulted. Good delivery there by the bowler Ratan Kamath. The ball pitching in the right spot, and the batter Narasimha played a forward defensive stroke. Straight down the ground he played, back to the bowler. Good piece of fielding of his own bowling, followed through and picks up the ball. So no runs resulted here. 2 dot balls so far in this over. The bowler Ratan Kamath is bowling in the right spot here. He's not giving any room for the batters to play. This is the first over, which is a power play over, is in progress. Well, he goes for a big one, taking the advantage of that fielding restriction. Narasimha played the shot elegantly onto the deep mid-wicket region, but there was a protection in the deep, so he will have to satisfy with only a single here. So single to Narasimha, which takes their full score to 3 without any loss. The bowler Ratan will be coming round the wicket to the left-hander now. That's a very fine delivery there by Ratan. Aditya, the batter, wanted to pull the ball onto the onside, but misses it completely. No connection with the bat and ball, and wicketkeeper Deepak Kamath collects the ball behind the stump. So no runs taken. Last ball is a dot delivery. That's a pretty good over there by the bowler Ratan Kamath. He just conceded only 3 runs in that over. So Narasimha is batting on 2 and Aditya is on 1. Very slow start for team Kodiyal United Sports Club. Mumbai Paltan's captain, after winning the toss, he had decided to field first here, and he has made his intention clear in the way he decided to field first. And his bowler Ratan has bowled economically well. He's really restricting the batsmen of Kodiyal United Sports Club. Deepak Kamath is a new bowler. Deepak is the skipper of Mumbai Paltan's team, icon player, leading from the front, playing a sheet anchor role for Mumbai Paltans. Ball is in the hands of the bowler Deepak now. The meantime, watch Deepak with a long run up, very experienced bowler. Narasimha goes for a big one. He finds the gap there. He played the shot in between the 2 fielders, and the ball has gone for the boundary road for 4 runs. Welcome boundary for Kodiyal United Sports Club. That was a short of length delivery, and Narasimha quickly realized that it is a short of length ball, picked it up very nicely and hits that one in between the long on and mid-wicket fielder. And there is no need of running for that because the timing was good and placement was perfect. Chipped up in the air, it could be out, and Narasimha is out. First wicket has gone down for team Kodiyal United Sports Club. The backbone of the team, Narasimha, departs. So Krishna, the fielder who was standing at square leg region, takes that catch. So Narasimha is out for 6 runs, and Kodiyal United are now 7 with 1 wicket down. Successful bowler Deepak has picked up that important wicket of Narasimha Chennai, and to replace Narasimha, new batter joining is Raghavendra. Kodiyal United Sports Club have lost their first wicket here.
That's a clever bowling there. Intelligent bowling. All of a sudden, after pitching, the ball has taken a turn, and new batter Raghavendra had no clue about that ball, misses it completely, and wicketkeeper collects the ball behind the stumps. So no runs taken, no addition to the total. Score remains on 7. We come back to the bowler. Played elegantly onto the onside, and Raghavendra gets a single here. Raghavendra is off the mark. He opened his account. Yesterday, Kodiyal United Sports Club played a match against UK Ekadash Saraswat, and that match got ended up with the tie, so they have got only 1 point in their points table, whereas ball is in the air, it could be a out, and straight in the throats of the fielder. Very good judgment there by the fielder. Mehul, the fielder who was standing at mid-off region, takes that catch. So one more wicket has gone down here in the over number 2 of this contest. Both the openers are now back in the pavilion. Aditya was able to contribute only 1 run in his individual account. Narasimha Shennai, the opener, scored 6 runs. So altogether, Kodiyal United Sports Club have scored 8 runs, and they have lost both the openers here. So you are watching Arch Pharma Labs GPL Trophy 2024, which is proudly organized by Kodiyal Sports Association of Mangalore. For the 8th time, Kodiyal Sports Association of Mangalore are organizing this fantastic cricket tournament here for GSB Samaja Bandhavas. 16 different teams are participating this year. We'll have to wait and see who is going to become the champions. So under the leadership of Mangal Padi, Naresh Shennai, Chetan Kamath, Naresh Prabhu, and all along with the teammates of Kodiyal Sports Association, we are seeing a 8th season of GSB Premier League in the name of Arch Pharma Labs GPL Trophy. So after 2 overs, Kodiyal United Sports Club are now 8 with 2 wickets down. Change in the bowling position here. Ratan has taken over. This is the second over of his Kocha now. Converted that into full toss, but couldn't take the advantage of that juicy full toss. Just taps the ball to the offside, gently pushing the ball to the cover point region, and the batter takes a single here. Single has been taken easily. With that single, their score now moves on to 9. 9 for the loss of 2 wickets after putting into bat first Kodiyal United Sports Club. Once again played that shot between the 2 fielders. The fielder from the gully region comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single there. 1 more run will be added to the total here. Very slow start for Kodiyal United Sports Club. They need to accelerate their score now. Power play is completed. Field has been spread out. They need to go for big hits in order to accelerate their score. That was a quicker delivery, flighted delivery there. An uneven bounce by has been signaled by the umpire. That ball beats not only the batsman but also the wicketkeeper. Wicketkeeper Deepak Kamath was not able to gather the ball properly. As a result, these 2 batters have taken a single here in the form of bye. Ball chipped up in the air but into the vacant region. Ball safely landed into the no man's area. Just glides the ball towards the cover point, and meanwhile they have got 1 more single here. So singles are coming more easily for team Kodiyal United Sports Club. We haven't seen any boundaries after that 1 boundary from Narasimha. Crashing drive to the offside. Lovely cover drive. It was a handsome looking cover drive by the batter, but since there was a protection in the deep, they were able to score only single here. Batter will have to satisfy with only a single here. Raghavendra gets a single, and with that single their score now moves on to 13 on the board.
Well, the batter wanted to go for a switch it here, attempted for a reverse shot, but he found complete failure in playing that one. No connection with the bat and ball, and the ball has gone straight to the wicket keeper. Deepak Kamath does the rest of the job. Good over there by Ratan. Ratan has completed his quota of 2 overs. In this over, Ratan conceded 5 runs. So altogether, after the completion of 3 overs, runs on the scoreboard is 13 for the loss of 2 wickets. With 2 wickets down, Kodial United Sports Club, after putting into bat first, they lost 2 quick wickets early in the innings. Now Raghavendra and Nagesh are the 2 batters in the middle. Raghavendra is batting on 3, whereas Nagesh is on 2. Deepak is a new bowler. The ball has gone straight in the throats of Ajay Nayak, who was standing at deep mid-wicket region. Kodial United Sports Club have lost another wicket here. So Deepak Kamath once again strikes. In the very first ball, Deepak was able to pick up that important wicket. So Kodial Sports United Club are in trouble now. Frustration continues. They are losing wickets in the regular intervals. Cool atmosphere here today at Sahyadri College ground. We can see some colorful flags, advertising boards all around the ground, and we are thankful to those who have supported us in giving these kinds of advertising boards. We are also thankful to our donors who made this tournament a grand success, and we hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. So Satyajit is a newcomer to replace Raghavendra, who was just out for 3. Deepak for the second time is over to Satyajit. Once again, clever bowling there. Bit of variation in the ball. The ball was pitching outside the off stump. All of a sudden it has taken a turn. It was going away from the off stump, and at the last moment Satyajit played that shot to the offside, just giving the touch and going for a cheeky single. That was a very risky run, and at the end he was able to manage to complete that single easily here without any problem. Once again, ball is in the air. There is a fielder. It could be out, and he's out. So wickets are falling like pack of cards. One after another, Kodial United Sports Club are losing their wickets. This is a very crucial and important match for Kodial United Sports Club, because they have not won the match. Yesterday's match got ended up with a tie. Hence, they have got only 1 point in their points table, whereas Mumbai Paltans had defeated Jaika Strikers Moodbidri in yesterday's match. So Mumbai Paltans are in a topmost position with the 2 points in their points table. So this is a must-win situation match for Kodial United Sports Club to be there in this contest. Deepak continues, and that one was going far away from the off stump. So umpire Swarup Tirthalli says it is a wide ball. Ball is once again in the hands of the bowler Deepak Kamath on his way to new batter Vinod.
That's a very, very fine delivery there, which beats the batsman Vinod Kamath. The ball pitching on the off stump, and batsman Vinod Kamath not getting the line of the ball. On that occasion, wicketkeeper Ratan collects the ball behind the stumps, so no runs resulted. One more dot delivery there by bowler Deepak. Deepak is bowling with very good line and length, in fact. Ball hitting the legs, and the umpire's finger goes up. Vinod Kamath will have to move back to the pavilion here. There was a loud appeal for leg before the wicket by the bowler Deepak Kamath as well as by all the fielders, and umpire Swaroop Tirthahalli has no hesitation in raising his finger. His finger goes up. Kodiyal United Sports Club have lost their 5th wicket. Vinod Kamath departs without making any score. He has gone for duck. What a great piece of bowling there by Deepak Kamath. So far he has picked up 5 important wickets. Can you believe this? He had got the man of the match award also in the previous game, and now Deepak has picked up 5 important wickets of Kodiyal United Sports Club, and he is putting more and more pressure. One ball to go of this second over. That's again a very good delivery there. Almost pitching onto the middle and leg stump, and batter played a forward defensive stroke. RK is the new batsman in Radhakrishna, while had no clue about that ball, so just played a forward defensive stroke. So no runs resulted there. Over number 4 completed. Very, very good over from Deepak. In this over, Deepak picked up 3 wickets, and he had considered 2 runs. Altogether, Deepak bowled 2 overs, 5 runs, no maiden, 5 runs, and he picked up 5 wickets. So that's the end of the over number 4. After 4 overs, Kodiyal United Sports Club are 15 for the loss of 5 wickets. So last 3 overs to go now. Let's see what kind of runs Kodiyal United Sports Club will be able to score in the remaining 3 overs. And for further commentary, I have got Mr. Satish Salyan is with me in the commentary box, who is going to give you the further commentary of the remaining 3 overs. Thank you very much, Suresh Bhaji. Good morning, everyone, and welcome back for the day number 2 of this prestigious GSB Premier League 2024, which is proudly organized by Kodiyal Sports Association Mangalore, and we are in the over number 4 of this first innings of the first match. Mumbai Falcons, after winning toss, selected to field fast, slashes that beautifully off the backward down to deep cow point region, and before the fielder from cow point region to run back towards the deep cow point region for a deep cow point region. Ample time for Radhakrishna to get that 2 valuable runs. Again, nicely driven off the back foot. He's so good off the back foot. Radhakrishna, one of the very good player off the back foot. Any ball which is pitching a little bit short, he's just using the deftness of the crease very well to get that runs, and he looks like very confident so far. And the scoreboard is now 19 on the board in the over number 4 is in progress. Again, right above, they get lofted high up in there. Catching practice might be up for the fielder at deep long on. Yes, he does. Not quite getting hold up that one stroke properly. Of course, intention is very clear from the batter that he want to get that one onto mid wicket, but he just got that one very high. And if it was in a square version, it's going to be opportunity for the batsman to get the distance. No timing at all, and he just pays the penalty for that. Once it looks like one more partnership is slowly going to build up. Again, Mumbai Falcons managed to break this partnership, and it's not as good thing to see that from the team are really struggling and to get some partnership going. It's the first match of the day number 1. Kodiyal United Sports Club are really wanted to get some good score in the need to play very good performance in the remaining overs, because they are after this they are going to deal with another 2 overs, and wait and see how well these 2 batters will go into handle the pressure.
Saurabh Bhakta, one more very talented cricketer, and need to see the condition of the game. He need to play as per the condition required. Shuffled across the line of the delivery, wide call by umpire, little margin Ferrer, Saurabh Bhakta. The very first ball itself, he just wanted to get that one down to fine leg region. He knows that he didn't got enough runs on the board, need to get some acceleration in the run rate. Right above the wicket, driven that one off the back foot and lofted that one down to deep long on region. This time Saurabh Bhakta and Little Master just transferring his weight onto the back foot to get that one down to deep long on. But this time he's not really getting that much of elevation he's looking for because of the line of delivery is just so good in the negation from the bowler. Again crashes that one. He's so good. I've already mentioned Radhakrishna is a very good striker of the ball, especially in the offside region. Again going back, using the deftness of the crease very well to get that one down to deep cow point region. One more over which is comes in and it looks like it's a successful over from the bowler. He got a wicket in that over after completion of over number 5. Searching for the right track. Kodial United Sports Club are 22 for the loss of 6 wickets. I'm not really thinking about this is going to be a good score here in the morning session because the condition is so good. The time is exactly 10 past 45 in this most beautiful nature covered Sahyadri Engineering Cricket Ground, of course in the bank of river Holy River Netravati. If you see that is just behind this cricket ground, absolutely fantastic view of this cricket ground. You can't get better than this cricket ground if anywhere. If you see that the nature's beauty, if you want to enjoy the cricket along with the nature beauty, you need to come here and watch this prestigious GPL GSB Premier League 2024, which is proudly organized by Kodial Sports Association Mangalore under the great leadership of 3 pillars of the cricket tournament, Naresh and Naresh Prabhu and Chetan. Ajay brought into attack the ball, the next delivery. Right arm over the wicket, balls. Ooh, this time Radhakrishna wanted to get that one in the offside region, but little bit is going outside the line of off time, try to get room to play the shot, but very thinking from the bowler's point of view. Ajay just bowling that very good line, slower one. Again, a beautifully bowled, identical mirror display of previous delivery, the same line and same length, and Radhakrishna once again just going back, try to get that one in the offside region. 2 dotted delivery in this 6th over. Ajay Boss, this time full toss delivery, driven that one down to extra coverage and not more than a single, and with that single scored numbers on to 23 for the loss of 6 wicket. First 3 deliveries, just a single run which conceded there by Ajay. It's outstanding, tidy over is in progress. Saurabh Bhakta is on strike. Saurabh Bhakta this time lofted that one straight to the hands of mid wicket. Of course, he wanted to drag the ball from the outside the line of off stump. If you see it in a replay, how far the batsman shuffled across the line of the delivery. He wanted to get that one in the mid-wicket region. He can't get the distance, especially in the morning, if you wanted to get the ball into the mid-wicket because you are playing the stroke against the direction of the wind. It's very difficult to get the distance and he pays the penalty for that. The wicket number 7, which is back into pavilion, it's 23 so for the loss of 7 wicket in the over number 6 is in progress. Day number 1 of prestigious GPL, which is ended very successfully, but it's a long day, and not for Ajay Raj, but for me and Sukumar. It's almost 3:30. We are finished in a late night, but today we have started exactly in a time, and hope today we are going to finish the match day number 2 as early as possible. For that, I think most cooperation is required from the playing teams. Have to make the things quickly, and what stipulated times which is given for the fielding team to complete their 7 overs. 32 to 33 minutes which is given for them to complete their 7 overs quota. And the bowler will going to continue from the, not only for the commentators, but we're talking about the umpires also has got a long day. Far outside the line of off stump, it's going to be a huge wide, and of course umpire Swaroop, I think, as a field umpire, along with him at square leg Raghu sir at square leg. So he there also has a long day because they are the one witnessing the last match of yesterday till 3 o'clock, and again nicely driven down to extra coverage, and Radhakrishna again going back. They're going for the second. It's a very good thinking from the new batter's point of view is concerned, because he is the one is running towards the danger end. One shot call by umpire. Unfortunately,
all the efforts which is gone in vain. Maybe Radhakrishna, I think, couldn't manage to cross that line which is in a non-strike end, and he will going to get only single for that. This time, lovely delivery, beautifully bowled. What a good finish for the over number 6. Still, struggle time continues here from Team Kodial United Sports Club. Are struggling against the disciplined bowling performance of Mumbai Paltans. It's a 26 for the loss of 7 wicket and the over number 6, which is comes in, and last over remaining. What we're talking about is good to see that after the long day for umpires, but today morning they are on time, and they finished late and they start early. Both the umpires, Swarup from Tirthahali and umpire Raghu sir from Udupi district. And 2 umpires, other umpires did a great job. The day number 1, Shiniket as well as umpire Dinesh Acharya. Maybe today they are given opportunity to officiate till late night. Krishna brought into attack from the river end. Last over will go into start, and Vaibhav Pai is a striker. This time across the line, he wanted to swing that one. Is gone. Almost looks like he's. Looks like he balled. He drags the ball into the stump. Just I want to see it in a replay. What really happened? Because wicketkeeper right in front of our commentary box. Very difficult to see what really happened in that particular delivery. Have a look at it on a replay. And the spin bowler, absolutely fantastic bowling action. Shuffled across the line of the with the turn. Ball has got a slight bit of deviation and hits the stumps. Wicket number 7, which is back into pavilion. It's 26 for the loss of 7 wicket. 8 wicket lead progression. They lost 8 wickets, only 2 wickets remaining and 5 balls remaining. It's a very important year for Kodial United Sports Club not to get bundled out. They need to play their all 7 hours. The 5 deliveries, this seems to be a very important deliveries for the team Kodial Sports United, because Kodial United Sports Club, because we are witnessing some low scoring game in the day number 1. Even 35 runs, 36, which is depended well in the day number 1, so that the believing is very important. Self-confidence is very important. Ramakrishna is the new batter in. Meanwhile, I request for the match number 2 of the day number 2 will be played between GRS Mysore Warriors versus Iruvattur Sports Club Manipal. I request all the players. Little correction, only the captains request you to come here to complete the formalities of tossing ceremony. One more single. With that single score moves on to 27 for the loss of 8 wicket. Again, that ball went into that fine leg region. The batsman quite easily completed a single. Radhakrishna got a single. Then score moves on to 28 for the loss of 8 wicket. In the over number 7 is in progress. Again from the far end. Right above the wicket, going for the improvising cricketing stroke. Not quite getting that one from the middle of the bat. Of course, he's got a good position to pull that one. But unfortunately for the batter, he couldn't manage to get that enough bat onto that. Just a single there. 29 for the loss of 8 wicket. Last 2 deliveries remaining in their innings. Krishna. Radhakrishna. Radhakrishna again, bowler's back drive. Again, Radhakrishna not really getting that much of enough bat again. He wanted to get the big shot, and he got one single for that. With that single score, moves on to 30 on the board. And last delivery of the innings of team Kodial United Sports Club will going to start. This time, improvising cricketing stroke, plays it down to deep mid-wicket region. They're coming back for the second because this is the last delivery. They're trying their level best to get a run, but here the wicket keeper hitting the stump, so that it's just a single run out taken place in the last delivery of the over. 1 run conceded, and after completing their 7 overs quota, Kodial United Sports Club the managed to get only 31, and they set a target of 32 to win this match for the team Mumbai Paltans. Fantastic job which is done by all the bowlers, even
very good support coming from the fielding unit of Mumbai Pultons, so that they managed to restrict. Have a look at that one performance. No double figure. This is what really bit disaster. The highest score is Radhakrishna. He scored 9 runs unbeaten, but we can see that single digit in that Kodial United Sports Club. That's a big problem. Why they couldn't manage to get that more runs. It's definitely going to be the lowest score as far as the day number 1, which is yesterday completed, and this is day number 2, is the beginning of the day number 2, and that shows the strength of Mumbai Pultons bowling department. Have a look at the bowling performance. Deepak Kamath picked up the wickets, picked up 5 valuable wickets by conceding 7 runs. That means he got a first piper of this cricket tournament, I think so. 5 wickets in one match. Deepak Kamath has got a record of getting a first bowler to get the 5 wickets in this GPL. And of course, out of 12 dot balls, out of 12 deliveries he bowled, 9 dotted deliveries bowled. I have a look at that one in the screen. Dots, which is 9, wickets, which is a 5, runs conceded is a 7, and economy absolutely fantastic. 3.50 runs per over. That shows the way that Deepak Kamath is bowled is just dismantling the batting department of their opposition. Outstanding bowling performance. So let's wait and see how well team Kodial will go into back in this game. Kodial United Sports Club, they needed some miracle bowling, needed some unbelievable bowling performance, because they're bowling against one of the formidable batting department of Mumbai Pultons. In cricket, anything can be possible, but you need to believe in their strength, isn't it? The believingness is very important for the success, and wait and see how well the bowlers will go into bowl here of team Kodial United Sports. And before the next innings will go into start, it's the time to change in commentary box. It's time for Ajay Raj to take over the microphone. First time today. Good morning, Ajay Raj, and this is a pleasant morning, the bright sunny morning. Looks like a strong wind is passing here in this beautiful cricket ground, and definitely we are promising all the cricket lovers today going to be one more excitement day of cricket, and it's going to be a little bit interesting, because most of the teams which has completed 2 league stage matches, so it's going to be for some teams it's going to be a must-win matches, do or die matches we are going to witness. So that day number 2 definitely is going to be it's an interesting day of cricket. Welcome back, Ajay Raj, and of course we have one more commentator here. After Ajay Raj, we are going to join one more very good Kannada commentator, Mr. Nayan. He will going to join soon along with Ajay Raj, and but I will going to join you after 6 o'clock. Thank you. Hello, check. I request captain of team Irattur Sports Club Manipal, please be reported here immediately for the tossing ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ Irattur Sports Club Manipal ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಚಿಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಮಗಾಗಿ ಎದುರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. GRS ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ Irattur Sports Club, please be reported immediately for the tossing ceremony. Thank you. Thank you, Satish. बहुत बहुत धन्यवाद. गुड मॉर्निंग सभी को इस प्रातःकालीन सभा में हृदय से स्वागत करते हैं. सप्रेम नमस्कार. अजय राज का प्रणाम स्वीकार करें. सतीश जी ने तारीफों के पुल बांध दिए और सह्याद्री का विशाल मैदान GPL 2024 दूर वाले छोर से इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक है. गेंद कवर, एक तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में जो कवर ड्राइव खेला जाता है, फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे बढ़ा है गेंद के पिच तक और बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को थोड़ा हवा में खेल दिया. फील्डर थोड़ा वाइड खड़े थे, जब तक वो पहुंच पाते गेंद का पीछा करते रोक पाते. बैट्समैन के पास पर्याप्त समय था कि वो 2 रनों को बटोर लें. कोडियाल यूनाइटेड और मुंबई पल्टन्स के बीच में संघर्ष चलता हुआ. शॉट ऑफ लेंथ थी ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, और इस गेंद को राघव ब्रह्मावर जी ने वाइड घोषित कर दिया. इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 4 पर पहुंच चुका है. तो टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला मुंबई पल्टन्स का. लक्ष्य है 32 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का, और
ड्राइव कर दिया बैट्समैन ने, आसानी के साथ गेंद को एक रन लेने का अवसर। इस एक के साथ कुल रन संख्या जो कि बढ़कर पहुंच चुका है 5 पर। तो अब कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। 7 ओवर्स में 42 गेंदों में आपको सिर्फ 32 रन बनाने हैं। तो योजना बड़ी अच्छी रही मुंबई पल्टन्स की कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे और विपक्षी टीम को यानी कि कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब को कम रनों तक सीमित रखने का उनका प्रयास रहेगा। वही किया, अच्छे गेंदबाजों को आक्रमण पर लगाया और शानदार बल्लेबाजी इस वक्त शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छी गेंद, क्या कमाल की गेंद थी आदित्य भट्ट की ये गेंद। राउंड विकेट आज फार्मा एंड से और लेंथ में ज्यादा थी, हवा में थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुई, बैट्समैन को बीट कर गई। रतन के लिए गेंद, हवा में गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता है। स्क्वायर लेग बैकवर्ड में फील्डर ने गेंद को कैच कर दिया, शानदार कैच। और इस कैच के साथ ही पहले विकेट का पतन हो चुका है। इस बेहतरीन कैच के प्रायोजक है जीपीएल 2024। तो रिप्ले में देखा जा सकता है कि किस तरह से ये गेंद की गई थी। राउंड विकेट और टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल था, उस उछाल को ऑन साइड की दिशा में लगभग हुक के अंदाज में खेलने का प्रयास किया था और एक तरह से कहना चाहिए कि बल्ले के ऊपर लगी थोड़ा ज्यादा। और स्क्वायर लेग बैकवर्ड में फील्डर जो तैनात थे पीछे की तरफ हटते हुए उन्होंने गेंद को खूबसूरती के साथ कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही पहले विकेट का पतन हो चुका है 5 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। शशिकांत शशांक आ चुके हैं स्ट्राइक एंड पर। तो दूसरा ओवर इस छोर से यानी कि फजल एंड से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं और सामने वाले छोर पर जो कि बैट्समैन इस वक्त शशांक है। इस छोर से गेंद 7 नंबर के जर्सी में गेंदबाज रामकृष्णा की गेंद फजल एंड से ऑन द विकेट। शशांक के लिए ऑन साइड पर घुमाकर लपेटकर गेंद को खेलने का प्रयास किया, पैरों से टकराई, रन लेने का अवसर नहीं है। ಇರುವತ್ತೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಜಲ್ತಿತ್ಲು ವಗ್ಯಾಂಗ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಯೌಕ GRS ಮೈಸೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮ್ಗೆ ಲೋಟಸ್ ತುಮಕು ವೇಟ್ ಕರ್ಸ ಸತಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಸೊ ಇರುವತ್ತೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಟन प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स इमीडिएटली। थैंक यू। ये गेंद ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी, ड्राइव किया गेंद को आसानी के साथ 1 रन लेने का अवसर। रन बढ़कर 6 पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो फजल एंड से एक और गेंद। जीपीएल उत्सव क्रिकेट का महोत्सव जो कि चलता हुआ 2024 का 8वां सीजन ये चल रहा है। कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की शानदार प्रस्तुति और क्या इस मैच में कुछ रोमांच देखने को मिलेगा। ऑन द विकेट फजल एंड से ऑफ स्टंप के बाहर, क्या कमाल की गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद स्विंग होकर बैट्समैन को छकाती हुई निकल गई। इसको आप स्पिन कहेंगे या मध्यम तेज रफ्तार का गेंदबाज, क्योंकि दौड़ रिलैक्स है, कोई ज्यादा जोखिम, कोई ज्यादा दबाव या फिर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। गेंद को उंगलियों के बीच में फंसाकर घुमाकर फिरकी दे देते हैं। ये गेंद बैट्समैन को बीट कर गई। छुए या न छुए, इस प्रयास में विकेट कीपर ने डाइव लगाकर गेंद को रोक लिया जब तक वो रोक पाते। हालांकि बैट्समैन ने मन बदल लिया, वापस पलटकर क्रीज के दिशा में पहुंच गए अपने आप को रोकते हुए। बहुत अच्छी गेंद थी और अंपायर ने कहा है कि जी हां, रिव्यू थर्ड अंपायर की तरफ उन्होंने संकेत किया तो आखिरकार तीसरी आंख अब एक्शन में आएगी और पता लगेगा कि बैट्समैन क्रीज में रह गए या पहुंच गए। विकेट कीपर ने कलाबाजी खाकर गेंद को रोककर स्टंप्स की दिशा में थ्रो कर दिया। रनआउट के रूप में अपील की गई, जिसको राघु ब्रह्मावर जी ने संकेत किया कि तीसरे अंपायर को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। तो इस प्रकार खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। दिल की धड़कनों की आवाज आपको सुनाई देगी।
थैंक यू। तो अंपायर ने कहा कि नॉट आउट, बैट्समैन बच गए, बेनिफिट ऑफ डाउट, और आखिरकार अंपायर ने निर्णय लिया कि बैट्समैन को सुरक्षित रखना होगा और बैट्समैन बच गए। इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद को लेकर रामकृष्ण तैयार हो रहे हैं। फजल एंड से 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है इस ओवर में, 2 गेंदें शेष बची है। और विकेट इस बार थोड़ा पीछे हट गए, इनसाइड आउट करते हुए गेंद को लॉफ्ट करने का प्रयास किया, बल्ले का भारी मोटा सिरा लेकर गेंद गई, जब तक गली में फील्डर गेंद को फील्ड कर पाते, दौड़कर दोनों बैट्समैन 1 रन को पूरा कर चुके हैं। 7 रन से 1 विकेट के नुकसान पर मुंबई पिल्टन्स को मुझे लगता है कि ज्यादा दौड़ धूप करने की दरकार नहीं है इस वक्त। मेरिट पर अगर वो खेलते हैं, सिंगल्स ही बटोरते हैं तो बात बन सकती है। बहरहाल कोडियल्स जो कि इस वक्त विकेटों की तलाश में गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ उछाल दिया इस जबरदस्त बल्लेबाज ने, शशांक ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए। जीपीएल का सिक्सर, क्या कमाल का स्ट्रोक है। रामकृष्णा ने जैसे ही गेंद में लेंथ ज्यादा दी, फ्लाइटेड गेंद थी ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, और शशांक बिल्कुल तैयार खड़े थे, उन्होंने ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर की गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ हाफ वॉली पर लेकर, थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा क्रॉस बैटेड शॉट था, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद कोसों दूर हवा में तैरती हुई पंछी की तरह निकल गई 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ अचानक रनों को एक रफ्तार मिल चुकी है, 13 रन से 1 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं, और ये ओवर समाप्त हुआ 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जबकि इस वक्त दीपक स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, तेज धूप मैदान पर फैली हुई। सभा के सवेरे के 11:10 हो चुके हैं, और पहला मैच आज का चलता हुआ। दीपक 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, शशांक ने 10 रन सब तक बनाए, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया। आदित्य भट्ट शायद गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से आज फार्मा के एंड से आ रहे हैं, नेत्रावती छोर से आ रहे हैं, मध्यम तेज हवा चलती हुई। और जैसा आप जानते हैं स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट यूथ ऑफ जीएसबी के जरिए किया जा रहा है। सहयोग के लिए सर्जन पड़ियो बिद्री की टीम M9, उनके सारे कैमरामैन टेक्नीशियंस इस वक्त बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे बगल में स्वराज बैठे हैं कंप्यूटर लैपटॉप के सामने, और गाइड करते हुए अपने कैमरामैन को सारे रनों का लेखा जोखा, हर एक लेखा जोखा वो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि उसको शानदार अंजाम दें। और उसके अलावा स्कोरिंग ऐप पर श्रीकांत मौजूद हैं लाइव स्कोर अपडेटिंग के लिए। दूर वाले छोर से आज फार्मा एंड से ये गेंद मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, और दीपक ने इसको देखा, परखा, फ्रंट फुट पर बल्ले को ऊपर आने दिया, टकराने दिया, धीरे से पुश कर दिया गेंद को कवर क्षेत्र में, जब तक फील्डर आ जाते अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बनाया। शशांक को जिम्मेदारी सौंपी है। 16 के कुल योग पर इस वक्त मुंबई पिल्टन्स बल्लेबाजी कर रही है। लक्ष्य है 32 रनों का, अभी आधा रास्ता लगभग तय हो चुका है, पार हो चुका है, तो मुंबई पिल्टन्स को चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाज कुछ अगर जादूगरी करते हैं, 2-3 विकेट अगर वो प्राप्त कर लें तो बात बनेगी, वरना मैच से पकड़ उनकी काफी ढीली हो चुकी है। मध्यम तेज हवा चलती हुई, वो दूर दूर रंग बिरंगे जो ध्वज हवा में तैर रहे हैं, बलखा रहे हैं, वो छोर से ये गेंद फ्रंट फुट पर, शशांक फुटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फ्रंट फुट पर गेंद के पिच तक पहुंचने का उनका प्रयास था, ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया, आसानी के साथ हाफ वॉली पर लेकर गेंद को धीरे से पुश भर कर दिया। अच्छे स्ट्रॉन्ग टेक्निक के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 17 पर 1 विकेट के नुकसान पर 17 for 1, और 1 विकेट प्राप्त करने वाले आदित्य भट्ट 1 और विकेट की तलाश में इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 9 रन वो खर्च कर चुके हैं। कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं।
आज फार्मा एंड से ये गेंद इस बार बड़ी चतुराई के साथ दीपक ने गेंद को ऑन साइड की दिशा में घुमाकर पेडल स्वीप के अंदाज में खेल दिया। टिप्पा खाने के बाद उछल कर आई थी, लगभग कमर तक ऊंचाई थी उस गेंद में। उसको एक पैर को स्ट्रेच करते हुए दूसरे पिछले पैर को घुटनों के बल झोंका कर ऑन साइड की दिशा में पेडल स्वीप के अंदाज में गेंद को खेल दिया। शॉट फाइन लेग क्षेत्र में 1 रन चुराकर शशांक को जिम्मेदारी सौंपी है। 18 रन से 1 विकेट के नुकसान पर 3.2 दिन का है औसत चाहिए इस बार। शशांक का एक और खूबसूरत स्ट्रोक कवर बाउंड्री लाइन की दिशा में, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को रोक लिया और लेकिन 2 रनों को नहीं रोक पाए। शशांक ने इतना खूबसूरत स्ट्रोक खेला था, लॉफ्टेड कवर ड्राइव था। अंदाजा लगाइए कि जब अच्छे स्ट्रोक्स लगते हैं चौका नहीं प्राप्त होता है, खाली स्थान था क्योंकि काफी धीमी पड़ चुकी है। यह गेंद ड्राइव किया, एक और बार प्लेस नहीं कर पाए। तो लॉफ्टेड स्ट्रोक आउटफील्ड में जो घास फूस उगाए हैं, मुझे लगता है कि जो रात की नमी है अभी तक सोख कर बैठी हुई है, समय लगेगा दोपहर तक का उसको सूखने में, तब गेंद थोड़ा सा तेज दौड़ेगा आउटफील्ड में। ऐसे में ओवर समाप्त हुआ, कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर 20 रन से 1 विकेट के नुकसान पर बच चुके हैं। 20 for 1 अभी 4 ओवर्स शेष बचे हुए हैं और इस वक्त करंट रन रेट जो कि 6.67 का चलता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट 3 का चाहिए। और ऐसे में मुंबई पल्टन्स के दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ सिंगल्स को बटोर कर बीच बीच में एक आध स्ट्रोक जो लूज गेंद मिलती है उसका फायदा उठाकर रनों को बटोर रहे हैं। अभी और 12 रनों की जरूरत है और स्ट्राइक एंड पर दीपक आ चुके हैं। रामकृष्णा कोटे का दूसरा, पारी का चौथा ओवर लेकर बहुत अलग अंदाज के गेंदबाज हैं रामकृष्णा। आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है गेंद किस तरह से फ्लाइट लेकर स्पिन का या फिरकी का जो मिश्रण वो करते हैं बैट्समैन को परेशान करने के लिए। फजल एंड से रामकृष्णा गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। दीपक स्ट्राइक एंड पर हैं और दर्शकों की तादाद कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ेगी। कल रात के पश्चात अगली सुबह लगभग 3 बज चुके थे, 2:30-3 बजे तक खेल चलता रहा GPL 2024 और आज सवेरे लगभग 10:15 पर पहला मैच। इस छोर से गेंद फजल एंड से रामकृष्णा की गेंद को हवा में खेल दिया, कैच नहीं होगा। फील्डर डीप में खड़े हैं। दीपक ने बड़ी चतुराई के साथ स्ट्रोक के पीछे ताकत नहीं लगाया, जानबूझकर गेंद को थोड़ा धीमा लॉफ्ट कर दिया ताकि लॉन्ग ऑन के में खड़े फील्डर जब तक पहुंच पाए वो आसानी के साथ छोर को बदलने। 21 रन से 1 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक एंड पर शशांक आ चुके हैं। इस छोर से रामकृष्णा की गेंद इस बार लॉफ्ट किया, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, अच्छा ऑन ड्राइव था, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद गई। 1 रन आसानी के साथ शशांक को मिलेंगे और इस एक के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 22 पर। 22 विदाउट करेक्शन, 22 for 1, 22 रन। इस छोर से एक और गेंद रामकृष्ण की गेंद पलट कर गेंद को खेल दिया, हवा में है, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे, थोड़ा सा वाइड खड़े थे वो, जब तक पीछा करते हुए गेंद को रोक पाए। लगभग 2-4 इंच बाउंड्री लाइन के अंदर, सीमा रेखा के अंदर दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर दूसरा रन पूरा कर लिया। और दीपक अचानक अलग अलग इंप्रोवाइजेशन वो कर रहे हैं, लगभग रिवर्स स्वीप के अंदाज में उन्होंने गेंद को खेल दिया, 1-2 रन खाते में जोड़ लिया। स्टेप आउट किया, ड्राइव करना चाहते थे, बच गया। इस बार बल्ले का सिरा नहीं लिया, वरना विकेट कीपर बड़े खुश हो जाते। रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। 24 के कुल योग पर मुंबई पल्टन्स इस वक्त खेल रही है और रामकृष्णा तलाश में है, विकेटों की तलाश को अंजाम देने में लगे हुए। फजल से एक और गेंद रामकृष्णा की, और विकेट ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस बार तिरछा ऑन साइड पर घुमाकर पुल करना चाहते थे, मिस कर गए, लेंथ ज्यादा थी, पहचान नहीं पाए गेंद के लेंथ को पूरी तरह से। हालांकि जब आप एक क्रॉस द लाइन खेलते हो तो सीधी गेंद कहीं ना कहीं आपको बीट कर जाती है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। एक और गेंद रामकृष्ण के, और बहुत अच्छी जी नहीं, अंपायर ने कहा कि अच्छी नहीं, इसको वाइड करार देना होगा, लेकिन परिवर्तन था। गेंद को जानबूझकर लेग स्टंप के लाइन पर करना चाहते थे, थोड़ा बाहर रह गई और अंपायर स्वरूप ने कहा कि ये वाइड है। एक और अतिरिक्त रन बढ़कर 25 पर। और विकेट, जोरदार अपील जी नहीं, हल्की सी अपील हुई, अंपायर ने इस अपील को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। लेग बाई के रूप में 1 रन का इजाफा। ऑफ स्टंप को छोड़कर साफ साफ गेंद बाहर निकल रही थी, बैकफुट पर थोड़ा सा ऑन साइड पर टैकल करने का प्रयास था बैट्समैन का। 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ लेग बाई के रूप में। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर 26 रन से 1 विकेट के नुकसान पर 26 for 1।
32 रनों का लक्ष्य, यानी कि अभी और 6 रनों की जरूरत है, 6 more runs to get, और उसके पश्चात एक और नया ताजा मैच। आपको बता दें अगला मैच मैसूर वॉरियर्स और इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल के बीच में। इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला है, कितना सही या गलत आने वाला समय बताएगा। इस वक्त हम सीधे मैदान की ओर बढ़ते हैं, जहां पर दीपक बल्ले को थामकर तैयार हो रहे हैं और एक बहुत अच्छी सूझबूझ की पारी, एक सहायक भूमिका, जैसा आप अक्सर देखते हैं मूवीज में, पिक्चर्स में, जब एक हीरो होता है तो उसको एक सपोर्टिंग रोल करने वाला एक्टर होता है, वही भूमिका इस वक्त अदा कर रहे हैं दीपक। आकाश में दूर पंछियों का एक झुंड बिल्कुल बलखाता हुआ, लहराता हुआ दूर जा रहा है। क्या शानदार दृश्य है। कैमरामैन आज भी तैयार हो तो अलग अलग दृश्यों को वो कैप्चर करें। एक अलग आकार के साथ वो कतार में उड़ रही हैं और बहुत सुंदर दृश्य है। हल्के बादल आकाश में सफेद सफेद रंगोली की तरफ बिखरे पड़े हैं। उस छोर से इस ओवर की पहली गेंद वैभव पै आक्रमण पर आ रहे हैं और वो क्या असर दिखा पाएंगे। सिर्फ 6 और रनों की जरूरत है, प्रति ओवर 2 का औसत चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 3 ओवर शेष बचे हैं, 18 गेंदों का खेल इस वक्त बचा हुआ और ऐसे में विकेट कीपर जो कि इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्लेसमेंट कर रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट जो है, और उसके पश्चात दूर वाले छोर से वैभव पै गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। आर्च फार्मा एंड से उनकी गेंद, दीपक स्ट्राइक एंड पर 8 के व्यक्तिगत योग पर 11 गेंदों का सामना किया। राउंड विकेट गई गेंद, हवा में गेंद को उछाल दिया, गेंद को सो दूर जा रही है जी, नहीं, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच है। इस बेहतरीन कैच के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप के सीध पर थी और दीपक ने गेंद के पीछे जो ताकत लगाया था, स्ट्रोक के पीछे, वो काबिले तारीफ था, लेकिन ज्यादा ऊंचा खेल बैठे थे जिसकी वजह से बाउंड्री लाइन क्लियर नहीं कर पाई। वहां पर खड़े फील्डर ने गेंद को एकाग्रित होकर देखते हुए, नजरों को टिकाकर देखते रह गए और फिर बाउंड्री लाइन के अंदर अपने आप को जी नियंत्रण के साथ रखते हुए कैच कर लिया और पीछे की तरफ मुड़ के देखा कि कहीं उनका पैर बाउंड्री लाइन से लगा तो नहीं है। ये बहुत शानदार कैच कहना होगा। एक पैर हवा में झूलता हुआ दूसरे पैर के ऊपर संतुलन बनाना और उसके बाद कैच को लपकना इतना आसान नहीं है। आदित्य का ये कमाल का कैच, और इस श्रृंखला में बहुत खूबसूरत कैचेस देखने को मिले और मुझे लगता है कि ग्रेट कैचेस कॉन्टेस्ट भी होना चाहिए जीपीएल में। बहरहाल वैभव पै आक्रमण पर, राउंड विकेट उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया गेंद को कवर में, और कवर और बैकफुट पॉइंट के बीच में गेंद निकल गई। जब तक फील्डर आकर गेंद को समेट पाते, बैट्समैन ने आसानी के साथ 1 रन पूरा करते हुए महेश पै ने अपना खाता खोल लिया। शशांक स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। दिन के उजाले में स्ट्रोक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा। पिछली रात की जो नमी है, घास फूस जो है मैदान के अंदर, लगभग 1.5-2 इंच के घास उगाए हुए हैं, उसको काटा नहीं गया, छाटा नहीं गया, इसी वजह से नमी सोख कर वो बैठी हुई है। अब थोड़ा समय लगेगा। गार्ड बदल कर वैभव, और विकेट ये गेंद फुल टॉस। शशांक को बहुत बारीकी से देखते हैं। शशांक ने देखा गेंद थोड़ा ब्लॉक होल में आने का कहीं ना कहीं अंदेशा था। फुल टॉस रह गई, लोअर फुल टॉस थी, उसको बल्ले का निचला सिरा देकर ड्राइव कर दिया और मिड ऑन क्षेत्र में डीप में फील्डर जब तक आ जाते, शशांक ने अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया। 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह गेंद राउंड विकेट ऑफ स्टंप के बाहर थी और टिप्पा खाने के बाद वैभव की यह गेंद उछल कर आई, बैकफुट पर जाकर थोड़ा कट करने का प्रयास महेश का, चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। आज फॉर्मेट से एक और गेंद, और खूबसूरती के साथ महेश ने बैकफुट पर जाकर गेंद को स्लाइस किया, चॉप के अंदाज में गेंद को खेल दिया। पॉइंट क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन आसानी के साथ दोनों बैट्समैन दौड़कर पूरा कर चुके हैं। रन्स बढ़कर 29 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। स्वरूप और राघु ब्रह्मावर ऑन फील्ड इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। उस छोर से 2 विकेट ये गेंद, और शशांक का हर स्ट्रोक लाजवाब देखने को लगता है और बहुत टेक्निकली स्ट्रांग जिसे कहते हैं,
क्रिकेट की जो तकनीक है, किस तरह से कोहनी को ऊपर करना चाहिए, बल्ले का फेस किस तरह से ओपन होना चाहिए, फुटवर्क किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी योजना के साथ और बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है। इस बार ड्राइव किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, बैकफुट पर थोड़ा सा पीछे की तरफ हटते हुए, फ्रंट फुट पर थे लेकिन थोड़ा पीछे हटकर गेंद को ड्राइव कर दिया, 1 रन चुराकर अपने आप को बढ़ाकर पहुंचा दिया। 16 पर ओवर समाप्त हुआ, 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी 2 और रनों की जरूरत है। दर्शक हालांकि उम्मीद करते हैं कि चौके छक्के बने लगें और उनका उत्साह बढ़े, लेकिन मुंबई पल्टन्स योजना के अनुकूल, वो परिस्थिति के अनुकूल बल्लेबाजी कर रहा है। वो जानता है कि इस वक्त उनको सिंगल्स से काम चलाया जा सकता है और इस वजह से सिंगल्स को बटोरकर वो आसानी के साथ मैच पर कब्जा करना चाहता है। मुंबई पल्टन्स के 2 बल्लेबाज शशांक और महेश इस वक्त ऑन फील्ड हैं। शशांक स्ट्राइक एंड पर और सिर्फ 2 रनों की जरूरत है। छठा ओवर शुरू होने जा रहा है तो सौरभ आक्रमण पर आ रहे हैं। उनके कोटे का पहला पारी का छठा ओवर लेकर फजलोना एंड से उनकी गेंद रन विकेट वो गेंदबाजी करेंगे। सामने वाले छोर पर शशांक है। शॉट ऑफ लेंथ थी गेंद, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को दर्शक दीर्घाव में उछाल दिया 6 रनों के लिए और इस जबरदस्त जीपीएल छक्के के साथ ही मुंबई पल्टन्स ने इस मैच को 8 विकेटों से जीत लिया है। क्या शानदार जीत उन्होंने अजीत कर ली है। अभिनंदन, मैनी कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या कमाल का स्ट्रोक शशांक ने खेल दिया। इस छक्के के साथ मुंबई पल्टन्स ने इस मैच को शानदार तरीके से जीत लिया है। कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब को अगले मैच के लिए शुभकामनाएं देंगे। बहरहाल तो आइए समय इस वक्त प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार देने का। आयोजनकर्ताओं से नरेश प्रभु और उनकी टीम यहां पर मौजूद हो। शिवानंद जी कृपया ध्यान दें कि प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जी हाँ, एक ऐसा गेंदबाज जिसने आज जादूगरी के साथ गेंदबाजी की और विपक्षी टीम को बहुत परेशानी में डाल दिया और 5 शानदार विकेट उन्होंने अर्जित कर लिए। दीपक प्रभु जो कि प्लेयर ऑफ द मैच है, दीपक कामत, माफ कीजिएगा, दीपक कामत जो कि प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले हैं, उनको जी हाँ रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कृपया दीपक कामत, जी हाँ कैप्टन है, कप्तान है, कृपया कमेंटेटर बॉक्स के बगल में जो बड़ा मंच है वहां पर आइए। क्या बात है। अपने कुछ नियति नियम, अपनी प्रथा सर आंखों पर और प्रशांत पुरानिक जी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, साथ में मिलकर गोल कतार बनाकर उस प्रथा के अनुसार। धन्यवाद। एक दूसरे का हौसला, एक दूसरे की हौसला अफजाई करने के पश्चात दीपक आ रहे हैं। दीपक कामत क्या शानदार गेंदबाजी वो करते हैं। पिछले मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार उन्हीं को मिला था। क्या खाकर आते हैं पता नहीं दीपक कामत। एक और पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं प्लेयर ऑफ द मैच का। 5 शानदार विकेट उन्होंने अर्जित कर लिए और उनको प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। तो बड़े मंच की ओर कृपया दीपक कामत जाइए और आयोजनकर्ताओं से अनुरोध है कि दीपक जी पधार रहे हैं, उनको ये प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार वो प्रदान करें। तो प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दीपक जी को दिया जा रहा है और कैमरामैन भी हो, जरा थोड़ा सा कैप्चर करें दृश्य को, बहुत जरूरी है। हर मैच का प्लेयर ऑफ द मैच रिकॉर्ड के लिए अच्छा बनेगा। यह विज्ञापनों से भरा हुआ बैनर जिसके सामने दीपक जी और आयोजनकर्ताओं के मुख्य सदस्य जो कि इस वक्त ये प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं और आज के आधुनिक कैमरा से यानी कि मोबाइल से कैप्चर किए गए हर वो दृश्य आपको मिलेंगे। संचार क्रांति का समय है, दौर चल रहा है। आइए समय
जिस तरह से मांग करता है कि विवरण को बदलें और अलग अलग भाषाओं के में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए जीपीएल ने अलग अलग भाषाओं के कमेंटेटर्स को आमंत्रित किया। उन सभी उनमें से एक और कमेंटेटर जिसको मैं आमंत्रित करता हूं कन्नड़ में नयन जी को, कृपया नयन जी आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए कन्नड़ में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। GRS मैसूर वॉरियर्स तशींची इरुवत्तूरू स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल दोन टीमांचे 12th मॅनान कूडले हंगे उका स्कोरर्स रेडी जालींती, अंपायर्स रेडी जालींती. वी नीड द 12th मॅन ऑफ बोथ द टीम्स. वेरेवर यू प्लीज कम टू द कमेंटेटर्स बॉक्स इमिडिएटली. तशींची एक रिक्वेस्ट ऑर्गनायझर जाल्या कसं म्हणल्यार एक मॅच जे तरी इमिडिएटली नेक्स्ट मॅच स्टार्ट जाता टाइम वेस्ट करून जे तुम्ही रेडी जावन आसुका तुमगे 12th मॅन हांगा प्रेझेंट आसुका कमेंट्री बॉक्सांतू. सो तुमगेला संपूर्ण सहकार आसुका टायमार पूरा मॅच कंप्लीट जावचेक. कालच्या दिसाक चिके वेळ जाल्ल्या मॅच मुगदताना तशें जावन आज राईट टायमार पूरा मॅच कंप्लीट करका म्हणून आमगेले एक आशी तशें जावन तुमी सकट जनांना कोऑपरेट करका म्हणून ऑर्गनायझर्स तर्फेन रिक्वेस्ट करता आसती. ಕುಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯ ಕಂಡಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನತಣಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ GRS ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಇರುವತ್ತೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೂ ಸಂಘಟಕರ ಮೇಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿರಾಗ್, ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಿದಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಲೈನ್ ಅತ್ತ 6 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುನ್ನೋಟ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಸಿಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೌಲರ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. 6. ಚಿರಾಗ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಚಿರಾಗ್ ಅಂತದ್ದೊಂದು ತಾಕತ್ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಇಸ್ ದ ಬೌಲರ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಮೆಂಡೋ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟದಲ್ಲಿದ್ರು ಚಿರಾಗ್. ಆದ್ರೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 13 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿರಾಗ್ ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ್ ಪೈ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ.
GRS ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ವೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪೈ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಸ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 15ರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಂಚ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೌಸಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 16 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಚಿರಾಗ್ ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವಂತ ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭದ್ರವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಚಿರಾಗ್ ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪೈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೂರಜ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 7 ಓವರ್ಗಳ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. GRS ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವತ್ತೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್. ಎರಡು ತಂಡ ಕೂಡ ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಮಾನಾಂತರವಾದಂತಹ ತೂಕ, ಕಾರಣ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗರು, ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೀಟನ್, ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇರಬಹುದು, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇರಬಹುದು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, 1 ಅಂಕದ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬಹುಶಃ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪೈ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಲರ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನತ್ತ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಟನ್, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2ನೇ ಓವರ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು, LBW ಬಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಬಹುಶಃ 2ನೇ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೇ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೂರಜ್ ಮುಖೇನ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿರಾಗ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪೈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ಪೈ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿರಾಗ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣ ಓರ್ವ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ವಿನಾಯಕ್ ಪೈ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇರ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ
GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪೇಶ್ ಚಿರಾಗ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಂದ ತೀರ್ಪು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು 18 ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿರಾಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ರನ್ಔಟ್ ಆದ್ರೆ GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಕಾರಣ ಚಿರಾಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಓಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗಂತೂ ಮನವಿ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ. ರಿಪ್ಲೇ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇದನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದು ಲಾಭ, ವಿಕೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 2ನೇ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತೂ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೈದಾನವನ್ನ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹಲವು ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಂಘಟಕರು, ಹಾಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚಿರಾಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಿಸಿದ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿಂದ. ಬಹುಶಃ ಇದು GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ಕಾರಣ ಚಿರಾಗ್ ಎದುರಿಸಿದ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಂತ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. 15 ಅಂಕ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿರಾಗ್. ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಬೇಸರ ತರಿಸುವಂತ ಒಂದು ರನ್ಔಟ್ ಇದು GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್, ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಬಹುಶಃ ಚಿರಾಗ್ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿದೆ 19 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸದ್ಯ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಲೇಷ್ ಬೌಲರ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 19 ಗಳಿಕೆ.
ದೊಡ್ಡ ಅಂಕ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಚಿರಾಗ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೀಪೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಶ್ಲೇಷ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಶ್ಲೇಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೊಳ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಸಿಂಗಲ್, 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಟಗಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಸದ್ಯ 3ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಮುಖೇನ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 21, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರ ಚೆಂಡು ಕವಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಶ್ಲೇಷ್. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 22-22ರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 23-23ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ GRS ಮೈಸೂರು ತಂಡದ. 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಕಾರಣ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಪು. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಶ್ಲೇಷ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 24. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಅಂಕದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯುತ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 26, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. GRS ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 26 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ GRS ಮೈಸೂರು. ಬಹುಶಃ ಚಿರಾಗ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಓಪನರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಮತ್ತುಳಿದಂತ 2 ಡೌನ್ ಹಾಗೂ 3 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಕಾಮತ್. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 80ರ ದಶಕದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಚಕತೆಗಾಗಿ ಒಂದು 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಸದ್ಯ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇತ್ತು. 19 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸೂರಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಪರ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟಗಳು. ಬಹುಶಃ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು. 2 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 28ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ GRS ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿದೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೂರಜ್ ಕಾಮತ್
ಸೂರಜ್ ಕಾಮತ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸಾರಿ 30 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಕಾಮತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಕಾಮತ್. ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ GRS ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಕಾಮತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನಂತೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಿಡ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 32 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಕಾಮತ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಲಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ 33ರಲ್ಲಿ 33 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೇರ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ GRS ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಸತತ ಇದು 3ನೇ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 33ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 33 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. GRS ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So thank you, Naveen. Once again, welcome back to this Sahyadri College ground. So second match of the day, number 2 of this Arch Pharma Labs GPL 2024 is going on here between Iruvatturu Sports Club of Manipal versus GRS Mysore Warriors. Iruvatturu Manipal, after winning the toss, they had decided to field first, and in reply to that, GRS Mysore Warriors have scored 33 runs with 3 wickets down in 4 overs. 3 more overs to go now. Let's see how many more runs they will be able to score in the remaining 3 overs. New bowler has been introduced here to bowl the over number 5 of the innings. It's a 7 overs match. Ashwin is the new bowler. Single has been taken in the first ball of the over. Once again, the ball is in the hands of the bowler Ashwin now. The 2 batters for GRS Mysore in the middle are Sandeep and Vinayak. Vinayak is set to open his account. Sandeep is at the non-striker's bench. Vinayak is all set to face Ashwin now. That's a very, very fine delivery there, which beats the batsman outside the off-stump delivery. And the batsman Vinayak was thinking that it is too far from the off-stump, so just leaves the ball, left the ball to go to the wicket-keeper. Vishwanath, the wicket-keeper, collects the ball behind the stump, so no runs resulted here. Again, similar delivery and similar result here. This time the ball kept low, surprised the batsman. The batsman Vinayak didn't know much about delivery. He does not have any clue about that ball. Misses it completely.
2 dot balls so far here from Ashwin, 2 consecutive dot balls, and Vinayak is finding some difficulty in facing the bowling of Ashwin. He will have to improvise his batting. Again, third one here. The ball is pitching outside the off stump. The bowler is maintaining the same line and length here. He's trying to bowl outside the off stump, and Vinayak will have to try something different now. And this is the fourth time. What a economical bowling figures there by Ashwin. Can you believe this? 4 consecutive dot balls. Runs are dried up for GRS Warriors now. Score remains on 34. Things are slowly down. Meanwhile, Vinayak gets a single, played that shot elegantly to the offside towards the deep extra cover region. And a very good over has come to an end there by Ashwin. Just considered only 2 runs in that over. Pretty good over. What a great productive over for team Iruvatturu Sports Club Manipal. That's the end of the over number 5. After 5 overs, runs on the scoreboard is 35 with 3 wickets down. And you are watching Arch Pharma Labs GPL Trophy 2024. Kodia Sports Association of Mangalore are organizing this most prestigious cricket tournament here. Youth of GSB are the broadcast partners. So you can watch each and every live actions of this cricket tournament in Youth of GSB Facebook page as well as in YouTube channel and the live scoring app where you can get all the updates. Sridhar Mendo has been brought into attack. He's attacking from the Arch Pharma Labs end, which is a far end, a tall man. Sridhar Mendo has got a unique bowling action, high arm bowling action. Basically, he's from Shirsi. He has played many matches for Shirsi Super Kings. And now he is ready to bowl the second ball of the 6th over. One of the very, very experienced bowlers, Sridhar Mendo, on his way to right-handed batter Sandy. Sandeep is on strike. Here he goes. The ball takes the leading edge of the bat, but the ball just landed into the between the two fielders, wicket keeper and the fielder who was standing behind the wicket keeper. So the ball chipped up in the air. It was taking the leading edge of the bat. Wicket keeper tried his best to take that catch, but it went above the head of the wicket keeper. Meanwhile, there was a very good running between the wicket. Couple of runs have been added to the total of GRS Mysuru Warriors, which takes their full score to 38 now. Some problem for the bowler during his bowling run-up. Sridhar Mendo balls, punch the ball onto the onside, hammer the ball to the deep square leg region, but there is a protection. The fielder comes across and collects the ball and throws it back to the wicket keeper. But before the throw reaches the wicket keeper, there is ample time for Sandeep to pick up a single here. Sandeep gets a single. His individual score now moves on to 8, and Vinayak will take the strike now. Vinayak is ready to face the bowler Mendo. Converted that into full toss, but the timing was not good, placement was not good. Aggressive running between the wicket here, very good understanding, good running between the wicket, and this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So couple of runs have been added to the total here. They have taken that first run very fast. Once again, he was trying to shuffling across the stumps and trying to go for a big hit, but this time he will have to satisfy with only a single, not more than that. There was no possibility of going for the second run because Suraj Kamath comes in and collects the ball. Suraj Kamath is the icon player of Iruvatturu Sports Club Manipal. That's a flighted delivery and uneven bounce there.
And the batter Sandeep misses the line of the ball completely. The pace deceives the batsman. Ball betrays the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage. And wicketkeeper Vishwak does the rest of the job. That's a good over from Sridhar Mendo. So after the completion of 6 overs, runs on the scoreboard is 42 for 3 GRS Mysore. GRS Mysore Warriors had lost their first game yesterday against Aberrant Diamonds, whereas Iruvatturu Sports Club Manipal were defeated by Malpe United. So both the teams are sailing in on the same boat here. Both the teams wants to win this match to get 2 points in their points table. Must-win situation here, rather a do-or-die situation now. That's a very, very fine delivery there. Ball pitching outside the off stump, and batsman wanted to play the ball to the offside, but the ball is not coming onto the bat. Sujit is the bowler. First one was a dot delivery. Once again with a long run up, Sujit on his way to Vinayak. Steers it down to third man region, angling the face of the bat. He just realized that there is no slip, so cuts it off down to third man. Sridhar Mendo from the third man region comes across and collects the ball. Meanwhile, these two batters have completed the second run easily here. 2 more runs have been added to the total of GRS Mysore Warriors, and they are now 44. Sujit bowls. And that should be a wide. Yes, it is, because the ball was going far away from the off stump. And umpire Karthik has no hesitation in stretching his arms, turning around and giving a wide signal here. Played the shot into the gaps to the vacant region. Long chase for Suraj Kamath. Suraj Kamath was able to stop the ball very close to the boundary ropes here. Meanwhile, they are looking for the I think umpire has given him ouch. So GRS Mysore have lost the wicket here. Very, very good piece of fielding there by Suraj Kamath. It was a long chase for him. He had to cover a lot of ground, and very close to the boundary ropes, he was able to stop that ball. He was very quick in throwing the ball to the wicketkeeper, and wicketkeeper Vishwanath returns the ball to the bowler, and meanwhile the batsman was short of his ground, so they have lost a wicket here. Suraj Kamath is the icon player for Iruvatturu Sports Club of Manipal. He has played plenty of KPL Karnataka Premier League matches, played for Bijapur Bulls as well as Bangalore Blasters. Well, he goes for a big one, punched the ball onto the onside, and very good catch taken there by the fielder. What a great effort. Ashwin, the fielder, who was standing at long on region, kept his eyes on the ball, converted that into an amazing catch. Good presence of mind, and you can't do anything whenever you have got fielders with such a good presence of mind. What a brilliant piece of catch there by Ashwin. GRS Mysore have lost one more wicket here at the score of 47. We are in the last over of the innings. Only 2 more balls to go of this over now. GRS Mysore, after putting into bat first, they are now 47 for 5. They are having a run rate of just over 7 per over. Last 2 balls to go now. They desperately need some big hits now. Punch the ball onto the onside. Again, straight in the throats of Ashwin. One more wicket has gone down for GRS Mysore Warriors.
47 for 6 now. Two consecutive wickets for the bowler Sujit. This is the final over of the innings. Productive over for Iruvatturu Sports Club Manipal. So the bowler is on hat-trick now. Sujit is on hat-trick. Can he pick up the hat-trick wicket? This is going to be very interesting now. Here is the last delivery of the final over of the innings. And Sujit has got a good chance to pick up the hat-trick wicket. Full toss converted it into full toss. Straight to the fielder of deep square leg region. Will they get 2 runs? They come back for the second. I think that's all over for the batsman. So altogether, after the completion of 7 overs, GRS Mysore Warriors, after putting into bat first, they have scored 48 runs. So 49 is the victory target for Iruvatturu Sports Club Manipal to win this match. 49 runs in 7 overs they need to score in order to win this match and to get 2 points in their points table. This is not a difficult target for Iruvatturu Sports Club of Manipal team because they have got a good batting lineup. Only thing is the opener batsmen will have to play with cool mind. What they should do is just work the balls into the gap, pick up singles and doubles to keep the scoreboard moving, rotate the strike. That's what they need to do now. And whenever they get some loose deliveries or full toss deliveries, only then they will have to look for big hits. Suraj Kamath is an icon player for the team. Iruvatturu Sports Club is playing under the ownership of team owner Raghubir Shanai, Ramesh Shanai, Dinesh Shanai and Vishwanath Shanbag are the co-owners, whereas GRS Mysore Warriors for the first time they are participating in this GPL tournament. Deepesh Shanai is the icon player, Bantwal Subrai Baliga is the team owner and co-owners are M. Pushpalata Baliga, A. Ram Prasad, Kamath. Let us see who is going to win this match and to get 2 points in their points table now. So soon after this match, we have one more interesting match which will be played between ASKB Cricketers Bengaluru versus Rising Stars Mangalore. I request the captains of both the teams to come to the main stage and please contact the organizers. Please give your playing 11 list and the toss will happen after that. So captains are requested to come to the commentators box immediately for the toss. Meanwhile, before the innings of Iruvatturu Sports Club starts, it is time for us to change the commentary language. I have got Mr. Ajay Raj is with me in the commentary box who is going to give you the further commentary in Hindi language.
थैंक यू सुरेश भट्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्रिकेट के उत्साह से सराबोर माहौल में बैठे तमाम दर्शकों का हृदय से स्वागत है जीपीएल 2024 में। जीपीएल क्रिकेट का महोत्सव, कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की शानदार प्रस्तुति और आज का ये दूसरा मैच चलता हुआ कोडियल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब और मुंबई पल्टन्स के बीच में पहला मैच हुआ, जिसमें मुंबई पल्टन्स ने शानदार जीत कर ली। इस मैच में डीआरएस मैसूर और इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल के बीच में संघर्ष चलता हुआ। टॉस जीतकर इरवत्तूर के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 49 का टारगेट जो कि उनके सामने रखा गया निर्धारित 7 ओवर्स में। और शानदार दृश्य है। समय इस वक्त आपको बता दें सुबह का प्रहर बढ़कर दोपहर की ओर बढ़ता हुआ जी। अब 12:05 हो चुके हैं। सह्याद्री महाविद्यालय का ये नेत्रावती छोर का मैदान जो कि हवादार प्रकृति के गोद में बसा हुआ। नदी काफी शांत है, दर्शक इस वक्त काफी शांत है। शाम के पश्चात दोपहर के पश्चात उत्साह ज्यादा होता है। बच्चे, महिलाएं, पूरा फैमिली परिवार यहां पर आकर एकजुट होकर इस महोत्सव में सहभागी हो जाते हैं और इस वातावरण का रंग कुछ और ही हो जाता है। इस वक्त दूर दूर अलग अलग जो ध्वज हवा में, अलग अलग रंगों के ध्वज जो हवा में लहरा रहे हैं वो काफी शानदार दिखाई पड़ रहे हैं। इस मैच में दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन इस वक्त आ चुके हैं गिरीश और नॉन स्ट्राइक एंड पर श्रीनिवास। गेंदबाजी का जिम्मा प्रशांत पर आ चुका है। प्रशांत फुजल एंड से पहली गेंद को, दूसरी पारी की पहली गेंद राउंड विकेट। इस बार पहली गेंद को ऑन साइड के दिशा में पुल कर दिया। हवा में कुछ देर के लिए थी, फील्डर काफी डीप में खड़े थे। जब तक वो गेंद तक पहुंच पाते बैट्समैन दौड़कर 1 रन पूरा कर चुके हैं। क्रिश ने अपना खाता खोल लिया। 1 रन बन चुके हैं इरवत्तूर की तरफ से बगैर किसी नुकसान के, क्षति के। तो कमेंट्री बॉक्स में गोपी भट्ट जी आए हैं, उनका हृदय से स्वागत है। और आज हो सकता है कि वो मन बनाए कि कोंकणी में शानदार तरीके से विवरण आपके सामने रखें। और जीएसबी प्रीमियर लीग जैसा आप जानते हैं, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण जीएसबी प्रीमियर लीग जिसे इन शॉर्ट कहा जाता है। और ये 8वां एडिशन, 8वां सीजन चल रहा है। लगातार एक क्रिकेट श्रृंखला को कंसिस्टेंसी के साथ बरकरार रखना इतना आसान नहीं, लोहे के चने चबाने के बराबर है। इस छोर से गेंद राउंड विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर थी। बहुत धीमी गति से और लूज गेंद कहा जा सकता है, जिसमें ज्यादा रफ्तार नहीं थी और उछल कर आई, उसका बहुत आसानी के साथ उपयोग किया बैट्समैन ने। और गेंद को गिरीश ने धीरे से कट भर कर दिया और अपने साथीदार को जिम्मेदारी के लिए बुला गया। श्रीनिवास ने गेंद को धीरे से कट भर कर दिया था, बल्ले पर आने दिया, फिसलने दिया। 1 रन के साथ कुल योग बढ़ चुका है। इस छोर से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, मिस कर गए विकेट कीपर ने। हज्जी नहीं बैकअप करे, फील्डर ने गेंद को उठा लिया और जी हाँ, रन आउट के लिए अपील जोरदार। स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर ने उंगली को उठाया, कहा कि बैट्समैन आउट हो गए। इस शानदार विकेट के प्रायोजक जीपीएल 2024। अगले मैच के लिए आमंत्रित करता हूं, अगले मैच के लिए एकेएसबी और राइजिंग स्टार। एकेएसबी और राइजिंग स्टार दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कृपया वो बड़े मंच की ओर आए टॉस के लिए। राइजिंग स्टार और एकेएसबी के कैप्टन जल्दी कमेंट्री बॉक्स के बगल में जो बड़ा मंच है वहां पर आइए टॉस के लिए। तो पहला विकेट गिर चुका है। रिप्ले में आपने देखा कि किस तरह से हाँ ना करते हुए जो तालमेल खो जाते हैं, कहीं ना कहीं दुर्घटना घट जाती है और यही हुआ। बैट्समैन क्रीज से रह गए और आखिरकार स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर ने संकेत किया कि बैट्समैन आउट हो गए। इसी के साथ 2 के कुल योग पर 1 विकेट बहुमूल्य गिर चुका है। इरवत्तूर परिस्थिति से जूझने की जी हाँ जूझ रहा है। 2 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। बाउंड्रीज और सिक्सेस की बात करें तो अब तक 41 छक्के और 39 चौके लगे हैं इस पूरी श्रृंखला में। दूसरा दिन चल रहा है। इस छोर से गेंद को लेकर दोबारा प्रशांत भी तैयार हो रहे हैं। फजल एंड से उनकी गेंद 62 नंबर के जर्सी में दौड़ना शुरू कर दिया। राउंड विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर। क्या कमाल की गेंद थी। टप्पा खाने के बाद गुडलैंड स्पॉट से घूमकर थोड़ा बाहर की तरफ बैट्समैन दुविधा में पड़ गए। आधे अधूरे मन से गेंद को थोड़ा सा खेले या न खेले इस दुविधा में पड़ गए और मिस कर गए। अगर बल्ले को चूमती, स्पर्श होता तो विकेट कीपर के हथेली में जाकर कैद होकर खुश हो जाते। बहरहाल एक और गेंद
प्रशांत की गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, ऑन साइड पर पुल कर दिया, लेकिन स्ट्रोक के पीछे ज्यादा ताकत नहीं, और वैसे भी गेंद आउटफील्ड में काफी धीमा ट्रैवल करती है। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो फासला है वहां पर फील्डर ने दौड़कर मिड विकेट से जाकर गेंद को उठा लिया, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने। इस 1 के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 3 पर 1 विकेट के नुकसान पर, 3 for 1। श्रीनिवास स्ट्राइक एंड पर है, प्रशांत की गेंद और पलटकर क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, अच्छी योजना थी। और श्रीनिवास ने देखा गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, हालांकि पहले ही कमिट हो चुके थे, योजना बना ली थी कि वो पलटकर गेंद को खेलेंगे। शॉट ऑफ गुड लेंथ थी और धीमा उछाल जिसको ऑन साइड की जी नहीं ऑफ साइड की दिशा में पलटकर धीरे से टैकल किया, 1 रन चुराकर जिम्मेदारी अपने साथीदार को सौंप दी। इस 1 के साथ कुल योग बढ़कर 4 पर ये ओवर समाप्त हुआ। तो पहला ओवर समाप्त हुआ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, स्कोर इज ऑन 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 49 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने का, और मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। मैंडेटरी पावर पे जो होता है वो बड़े मायने रखते हैं, उसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है बैट्समैन के लिए। अगर ऐसा नहीं हो पाए तो फिर मुश्किल हो सकता है। छक्के अब तक श्रृंखला में, थोड़ा सा करेक्शन, 51 सिक्सेस जो कि लग चुके हैं और 39 बाउंड्रीज। ये श्रृंखला में अभी भी बहुत रोमांच बचा हुआ है, जितने सारे चौके छक्के लगने हैं, देखते हैं क्या होगा। तो बैट्समैन नंबर से गैप देने श्रीनिवास बी और नागेश भाई नॉन स्ट्राइक एंड पर। आक्रमण पर मोर्चे पर सचिन पई दूर वाले छोर से आज फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। एक काला जो बैनर लगा हुआ है खास तौर पर गेंद को साइट करने के लिए, उसके ऊपर एक जी हाँ कैमरामैन जो कि बिल्कुल तैयार है, तत्पर है अपने काम को अंजाम देने के लिए। उस छोर से सचिन पई की गेंद लंबी दौड़ के साथ तेज तादार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हुए। सचिन ने दौड़कर क्रीज के तक, जी हाँ क्रीज तक पहुंच गए, लेकिन न मालूम क्यों थोड़ा सा उनके दुविधा में एकाग्रित नहीं हो पाए, विश्वास कहीं ना कहीं भटक गया, फिर डिलीवर नहीं कर पाए, गेंद को वापस लौट रहे हैं और एक खिलाड़ी ने उनका हौसला बढ़ाया। दोबारा सचिन बॉलिंग एंड की दिशा में जाते हुए आज फार्मा एंड से उनकी गेंद स्ट्राइक एंड पर श्रीनिवास तैयार। फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को खेलने के प्रयास में चूक गए, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो किया, बैकअप कर रहे फील्डर ने। और बहुत कुछ हुआ लेकिन नहीं हुआ, तो विकेट गिरने की जो संभावना थी वो नहीं हुई, क्योंकि बैट्समैन गेंद को खेलने के प्रयास में बल्ले को थोड़ा हवा डालकर गेंद गई, विकेट कीपर के अंदर नहीं कर पाए। बैकअप कर रहे फील्डर ने गेंद को उठा लिया, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में बैट्समैन को आगे निकलते हुए देखकर उन्होंने थ्रो कर दिया, दिशाहीन थ्रो, लेकिन रन लेने का अवसर नहीं है। 4 रन से 1 विकेट के नुकसान पर सचिन की पहली गेंद फुल टॉस रह गई, क्या योजना बनाते हैं? और विकेट, ये गेंद हवा में गेंद को खेल दिया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई है, क्या बेहतरीन स्ट्रोक है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए, जीपीएल का सिक्सर। लेग स्टंप के सीध में हवा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रिफ्ट स्विंग होती हुई गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के सीध पर आ रही थी, लेंथ में ज्यादा थी और श्रीनिवास ने पलक झपकते ही गेंद को जज कर लिया, थोड़ा स्ट्रिगर ऑन हो गए और विकेटों को कवर किया, पूरी तरह से गेंद के ऊपर आ गए। हालांकि लेग स्टंप के लाइन पर गेंद थी, उसको बहुत खूबसूरती के साथ पुल किया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और गेंद ऑफ स्टंप की ज्यादा भारी, इस बार रन आउट का मौका होगा, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो, अगर गिरता चूक होता भेद होता तो बात बनती, लेकिन पहले जमीन पर गिरी, उछल कर स्टंप्स के ऊपर से निकल गई और बैट्समैन बच गए, क्रीज के काफी बाहर खड़े थे और इस दौरान रन लेने का अवसर जो था वो टल गया और खतरा भी टल चुका है। 10 रन से 1 विकेट के नुकसान पर सचिन आक्रमण पर तैयार। और विकेट, फुल टॉस गेंद, कैच होगा, फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं है, बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, क्या शानदार फील्डिंग है, लेकिन अंपायर ने कहा कि नो बॉल। टिप्पा खाने के बाद ऑन साइड की दिशा में बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को उछाल दिया, लेकिन अंपायर ने कहा कि नो बॉल है और आखिरकार नो बॉल के इस रन के साथ दौड़ और नो बॉल को मिलाकर फुल टॉस, जी हाँ बीमर थी, लगभग कमर के ज्यादा ऊंची उठी थी, जी हाँ संकेत किया श्रीनिकेत जी ने, तो कमर से ज्यादा ऊंची उठी अबाउट द वेस्ट और
नियम बहुत जरूरी है पालन करना, इसलिए अंपायरों का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। आखिरकार देखभालते हुए अंपायर ने कहा कि नो बॉल। फ्री हिट का अवसर बैट्समैन के पास। सचिन जो अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, एकाग्रित नहीं हो पा रहे। यह गेंद हवा में, गेंद को खेल दिया। कैच होगा जरूर लेकिन गिना नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। बैट्समैन सुरक्षित, क्योंकि बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को कैच तो जरूर किया, लेकिन फ्री हिट का अवसर था और बैट्समैन ने 1 रन को पूरा कर लिया। रन्स बढ़कर 14 पर 1 विकेट के नुकसान पर। तेज धूप मैदान पर फैली हुई है। आप जानते हैं गर्मी का ये मौसम है, महीना है जिसमें पसीने छूट जाते हैं, लेकिन हवा ताजा चलती हुई। एक और गेंद लेग स्टंप के आसपास थी, रनआउट का मौका बनेगा, यूं नहीं तो यूं ही सही। आखिरकार बैट्समैन रन आउट होकर लौट रहे हैं। नागेश आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं और हालांकि पहली बार बच गए अंपायर की नजरों से, स्टंप्स को छोड़कर निकल रही थी गेंद, अपील की गई जिसको अंपायर ने पुरस्कार नहीं दिया और दूसरी बार रनआउट के रूप में आउट हो गए। स्टंप्स को छोड़कर, क्रीज को छोड़कर आगे निकल गए। थ्रो हो चुका था स्ट्राइक एंड के दिशा में, उन्होंने गेंद को गैदर करते हुए स्टंप्स को गिल्लियां को उड़ा दिया। तो इसी के साथ तो रिप्ले में देखा जा सकता है कि क्या हुआ। आखिरकार नजदीकी खिलाड़ी ने जल्दी गेंद को उठाकर स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया और नागेश बहुत आगे निकल चुके थे। आवश्यकता नहीं थी इस रन की, क्योंकि फील्डर नजदीक थे, उनके पास गेंद गई थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तो इसी के साथ एक और विकेट का पतन। दूर वाले छोर से सचिन दौड़ना शुरू कर चुके हैं। और विकेट उनकी गेंद है इस बार। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, ग्लांस किया गेंद को ऑन साइड की दिशा में, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास, इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 15 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 15 for 2, जबकि ये ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति पर 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विश्वनाथ और श्रीनिवास इस वक्त पारी की बागडोर को संभाल रहे हैं। श्रीनिवास काफी देर से क्रीज पर हैं, 11 रन वो बना चुके हैं। अब तक 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया। लक्ष्य 49 का है, अब तक सिर्फ 15, यानी कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि बहुत बड़ा विशाल लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में बात बनेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सारे फील्डर्स एकत्रित होकर योजना बना रहे हैं कि जिस तरह से दबाव उन्होंने बनाकर रखा है उसको बरकरार रखें। और अब चयन है गेंदबाज का कि कौन सा गेंदबाज आक्रमण पर आएगा। कप्तान के पास क्या विकल्प है उसको देखते हुए इस छोर से तो दीपक बादल इस छोर से आ रहे हैं आक्रमण पर। प्रशांत पुरानी जी का स्वागत है, मुंबई पल्टन्स के मैनेजर कहिए, टीम ओनर कहिए, गाइड करने वाले कोच कहिए और कहिए, स्वागत है उनका। उनकी टीम अच्छा कर रही है, शुभकामनाएं उनको, बहुत अच्छा करें और जीते वही जो डिजर्व करता है। टीम में स्ट्रेंथ काफी अच्छा है गेंदबाजी और बल्लेबाजी का। बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्या होता है ये देखते हैं। 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस छोर पर दीपक बादल, नाम में ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, दीपक भी और बादल भी है, तो 2 नाम मिलकर दीपक बादल बने हुए हैं। इस छोर से आक्रमण पर 97 नंबर के जर्सी में दीपक गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। सामने वाले छोर पर विश्वनाथ। राउंड विकेट ये गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा पीछे हटे, ये गेंद को आने दिया, बल्ले के ऊपर रनआउट का मौका बन सकता है, पलट कर वापिस लौट गए बैट्समैन श्रीनिवास। और अगर ना पलटते तो बात बिगड़ सकती थी, आउट हो सकते थे। विकेट कीपर के पास थ्रो आ चुका था। तो पिछला स्ट्रोक टिप्पा खाने के बाद कुछ बाहर की तरफ निकल रही थी, पीछे हटे, बल्ले पर आने दिया, फिसलने दिया गेंद को, और जब तक फील्डर गेंद तक पहुंच पाते। दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर 1 रन को पूरा कर दिया और आखिरकार विश्वनाथ बच गए, श्रीनिवास बच गए, माफ कीजिए, इस छोर से गेंद श्रीनिवास के लिए गेंद। और दीपक बादल की ये गेंद कुछ अलग अंदाज में थी, लेंथ में ज्यादा, ऑफ स्टंप के बाहर जरूर थी, उसको खेलें या न खेलें दुविधा में पड़ गए, थोड़ा चेक करना चाहते थे, मिस करके विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। दीपक बादल की गेंद फजल एंड से पीछे है, क्या बात है, अच्छा स्ट्रोक। जिस तरह से सवाल जवाब उसी अंदाज में, थोड़ा देखा कि गेंद टिपा खाकर मिडलर ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर निकल रही है, पीछे हटकर गेंद को धीरे से बल्ले पर से फिसलने दिया, 1 रन चुराकर अपने साथीदार विश्वनाथ को जिम्मेदारी को सौंपी। 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। राउंड विकेट
फजल से एक और गेंद बीट कर गई बैट्समैन को, बैकफुट पर थोड़ा पिछले पैर को स्ट्रेच करते हुए कट करने का प्रयास किया था, बच गए कि बल्ले का सिरा नहीं लिया। वैसे भी विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूट चुकी थी। 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 49 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का। फजल से राउंड विकेट, ये गेंद ड्राइव किया, गेंद को खूबसूरत सो का 1 रन लेने का अवसर मिलेगा, दौड़कर पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, क्या बात है, तेज रनिंग, बहुत तेजी के साथ दूसरा रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने। इस रन के साथ कुल योग बढ़कर 19 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी बहुत सारे रनों को बटोरना होगा इस मैच को अगर जीतना है इरवत्तूर को, तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे। विश्वनाथ 4 की व्यक्तिगत योग पर 4 गेंदों का सामना किया। अब दीपक बादल इस छोर से एक और गेंद को लेकर राउंड विकेट, उनकी गेंद, कदमों का इस्तेमाल, कलाइयों का बेहतरीन उपयोग, गेंद को ऑन साइड की दिशा में फ्लिक के अंदाज में खेल दिया, मिड विकेट में गेंद गई, 1 रन लेने का अवसर, इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो 3 ओवर समाप्त हुए हैं, 3 ओवर की समाप्ति पर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 20 for 2। अभी 4 ओवर्स शेष बचे हैं। इक्वेशन आपको बता दें, बचे हुए 4 ओवर्स में यानी कि 24 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। 29 runs to get in 24 balls। बैट्समैन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए। 29 more runs required in 24 balls। 29 रनों की दरकार है, 24 गेंदें शेष बची हैं और 29 रन बनाए जा सकते हैं, बशर्ते कि आप योजना बनाएं और उसको लागू करें, इंप्लीमेंट करें, तभी बात बनेगी। क्या ऐसा हो पाएगा, देखने वाली बात है। विश्वनाथ स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और आक्रमण पर प्रशांत भी आ रहे हैं। अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर दूर वाले छोर से आज फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एंड से वो गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और हवा एक तरह से अगर कहा जाए तो स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड की दिशा में चल रही है। बैट्समैन विश्वनाथ के पास अवसर है कि वो कुछ कर सकते हैं ऑन साइड पर, अगर सही टाइमिंग के साथ, प्लेसमेंट के साथ गेंद को खेला जाए तो बात बनेगी, बाउंड्री लाइन को क्लियर कर सकती है। क्या ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन और एक खिलाड़ी को जो लगभग मिड ऑन डीप में था उसको हटाकर मिड ऑफ की दिशा में ढकेल दिया गया। अब ऑन साइड पर क्या जबरदस्त क्षेत्ररक्षण है, सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, एक भी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन 30 गज के दायरे के अंदर ऑन साइड पर नहीं है। और दूर वाले छोर से ये गेंद, प्रशांत भी दौड़ना शुरू कर रहे हैं आज फार्मा एंड से, उनके सामने विश्वनाथ स्ट्राइक एंड पर हैं। राउंड विकेट, ये गेंद ऑन साइड की दिशा में, गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ घुमाकर खेल दिया, फ्लिक किया और अच्छा स्ट्रोक था, कलाइयों का सही उपयोग। फुल टॉस गेंद को इस तरह से मानो प्लेस करना चाहते थे, लेकिन स्क्वायर लेग डीप में जो फील्डर थे बस उनके पास निकल गए। थोड़ा सा और तिरछा खेलते तो शायद दोनों फील्डरों के बीच में रास्ता था। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास, रन बढ़कर 21 पर श्रीनिवास स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। आज फॉर्मैन से प्रशांत की अगली गेंद, राउंड विकेट, ये गेंद थोड़ा सा बच गए, बल्ले को शायद लगी है, नहीं देखना होगा, अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया है तो शायद बल्ले से लगी है। विकेट के पास से गेंद गुजर गई और बच गए कि स्टंप्स को नहीं लगी। और वैसे भी आपने कल 2-3 बार देखा कि स्टंप्स पर हल्के से अगर गेंद लगती है तो वे गिल्लियां आसानी से नहीं उठती हैं, क्योंकि गिल्लियां वजनदार है और गेंद थोड़ा सा नरम है, सॉफ्ट है, हल्का सा है। उस छोर से इस ओवर की अगली गेंद, राउंड विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और गेंद को ऑन साइड की दिशा में खूबसूरती के साथ मिड विकेट डीप में तिरछा खेल दिया। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया बैट्समैन ने। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 22 पर पहुंच चुका है। 23 पर 23 for 2, 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों बैट्समैन बड़ी अच्छी योजना बना रहे हैं। जरूरी नहीं कि आक्रामक स्ट्रोक खेलें, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 स्ट्रोक्स निश्चित तौर पर जरूरी है रनों को बराबर, गेंदों का फासला दूर करने के लिए। ये गेंद विकेटों को कवर किया, ऑन साइड की दिशा में स्लॉग स्वीप के अंदाज में गेंद को उछालने का प्रयास किया था श्रीनिवास ने। जोरदार अपील हुई लेकिन अंपायर के नजरों से बच गए। जी हां, स्टंप्स को छोड़कर बाहर निकल रही थी और इस वजह से अंपायर ने इस अपील को खारिज कर दिया। बहुत जोरदार अपील की गई थी, गुहार लगाई अंपायर को कि भाई इस अपील को स्वीकार करें, लेकिन जैसा मैं कहता हूं कि कभी कभार गेंदबाजों को लगता है कि अंपायर बिल्कुल पत्थर दिल वाले हैं। उस छोर से ये गेंद, राउंड विकेट,
एक और अच्छी गेंद थी, दोबारा अपील, विकेट कीपर ने मात्र अपील किया है और 1 रन तेज कदमों के साथ दोनों बैट्समैन दौड़कर पूरा कर चुके हैं। रन बढ़कर 24 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी प्रशांत कर रहे हैं और बैट्समैन विश्वनाथ जो कि बीट होते जा रहे हैं, 2 बार बीट हो गए इस बार। तो विश्वनाथ स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। वो छोर से प्रशांत की गेंद दूर वाले छोर से आज फार्मा एंड से दौड़ना शुरू कर दिया राउंड द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर घुमाकर फील्डर की दिशा में गई, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट गिर चुका है, बैट्समैन आउट हो गए। थोड़ा सा बैकलिफ्ट जो था उसके साथ स्विंग के साथ गेंद को ऑन दी अप घुमा दिया ऑन साइड की दिशा में। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी गेंद, बाहर आकर थोड़ा स्ट्रेच करते हुए बैकफुट पर गेंद को घुमाकर ऑन साइड की दिशा में खेल दिया। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में फील्डर जो थे उनके पास गेंद गई, उन्होंने गेंद को खूबसूरती के साथ कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन और ओवर समाप्त हो चुका है। और आपकी जानकारी के लिए ध्यान दिला दूं, दोनों और स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड और ऑन साइड के पीछे बाउंड्री लाइन के पीछे 2 डगआउट्स रखे हैं, 2 डगआउट्स बनाए गए हैं, वो प्लेयर्स के लिए हैं। हालांकि उनके चाहने वाले कुछ वहां पर बैठे हुए हैं, तो उनसे अनुरोध है कि विशेष तौर पर, खास तौर पर प्लेयर्स के लिए बनाया गया वो डगआउट, तो पहले मौका उन सारे खिलाड़ियों को, उन प्लेयर्स को दें डगआउट में बैठने के लिए। अगर फिर जगह बचती है तो आप उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं, बुरा न माने, यह क्रिकेट है। बहरहाल खेल में वापस आते हैं। 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है और रोमांच अभी बाकी है। मुझे लगता है कि गोपी भट्ट जी को बुलाते हैं थोड़ा सा इंटरेक्शन करने के लिए। गोपी भट्ट जी, आप देख रहे हैं 24 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। सबसे पहले आपका स्वागत है जीपीएल के इस 8वें एडिशन में, जीपीएल 2024 में। आज का दूसरा दिन शुरू हो चुका है और इस मैच में इस वक्त उर्वतूर थोड़ा सा दबाव में है, लेकिन रन और गेंदों के बीच में ज्यादा फासला नहीं है, बनाए जा सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि इस मैच को उर्वतूर आसानी से जीत पाए? आसानी से जीत पाए म्हळ्यार तितली सुलभ म्हणून सांगू जायना, जाल्यार कंडिशन्स कशें म्हळ्यार केलो पाटी रात्री ड्यू फॅक्टर आनी आसता तसले एक टफ सिच्युएशन खंडीत ना। दोन्ही टीमाक लायक सिच्युएशन आसा आनी विंड डायरेक्शन येदोळ सूड जाय न्ही, बहुशा 2 अड्डेस गण नंतर रिवर साइड तुलान विंड चड आसता, इक्वल आसा म्हणून येता दोन्ही टीमाक। क्या बात है, इस छोर से गेंद पलट कर गेंद को खेलने का प्रयास। रात के खेल में और दिन के खेल में काफी बिल्कुल फर्क है गोपी जी, बिल्कुल वेरी वेल सेड। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि रात के मुकाबले में गेंद कुछ ज्यादा रफ्तार ले रही है। अभी और समय निकलेगा तो और तेज हो सकता है खेल। लॉफ्टेड स्ट्रोक जो कि बाउंड्री लाइन को क्लियर कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर। इस वक्त बैट्समैन के लिए ऑफ साइड होगा क्योंकि दूर छोर पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो बैट्समैन को स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में हवा का साथ है तो वो वहां पर कहीं ना कहीं रन बना सकते हैं। 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ओ द विकेट पलट कर गेंद को खेल दिया, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, फील्डर वहां पर तैनात कर दिए गए। 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया। इसी के साथ रन बढ़कर 25 पर 26 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। कुछ कोंकणी में कमेंट्री हो जाए गोपी भट्ट जी आपकी आवाज में, दर्शकों का मन जीतने के लिए। खंडित काल तुलान अजयराज बहुशा सकाळ तुलान रात्री ताई तुम्ही हिंदीन तांगेले कमेंट्री ऐकल्याची भारी चंद कमेंट्री आणि एक वॉइस कशी म्हळ्यारी ते कमेंट्री सांगेल तसं एक वॉइस म्हणटा तांगेले एक गोल्डन वॉइस तांणी कमेंट सांगिल्ले, मस्त तुमकां खुश जाला म्हण लागता। तशी आता बॅटिंग करूं का शिन्नी लायक एक मारू प्रयत्न केला जाल्यार विंड डायरेक्शन आवटूची बॉल पेटोवच्याक ताणें प्रयत्न केला जाल्यार कनेक्ट जाय न्ही बॉलाक। तुमकां गोतशील म्हणकेची आतां ऑफ सायडाक बाउंड्री लायना 4 फिल्डर्स राबयला, 130 यार्डा भितर एकलो मात्र फिल्डर आसा। बहुशा तुमी आतां ग्राउंडा मध्येन तूं कसो फ्लॅग पळयता आसा की बाउंड्री लायना भायर तुमकां विंड डायरेक्शन कशें वता आसा म्हणून दिसता आसा। बॅट्समॅन बॉलर ते आतां कित बॅटिंग वापस रिवर्स मारू प्रयत्न, ह्या फाटी बाउंड्री लायना बॉल वता आसा जाल्यार ते एक फिल्डर लायक एक फील्डिंग 1 रन मात्र 2 रन लागेल प्रयत्न लायक 1 रन विकेट तेई सना मटाक मिसफील्ड जल्ली कूडले त्या मिसफील्डचा उपयोग घेताची श्रीनिवास दोन्ही रन्नाक धावन 2 रन कंप्लीट केलेला आसा। असल एक टफ सिच्युएशन म्हळ्यार असल एक क्रुशियल सिच्युएशन आनी 1 रन कितली म्हारग बेसता म्हणून तुमकां काल दोन्ही टाई पळोवच्या मेळ्ळा। कालचे सगळे दिवसांत दोन्ही टाई मॅच पळोवच्या मेळ्ळा। 1 रनाची इम्पॉर्टन्स कितलें क्रिकेटांत म्हणून
हांगा GPL अंजल्यार तुमकां कालच्या दिवसाक पळोवपाक मेळ्ळा तशी स्कोर तुमी पळयता आसतली 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स शिन्नी स्ट्रायकाक लो फुल टॉस बॉल सीधा फील्डला लातान तो 1 रन मात्र मेळता दोनी रन ह्या फाटी खंडित दानी रिस्क येवचा प्रयत्न करनाची विकेट हातान तस्साने 7 स्कोर चेज करतसले स्कोर रिक्वायर्ड रन रेट तुम्ही स्कोर बोर्डान पळयला रे 9.23 म्हणून दिसता करंट रन रेट एक्झॅक्ट 6 पर ओवर 4.5 ओवर्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स लास्ट बॉल ह्या ओव्हराचे लो फुल टॉस बॉल ह्या फाटी कीपर चान्सेस की का वय आउट भारी संधी एक बॉलिंग पळयते ह्या फाटी एक लायक विकेट ह्या संदर्भात तो मेळ्ळा म्हणून सांगेत 4 विकेट कडून घेतला एक हंतान तो स्कोर चेज कोरेत म्हणून दिसला री विकेट तुम्ही कडून घेतला री खंडितही नव बॅट्समॅनान येवका जाता प्रेशर खंडितही बिल्ड जाता तस देखून तबळी सांगिला ಸ್ವಲ್ಪ सुलभ म्हणून दिसच्या पूर आशिल्लें जाल्यार तितली सुलभ येना लास्ट मोमेंट एक कसं म्हणून सांगू जायना म्हणून सांगून आता पळय रिक्वायर्ड रन रेट 10 म्हणून आयली कुडले तुमकां प्रेशर बिल्ड जाताची म्हळ्यार दोनी ओव्हर वरला 7 ओव्हर मॅच अंतू दोनी ओव्हर वरला आणि 20 रन जावका बहुशा तशीची 9 बॅट्समॅन आयला आता श्रीधर मेंडो सॉल टिमाचे 4 ग्रुपाचे मॅच तुमकां आतां पळोवचा मेळटा GSB प्रीमियर लीग 8 सीझन अंतू पॉइंट्स टेबल तुम्ही पळयलें म्हणजे जाल्यार A ग्रुप B C D 4 ग्रुप आसा A ग्रुपांतू मुंबई पल्टन्स दोनी मॅच अंतू दोनी विन जावन 4 पॉइंट्स सारी टॉप पोझिशनार A ग्रुपांत आसल्यार UK एकादश सारस्वत दोन मॅच अंत 1 विन जावन 1 टाई जाला 3 पॉइंट्स सारी कोडियाल युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब 2 मॅच अंतू तंगेला 1 डिफीट तशी 1 टाई जावन 1 पॉइंट टीम जयकार A ग्रुपांतू 2 मॅच अंतू दोनी तांणी डिफीट जाला ऑलमोस्ट तुम्ही पॉइंट्स टेबल A ग्रुपाच पळयलें म्हणजे जाल्यार मुंबई पल्टन्स नेक्स्ट राउंडाक ऑलमोस्ट एंट्री केला म्हणून सांगेता जाल्यार ऑफिशियल जावन सांगता म्हणजे जाल्यार फर्स्ट राउंडाची मॅच पुराय जावका आणि तुमकां प्रत्येक टिमाचे सेकंड मॅच जातास आणि ओगोर ओगोर तुमकां स्ट्रॅटर्जी कशी खंयची टीम येद्रा कशी विन जावका कितले रन्नार विन जावका हें पुरे कॅल्क्युलेशन आनी भविष्य स्टार्ट जाता लायक एक लॉफ्ट सीधा फिल्डर हातान तू कशी फिल्डिंग सेटिंग केला की तसले एक लायक बॉलिंग घाला म्हणून येता तुम्ही फिल्डिंग सेट करची मान्य तशी एक बॉलिंग प्रदर्शन केला रे तसले एक लाईन अँड लेंथ गल्ली म्हणून जाल्यार खंडितही तुम्ही त्या फिल्डिंग सेट केलं तकीत विकेट करच्याक अवकाश आसा तुम्ही ऑन सायडार स्ट्रॉंग 4 जनाक बाउंड्रीला रबयला तसले एक बॉलिंग घालून बॅट्समॅनाक त्याच डिरेक्शनाक मारच्याक एक तुम्ही फोर्स केला बाउंड्री लायना भायर वच्चे न्ही ಸ್ವಲ್ಪ रिस्क आशिल्लें त्या शॉटान ಸ್ವಲ್ಪ बल आसा म्हणजे जाल्यार विंड डायरेक्शना वटूची बाउंड्री लायना भायर वचचे चान्स आशिल्ले जाल्यार बॉलर आला मन आशिल्ले प्रकार बॉल कॅच जावन अनेक विकेट श्रीनिवास मुखांतर कळून घेतला श्रीनिवास फर्स्ट ताव येवन लायक सेट जाला तसले बॅट्समॅन उगूर उगूर सिच्युएशन कशी चेंज जाता असं पळया 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट जाला एक टाइमारी 6 रन 7 रन एवरेज जावकाशील स्कोर उगूर उगूर आता 1 रन बशी वयर आसा अजय सर वैलिड पॉइंट गोपी जी आपने बताया कि जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं उसके अनुकूल अगर आप क्षेत्ररक्षण करेंगे तो बात बनेगी और सचिन यही कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है क्योंकि ऑन साइड पर हवा चलती है ये भी आपने बता दिया उस छोर से आज फरमैन से ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ हवा में गेंद को खेल दिया फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए बैट्समैन दौड़कर 1 रन को पूरा कर चुके हैं और कितने साफ लफ्जों ने गोपी जी ने बताया कि झंडे को ध्वज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विंड का डायरेक्शन हवा क्या रुख किस तरह दिशा में है स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर इस वक्त हवा चल रही है जैसे गेंदबाज सचिन योजना बनाकर बैट्समैन को मजबूर कर रहे हैं कि गेंद को लॉफ्ट करें लेकिन थोड़ा सा रिस्क हो सकता है अगर बाउंड्री लाइन क्लियर कर गई गेंद तो छक्का हो सकता है उस छोर से इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और इस बार वाइड हो सकती जी हाँ श्रीनिकेत जी ने हाथों को फैलाकर कहा कि वाइड लेग स्टंप के बाहर थी एक अतिरिक्त रन गोपी जी मुझे लगता है कि ऐसे समय पर निश्चित तौर पर मुश्किल पैदा कर सकते हैं क्योंकि रन और गेंदों के बीच में जो फासला बढ़ता जा रहा है उसको अतिरिक्त रन कम करेंगे ಖಂಡಿತ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಚಡಸ ಜಲಾರಿ ಖಾಲಿ तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಪಳೆಯಲ್ ಮೊಂಜಲಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆಲವು 6 मैचेस वापस बैट्समैन पळया सीधा या पटी फील्डर तंतू कंचे चूकी करनी फील्डरान मारू का जलाले बाउंड्री सिक्सर जाऊ का जलाले का निर्वार येत आशिल्ले
मेंडो आउट जाऊन मागश बतास ह्या मूलक खंडित जाऊन ते एक संघर्ष परिस्थिती असं म्हणून सांगितलं लायक एक बॉलिंग परफॉर्मन्स सेकंड मॅच जतास दोन्ही टीमा काही क्रुशियल मैच एक फर्स्ट राउंड अंतु 4 टीम असता एक ग्रुप अंतु 3 लीग मैच चलता फर्स्ट मैच कंप्लीट जाते उगुर प्रेशर प्रति एक टीम बिल्ड जाता 3 लीग मैच अंतु एटलीस्ट दोन्ही पुणी विन जल्ली मोन जलारी नेक्स्ट राउंड विन जावच्या वच्चे एक अवकाश असता जलारी तंतु मगिरी कॅल्क्युलेशन स्टार्ट जाता पॉइंट्स एवरेज स्कोर पूरा हे सांगून जलारी ऑलमोस्ट 3 मैच अंतु प्रति एक मैच विन जाव का एटलीस्ट 2 मैच विन जावचा प्रयत्न पूरे टीमाचा असता तीनों मैच अगर जीत जाएं तो टेबल टॉप बन सकते हैं फिर आपको कोई दुविधा न होगी रन रेट की जरूरत ही नहीं होगी और यही प्रयास सारी टीमें कर रही हैं बहरहाल छठा ओवर प्रगति पर 31 रन 6 विकेटों के नुकसान पर इरवत्तूर परेशानियों में डूब चुका इस वक्त खतरों के बादल मंडरा रहे हैं उस शो से आज फॉर्मेट से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी क्या गेंदबाजी है लेकिन इस बार अंपायर ने कहा कि वाइड है ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर निकल गई स्विंग हो रही थी पिछली 2-3 गेंदें इन स्विंगर की तरह अंदर आई थी ये कुछ बाहर की तरफ निकल गई और अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दें और वाइड के इस रन के साथ रन बढ़कर 32 पर पहुंच चुका है 6 विकेटों के नुकसान पर आस्किंग रन रेट 11.33 का चल रहा है और ऐसे में इरवत्तूर के बैट्समैन को श्रेयस को आक्रामक स्ट्रोक्स लगाना मात्र एक विकल्प बचा हुआ है यह गेंद ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेल दिया बल्ले का नेचुरल सिरा लगकर गेंद गई लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं एक रन बन चुका है गोपी जी मुझे लगता है कि सिंगल से बात नहीं बनेगी रनों की आस्किंग रन रेट को ज्यादा है चौका छक्का जरूर लगना है अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिल्कुल आपकी नैया डूब सकती है खंडित बाउंड्री सिक्सर जाऊ का ओव्हर एव्हरेज तुम्ही रिक्वायर्ड रन रेट 12 पळयताना बाउंड्री सिक्सर जाऊ का आणि ग्राउंड कंडिशन फेवर ना म्हणना बॅट्समॅनाक चान्स घेऊ का चान्स मेळ का तितलेच लायक एक बॉलिंग असल एक बॉलिंग अल म्हणजे बॅट्समॅनाक खंडित अवकाश मेळना लायक एक गुड लेन डिलिव्हरी तई कितले विंड तुमका ऑन साइड अंत दिसला रे बॉलिंग घालच्या तस लायक एक फुल लेंथ डिलिव्हरी बॅट्समॅन खंयचे अवकाश ना ते लॉफ्ट करू का लॉफ्ट केल्यार तांणी ऑफ साइड करू का जाल्यार विंड डायरेक्शन ऑन साइड आशिल्ले मित पळोवका वरला आनी के लास्ट एक बॉल वरला बाउंड्री सिक्सर जाऊ का पळय का बॅट्समॅन कसं करता म्हणून सांगून फुल टॉस बॉल पण स्ट्रेट ड्राइव्ह जाल्यार ह्या पटी सीधा बाउंड्रीला आता आशिल्ल्या फील्डरला लागी लॉंग ऑन आशिल्ले तसं आता फील्डराक आउट जावन मक्ष वतास ह्या सिच्युएशन कशी म्हळ्यार प्रति एक बॉल हिट कोरका जाल्यार तसल परिस्थिती ह्या मॅच विन जाऊ का म्हणून जाल्यार लास्ट एक ओवर मात्र बाकी वरला आता एवरेज फर्स्ट टाइम ह्या इनिंग्स अंतु 16 एवरेज रिक्वायर्ड रन रेट जाऊ का गोपी जी बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस मैच में खास तौर पर इस वक्त जो सिचुएशन जो परिस्थितियां चल रही है सब कुछ जीआरएस मैसूर के साथ चल रहा है जहां पर बैट्समैन स्ट्रोक खेलते हैं वहां पर फील्डर पाए जाते हैं और हर एक स्ट्रोक जो हवा में खेलते हैं वो कैच में तब्दील हो रहा है यानी कि इसमें कप्तान की सूझबूझ और गेंदबाज की जो बुद्धिमत्ता है उसको मैं कहूंगा सराहना करनी होगी कि शानदार क्षेत्ररक्षण का उनकी योजना है और उस पर वो अमल कर रहे हैं उसी के मुताबिक गेंदबाजी चल रही है और बिल्कुल बैट्समैन ललचा कर गेंद को उठाकर हवा में खेल रहे हैं कैच में परिवर्तित हो रही है और विकेट्स पर विकेट गिरते जा रहे हैं आणि मैसूर टीम ह्या पाटी फर्स्ट टाइम GPL सीजन 8 सीजन अंत फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करता असं मैसूराच्या सेकंड मॅच तशी 7 सीजनांत आम्ही मैसूर म्हणून नाव सांगेन खंयच्या टीमाक ह्या पाटी फर्स्ट टाइम मैसूर टीमाच्या कमेंट करू मेळता नाव जरा सर क्या बात है जी हाँ कल मैसूर ने पहला मैच खेला था और पहला मैच मुझे याद है मैंने कहा था कि पहली बार वो इस क्रिकेट श्रृंखला में शामिल हुए हैं और पहला मैच मुझे लगता है कि वो हार चुके थे ये मैच उनको जीतना जरूरी है कल के गलती से सीखकर कमबैक किया उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका चल रहा है इस शो से गेंद विकेट ऑफ स्टंप के बाहर अलग अंदाज था अंपायर ने कहा कि वाइड है कार्तिक मैंगलोर अंपायर इस वक्त बहुत स्टाइलिश अंदाज में अंपायरिंग करते हैं उनके छक्के का संकेत देखा मैंने कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद रक्षित आक्रमण पर तैयार
उनकी गेंद हवा में उछाल दिया, गेंद को कैच हो सकता, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं। आज इस मैच में जीआरएस मैसूर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, जहां पर खिलाड़ी बैट्समैन बैटर जो गेंद को उछालते हैं, फील्डर वहां पर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है, कुछ तो जादू है। जबरदस्त मैच चल रहा है। मैसूर ने पिछले मैच से गलती को सुधार कर एक स्ट्रांग योजना बनाकर मजबूत इरादे के साथ वो मैदान पर उतर चुकी है। बहुत अच्छा करते हुए इस मैच को एक मजबूत पकड़ के साथ जीतने का उनका प्रयास बिल्कुल सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 11 नंबर के जर्सी में रक्षित एक अलग स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं, कुछ कूदते हुए दौड़ लगाते हैं 2-3 बार, उसके पश्चात डिलीवर करते हैं। उनके हाथ का एक्शन भी कुछ अलग दिखाई पड़ता है और युवा खिलाड़ी हैं। क्या असर, क्या जबरदस्त गेंदबाजी उनकी चल रही है। बैट्समैन को भापना मुश्किल हो रहा है इस गेंदबाज को, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो स्ट्रोक खेला गया उसमें विश्वास शायद उतना नहीं था। हवा में गेंद गई, कैच कर लिया गया। रक्षित को पहली सफलता, 34 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। 5 गेंदें शेष बची। एक गेंद के बाद दोबारा गोपी भट्ट जी आपके सामने आएंगे। ये गेंद ओवर विकेट फजल एंड से इस बार स्विच हिट करने का प्रयास, विकेट कीपर ने गेंद को उठा लिया, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हो चुका है अंडर आर्म, लेकिन बच गए। कार्तिक मैंगलोर जी ने संकेत किया कि लेग बाय है। 1 रन के साथ ही अभी 4 गेंदें शेष बची और मैं चाहता हूं गोपी भट्ट जी इन चारों गेंदों का अपने अंदाज में वो विवरण कोंकणी भाषा में सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, 4 बॉलाक 21 रन जाऊ का, रक्षित बॉलिंग घालू का, प्रति एक बॉलाक बाउंड्री सिक्सर जाऊ का, हे बॉल रक्षित रिवर्स लो बाउन्स बॉल 1 रन मात्र मेलता बहुशा आणि 3 बॉलाक 20 रन जाऊ का. ग्रुप सी ची तुम्ही मॅच, ग्रुप बी च्या दोन्ही टीमा मॅच तुम्ही पळयता आसाची मैसूर आणि इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब. ग्रुप बी ची तुम्ही सिच्युएशन पळयली म्हणजे 3 बॉलाक 13 जाऊ का, शंभर का 3 बॉलाक 13 अनेक विकेट गेला, अनेक विकेट हजोटूची 9 विकेट गेलेला इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लबाची. तशी तावळी सांगील प्रकार ग्रुप बी च्या पॉइंट्स टेबल तुम्ही पळयलारी आभरण डायमंड्स ग्रुप बी तू आता टॉप आरस एद्दोळू 2 मॅच अंतांनी 2 विन जावन 4 पॉइंट्स घेतला. सेकंड पोझिशनार आता मल्प युनायटेड असा ग्रुप बीन तू 2 मॅच अंतू 1 विन 1 सलवन 2 पॉइंट सारी. आत्ता मॅच रिझल्ट आणि दोन्ही बॉल भितर आमकां कळू आसा GRS मैसूर वॉरियर्स आणि इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब हांगेला ह्या सिजनाच्या दोन्ही मॅच खेळता आसा. 2 टीमाय दोन्ही बॉल मात्र भरला. रक्षित बॉलिंग आलोक फुल टॉस बॉल 1 रन मात्र मेलता. खंडित 1-2 रन भिन्न जाऊचा साध्य जायना आणि 1 बॉल वरला. 1 बॉल आणतो नो बॉल वाईड कसले घालनी मुंजलरी या बॉल जाली कुठले रिझल्ट ह्या मॅच आमकां पळोवच्याक मेळटा. भारी संदेक बॉल ते हजोटूची GRS मैसूर वॉरियर्स तांगेला दोन्ही मॅच खेळता आशिल्ली तांणी ह्या मॅच तांणी विन जाला. फुडली मॅच तांणी डिफीट जाला. हजोटूची दोन्ही मॅच आणतो 1 विन 1 सलवून 2 पॉइंट सारी ग्रुप बीन तू तांणी खेळता आसाची. तशीच ग्रुप सी तू सांगची मुंजलारी 4 टीम आसा. कोडियाल सुपर किंग्स, उडुपी ब्लास्टर्स, ASKB क्रिकेटर्स बेंगळूर आणि रायझिंग स्टार्स मंगळूर. हंतू एद्दोळू ग्रुप सी तू टॉप टीम जावन कोडियाल सुपर किंग्स आसा. 2 मॅच तांणी 1 विन 1 टाय जावन 3 पॉइंट सार खेळता असल्यारी उडुपी ब्लास्टर्स तांणी 2 मॅच 1 विन 1 डिफीट जावन 2 पॉइंट्स. ASKB क्रिकेटर्स बेंगळूरू 1 मॅच खेळणू तांणी टाई जाला कोडियाल सुपर किंग्स ओटू 1 पॉइंटर तांणी खेळता आसाची. रायझिंग स्टार्स मंगळूरू कालचे 1 मॅच तांणी 1 मॅच सलवला. पळोवका नेक्स्ट मॅच तांगेल मध्य जावचा आसा ASKB क्रिकेटर्स बेंगळूर आणि रायझिंग स्टार्स मंगळूरू. ग्रुप सी च्या मॅच नेक्स्ट चलचा आसा. तशीच ग्रुप डीन तू माल्सी स्मॅशर्स आणि वडलंके फायटर्स मुल्की
रॉयल चॅलेंजर्स बलंबेट्टू आणि आमचिगल चर्केस या चारही टीम चारही टीमांतू रॉयल चॅलेंजर्स बळंबेट्टू आणि आमचिगल चर्केस ನಂಗೆಲ್ಲ दोन मॅच जल्ला रॉयल चॅलेंजर्स बळंबेट्टू एक मॅच विन एक मॅच डिफीट जाऊन 2 पॉइंट्स खेळता असल्यारी आमचिगल चर्केस तांगेला दोन्ही मॅच आणतो दोन्ही तनी सलवल्याची एक मॅच मात्र बाकी वरला मल्सी स्मॅशर्स खेळायला एक मॅच आणतो त्या मॅच विन जाऊन 2 पॉइंट्स खेळता असल्यारी ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ मुलकी त्यांनी तशीची खेळायला एक मॅच आणतो त्यांनी विन जाऊन 2 पॉइंट्स असाची सेकंड मॅच तांगेल जाऊ का मात्र मुखर्च मॅच तुम्हाला अದ್ರ जाऊचा असं एएसकेबी क्रिकेटर्स बेंगळूरू आणि रायझिंग स्टार्स मंगळूरू दोन्ही टीमाचे एक्स्ट्रा प्लेयरांना कमेंट्री बॉक्सला येऊ का म्हणून म्हणून घेता असं एएसकेबी क्रिकेटर्स बेंगळूरू आणि रायझिंग स्टार्स मंगळूरू तशीची मुखारचे कमेंट्री सांगू का कन्नडान नयन कुमार हांगा आशिल्लो आसा हांका प्रितीन कमेंट्री बॉक्सात स्वागत करतास ओवर टू नयन कुमार आणि प्रति एक टीमाचे हांगा आशिल्ल्या टीमाचे प्रति एकल्याला सांगून घेता आसा आणि कोण लाईव्ह पळयता आसा की लाईव्हान समेत तुमकां रिक्वेस्ट करताची प्रति एक मॅच टायमार जावच्याक तुमकां अत्यगती जावन सहकार जावका इनिंग्स ब्रेक आवडला टॉक्स जावची की आणि मॅच जल्ली ಕೂಡಲೇ इमिडिएटली तुम्ही ग्राउंड देवची की त्या प्रत्येक तुम्ही टाइमा सहकार कोरका इनॉग्रेशन जाऊ का तशी जी काली तशी तुम्ही पळेला मॅच लेट जल्ली ಕೂಡಲೇ तुमकांही नेक्स्ट प्रेशरचे नेक्स्ट दिवसू तस देखून प्रत्येक टीमाच्या ओनर कॅप्टन लागे मी विनंती करताची टाइमारी मॅच जावच्याक तुमगेले एक सहकारू ऑर्गनायझर्स आलो असो म्हणून अफासोफास तुमगे लागी निमून घेता असाच ओवर टू नयन कुमार ಎಸ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಎಸ್ಕೆಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ನಾಳೆಯ ದಿನ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಗೆಲುವು ಸೋಲುಗಳು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಎಸ್ಕೆಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಣೆ ಇಸ್ ದ ಬೌಲರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಣೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ಗೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟ ಇದು ಒಂದು ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಇದು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಲೋ ರನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೀಟನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೌಶಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ವೇಪ್ ವಾಹ್ ವಾಟ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್
ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಪ್ ಮುಖೇನ 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 30 yards ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದುರ್ಗೇಶ್. 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 5 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕೌಶಿಕ್ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ನೇರ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ 6 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 2 ಓವರ್ ಇದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಎನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಹುಶಃ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ನ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ಚೆಂಡು ತಲುಪಿದ ಕಾರಣ ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 7 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಮತೂಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದಿತ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಡ್ರೈವ್ ಇದು ಬಹುಶಃ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುಖೇನ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಪೈ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಜ್ನತ್ತ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಚಿನ್ ಪೈ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ದುರ್ಗೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದುರ್ಗೇಶ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಶಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್. ಇಂಥ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವ ತನಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಓಹೋ, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ದುರ್ಗೇಶ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಬಹುಶಃ ಆದಿತ್ಯ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ಎದುರಿಸಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 17 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್. ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 20 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6 ರನ್ ಸಿಡಿಸಬಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನೇ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್. ಎದುರಿಸಿದ 2 ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಂತೂ ಇತ್ತು. ಕವಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಸ್ಕೋರ್ 20 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ಅತ್ಯಂತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿಸಿದಂತಹ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 17 ಅಂಕಗಳು, 1 ಬೌಂಡ್ರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ASKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸದೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ 2ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಸದ್ಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. 30 yards ಸರ್ಕಲ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಓಹೋ, ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತಿರುವು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ 21. ಆರಂಭಿಕ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುಖೇನ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌಶಿಕ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌಶಿಕ್. ಸದ್ಯ 3ನೇ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮುಖೇನ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಹುಶಃ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಎಸೆದ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೈಡ್ ಮುಖೇನ ಮಾತ್ರ 1 ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ 3 ಕೂಡ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು. ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ. ಕಾರಣ 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ. ಆ ಬಳಿಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 21 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನೆ ಇದಂತೂ. ನೇರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಚೇತರಿಕೆ 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಮುಖೇನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ASKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್. 1 ಬೌಂಡ್ರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಓಹೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ನೇರ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ದುರ್ಗೇಶ್ ಎದುರಿಸಿದಂತ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತತ 2 ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು.
ದುರ್ಗೇಶ್ ತಂಡದ ಮುಖೇನ ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಗೇಶ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 26, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 26 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಗೇಶ್ ಎದುರಿಸಿದ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್. 3 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 26 ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಕಾರಣ ಎದುರಿಸಿದ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಮೀರ್ ಶಾನ್ ಭೋಗ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನಿರಂತರ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಕೂಡ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಹಾದಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 11 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು, ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದುರ್ಗೇಶ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮೀರ್ ಶಾನ್ ಭೋಗ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮುಖೇನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ವಂಚನೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಮೀರ್ ಶಾನ್ ಭೋಗ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸಮಯ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಗಡಿಯಾರವನ್ನಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ದುರ್ಗೇಶ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 27, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭದ್ರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ದುರ್ಗೇಶ್ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಮೀರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೇರ ದುರ್ಗೇಶ್ ಕಡೆಗೆ. ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಗ್ಔಟ್. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಮೀರ್ ಶಾನ್ ಭೋಗ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ದಂಡನೆ ನೇರ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ಮುಖೇನ 3ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು ದುರ್ಗೇಶ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಬಂದದ್ದು. ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ನೇರ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮೀರ್ ಓವರಿನ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತಿಯ ಯಾರ್ಕರ್ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಮೀರ್ ಶಾನ್ ಭೋಗ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 34, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಮೀರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ 4ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸಮೀರ್ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ದುರ್ಗೇಶ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎದುರಿಸಿದ್ದು 10 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮುಖೇನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 35 ಅಂಕಗಳನ್ನ ದುರ್ಗೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ
ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 13 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕೇವಲ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ಫೋಟಕ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಂಡ 35 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. Thank you, Nayan. So 4 overs have been bowled so far. ASKB cricketers Bengaluru have scored 35 runs in 4 overs. They are having a run rate of exactly 8.75 per over. A very good partnership here between Balakrishna and Durgesh. 35 runs opening partnership. Can you believe this? Durgesh is one of the terrific player of their side, batting on 28 of 11 balls, whereas Balakrishna 30. Samir Shanbag has been brought back into attack. This is the second over of his coacher. Samir Shanbag, one of the most experienced bowler. He has played plenty of matches for Mumbai team, and I think in the last season he has played for Malpe United. Now in this season he is playing for the team Rising Stars Mangalore. 38 with 1 wicket down. Balakrishna was retired out. Hammered the ball onto the onside, but straight in the throats of the fielder. Atharva, the fielder who was standing at long on region, makes no mistake. Caught it beautifully. So Shri Krishna is out. Shri Krishna is moving back to the pavilion. Atharva Pai takes that catch brilliantly. A good presence of mind. He was very quick, and another wicket has been lost for ASKB Bangalore. Deepak Shanai has come to the crease now. Deepak, a technically sound batsman, one of the hard hitter of the ball, a good timer of the ball, pinch hitter of their side, a key player for ASKB Bangalore. Deepak is on strike now. So successful bowler Samir picked up that important wicket in the very first ball of the over. We are in the 6th over of the innings. From the Arch Pharma Labs end, the bowler Samir Shanbag continues. Played the shot all around the carpet, turned away nicely onto the deep mid-wicket region, but there is a protection, so Deepak will have to satisfy with only a single here, not more than that. With that single, Deepak is straight away off the mark. He opened his account. Score slowly moves on to 39. 30 runs contributed by this man Durgesh. Out of 39 runs, 30 runs came from the bat of Durgesh. 3 sixes and 2 boundaries. This time wanted to play the shot through the covers, but the ball takes the outer edge of the bat down to the third man fielder. Fielder comes in and collects the ball, but he cannot prevent the batsman Durgesh in picking up a comfortable single there. Before the fielder collects the ball, there is ample time for both these two batters to cross over for an easy single. That single will bring newcomer Deepak Shanai on strike now. Deepak Shanai is already, he has opened his account. He is now all set to face the bowler. Well, Deepak goes for a big one. Ball is in the air and again straight in the throats of the fielder. The mid-wicket fielder makes no mistake. Vignesh Bhatt caught it beautifully. So Deepak Shanai is out.
So Kodia Sports Association of Mangalore are organizing this fantastic cricket tournament. 3 days of cricket festival, cricket carnival, a mega cricket extravaganza here at Sahyadri College ground for GSB Samaja Bandhavas. 16 different teams are participating in this particular tournament, and we are in the second day of this GPL 2024. Youth of GSB Worldwide are the broadcast partners. Youth of GSB is hosting the live broadcast of this tournament. A lot of viewers are watching the live telecast, live streaming in YouTube channel as well as in Facebook page. Oh, that's a quicker delivery there. Intelligent bowling there by the bowler Samir Shanbag. And this is the kind of bowling actually we need in the limited overs matches to put the pressure on the batters. Batter Savin Nayak didn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. After pitching, all of a sudden it has taken a turn. In swinger delivery and ball went straight to the wicket keeper. No runs resulted. Score remains on 40 and we are in the 6th over of the innings. So you are watching the match between ASKB Cricketers Bengaluru versus Rising Stars Mangalore. Straight down the ground he played. Will they get 2 runs? They come back for the second. They have taken the first run very quickly and the second run very fast. So completed 2 runs easily here. Comfortable 2 runs. Great running between the wicket here. Good understanding there between Durgesh and Savin Nayak. Durgesh was very, very quick. He's a good runner. So, end of the over number 6. Good over there by Samir Shanbag. After 6 overs, it is 42 for the loss of 3 wickets. That means ASKB Bangalore has got a run rate of exactly 7 per over. Last over to go now. Let's see how many more runs they will be able to score in the remaining 6 balls. They are in a position to reach a target of around 50 runs, which is a respectable target here. As I mentioned here earlier, these two teams are sailing on the same boat. Must-win situation for both these two teams to get 2 points. Both the teams can't afford to lose this match. To be there in this contest, they have to win this match. 50-50 situation, we cannot say exactly because Rising Stars Mangalore also has got some talented batters. So this is going to be a very interesting match, really a fast shooting game, and I think it has a real close finish. Durgesh punched the ball onto the horn side, hammered the ball towards the deep mid wicket, long chase for the fielder. Fielder collects the ball. 2 runs have been added to the total. Vignesh Bhatt is the bowler who is operating his over from the Puzalana end. Durgesh gets 2 runs in the first ball. Now 5 more balls are remaining in the innings. Score at the moment is 4-4. The meantime, watch Vignesh Bhatt for the second time in this over. With a long run up, in the right arm, round the wicket fashion, he will bowl. Once again, wanted to crash the ball through the covers. But the ball has gone down to the third man. Only a single will result here. Durgesh will have to satisfy with only a single here, not more than that. That single will bring Savin Nayak on strike now. Right-handed batter, Savin will take the strike. 5 men on the onside for Savin and 4 on the offside. Have a look at the field placement. A huge wind is blowing here. So batsmen will have to look for big hits now. By taking the advantage of that wind, they need to go for big hits in order to accelerate their score. There is a deep mid wicket. There is a long on, long off, extra cover, cover point, deep extra cover, short third man. Here is the next delivery for the third time. We come back to the bowler. Outside the off stump delivery, played that shot to the gully region. The fielder at gully region collects the ball. Prajwal
Chennai collects the ball. Meanwhile, he couldn't prevent the batsman from picking up a comfortable single here. Savin Naik takes a single and he has given the strike to Durgesh. Durgesh is one of the hard hitter of the ball. Can he go for a big hit now? Will he be able to go for a maximum? This is going to be interesting. Vignesh to Durgesh now. Well, he punched the ball onto the onside, but not from the middle of the bat. The ball takes the leading edge of the bat. Durgesh lost his complete rhythm. As a result, the ball was quite high in there for a while, and very good catch taken by the bowler himself. He kept his eyes on the ball. It's not an easy catch because especially when you are looking at hot sun, it is difficult to judge these kinds of catch. But Vignesh finally converted that into an easy catch. So a fine innings from Durgesh has come to an end now. Durgesh came as an opener and he stayed there till the last over. So a brilliant knock from Durgesh. We'll have to really appreciate the batting performance, what he has shown here. How many Durgesh? 34 runs contributed by this man, Durgesh. What a great piece of batting performance. He has shown all the caliber here. That's a very fine delivery there. The ball kept very low, surprising the new batsman Mahesh. Doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Misses it completely and wicketkeeper collects the ball behind the stumps. So no runs resulted. Dot delivery there by Vignesh. Vignesh is bowling pretty good here. Economical bowling figure in this slog overs. Almost a Yorker delivery there. Flicks the ball onto the onside. Will they get 2 runs? They come back for the second and completed. No, this is going to be ouch. The batsman Mahesh was looking for the second run. Very good piece of fielding there by Kaushik. He was very quick, collected the ball and he quickly realized that Mahesh was rushing towards the danger end. So he threw the ball to the wicketkeeper and wicketkeeper made no mistake in taking off the bails. So they will get only a single in the last ball of the over. That's the end of their innings. Very good over there by Vignesh. He has conceded only 4 runs, I think. So there's the end of their innings. So after putting into bat first, ASKB Bangalore have scored 47 runs. That means now 48 is a victory target for team Rising Stars Mangalore to win this match in 42 balls. So match number 15 is going on here between ASKB Bangalore versus Rising Stars Mangalore. 48 runs required for Rising Stars Mangalore to win this match of 7 overs. This is not a difficult target for the team because as I mentioned earlier, Rising Stars Mangalore have got a very good batting lineup. But at the same time, ASKB Cricketers Bengaluru bowlers will have to be very, very hard. They should try to pick some wickets early in the innings. If they can pick up 1 or 2 wickets during the power play session, definitely they can put the pressure on the opposition side. And after this match, the next match will be between Malshi Smashers versus Vadalanke Fighters Mulki. Malshi Smashers will be playing against Vadalanke Fighters Mulki in their second round match. So I request the captains of both the teams to come here in front of the dais and please give your playing 11 list. Also, let's have the toss for the next match. Malshi Smashers आणि Vadalanke Fighters Mulkiच्या टीमांच्या कॅप्टन्सान दैकोरनो हांगा कमेंट्री बॉक्स लाग येवका टॉस खातीर ऑर्गनायझर्स तुमकां वेट करता आसती. Second round match जो चलचार आसा Malshi versus Vadalanke. And before the innings of Rising Stars Mangalore, it's time for us to change the commentary language. And for further commentary, please come in Mr. Ajay Rajji.
थैंक यू सुरेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीपीएल 2024 नई योजनाओं के साथ और बड़े पैमाने के साथ बड़ी शानदार उपलब्धियां, और जैसा आप जानते हैं सीजन 8वां इस वक्त चल रहा है। शानदार प्रहर है, दोपहर का प्रहर, मध्यम तेज हवा पुरवैया बह रही है। आकाश में सवेरे से जो दूर दूर सफेद बादल दिखाई पड़ रहे थे वो धीरे धीरे गायब होते हुए हैं और कुछ एक बादल दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त संघर्ष चौकी चलता हुआ राइजिंग स्टार्स मैंगलोर और एसकेबी क्रिकेटर्स बैंगलोर के बीच में टॉस जीतकर राइजिंग स्टार के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके सामने 48 रनों का लक्ष्य 48 का लक्ष्य उनके सामने रखा गया। क्या वो बना पाएंगे नहीं, देखने वाली बात होगी। और दोनों बैट्समैन मैदान पर उतर चुके हैं। 48 का रन अगर बात करें इन रनों की, अच्छा लगभग 42 गेंदों का खेल है। 42 गेंदों में 48, 6 का फासला है। इस फासले को दूर करने के लिए मैं समझता हूं कि मैंडेटरी पावर प्ले बड़े कारगर साबित हो सकते हैं, बशर्ते कि गेंदबाज ऐसा मौका दें। ये देखने वाली बात होगी। दोपहर के 1:24 हो चुके हैं। अंपायर ने खेल शुरू का संकेत किया। इस छोर से पहली गेंद, अभिजीत की गेंद को क्या खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया। शानदार कवर ड्राइव है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। इस बेहतरीन स्ट्रोक के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। पहली गेंद प्रज्वल की राउंड विकेट गेंद थी, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर विड था और पूरी ताकत के साथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के दिशा में ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ ही प्रज्वल अपना खाता खोल चुके हैं। अभिजीत किनी को सोचना होगा कि क्या लाइन और लेंथ उनकी होनी चाहिए फुजल एंड से उनकी इस ओवर की अगली गेंद। राउंड विकेट इस बार फुल टॉस थी और परिवर्तन के तौर पर गेंद को शायद वो ब्लॉक होल में डालना चाहते थे, लोअर फुल टॉस रह गई और प्रज्वल ने गेंद को देखा और तिरछा खेल दिया। ऑन साइड पर शायद वो उछालना चाहते थे गेंद को, बल्ले का निचला सिरा लगकर गेंद मुझे लगता है शायद थोड़ा सा बल्ला घूम गया, जिसकी वजह से लगभग वाइडिश मिड विकेट डीप की दिशा में गेंद गई। 1 रन लेने का अवसर प्रज्वल के पास, वो बढ़कर 5 पर पहुंच गए। कुल रन संख्या 5 रन बगैर के नुकसान के दीपक स्ट्राइक एंड पर, और अभिजीत ने गार्ड बदल दिया। वो शायद ओवर द विकेट करेंगे फजल एंड से उनकी गेंद, और पटकी हुई गेंद थी ऑन साइड पर, पुल कर दिया, गेंद को प्लेस नहीं कर पाए स्क्वायर लेग पर। अंपायर के पास जाकर फील्डर ने गेंद को उठा लिया, रन लेने का अवसर नहीं है। शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा कंधों का ज्यादा उपयोग किया, ज्यादा जोर दिया। टिप्पा खाने के बाद अप्रत्याशित रूप से गेंद उठ कर आई, उसको पुल किया था बैट्समैन ने, रन लेने का अवसर नहीं है। ओवर द विकेट एक और गेंद, और अभिजीत शायद यही प्रयास कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा वेरिएशन ले आए, और इस प्रयास में गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी जिसको बैट्समैन खेलना चाहते थे, चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर दिया, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। सबसे सुरक्षित हाथ विकेट कीपर के अभी तोड़ना शुरू कर चुके हैं। ये गेंद अच्छी गेंद थी और अभिजीत जी हाँ, इस गेंद को लेकर थोड़ा सा पीछे हटते हुए कट करना चाहते थे, बैट्समैन चूक गए। शायद गार्ड पहन चुके हैं और उनको थोड़ी सी चुभन हो रही है, या फिर मांसपेशियों में थोड़ा सा खिंचाव, हैमस्ट्रिंग, जी हाँ, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर फिजियो हो तो थोड़ा सा आ जाए, लेकिन जी नहीं, अभिजीत ने अपने आप को दुरुस्त कर दिया। और ब्राउनिश हेयर है, बहुत अलग दिखाई पड़ते हैं अभिजीत की। नहीं, इस छोर से 82 नंबर की जर्सी में तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर 5 रन बगैर किसी नुकसान के दीपक स्ट्राइक एंड पर हैं, अभी खाता नहीं खोल पाए। 3 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं। इस छोर से अभिजीत की गेंद ऑन साइड पर उछाल कर गेंद को खेल दिया। कौन रोक सकता है भला इस गेंद को? स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद गेंद गई और ये 4 रन। कमाल का स्ट्रोक है। इस कमाल के स्ट्रोक के प्रायोजक है जीएसबी प्रीमियर लीग 2024। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद टिप्पा खाने के बाद शॉट ऑफ लेंथ थी, टिप्पा खाकर उछल कर आई। बैट्समैन ने गेंद को देखा, परखा, थोड़ा सा पीछे ऑफ स्टंप के बाहर पैर को निकाला, बैकफुट को स्ट्रेच किया और
पूरा शरीर का संतुलन पिछले पैर पर ट्रांसफर करते हुए गेंद को पुल कर दिया उन्होंने खूबसूरती के साथ। बड़ा अनोखा अंदाज था। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद टप्पा खाने के बाद गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ये ओवर समाप्त हुआ और संख्या बढ़कर रनों की 9 पर पहुंच चुकी है बगैर किसी नुकसान के। आघात के लक्ष्य है 48 रनों का, तो मैंडेटरी पावर प्ले का भरपूर उपयोग लाभ उठाने का प्रयास इस वक्त दोनों बैट्समैन कर रहे हैं। खासतौर पर प्रज्वल का वो शानदार चौका। दीपक 4 पर खेल रहे हैं। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया। प्रज्वल ने 5 रन बनाए 2 गेंदों का सामना करते हुए, जबकि प्रज्वल अब स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। दीपक ने वो शानदार चौका जड़ा था आखिरी गेंद पर। स्ट्राइक एंड पर प्रज्वल आ चुके हैं। आक्रमण के लिए दूर वाले छोर से दीपक आज फार्मास्यूटिकल लिमिटेड छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। और आइए दोबारा आपको बता दें M9 के सारे वो कैमरामैन टेक्नीशियंस बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। स्वराज हमारे बगल में बैठकर लैपटॉप के सामने बागडोर संभाल रहे हैं और सारे कैमरामैन्स बैठकर बहुत खूबसूरती के साथ इस गर्मी में इस तेज धूप में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस ओवर की पहली गेंद और प्रज्वल कलाइयों का बहुत सही उपयोग जानते हैं। टिप्पा खाने के बाद उछलकर जो गेंद आई उसको धीरे से अचानक एक अलग अंदाज में गेंद को उन्होंने शरीर से दूर फ्लिक के अंदाज में खेल दिया। जब तक फील्डर आ जाते 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर दिया। प्रज्वल ने बढ़कर पहुंच गए 6 पर, जबकि कुल रन संख्या 10 पर पहुंच चुका है बगैर किसी क्षति के आघात के। श्रीनिकेश और स्वरूप गौड़ा जो कि इस वक्त ऑन फील्ड जिम्मेदारी को संभालते हुए अलग अंदाज और हर एक अंपायर को चाहे वो खिलाड़ी हो अलग अंदाज अपना बनाना जरूरी है, क्योंकि वो दूर कहीं से जाने जाएं पहचाने जाए अपना अलग अंदाज अपनी अलग पहचान बनाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये गेंद उछाल दिया, गेंद को फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को कैच कर दिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में लपक लिए गए दीपक के शानदार कैच के साथ ही पहला विकेट जो कि गिर चुका है, बैट्समैन आउट हो गए। तो दीपक आउट होकर लौट रहे हैं और फील्डर को तैनात कर दिया गया था लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। उन्होंने श्री कृष्णा वहां पर तैनात थे, उन्होंने गेंद को खूबसूरती के साथ कैच कर लिया। पिछली गेंद रिप्ले में देखा जा सकता है कि किस तरह से गेंद को लॉफ्ट किया गया था। मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी गेंद और उसको लॉफ्ट किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। फील्डर बस इंतजार कर रहे थे, अपने चोली में उन्होंने गेंद को कर लिया और इसी के साथ पहले विकेट का पतन हो चुका है 10 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। अभी और 38 रन्स की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। दूसरा ओवर प्रगति पर है, 5 ओवर सभी शेष बचे हुए। इस ओवर के पश्चात की बात कर रहा हूं। स्ट्राइक एंड पर नए बैट्समैन आदित्य आ चुके हैं और बड़े सशक्त शरीर के धनी है। उस छोर से आज फॉर्मेट से ये गेंद बैकफुट पर थोड़ा सा कट किया था, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे, थर्ड मैन डीप में उन्होंने गेंद को उठा लिया। जब तक वो गेंद को उठाकर तो थ्रो कर पाए, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। तेज रनिंग से के साथ रन बढ़कर 11 पर, जबकि आदित्य ने अपना खाता खोल दिया। प्रज्वल स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन 12 नंबर की जर्सी में। मैं अगर गलत ना हूं तो वो चश्मा पहनते हैं और बहुत कम चश्मिश बैट्समैन आपको देखने को मिलते हैं। इतिहास गवाह है कि एक ऐसा बैट्समैन जिसको गॉर्डन ग्रेनिच कहा जाता है, वेस्ट इंडीज के बहुत स्ट्रॉन्ग बैट्समैन थे, वो छोर से इस ओवर की अगली गेंद। ये गेंद टिप्पा खाकर थोड़ा सा उछल कर आई, धीमा उछाल था और बड़ी बुद्धिमानी के साथ प्रज्वल ने गेंद को थोड़ा टैकल किया, फ्लिक के अंदाज में हल्के हाथ से खेल दिया। फील्डर थोड़ा पीछे खड़े थे, जब तक वो स्क्वायर लेग की दिशा में आकर गेंद को फील्ड कर पाते। अपने आप को प्रज्वल ने नॉन स्ट्राइकर बना लिया। 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 12 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तो योजना क्या है देखने वाली बात होगी। मैंडेटरी पावर प्ले में 9 रन शुरुआत के बने, उसके पश्चात रनों पर थोड़ा सा अंकुश लगा हुआ। दीपक योजनाबद्ध तरीके से आज फार्मा एंड से गेंद को लेकर दौड़ना शुरू कर चुके हैं। आदित्य की गेंद को उछाल दिया, हवा में तैरती हुई गेंद जा रही है, फील्डर गेंद के नीचे नहीं आ पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। जीपीएल का जबरदस्त सिक्सर।
क्या कमाल का स्ट्रोक था, बस इंतजार कर रहे थे, बल्ले को तलवार बनाकर इंतजार किया। ऑफ स्टंप के आसपास थी गेंद, लाइन के आसपास, उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ, गुड लेंथ, टिप्पा खाने के बाद उछल कर आई। अच्छा बैकलिफ्ट था, स्विंग के साथ गेंद को उछाल लिया। ऑन एक तरह से ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक। एक और जबरदस्त स्ट्रोक है, इस बार कैच किया जा सकता है। जी हाँ, फील्डर ने गेंद को कैच कर दिया और इस बढ़िया कैच के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। बहुत तेजी के साथ ताकतवर स्ट्रोक था, पूरी ताकत के साथ गेंद को खेला गया था। पावरफुल स्ट्रोक था, लेकिन ज्यादा ऊंचा खेल बैठे, जिसकी वजह से पूरा साथ हवा का नहीं मिला और हवा की दिशा उसी दिशा में चल रही है, लेकिन कुछ ज्यादा ऊंचा स्ट्रोक की वजह से गेंद बाउंड्री लाइन को क्लियर नहीं कर पाए। फील्डर ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, पीछे देखा कि बाउंड्री लाइन उनके पास खड़ी है, कैच किया, शरीर का संतुलन बनाया। 18 for 2, आई रिपीट 18 for 2, 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। 56 छक्के अब तक लग चुके हैं, 43 चौके इस श्रृंखला में। अब न मालूम कितने और लगने वाले हैं, क्योंकि ये जीपीएल है, चौके और छक्कों की बरसात यहां पर होती है इस मैदान पर। बहरहाल 2 विकेट गिर चुके हैं, रन 18 पर प्रज्वल स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, 7 रन वो बना चुके हैं। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया। बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, चश्मा पहनते हैं, गेंद को अच्छी तरह से साइड करने के लिए। इस छोर पर नए बैट्समैन कौस्तुभ का आगमन हुआ, वो नॉन स्ट्राइक एंड पर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अवसर मिलेगा अपने साथीदार के साथ मिलकर वो क्या भागीदारी बना पाते हैं, देखने वाली बात होगी। जबकि गेंदबाजी का क्रम अभी उसी तरह से चल रहा है। अभिजीत किनी को पारी का तीसरा ओवर करने के लिए भेजा गया है। हालांकि पहले ओवर में वो महंगे साबित हुए थे, 9 रन उनके गए थे, और फिर भी कप्तान ने उनके ऊपर विश्वास रखा है कि वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे। कभी कभार हो जाता है। इस छोर से गेंद, अभिजीत गेंद को लेकर तैयार हुए, उनकी गेंद राउंड विकेट। ये गेंद फुल टॉस थी, ड्राइव किया गेंद को, फील्डर शॉट मिड विकेट में मौजूद थे, लेकिन उनके हाथ से छूट गई। और इसको देखते हुए प्रज्वल ने तेज दौड़ लगाई, अपने साथीदार को बुलाकर 1 रन को पूरा कर लिया, बढ़कर वो पहुंच गए 8 पर। कुल रन संख्या 19, 2 विकेटों के नुकसान पर 19 for 2। कौस्तुभ स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। अब परिवर्तन होगा, क्योंकि दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ऐसे में फील्डिंग में, प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव होगा। इसको देखते हुए अभिजीत ने अपना गार्ड भी बदल दिया, वो शायद अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए। कौस्तुभ स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। हवा तेज चलती हुई इस छोर से अभिजीत किनी की गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, क्या बात है, मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछल कर आई, बैट्समैन को थोड़ा उछलना पड़ा इस गेंद को कवर करने के लिए। कौस्तुभ ने बैकफुट पर जाकर अच्छा, जिसे कहते हैं कि बैकफुट पर डिफेंसिव स्ट्रोक अपनाया, गेंद को दबा देने के अंदाज में पुश पर कर दिया, रन लेने का अवसर नहीं। 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फजल एंड से इस ओवर की अगली गेंद, लेंथ में ज्यादा थे इस बार, ड्राइव करने का प्रयास, बल्ले का सिरा लेकर गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है थर्ड मैन में, लेकिन जैसा आप जानते हैं सवेरे के पश्चात थोड़ा समय लेता है आउटफील्ड तेज होने के लिए, नमी को सुखाने के लिए, और इस वजह से गेंद थोड़ा सा धीमा पड़ गई। जब तक फील्डर गेंद को समेट कर थ्रो कर पाते, तेज कदमों के साथ 2 रनों को दौड़कर पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। कौस्तुभ ने अपना खाता खोल लिया, रन 21 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 21 for 2, 48 रनों का लक्ष्य, यानी कि अभी भी और 27 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और विकेट ये गेंद ड्राइव किया, बड़ा अच्छा स्ट्रोक था, देखा कि गेंद लोअर फुल टॉस है, फॉरवर्ड होकर थोड़ा फ्रंट फुट को ज्यादा स्ट्रेच किया, झुक गए गेंद के ऊपर आकर, गेंद को बल्ले का निचला सिरा देकर बल्ले का मुंह खोलते हुए ड्राइव कर दिया कवर क्षेत्र में। 1 रन 23 कदमों के साथ पूरा कर लिया। कौस्तुभ बढ़कर पहुंच गए 3 पर, और कुल रन संख्या 22, 2 विकेटों के नुकसान पर। 22 for 2, दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है। प्रज्वल को अवसर हो सकता है कि ऑन साइड पर वो अच्छा स्ट्रोक खेलें, कि अभिजीत ऐसा मौका देंगे। फजल एंड से ये गेंद राउंड विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बहुत तेजी के साथ लगभग पिछले पैर के घुटनों को झुकाया था, और खूबसूरती के साथ उछालने का उनका प्रयास थोड़ा सा मिस टाइम कर गए। बल्ले का निचला सिरा लगकर गेंद गई, और स्लॉग स्वीप के अंदाज में जो स्ट्रोक खेलना चाहते थे हुआ नहीं। 1 रन लेने का अवसर तो जरूर मिला,
एक के साथ कुल योग बढ़कर 23 पर 23 for 2। फजल एंड से एक और गेंद अभिजीत, इस ओवर की आखिरी गेंद शायद। और विकेट इनफील्ड के ऊपर से उछाल दिया, कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए लेकिन उनके हाथ से गेंद छूट गई और मौका मिला बैट्समैन को कि वो 2 रनों को तेज कदमों के साथ पूरा करें। अभिजीत का ये स्ट्रोक हवा में गेंद थी, फील्डर थोड़ा सा जल्दबाजी में आगे निकल गए, अगर पीछे जाते तो कैच हो सकता था, फिर पीछे की तरफ मुड़कर थोड़ा टोक के बल उछलकर गेंद को कैच करने का उनका प्रयास था, लेकिन इस प्रयास में गेंद उनके हाथ से छूट गई। बाउंड्री लाइन के बाहर जाते जाते रोक लिया फील्डर ने गेंद को और बैट्समैन को पर्याप्त समय मिला कि वो दौड़कर 2 रनों को पूरा कर लें। इन 2 रनों के साथ कुल योग बढ़कर 25 पर 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर्स समाप्त हो चुके हैं। चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है और मुझे लगता है कि अभी 23 रन टू गेट इन 24 बॉल्स। 24 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है और ऐसे में सारे फील्डर्स एकत्रित होकर मंत्रणा कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी अगर हो जाए तो बात बनेगी। 24 बॉल्स टू गो, 23 रन टू गेट, 23 रनों की जरूरत है। 24 के शेष बची हैं। दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ 5.76 का औसत जो कि रिक्वायर्ड रन रेट है, इस वक्त 8.33 का औसत चल रहा है करंट रन रेट। और मुझे लगता है कि अच्छी योजना बल्लेबाज बना चुके हैं। राइजिंग स्टार यानी कि उगता हुआ सूरज, नाम भी बड़े दिलचस्प होते हैं और उसी के मुताबिक बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं कि वो उभर कर ऊपर आ जाएं और इस मैच को जीत कर आगे बढ़ें। लेकिन क्या ऐसा होगा? योगेश भाई दूर वाली छोर से आर्च फार्मा एंड से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। स्पिन का शायद आक्रमण है उनके सामने। स्ट्राइक एंड पर प्रज्वल जो कि 9 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की पहली गेंद और लेग स्टंप के बाहर थी, लेंथ में ज्यादा फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस ज्यादा जोर नहीं दिखाया। प्रज्वल ने थोड़ा नीचे झुक गए, गेंद के ऊपर आकर धीरे से सॉफ्ट हैंड से गेंद को पुश भर कर दिया और सिंगल से काम चला रहे हैं। वो जानते हैं कि ज्यादा दौड़ धूप मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरिट पर खेलकर सिंगल्स को बनाया जा सकता है और इसी प्रयास में वो लगे हुए हैं। 1 रन चुराकर उन्होंने कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा दिया 26 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। आज फरमाइन से एक और गेंद को योगेश लेकर तैयार होने। गेंदों में कोई ज्यादा रफ्तार नहीं दिखाई पड़ रही है। तेज तर्रार गेंद के साथ स्विंग या स्पिन का मिश्रण होगा तो बैट्समैन को परेशान कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता हुआ। यह गेंद इनफील्ड के ऊपर से गेंद को उछाल दिया, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, लेकिन फिर भी चौका नहीं मिलेगा। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन तक नहीं पहुंच पाएगी, ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है। आउटफील्ड में जैसा मैंने कहा कि काफी नमी है, अभी भी पूरी तरह से सूखा हुआ नहीं है। बैट्समैन को समय मिला कि वो 2 रनों को बटोर लें। कौस्तुभ बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो गेंद को देखते हैं, परखते हैं और उसके मुताबिक स्ट्रोक खेलते हैं। परिस्थिति के अनुकूल उनकी बल्लेबाजी चल रही है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सिंगल बटोर रहे हैं, देखभाल कर गेंद को लॉफ्ट कर रहे हैं फील्डर के ऊपर से। और मुझे लगता है कि लिमिटेड ओवर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं ऐसे बल्लेबाज जो परिस्थिति को देखकर और फील्डर को देखकर उसके अनुकूल बल्लेबाजी करते हैं। अब गेंदबाज आपस में बातचीत करते हुए शायद अंपायर से कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। रन्स बढ़कर 28 पर 2 विकेटों के नुकसान पर 28 for 2। कौस्तुभ बढ़कर 7 पर पहुंच गए। 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इस बीच खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। स्वरूप जी से बात कर रहे हैं फील्डर्स और गेंदबाज। विकेट कीपर ने जाकर कुछ शब्दों का लेन देन किया। वापस विकेटों के पीछे वो आ रहे हैं। उस छोर पर क्या योजना बनाते योगेश भाई गेंद को लेकर तैयार। 3 गेंद अब तक कर चुके हैं और 2 गेंद अब तक कर चुके हैं, 3 रन खर्च कर चुके हैं। उस छोर से गेंद योगेश के गेंद को लॉफ्ट किया कौस्तुभ ने बहुत खूबसूरती के साथ। देखते हैं, परखते हैं कि वहां पर कोई फील्डर नहीं है और उस दिशा में गेंद को लॉफ्ट करते हैं। इस 1 रन के साथ कौस्तुभ बढ़कर 8 पर पहुंच गए। कुल रन संख्या 29 for 2, 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ। प्रज्वल स्ट्राइक रोटेट होने के बाद आ गए स्ट्राइक एंड पर, थोड़ा ऑन साइड पर घूमकर खड़े होते हैं। उस छोर से गेंद, ये गेंद घुमाकर ऑन साइड की दिशा में फ्लिक किया। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर दिया प्रज्वल ने और कोई दबाव दिखाई नहीं पड़ रहा है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि एएसकेबी क्रिकेटर्स के कप्तान को सोचना होगा कि कुछ ऐसे गेंदबाज को विकल्प, उनके पास विकल्प है तो वो लगाएं
जो विकेट लेने की क्षमता रखते हैं, रनों पर अंकुश लगा सकते हैं। कुछ ऐसी गेंदें जो स्टंप्स पर आ जाएं, सटीक बैट्समैन को परेशान करें, उस छोर से गेंद इस बार ऑन साइड पर पुल कर दिया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद गई है, एक रन चुरा लिया, दूसरा रन तेज कदमों के साथ दौड़ने का प्रयास और सफल हो गए। क्या बात है, देखा कि फील्डर थोड़ा सा फिसल गए और स्लाइडिंग के जरिए शायद वो चाहते थे, थोड़ा सा घुटनों को झुकाया था, फिसल गए। जब तक वो दोबारा गेंद को फील कर पाते, दोनों बैट्समैन ने, कौस्तुभ ने अपने साथीदार को जल्दी ही बुला लिया, दौड़कर दूसरा रन पूरा कर लिया। 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, लक्ष्य 48 रनों का। उस छोर से एक और गेंद ओवर द विकेट, इस बार इनफील्ड के ऊपर से क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, एक रन चुरा लिया, दूसरा रन दौड़ना चाहते हैं और डेंजर एंड की दिशा में बैट्समैन कौस्तुभ दौड़कर पहुंच गए। क्या शानदार रनिंग है, क्या बात है, 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ ही ये ओवर समाप्त हुआ। कौस्तुभ ने जानबूझकर गेंद को स्कोर लॉफ्ट किया इनफील्ड के, हालांकि वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। जब तक लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी फील्डर जाकर गेंद को फील कर पाते, 2 रन पूरा हुआ। 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आइए आपको बता दें कि इक्वेशन अभी 3 ओवर शेष बचे हैं, 18 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। 18 balls to go and 14 runs to get। और जी हाँ, तो 14 रनों की दरकार है, 18 गेंदें शेष बची हुई हैं। अगर मेरे साथी मित्रों को आपत्ति न हो तो मैं बचे हुए ओवर्स को कर लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ 14 रन बचे हैं और कुछ शायद थोड़ा सा रोमांच हो जाए। गर्मी ज्यादा बढ़ती हुई और बल्लेबाजों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है और एक योजना होती है, एक अतिरिक्त खिलाड़ी पानी बोतल के साथ, जलपान के साथ मैदान पर उतरता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस उनके कान में डाल देता है कि आपको क्या करना होगा, स्ट्रेटेजी बनती है। 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। अब 14 रनों की दरकार, 18 गेंदें शेष बची हैं। और कौस्तुभ का क्या कहना, इस मैच में जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। प्रज्वल का साथ निभाकर जो बुद्धिमानी वो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि वो निश्चित तौर पर लंबी रेस का घोड़ा है। 12 रन बना चुके हैं, 8 गेंदों का सामना किया है। प्रज्वल के मुकाबले में, हालांकि प्रज्वल काफी देर से हैं, लेकिन प्रज्वल भी योजना बनाकर खेल रहे हैं, ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं, सिंगल्स को बटोरकर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। 11 के व्यक्तिगत योग पर प्रज्वल 8 गेंदों का सामना किया, कौस्तुभ ने 12 रन बनाए, 8 गेंदों का उन्होंने भी सामना किया है। जबकि इस वक्त आक्रमण पर इस छोर से गेंदबाज फुजलोना एंड से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। दीपक अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं। 14 रनों की दरकार है। क्या प्रज्वल कुछ एंटरटेन करेंगे पटाखेदार बल्लेबाजी से? यह गेंद लॉफ्ट किया गेंद को और क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चौका। जी हां, ऐसे क्रिकेट कहते हैं अनिश्चितताओं का खेल। बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। इस शानदार चौके के प्रायोजक है जीपीएल 2024। देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि दबाव फील्डर पर है, गेंद को लॉफ्ट किया और एक्स्ट्रा कवर डीप में जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया, गेंद से हाथ छूट गई और धीरे से जाकर लुढ़क कर बाउंड्री लाइन को छू गई, तो चौका खाते में जोड़ लिया गया। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। जी हां, श्रीनिकेत जी ने कहा कि वाइड है। 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर 39 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। जैसे ये चौका निकला, दीपक थोड़े से परेशान, दिशाहीन गेंद उन्होंने की। हालांकि शायद वो टारगेट कर रहे थे कि एंगल डिलीवरी जो मिडिल लेग स्टंप पर आती हो, दिशा से थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकल गई। अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि वो इस गेंद को वाइड करार दें। 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दीपक की अगली गेंद, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, जोरदार अपील की गई है, लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, स्टंप्स को छोड़कर बाहर निकल रही थी गेंद और थोड़े से निराश हो गए दीपक। लेंथ में ज्यादा थी गेंद, कहीं ना कहीं ब्लॉक होल में गेंद को करने का उनका प्रयास था। बच गए बैट्समैन। लेग बिफोर द विकेट के लिए जोरदार अपील की गई थी, तो बल्ले का किनारा लेकर गई थी। जी हां, इसीलिए अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। मैं भी यही सोच रहा था कि बहुत नजदीकी मामला स्टंप्स के सामने दिखाई पड़ रही थी और अपनी पैनी निगाहों से, जैसा मैंने कहा कि माइन्यूट होकर वो देखते हैं और फिर निर्णय निकाल लेते हैं कि बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई थी। 1 रन खाते में और।
ये गेंद इस बार कोई नहीं रोक सकता इस गेंद को। गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। 4 रन। जीपीएल का शानदार चौका। इस बेहतरीन चौके के प्रायोजक थे जीएसबी प्रीमियर लीग 2024। शॉट ऑफ लेंथ गेंद और दीपक जब 2 गेंदें ऐसी जहां पर विकेट गिरना था नहीं गिरा, वो अपने विश्वास को खो चुके हैं। गेंद शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर विड था और कौस्तुभ जैसे बैट्समैन को जो बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं, 4 रन के लिए उन्होंने लगा दिया स्ट्रोक। एक और गेंद, इस गेंद में अलग अंदाज था। स्विंग होकर गेंद बैट्समैन को छकाती हुई निकल गई। बैट्समैन कौस्तुभ इस बार गेंद को धीरे से कट करना चाहते थे, बच गए कि बल्ले का सेहरा नहीं लिया। विकेटकीपर ने हथेली में गेंद को कैद कर लिया था। 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दीपक दोबारा गेंद को लेकर फजल एंड से तैयार हो रहे, शिकार की तलाश में। उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। एक मौका बन सकता था। 3 मौके गवा दिए इस ओवर में। दीपक निराश हैं। होता है, समझा जा सकता है कि एक ओवर में 3 मौका, एक जो लगभग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कैच का मौका था, गवा दिया। फिर लेग बिफोर द विकेट में बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई थी, वहां पर बैट्समैन बच गए। फिर अभी अभी गेंद बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर के उंगलियों को छू कर निकल गई, तो जीवन दान मिला बैट्समैन को। कौस्तुभ भी तकदीर के बड़े धनी निकले। 17 की व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रज्वल स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। 3 और रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। राउंड विकेट गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। वाइड संकेत किया, घोषित किया श्रेणी के जिन्हें से वाइड के साथ रन बढ़कर 47 पर। दबाव होता है, समझा जा सकता है कि जब आप अच्छी गेंदबाजी करें, विकेट न मिले तो निराशा हो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो बड़े जिज्ञासु होते हैं, उसी को आपको दिखाना चाहिए। इस छोर से दीपक गेंद को लेकर तैयार। राउंड विकेट ये गेंद लॉफ्ट किया। इस बार कैच हो सकता है क्या? इस बार लपक लिया जाएगा? जी नहीं। आज क्या हुआ है? क्यों दीपक का तकदीर साथ नहीं दे रही है? किस्मत उनके साथ नहीं है। 4 मौके इस ओवर में गवा दिए गए। लॉफ्ट कर दिया गया इस बार गेंद को। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर ने गेंद को कैच करने का प्रयास किया, लेकिन झुककर इतना आसान नहीं था। दौड़कर झुककर गेंद को कैच करना, शरीर का संतुलन बनाना मिस कर गए और इसी के साथ जीवन दान मिला बैट्समैन को। तो इसी के साथ ये ओवर जो कि समाप्त हो चुका है। तो नया ताजा ओवर दूर वाले छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं और 1 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। आज फॉरमैन से इस ओवर की पहली गेंद। चंद्रकांत गेंद को लेकर तैयार, गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। जी हां, फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस जबरदस्त छक्के के साथ ही, बहुत खूबसूरती के साथ खेला गया यह स्ट्रोक। इस छक्के के साथ ही राइजिंग स्टार मैंगलोर ने इस मैच को शानदार तरीके से जीत दिया है। अभिनंदन, बधाई हो, मेनी कांग्रेचुलेशंस। और एएसकेबी क्रिकेटर्स बेंगलुरु के सारे खिलाड़ी थोड़ा सा निराश हैं, लेकिन अगले मैच के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं और जो कमी इस मैच में रह गई उसको अगले मैच में वो पूरा करें। शुभकामनाएं उनको बहुत बहुत। और इस वक्त आपके सामने देखा जा रहा है कि किस तरह से इस पूरे मैच का लेखा जोखा आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो मैच समरी आपके सामने। शुरुआत में एएसकेबी क्रिकेटर्स बेंगलुरु के कप्तान ने, हालांकि राइजिंग स्टार के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और एएसकेबी ने कुल मिलाकर 47 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। और जिसमें आप देख रहे हैं दुर्गेश प्रभु 34 रन, बालकृष्ण किनी जिन्होंने 4 रन, सविन नायक ने 3 और दीपक शनाय ने 1 रन बनाए। और उसके अलावा ओवर्स में अगर देखा जाए 7 ओवर्स में निर्धारित समीर शानबाग ने जी हां 13 रन 2 विकेट्स। उसके अलावा विघ्नेश ने 5 रन दिए, 1 विकेट प्राप्त कर लिए। प्रज्वल ने
उसके अलावा इस मैच में अभी समय है कि प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दें। उसके लिए तेईस रन बनाने वाला एक बैट्समैन राइजिंग स्टार की तरफ से जिसको प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। आयोजनकर्ताओं से अनुरोध है कृपया वो उस विज्ञापन की ओर हमारे किसी मुख्य अतिथि को लेकर आए और इस प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार को प्रदान करें। और आप जानते हैं 23 रन शानदार छक्के के इस साथ मैच को समाप्त करने वाला वो खिलाड़ी प्रज्वल, कृपया प्रज्वल आए। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, कंग्रेचुलेशंस। जबकि एक और नया ताजा मैच मैदान पर शुरू होने जा रहा है। कार्तिक जी और राघु ब्रह्मवर मैदान पर उतर रहे हैं। दोनों टीमों के 12th मैन जल्दी कमेंट्री बॉक्स में आइए प्लीज। और इससे पहले कि नया ताजा मैच शुरू हो, आगे का विवरण सुनाने के लिए जी हां गोपी भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वो जिम्मेदारी को संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद अजय राज सर. आयच दिवसाच्या GSB प्रीमियर लीग 2024च्या दोन्ही दिवसा मॅच तुम्ही पळयता आसाची. आयच दिवसाच्या चारही मॅच पंचा मॅच जाता आसा. मल्सी स्मॅशर्स आणि वळलंके फायटर्स मुल्की दोन्ही लायक टीम ह्या सिजनाचे. दोन्ही टीम खेळले तांगेले फर्स्ट मॅच अंतू फर्स्ट मॅच दोन टीमें बिन जाला. सेकंड मैच तांगेले लीग हंता तुला खेळता आसाची. मल्सी स्मॅशर्स आणि टॉस विन जावन फिल्डिंग घेतलेलं आसा. वळलंके फायटर्स हांकां बॅटिंगाक आमंत्रण केलेलं आसा. वळलंके फायटर्स तुलाना स्ट्रायकाक डॉग जन बॅट्समॅन तुमगेले एद्र दिसता आसाची विघ्नेश भट आणि स्ट्रायकारी लेफ्ट हँडेड बैटर विघ्नेश भट. नॉन स्ट्रायकर अश्विन. फर्स्ट बॉल गिरीश पाई भारी चंद एक बॉल दे गिरीश पहिले लायक एक सिंगल ते लायक एक रनिंग मिड विकेट. फर्स्ट बॉल सना मट्टा ओवर थ्रो जाला मिसफील्ड जाला. बॉल दोरोग साथ जायनी फील्डर आग ह्या मध्ये तो ताजी उपयोग करता जी दोन्ही रन धावलेच. एक लायक एक चिकी सिंगल धावन फील्डर भायर प्रेशर आला बॅट्समॅनाना उडोक जलारी सनमट मिसफील्ड जावन दोन्ही रनाके अवकाश मेळ्ळी. ते दोन्ही रन फर्स्ट बॉलाक मेळ्ळला आसा. वळलंके फायटर्स तांकां बॉलिंग घालता आसा गिरीश पाय. माल्सी स्मॅशर्साचे स्टार बॉलर यो गिरीश पाय. लायक एक लेफ्ट केला फिंटे फील्डर ना ते बॉल मोडलेला भायर सरन फर्स्ट सिक्स वळलंके फायटर्स मुल्की तर्फेन. तशीच हांगा ग्राउंड नांदू स्वरूप म्हणून कोणी चल्लो अस म्हणजे फुड कोर्ट तुगेला नम्म सोदिता आसाची. स्वरूप म्हणून एक चल्लो हांगा खै जव ग्राउंडारी अस म्हणजे ಕೂಡಲೇ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವಚ್ಚುಗ ಮಣು ತಂಗಲ ಆನಮ್ ನಿಂಬಿತ ಆಸಾची. तशीच वळलंके फायटर्स आणि माल्सी स्मॅशर्स मध्ये लायक एक क्रुशियल मॅच तुमगेले एद्र चलता आसा. वापस भारी चंद एक बॉल थई फुडली बॉल सिक्स मारल जल्लारी ह्या बॉल लायक एक लाइन एंड लेंथ डिलिव्हरी गिरीश पैला. विघ्नेश स्ट्राइक घेतास. डॉग जन फील्डर्स मात्र एक दोन्ही ओव्हर अंतर अबुनसाची बारीक वापस चंद एक बॉल एक रन मात्र मेलता. गिरीश पहिले एक लायक बॉलिंग म्हणता असल एक ओव्हर अंतू फर्स्ट ओव्हर चलता असं. डॉग जन विंड डायरेक्शन कशी की त्या लाईनारीची
ऑन साइड अंतू लेफ्ट हँडेड बॅटर आका दोन्ही लायक एक पोझिशनरी फिल्डर आका गिरीश पैन सेट केला पळका राईट हँड आणि लेफ्ट हँड बॅटिंग कॉम्बिनेशन तुमगेल मुखार चलता आसा अश्विन आणि विघ्नेश भट्टाल मुखांतर गिरीश पै वापस बॉलिंग घालू तयार स्कोर बोर्डारी तुमका स्कोर दिसता असं 4 बॉल जाला 9 रन खंयचे विकेट काढून घेन अशी वडालंके फायटर्स अश्विन फर्स्ट टाइम स्ट्राईक घेता असा या इनिंग्सांत गिरीश पहिल्या बारीच्यात एक बॉल तेई पळोका ऑफ स्टंप मस्त बाहेर असेल तसल बॉल वाईड सिग्नल अंपायर आला हेमलका एक एक्स्ट्रा रन स्कोर बोर्डात ऍड जाता वडालंके फायटर्स मुलकीचे अश्विन स्ट्राईक घेवच्या तयार वापस गिरीश पै बॉलिंग आका लेग स्टंप बाहेर या पटी बॉल अनेक वाईड अनेक एक एक्स्ट्रा मालसी स्मॅशर्स आणि वडालंके फायटर्स दोन्ही टीम बहुशा इक्वल असं म्हणत लायक एक पंद्य ह्या एक मॅच तुमका पळोवच्या खंडित मेळटा म्हणून आमगेले एक अनुभव लायक एक सिंगल ते गिरीश पै एक सीनियर मोस्ट प्लेयर आमगेल्या GSB क्रिकेट आमगेल समाजांतू प्रति एक टीमा ओटू या GSB प्रीमियर लीग अंतू खेळल तसले प्लेयर म्हणून सांगता विंगड विंगड टीम अंतू प्रति वर्ष पार्टिसिपेट करता साधारण वाटा पोरे टीमा गिरीश पै खेळला म्हणून म्हणत ह्या पटी ह्या सीझन अंतू मल्सी स्मॅशर्स टीम अंतू गिरीश पै केलतास लफ केला या पटी बाउंड्री लाईन बाहेरी बोन दिसता वय 6 बाउंड्री लाईनाचा एक 10 मीटर बाहेर पडला लायक एक शॉट ते विघ्नेश भट्टाल दोन्ही 6 ह्या ओव्हर अंत हरताची एक ओव्हर अंतू तुम्ही स्कोर बोर्ड अंतू स्कोर पडेल रे 18 रन 18 रन्स विदाउट लॉस विघ्नेश भट्ट आणि अश्विन स्ट्राईक आका लेफ्ट हँडेड बॅटर आणि राईट हँडेड बॅटर ह्या कंडिशन खंडित जाऊन तुम्ही पळय जाता 2 घंटा साधारण एक 1.5 तुलान 4.5 ताई लेफ्ट साइड कमेंट्री बॉक्साच्या लेफ्ट साइड विंड डायरेक्शन असता लेफ्ट हँडेड बॅटर आका त्या साइड तुला रिव्हर साइड तुला खेळतास म्हणजे री चान्स चढ तशीची राईट हँड बॅटर आका आता ऑन साइड आरी अवकाश चढ म्हणून विंड डायरेक्शन आणि मी सांगू येत पळका एक ओव्हर अंतू 18 रन एव्हरेज आरी वडालंके फायटर्स खेळतासाची दोन्ही ओव्हर चालतील तत दोन्ही ओव्हर घालूक सुधींद्र स्ट्राईकाक अश्विन पळका ह्या ओव्हर मालसी स्मॅशर्स आतानी कशी घालताची म्हणून 7 ओव्हर पंद्याट अंतू एक ओव्हर अंत 18 रन दिला हाय स्कोर मॅच खंडित जाऊन पळोवच्या मेळत म्हणून दिसता ह्या मॅच स्कोर पळयताना सुधींद्र अश्विनाक ऑफ स्टंप मस्त बाहेर असेल तसल बॉल वाईड खंडित जाऊन ऑफ स्टंप बाहेर घालचे तसल प्रयत्न बॉलर आला असता प्रति एक लांक एक होतस ह्या सिच्युएशन खंयची सिच्युएशन कशी खेळका असल एक सिच्युएशन असल एक वातावरण कशी बॉलिंग घालका म्हणून एक्सपिरियन्स बॉलर खंडित होत असता सुधींद्र वापस ऑफ स्टंप बाहेर येत असेल बॉल ह्या पटी वाईड धीनी अंपायरान लायक एक बॉल म्हणत दोन्ही ओव्हर चलतास स्कोर बोर्ड अंतू 19 विदाउट लॉस भारी संदेश बॉल ह्या पटी वाईड ಸ್ವಲ್ಪ प्रेशर असता खंडित जाऊन बॉलर आका लेग साइड वारस म्हणताना जल्दीतले ऑफ स्टंप बाहेर घालचे प्रयत्न असता जाल्यार ऑफ स्टंप बाहेर कितली बाहेर घालता म्हणाला मस्त इम्पॉर्टंट जावन असता चढ त्या विषयावर कॉन्सन्ट्रेट केले म्हणजे रशीची दोन्ही वाईड दिल्या सुधींद्रान पद्दा कीपर जावन रबला करेक्ट बॉलर आका एक गायडन्स दिता असतो कशी ह्या सिच्युएशनात घालका म्हणून एक्सपिरियन्स प्लेयर तो भाई पद्मनाभ पै सुधींद्राला वापस ऑफ स्टंप बाहेर मस्त बाहेर पडला तसल बॉल पद्मनाभ पै बॉलर गाईड करता असं कशी घालका खंयची लेंथर घालका विकेट तुला ऑफ स्टंप तुला कितली बाहेर असका लेंथ कशी असका म्हणून सांगून बहुशा बॉलर
कीपर पद्दान सांगिल तसला लाईन अँड लेंथ घालूक ताका सद्या मटाक जाताना पळका ह्या बॉल कशी घालता म्हणून सांगून बरच एक बोलते पद्मनाभ पै या पडी कसं सांगला की तशी सांगला या पडी एक समाधान पद्दाक लायक एक बॉलिंग आला म्हणत सुधींद्रान सुरवे ओव्हर 18 रन दोन्ही टीमय लायक आशिल्ली मित हाय स्कोर मॅच ह्या मॅचांत तुमका पळोवचा मेळटा म्हण दिसता 1.2 overs 21 विदाउट लॉस भारी चंद एक बोलते सुधींद्रा वापस बीट जाला खंडित जाऊन एक लायक ओव्हर जाऊक जाता मल्सी स्मॅशर्स तांका जलतीतले ऊडी रन्नारी ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಂಕ ರಬ್ಬೋಕ ಜಲರಿ ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ जलतीतले 60 प्लस स्कोर करूक खंडित तांगेले प्रयत्न असता या कंडिशनात म्हण दिसता ऑफ स्टंपाच भायरी लायक एक बॉल ते वाईड क्रीज ಸ್ವಲ್ಪ भितर येयला म्हण अंपायर सांगता वाईड दिवच्या जायना लायक एक डिलिव्हरी म्हण सांगून हा अज्जी उठूची एक दोन्ही बॉलवरला स्कोर बोर्डा प्रकार ह्या ओव्हर आणतो नेत्रावती आर्च फार्मा लिमिटेड अँड तुलाना सुधींद्रा वापस विघ्नेशाक चंद एक डॉट लायक एक डिलिव्हरी ते एक रन दान कंप्लीट केला दोन्ही रनांचे अवकाश ना ते 1.5 overs 22 जाला 12 रन एव्हरेज जारी ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಾನಿ खेळता सची स्ट्राइक ಆಗತ್ತ लेफ्ट हँड बैटर विघ्नेश भट फर्स्ट ओव्हर अंताना लायक एक 2 6 मारला अगेन्स्ट द विंड कंडिशनर खेळका जाताना त्याने पळका लास्ट एक बॉलवरला सुधींद्राला फुल एंड डिलिव्हरी एक रन धावून कंप्लीट केला सनामटाक फ्लिप करून शॉर्ट फाईन लागा मारनो एक रन धावून कंप्लीट करून स्ट्राईक वापस विघ्नेश भट घेता सात जोटूची दोन्ही ओव्हर मुक्ताय जाला दोन्ही ओव्हर मुक्ताय नंतर स्कोर बोर्ड अंतू तुम्ही स्कोर पळयत 23 विदाउट लॉस विघ्नेश स्ट्राईकाक दोन्ही ओव्हराचे तुम्ही स्कोर पळयताना लायक एक स्कोर ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ हनी कशी स्कोर हडका सुरवे 2 ओव्हराक ओन लेखील प्रकार त्या एक समाधानकर स्कोर ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ तर्फे असं म्हणून म्हणत दोन्ही ओव्हर दोग जन मात्र फिल्डर भायर असताची प्रेशर खंडित जाऊन बॉलर भायर असता 2 ओव्हराक 23 जाला आणि 5 ओव्हर वरला फील्ड रिस्ट्रिक्शन होगूर सडिलीक जाता पळक आणि 5 ओव्हर अंतू ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ अंक कितली रन भितरी मल्सी स्मॅशर्स तांणी रबयताची म्हूण सांगून जाल्यार विघ्नेश भट असले कंडिशनान सांगील तसले बॅटर यो असल सिच्युएशनान फुडली GPL जाल्यार तुम्ही विघ्नेश भटाल बॅटिंग पळयला पळका ह्या सिच्युएशना ह्या एक वातावरणान तू लेफ्ट हँडेड बॅटर जावन आशिल्ले विघ्नेश भट कशी केलता म्हणून सांगून गिरीश पै बॉलिंग घालू का लायक एक लो फुल टॉस मारची म्हणा तितली सुलभ ना लायक एक बॉलिंग ते गिरीश पैला असल एक कंडिशनान तू लेफ्ट हँडेड बॅटराक लो फुल टॉस बॉलिंग घालचेची सूक्त म्हणून दिसता अनुभवस्त बॉलर गिरीश पै स्ट्राईक घेवच्याकत अश्विन गिरीश पै ह्या इनिंग्सान गेल्या दोन्ही ओव्हर घालता मल्सी स्मॅशर्साचे 3 ओव्हर चालतीन तू भारी सद एक बॉल थे एक रन मात्र मेलता खंडित एक रन मस्त इंपॉर्टंट जाल्यार असले कंडिशन तू एक रनाक ಸ್ವಲ್ಪ मट्ट समाधान दिता मल्सी स्मॅशर्स अंक म्हणत बाउंड्री सिक्सर्स रब्बोचे प्रयत्न खंडित जावन असता एक हॉर्ड स्कोर काडचे रब्बोचाक प्रयत्न खंडित मल्सी स्मॅशर्स तांगेला असता पळका विघ्नेश भट स्ट्राईकाक गिरीश पैल बॉल लायक एक शॉट ते कंचे फील्डर अवकाश ना इता म्हळ्यार
बाउंड्री लाईन मागशील डगआउट मागशी पडला बॉल विघ्नेश भट तावळी सांगितलं असल एक कंडिशन विघ्नेश भट मस्त प्रीती करता तसल एक हार्ड हिटर बॅट्समॅन आता गेले एक फेवरेट एरी मात नाही एक कंडिशन समेत तक समजावून असं या कंडिशन समजावून ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ त्यांनी करेक्ट एक बॅटर आक ओपनिंग करूक पेटयला म्हूण म्हणत ते पळय लेफ्ट हँड आनी राईट हँड बॅटर कॉम्बिनेशन ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಾक ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ घालूक कष्ट बॉलर वयर खंडीत प्रेशर असता पळय वापस गिरीश पै विघ्नेश भटाक ह्या पटी एक रन मात्र काणू स्ट्राईक अश्विनाक दिला गिरीश पैला सांगा ಮುಂಜಲಾರಿ मस्त अनुभव तगेला या GSB क्रिकेट अंतू तगेलास विंगड गाव अंतू विंगड नमना ग्राउंड अंतू विंगड पिच अंतू खेळल तसल अनुभव गिरीश पैला खंडित जाऊन असं वापस लायक एक बॉलिंग ते लायक एक बॉलिंग गिरीश पैला 32 32 विदाउट लॉस तिन्ही ओव्हर जत्तास एक हंत अंतू 18 रन असेला एक ओव्हर अंतू वापस गिरीश पै या पडी कॉट एंड बॉल चान्स असेला साधा मटाक कॅच ड्रॉप जाला ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ असेला ಬಹುಶಃ गिरीश पै ಲೆಕ್ಕನಿ स्ट्रेट ड्राइव करतीयो म्हणून कॉट एंड बॉल कळल जाला एक विकेट ताजी सफलता खंडित जाऊन ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ आले निमित्त माल्सीस मॅचर्स आमेल तशेले लायक एक ओव्हर गल्ला म्हणत गिरीश पै ह्या ओव्हर फर्स्ट ओव्हर ಅಂತ गेला 18 रन दिला जला ह्या ओव्हर बारी लायक एक कम बॅक केला म्हणत हजोटूची गिरीश पैला तगेला ह्या इनिंग्साचे 2 ओव्हर मुक्ताय झाला सुरवे ओव्हर अंतू लायक एक बॅटिंग प्रदर्शन दिला 18 रन मारला 3 ओव्हर नंतर 18 रन एव्हरेज असेला 1 रन एव्हरेज येऊन पावला माल्सीस मॅचर्स जशी कम बॅक करते की नाव आहे ಒಳಲಂಕೆ फाइटर्स मुलकी 7 ओव्हर अंत एक हॉर्ड टार्गेट 60-65 प्लस लगे 70 स्कोर करते की म्हणून आम्ही आणि 5 ओव्हर अंत पळका कंडिशन्स पळयतना खंडित बॅट्समॅन ಸ್ವಲ್ಪ फेवर जाऊन या कंडिशन विंडस बॉलर वैरी खंडित प्रेशर असं जलारी लायक एक लाईन अँड लेंथ डिलिव्हरी लायक एक लाईन अँड लेंथ बॉलर आलाय तगेल अनुभव खंची कंडिशन जलारी गलची तसं लायक सामर्थ्य त्या बॉलर आकस म्हणून जलारी बॅट्समॅन आना रन करचाक राबोचाक तका खंडित साध्य असं तसले एक सामर्थ्यशील बॉलर पवन नायक तुमगेले एद्राक ह्या इनिंग्साचे 4 ओव्हर घालूक येतास अश्विन स्ट्राईक आका पवन नायक बॉलिंग लायक एक अश्विनानं कवर ड्राईव्ह केला 1 रन मारनो धावनो कंप्लीट करू विघ्नेश भटाक वापस स्ट्राईक दिला लायक एक अंतर ಏನ್ ಪೋಲಾ ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾತ್ರ नाही कंचे विकेट कळून घेनाशी 34 विदाउट लॉस यूथ ऑफ GSB यूट्यूब चॅनल अंतू सीधा प्रसार आहे देश विदेश जमगेला अनेक समाज बांधव क्रीडाभिमानी क्रिकेट प्रेमी या सीधा प्रसार आता पळयतास लायकी कव्हरेज जतास घरां बेसूनची एके तुम्ही खई असा की ते स्मार्टफोन आरी तुम्ही या सीधा प्रसार यूट्यूब चॅनल मुखांतर पळयतासची संदेक डिलिव्हरी तई लायक एक कवर ड्राईव्ह विघ्नेश आला लायक एक सेट झाला बॅट्समॅन विघ्नेश जलारी अखेरी ते रब्या पळया लास्ट 5 ओव्हर 5 बॉलर कोण म्हणून पळया म्हणून सांगून विघ्नेशाल बहुशा मन अशा पुरा अश्विनाके स्ट्राईक दिता असतो अश्विन ह्या बॉल कशी केलता म्हणून पळका लॉफ्ट केला अश्विनानं मस्त प्रयत्नशील जलारी बॉल सांगेल तितली कनेक्ट जायनी 1 रन मात्र मेलता लायक एक बॉलिंग ಎದ್ದೋಳು 3 बॉल अंतू खाली 3 रन मात्र दिला लायक एक बॉलिंग प्रदर्शन उगुर मल्सीस मॅचर्स साल मुखांतर ಎತ್ತಾಸ सुरवे ओव्हर 18 तुम्ही लॅक काढली ಮುಂಜಲಾರಿ 3.3 ओव्हर्स अंतू 36 मात्र झाला लायक एक सिंगल ते विघ्नेश जलतीतली स्ट्राईक अश्विन दितास बहुशा आम्ही ग्राउंडा भायर बेसून तुम्ही कोणालागी क्रिकेटाचे अनुभव आशिल्ल्या लागी तुम्ही निंबिला म्हण जाल्यार विघ्नेश
अश्विनाक कसं लायक स्ट्राईक दिता असं म्हण सांगू न्हू तुमकां खंडितय गोत्त आसता ह्या सिच्युएशनान तूं विंड डायरेक्शन कशें आसा राईट हँड बॅटराक हे अवकाश तान कशी सदुपयोग कोरयता म्हणाले विघ्नेशाक खंडित गोत आसा लॉफ्ट केला एक रन मात्र मेळता लाँग ऑनाक बॉल वताच स्कोर 38 रनार येवन पावला 3.5 ओवर्स ह्या ओव्हराचे लास्ट एक बॉलवरला सुरवे 3 ओव्हर तुम्ही कंपेअर केले म्हणजे जाल्यार मल्सी स्मॅशर्साचे ह्या ओव्हर खंडितय तांकां एक समाधान दिला म्हणे तर खाली 4 की 5 रन मात्र दिले ह्या ओव्हरांत पवन नायकाना विघ्नेशाना रनआउट अवकाश किपलो लायक एक रन विथ विकेट दे बॉल हातान गॅदर जाय नी वसंत हातान ताच्या जोटूची 1 रन धांवन कंप्लीट केला 4 ओव्हर मुक्तायानंतर स्कोर आता 39 विदाउट लॉस आता तुम्ही पळया सुरवे ओव्हर 18 आशिल्ल्या 4 ओव्हर मुक्तायानंतर 18 एवरेजार खेळता आशिल्ले वडलंकी फायटर्स 10 रन एवरेजा भितर येवन पावला आता लागी 10 रन आसा आणि 3 ओव्हर आसा एक प्लस कसं म्हणाल वडलंकी फायटर्सा लागी 2 बॅटर सेट जाल्याची विकेट हातांत आसा आणि खंडित जावन 3 ओव्हरांतू कितली जतकी तितली स्कोर ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಮಾರ್ಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟ ಪೂರ್ವ म्हणू क्रीडाभिमानी जावन आम्ही संगीत जाल्यार सिच्युएशन हांगा दूर बेसून सांगच्या काही ते ग्राउंडारी खेळता आशिल्ले बॅटर आल्या पोझिशन नावे तांगेले एक सिच्युएशन आम्ही अनुभव करचे भारी कष्ट तशी मुखारचे कमेंट्री सांगू का कन्नडान नयन हांका प्रीतीन आमंत्रण करता ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಆರಂಭಿಕ 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 40 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಲಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ 5ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 40ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಾಡುವಾಗ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಸುಧೀಂದ್ರ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆಂಡನ್ನ ನೇರ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಹುಶಃ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಎದುರಿಸಿದ 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 28 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡಕ್ಕೊಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 4ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ರು ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ 43 ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 4ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವಾಗ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗ ಖಂಡಿತ ಏರ್ಪಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ
5ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ 4-5 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 43, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 43 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ತಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದ್ಭುತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 43, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಆರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಮನವಿಯಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಗೋಕುಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಲೆಫ್ಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ಇವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈ ತನಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಈ ತನಕ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ 29 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಿದ 15 ದಿವಸಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾದೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಕುಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್, ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕನೆಕ್ಷನ್, ನೇರ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬಟ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಮಾತ್ರ. 6 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. 50 ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರೊಂದಿಗೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಂಡದ ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಅಂಕಗಳನ್ನ. ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಕಾರಣ 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಷಟ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲಿದು. ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೋಕುಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಷಡ್ಕವೀರ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ 6ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 53, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್. 53 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 9.9 ರಂತೆ ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತೂ ಮೊನಚಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದ 53 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ 18 ಎಸೆತಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 37 ಅಂಕದ ಕೊಡುಗೆ. ಇದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ 6 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸೂರಜ್ಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ, ಆ ಕಾರಣ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಒತ್ತಡವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಐವತ್ತ 3 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನವರೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಸದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬಿಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರಣ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ ಜಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 28. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೀಗಿ ಪ್ರಹಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೇರ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮನಮೋಹಕ ಸಿಕ್ಸರ್, ಇಡೀ ಮೈದಾನವನ್ನೇ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ. ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೌಲರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ 59 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಎದುರಾಳಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. 43 ವಿಘ್ನೇಶ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಧಶತಕದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರಜ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 59 ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮನಮೋಹಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ. ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮುಖೇನ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ 1 ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಬಹುಶಃ ಬೌಲರ್ಸ್ ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸುವಂತವರು ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್. 49 ಇದು ವಿಘ್ನೇಶ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕಗಳು. 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ GPL ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಒಂದು ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮುಖೇನ. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕಕ್ಕೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 65 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್. ಅರ್ಧಶತಕ, ಇದು ಅರ್ಧಶತಕದ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ. ಇಡೀ ಮೈದಾನವಂತೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಕಾರಣ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮುಖೇನ. ಎದುರಾಳಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸುವಂತ, ಎದುರಾಳಿಗಳು ಕೂಡ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 55, ಎದುರಿಸಿದಂತ 22 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 71. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬಂದಂತ ಅಶ್ವಿನ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 71 ಅಂಕಗಳನ್ನ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ವಿಘ್ನೇಶ್ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡಿರುವಾಗ ಏಕೈಕ ವಿಕೆಟ್. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ
ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಖಂಡಿತ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮ ಡಗೌಟ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವಂತೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆಯದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು, ಕಾರಣ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 72 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸದ್ಯ ಶರತ್ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ, ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರತ್. ಬಹುಶಃ ಬಂಡೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 18 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಸೂರಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂತು, ಆದರೆ ಬೌಲರ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಲ್ಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 73 ಅಂಕಗಳನ್ನ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನೇ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿ 74 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ. Thank you, Nayan. So match number 16 of this GPL 2024 is going on here between Malshi Smashers versus Volalanke Fighters Mulki. Malshi Smashers, after winning the toss, they had decided to field first, and in reply to that, Volalanke Fighters have set a huge target of 74 runs, and I think this is the highest total so far in this tournament. The opener batsman Vignesh especially played an astonishing knock of 56 runs with the help of 6 sixers. 56 runs contributed by this man Vignesh Shanai has helped their team to reach a very good score here. So now 74 is the target. 74 runs required for Team Malshi Smashers to win this match of 7 overs. Meanwhile, the fielders of Volalanke Fighters are already in the middle. A huge discussion is going on here. This is a very important match, crucial match for both these two teams. Volalanke Fighters Mulki had defeated Amchikela Cherkes yesterday in their first round match, whereas Malshi Smashers defeated Royal Challengers Ballambechu. So both the teams have got 2 points in their points table. So two topmost teams from Pool D are clashing against each other here. As far as the run rate is concerned, yesterday Malshi Smashers win a top position in Pool D, and Volalanke Fighters were in the second position. Now, since they have scored 74 runs in 7 overs, definitely the run rate will creep up for Volalanke Fighters here. Meanwhile, the two openers for Malshi Smashers are in the middle now.
Padmana Pai Kota, the icon player of Marchi Smasher, is on strike. Vasant Nayak, another technically sound batsman, right-handed batter, he will be at the non-striker's end. And the opener bowler for Walalanke Fighters Mulki will be Sunit Bhatt, a right-arm medium-fist bowler, a clever bowler. He's going to bowl the first over of the innings from the Puzalana end with a long run-up. And the man on strike is a very dangerous batsman, Padmana Pai. So Walalanke Fighters will have to look for the wicket of Padmana Pai because he is the trump card, the key player for team Marchi Smashers, leading from the front, playing a sheet anchor role for his team. So if Walalanke Fighters picks up the wicket of Padmana Pai, definitely they can put the pressure on the opposition side here. Everything seems to be ready here. We have the green signal there by the umpire. Here is the first ball. Room outside the off stump crashed away nicely to the covers, but there is a protection. So Padmana Pai will get only a single here. With that single, Padmanabh is straight away off the mark. He opened his account and Vasant will take the strike now. Right-handed batter Vasant will be on strike. 4 men on the onside and 5 on the offside for Vasant. There is a silly mid-off, long off, deep extra cover point, short third man, and on the onside, long on, short mid-wicket. Square leg, full toss. But he couldn't take the advantage of that juicy full toss. It was a lower full toss delivery which was going down the leg side. So just taps the ball, fixed the ball onto the onside, played that shot to the vacant region, and easily Vasant Nayak takes a single here. So after this match, the next match will be played between Jaika Strikers Moodbidri versus Kodiyal United Sports Club. The captains of both the teams are requested to come in front of the main stage for the toss. Jaikar Strikers Moodbidri and Kodiyal United Sports Club captains, wherever you, please come to the commentators box for the toss. 3 singles so far. For the 4th time, Sunit Bhatt on his way to Vasant Nayak. Crashed away nicely to the covers, but there is a protection. The fielder Pancham Bhatt comes across and collects the ball and throws it back to the wicket keeper. But before that, there is ample time for Vasant to pick up a single here. That single will bring Padmana Pai Kota is on strike now. As I mentioned earlier, Padmana Pai is a good hard hitter of the ball. He has played plenty of district level matches. He can hit the ball all around the ground. Very, very dangerous batsman, Padmanabh. Let's see what he's going to do in this crucial match. As the next delivery from Sunit, it was a full toss delivery and played that shot to the same region here. Pancham Bhatt comes across and collects the ball. Good piece of fielding, and he was very quick in returning the throw to the wicket keeper. So 5 singles have come so far. They have not found any boundaries or sixes. Only singles are coming here. They desperately need boundaries or sixes. Again, it was a full toss, but just falling away from the fielder who was standing at gully region. The fielder tried his best. The ball chipped up in the air, diving to his left, tried to take that catch. Desperate effort the end, and meanwhile they get couple of runs here. So 2 runs have come in that last ball of the first over. So over number 1 completed. Pretty good over there by Sunit, but he has not given any room for the batters to free their arms in the power play over. In the first 5 balls, singles had come, and after that, in the last ball, they got 2 runs. So at the end of first over, it is 7 on the board without losing any wickets. Kodiyal Sports Association of Mangalore is organizing this prestigious cricket tournament for GSB community players.
Arch Pharma Labs are the title sponsors, and our broadcast partners are Youth of GSB Worldwide. Youth of GSB is hosting the live broadcast, live streaming of this cricket tournament. Beautiful cricket ground, a perfect weather for cricket. 3 days of cricket festival here at Sahyadri College ground. The bowler is ready to bowl from the Arch Pharma Labs end. Venkatesh is the bowler. That's a bad start for this over. He starts off with the no ball. This is very disappointment for the team fielding side, because they shouldn't bowl any no balls, because there will be a free hit if they give no balls. So here is the free hit delivery now. Can Padmanabh go for a big hit now? Can he take the advantage of this free hit ball? Will he be able to go for maximum? This is interesting to see now. Again, that's a bad start. The bowler Venkatesh Prabhu is finding some difficulty in maintaining a line and length. He has to bowl perfectly straight to the wicket. Wicket to wicket bowling is very much required. The bowler has to give more and more priority for the direct and accurate bowling. Tight bowling is required. He has to concentrate on his line and length now. He will have to improvise his bowling. Free hit continues. Once again, similar delivery and similar result here. Outside the off stump, the ball was going a bit of away from the off stump. So Padmanabh Pai just leaves the ball to go to the wicket keeper, because he quickly realized that it is far from the off stump. So left the ball to go to the wicket keeper. Wicket keeper Sharath Prabhu collects the ball. Meanwhile, umpire Raghu Kaduru says it is a wide ball. Away from the off stump here, Padmanabh Pai was thinking that it is too far from the off stump, so once again left the ball to go to the wicket keeper. Wicket keeper Sharath Prabhu collects the ball behind the stumps, and the rest of the job is done by the wicket keeper. Padmanabh Pai is not happy with that. Ball is now in the hands of the bowler Venkatesh. Venkatesh is really finding some difficulty here in maintaining the line and length. He will have to improvise his bowling now. Well, Padmanabh goes for a big one. Ball is in the air. It could be 6, and that's a mighty 6. Lovely chiming and nice footwork by the batsman. Down the track he goes. Picked it up very nicely and hits that one over the mid-wicket fence for a maximum. What a terrific shot it was. That one just went like a treasure bullet. Monstrous hit from Padmanabh Pai. As I mentioned earlier, Padmanabh Pai is a good hard hitter of the ball. He can smash the ball all around the ground. Once again, he finds the gap into the wicket region for 4 runs. Couple of bounce over the boundary for 4 runs. No chance for any fielder to stop that ball. All the fielders just became spectators here. Padmanabh Pai is in an aggressive mood, looking very, very dangerous. And the bowler, Venkatesh, is becoming very expensive here. In the first over, Sunit bowled economically well. He restricted the batsman at 7 runs, but this over is becoming an expensive over. Full toss, and this is another one, the bigger than the previous one. Big, big, big sixer. GPL sixer. That was a full toss delivery, and the batsman Padmanabh Pai has taken the great advantage of that full toss delivery, and he was able to send the ball out of the park here. Next match, Jaika Strikers ani Kodial United Sports Club. Jaika as captain ananga Jaiko toss ayuga. Jaika team match captain. Jaiko jaldi logen toss ayuga. Kodial United captain andra klasa.
Score jumps up to 26 now. Padmanabh is on 19 after facing 3 balls. Well, have a look at the batting style of Padmanabh. You cannot bowl such kind of deliveries to Padmanabh because Padmanabh has got that caliber of hitting any big sixes in any crucial moments, no matter what the conditions are. And he is really destroying here. Padmanabh Pai is dominating right from the word go. Everything is good going for Marshy Smashers now. What a great comeback by this man, Padmanabh Pai. This is a good ball. Good improvisation in the bowling there by bowler Venkatesh. Good comeback there. Batsman Padmanabh Pai again wanted to go for a big hit but misses the line of the ball and wicket keeper collects the ball behind the stumps. There's the end of the over number 2 after the completion of 2 overs. Marshy Smashers are 32 without any loss. They're having a run rate of exactly 16 per over without losing any wickets. Padmanabh and Vasant are trying to build a good foundation for the rest of the team here. After facing 10 balls, Padmanabh Pai scored 25 and Vasant Nayak is on 4 of 3 balls. So power play is completed. Field will be spread out now. Padmanabh Pai has taken the great advantage of that power play fielding restrictions. We'll have to wait and see what is going to happen in the remaining overs here. I think Satvik is going to bowl the 3rd over of the innings. From the Puzalana end, it's going to be Satvik, another right arm medium fist bowler. Satvik on his way to Vasant now. Some problem for Satvik during his bowling run up. Once again, he's going back to the bowling mark here. Ball is in the hands of the bowler Satvik. The meantime, watch Satvik for the first time in this over. Crashed away nicely to the cover point region. There is a fielder. The fielder comes across and collects the ball. But before the fielder Venkatesh collects the ball, there is ample time for Vasant to pick up a single. And Vasant has given the strike to dangerous man Padmanabh. Because Padmanabh is a good hard hitter of the ball, so Vasant is giving as much as strike as possible to Padmanabh. This was going down the leg side and batsman Padmanabh Pai wanted to sweep the ball, wanted to hit the ball to the fine leg region, but the ball is not coming onto the bat. The ball went very close to the leg stump there, so no runs resulted here. Dot delivery there by the bowler Satvik. As the next delivery from Satvik to Padmanabh. Well, Padmanabh was looking to go for a switch hit here. The bowler Satvik quickly realized that he's going for a reverse shot. Hence he has changed the line and the ball has gone down the leg side here. So no runs resulted. Dot delivery there by the bowler. Wicket keeper collects the ball neatly and wicket keeper Sharat Prabhu returns the ball back to the bowler now. Glides the ball to the cover point. There is a fielder from the deep extra cover region, comes in and collects the ball. Meanwhile, Padmanabh gets a single here. Pretty good bowling so far from Satvik. 2 dot balls so far in this over and 2 singles have come. Already 4 balls are over, 2 more balls remaining. Runs on the scoreboard is 34. That second over was a bit of expensive over. Very fine delivery there which beats the batsman Vasant. The ball went straight to the hands of the wicket keeper. The pace deceives the batsman. Ball betrays the batsman Vasant and directly into the wicket keeper's baggage. That is the beauty of the bowling
Fantastic perfect delivery there by the bowler Satvik. Third dot ball from Satvik in this over. Last ball to go now. Satvik for the 6th time in this over. We are in the 3rd over of the innings here. Vasant is the man on strike. That's again ball pitching right in the block hole. Bowler Satvik has bowled in the right spot here. Great bowling figures there by Satvik in this over. He has conceded only 3 runs. Very, very economically bowled. So 3 overs gone, 35 runs on the scoreboard for Vadalanke. Marshy Smashers. Vadalanke had given a target of 74 runs. So chasing a target of 74 runs at the moment, they have scored 35 runs opening partnership without losing any wickets. So 4 more overs to go now. Let us see what is going to happen and who is going to win this match. (34) 24 balls remaining and 39 more runs required for Marshy Smashers to win this match. Changing the bowling position, meantime changing the commentary position as well. For further commentary, please come in Mr. Ajay Raj. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मालसी जो कि जीत की और प्रयास 74 रनों का लक्ष्य आपको आंखों देखा अंग्रेज में सुना रहे थे सुरेश भट्ट। इस वक्त एक आशा की किरण इस छोर पर जो स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन है उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। इस बार ऑन साइड पर उछाल दिया गेंद को मिड विकेट में, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और ये बैट्समैन जो परिस्थिति को बदल सकता था वो आउट होकर पवेलियन लौट रहा है। इस शानदार कैच के प्रोजेक्ट है जीपीएल 2024। 36 का कुल योग। तो विघ्नेश ने शानदार कैच लपक लिया। पद्मनाभ जो कि बहुत खतरनाक साबित हो रहे थे, 26 रन्स बनाए थे और उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर था। पूरी टीम कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही थी अगर पद्मनाभ चल गए, जम गए तो निश्चित तौर पर ये 74 रन बनाना कोई बड़ी बात न होगी। लेकिन इस स्ट्रोक को खेलने के प्रयास में थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर रह गई गेंद, बाहर नहीं निकल पाई। 14 गेंदों का सामना किया, 26 रन बनाए पद्मनाभा ने और खूबसूरत स्ट्रोक। लेकिन वहां पर फील्डर का क्या कमाल का कैच था। विघ्नेश भट्ट आज क्या कहना विघ्नेश भट्ट का, वो तो बस स्टार बन चुके हैं विघ्नेश भट्ट। हाईएस्ट बिडिंग में सबसे ज्यादा पैसों में चुने गए खिलाड़ी विघ्नेश भट्ट। यूं ही नहीं उनको चुना जाता है। शानदार बल्लेबाजी की इस मैच में एक नया कीर्तिमान, एक रिकॉर्ड बनाया। 50 रन उन्होंने बनाए, वो तो निश्चित तौर पर स्टार बन चुके। ये कैच उनका कमाल का था। पहले प्रयास में शरीर का संतुलन बना था, गेंद हाथ से छूट गई, दोबारा उसको संभाल लिया, समेट लिया, कैच कर लिया, जिसके के साथ एक और विकेट। आज फॉरमैन से गेंद लॉफ्ट कर दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर मिलेगा। इस एक के साथ रन बढ़कर अब पहुंच चुका है 37 पर। देखा जा सकता है कि किस तरह से स्ट्रोक खेला गया। लॉफ्ट किया था गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर ने और 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया गया। तो इस श्रृंखला का मुझे लगता है कि पहला अर्धशतक बनाया विघ्नेश भट्ट ने और मालसी स्मैशर्स को इस वक्त 74 रनों की दरकार। वोलंग के ऐसे खिलाड़ियों से निश्चित तौर पर प्लस के ऊपर प्लस कहना चाहिए। दूर वाले छोर से सुरित भट्ट गेंद को लेकर तैयार। आज फॉरमैन से ये गेंद करीबन ऑफ स्टंप के सीट पर थी, जिसको तिरछा खेल दिया, ऑन साइड की दिशा में पुल करना चाहते थे। बल्ले का सिरा अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गई मिड विकेट डीप में, जब तक फील्डर गेंद को समेट पाते। 1 रन तेज कदमों के साथ बैट्समैन ने पूरा कर लिया। 38 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और सुनीत भट्ट जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर वो कर रहे हैं,
वो छोर से गेंद ऑन साइड पर, दोबारा गेंद को पुल किया, थोड़ा स्ट्रेच किया था गेंद तक, और दूसरा रन तेज कदमों के साथ पूरा करने का प्रयास, दौड़कर पूरा कर लिया। थ्रो किया गया था लेकिन उस थ्रो को संभाल नहीं पाए सुनीत, अपने फॉलो थ्रू में जाकर उस थ्रो को उन्हें गैदर करना था लेकिन उनके हाथ से वो छूट गई। उसको संभालते संभालते समय निकल गया, दोनों बैट्समैनों ने तेज कदमों के साथ रन को पूरा कर लिया। तो इस 2 रनों के साथ हर एक रन बहुत कीमती है। वो छोर से सुनीत भट्ट अगली गेंद को लेकर तैयार हुए, 40 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। आज फार्मा एंड से लंबी दौड़ के साथ सुनीत भट्ट जो कि मध्यम तेज रफ्तार की गेंदबाजी करते हैं, लगभग 50 से 60 की रफ्तार की उनकी गेंदें। ये गेंद उछाल दिया, इस बार मौका बनेगा या नहीं देख रहा होगा, गेंद गई बाउंड्री लाइन के ऊपर से, करारा स्ट्रोक है जीपीएल का सिक्सर। बहुत करारा स्ट्रोक था ये गेंद, जिसको टाइमिंग के साथ ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, लपेट कर खूबसूरती के साथ पुल किया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई। हालांकि फील्डर ने वहां पर दोबारा गेंद को अपने टो पर उछल कर अंदर की तरफ ढकेलने का प्रयास किया लेकिन उनके पहुंच से दूर गई, मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ अचानक रनों की एक रफ्तार मिल चुकी है, 46 रन से 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। इक्वेशन आपको बता दें, 3 ओवर्स शेष बचे हुए हैं, 28 रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 3 ओवर्स, यानी कि 18 गेंदों में 28 रनों की दरकार। तो 28 रनों की दरकार, 18 गेंदें शेष बची हैं और विघ्नेश भट्ट आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, क्षेत्ररक्षण में जबरदस्त उनका प्रदर्शन देखने को मिला। बिल्कुल सारे क्षेत्रों में महारत हासिल कर ली है उन्होंने। 11 नंबर के जर्सी में विघ्नेश भट्ट, प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, ये बड़े मायने रखते हैं। कप्तान और गेंदबाज इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि जिस लाइन और लेंथ में वो गेंदबाजी करते हैं उसके अनुकूल अगर क्षेत्र रक्षण रहेगा तो बात बनेगी। और इसी योजना के साथ विघ्नेश भट्ट थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि फील्डिंग में कोई कमी तो कसर तो नहीं रह गई। विघ्नेश भट्ट इस छोर से 11 नंबर की जर्सी में गेंद को लेकर तैयार हुए, स्ट्राइक एंड पर वसंत नया जो कि तैयार है, 8 की व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद उछाल दिया, गेंद को कैच होकर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर, 2 फील्डर गेंद के नीचे आ गए, लॉन्ग ऑफ में कैच कर लिए गए। 1 विकेट विघ्नेश भट्ट के खाते में। आज 50 भी रन बनाए, वो हजम नहीं हुआ कि एक शानदार विकेट उन्होंने अर्जित कर लिया और इस कैच के साथ ही विकेटों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 2 पर। विकेट की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है। शानदार कैच के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। थोड़ा सा बाहर निकलकर गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ उछाला, ज्यादा ऊंची गई गेंद हवा में, फील्डर लॉन्ग ऑन से आ गए, लॉन्ग ऑफ पर आ गए, दोनों ने मिलकर कैच को लपकने का प्रयास किया। पंचम ने बहुत खूबसूरती के साथ, युवा खिलाड़ी हैं, बहुत शानदार कैच उन्होंने लपक लिया और विघ्नेश के खाते में 1 विकेट जो कि आ चुका है, माफ कीजिएगा। इस छोर से विघ्नेश भट्ट गेंद को लेकर तैयार है। इस श्रृंखला में विघ्नेश भट्ट कितना करेंगे देखने वाली बात होगी। पाइस सेल्स की तरफ से शानदार सुजुकी आप देख रहे हैं, डिस्प्ले रखा गया है। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार उस खिलाड़ी को यह सुजुकी दिया जाएगा। तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि हकदार बनते हैं, लेकिन इसमें एक कंपटीशन रहेगा कि कौन ज्यादा बेहतर है, उसको ये पाइस सेल्स की तरफ से सुजुकी मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया जाएगा। इस छोर से विघ्नेश भट्ट की गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, अतिरिक्त उछाल था, ऑफ स्टंप के बाहर, पीछे हटे, थोड़ा सा शरीर को दूर ढकेल दिया, कट करने का प्रयास किया, बच गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, गिल्लियां उड़ा दी, लेकिन बैट्समैन सुरक्षित है। विकेटों के पीछे विकेटों के पीछे शरत जो कि मौजूद है। इस पिच, इस छोर से अगली गेंद विघ्नेश भट्ट की गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड हो सकती है। जी हां, कार्तिक जी ने कहा कि वाइड है और वाइड के इस रन के साथ रन बढ़कर 47 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। तो दर्शकों से उनकी जानकारी के लिए बता दें कि वोटिंग स्टार्ट हो चुका है। आप बेखौफ बेझिझक एंजॉय कर सकते हैं, वोटिंग का मजा लूट सकते हैं। कृपया जाकर वोटिंग का मजा लूटें। इस वक्त समय वोटिंग के लिए शुरू हो चुका है। इस बीच गेंद हवा में खेल दिया, फील्डर गेंद के नीचे। आज सब कुछ सोना ही सोना है।
बिल्कुल शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट। नवीन ने शानदार तरीके से गेंद को कैच कर लिया, थोड़ा सा बाहर निकल कर आ गए बैट्समैन ने, इनसाइड आउट किया और गेंद को उछाल दिया था। नवीन ने गेंद को कैच कर लिया, दूसरे फील्डर्स को दिखा रहे हैं कि आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। शानदार कैच के साथ ही इस शानदार कैच के प्रोजेक्ट है GPL 2024 बेहतरीन कैचों में से एक, क्योंकि जब दो खिलाड़ी एक साथ आ जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, कॉल देना जरूरी है एक दूसरे को कि कौन कैच पकड़ रहा है। कैमरामैन दोबारा तैयार हुए अलग अलग दृश्यों को कैप्चर करने के लिए, और बीच बीच में दर्शकों के बीच में वो कैमरास के आंखों को ले जाते हैं, और मजा तब आ जाता है कोई अपने दुनिया में खोया रहता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि कैमरामैन उसे कैप्चर कर रहा है, और तब उनके चेहरे के हाव भाव देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि अपने दुनिया में मस्त वो रहते हैं। बहरहाल 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर विघ्नेश भट्ट के खाते में 2 विकेट्स आ चुके हैं। एक और विकेटों की तलाश में, एक विकेट की तलाश में वो तैयार हुए। लोकेश स्ट्राइकर पर बहुत अच्छी गेंद थी, बच गए बैट्समैन बिल्कुल स्टंप्स के सीधे, लेकिन बल्ले से लगकर गई थी, और इस वजह से विघ्नेश ने दोनों हाथों को सर पर रखा कि अगर थोड़ा सा बल्ला नहीं लगता तो अंपायर की नजरों में दोषी पाए जाते। इस वजह से विघ्नेश ने अपील नहीं किया, क्योंकि अंपायर भी जानते हैं कि गेंद बल्ले से लगी थी, वरना बिल्कुल जिस तरह से कहते हैं कि प्लम इन फ्रंट ऑफ विकेट जैसे कहते हैं, स्टंप्स के सामने उनका पैर था, जिसकी वजह से अगर बल्ला नहीं लगता तो खतरनाक हो सकता था। 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर इस छोर से विघ्नेश भट्ट की गेंद, फजल रन से यह गेंद पलट कर गेंद को खेल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक है, लेकिन अभी भी चौका नहीं मिलता है। 1 रन चुराने का अवसर मिला बालकृष्ण को, वो बढ़कर पहुंच चुके हैं 10 पर। स्विच हिट किया था, बहुत अच्छा स्ट्रोक, फ्लैट शॉट था, दोनों फील्डरों के बीच में से निकालने का प्रयास, और इस स्ट्रोक के लिए उनको सिर्फ 1 रन लेने का अवसर प्राप्त हुआ, दौड़कर उन्होंने पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ ही कुल योग अब बढ़कर 49 पर 49 for 3। विघ्नेश भट्ट की अगली गेंद, आखिरी गेंद को लेकर वो तैयार हुए, उनके सामने लोकेश भाई स्ट्राइक एंड पर है। ओद विकेट फजल नैन से ऑफ स्टंप के बाद थोड़ा सा बल्ले को लगा दिया, और सिरा लेकर गई थी शरद के पास विकेटों के पीछे। विघ्नेश झुककर घुटनों, आक्रमण के लिए दूर वाले छोर से आर्च फार्मा एंड से एक और गेंदबाज का, इस बार उछाल दिया गेंद को, क्या छो सकता है? नहीं जी नहीं, गेंद दूर गई हवा में तैरते हुए, दर्शक दीर्घाव में 6 रनों के लिए। 55। एक विषय आपको बता दें, 55 रन बन चुके हैं, 74 रनों का लक्ष्य है, 74 का टारगेट है। शरद हिसाब लगाने में बड़े माहिर हैं, और तो अंदाजा लगाइए 55 रन बन चुके हैं, 74 का लक्ष्य है, तो यानी कि अभी और 19 मोर रन्स रिक्वायर्ड, 19 रनों की जरूरत है। 11 बॉल्स टू गो। और छोर से सात्विक आक्रमण पर तैयार, आर्च फॉरमैन से उनकी गेंद, बालकृष्ण को उन्होंने धीरे से गेंद को कट कर दिया, नॉन स्ट्राइक की दिशा में थ्रो हुआ, लेकिन गेंदबाज सात्विक बहुत आगे निकल गए थे फॉलो थ्रू में, जिसकी वजह से ये रनआउट का मौका नहीं बना, और 1 रन बालकृष्ण ने पूरा कर लिया। 17 के व्यक्तिगत योग पर बालकृष्ण बढ़कर पहुंच चुके, कुल रन संख्या 56 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। रनों और गेंदों के बीच में एक फासला कभी कम कभी ज्यादा होता हुआ अब तक 46 छक्के चौके और 69 छक्के लग चुके हैं, और इस बार कैच कर लिया गया। क्या कमाल का कैच है, अद्भुत है, अद्भुतम, बिल्कुल अनोखा कैच, शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन, और इस बेहतरीन कैच के प्रोजेक्ट है GPL 2024। 56 का कुल योग, चौथा विकेट गिरा। दर्शकों के चेहरे में हल्की से मुस्कान, वो जानते हैं कि कैमरामैन उनकी तरफ आ चुके हैं। ये गेंद रिप्ले में अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गेंद की गई थी, उंगलियों के बीच में फंसाकर गेंद को, लगभग ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, और धीरे से गेंद को हालांकि तेजी के साथ कट करना चाहते थे, बल्ले का सिरा लेकर गई गेंद, मुहिम से स्पर्श लेकर, और विकेट कीपर ने मानो शरद ने हाथ में कुछ फेविकॉल चिपका लिया हो, आकर गेंद चिपक गई। बैट्समैन को चलता किया उन्होंने शानदार कैच के साथ ही,
तो एक और विकेट का पतन हो चुका है। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद, अगर छोड़ देते तो भी शायद बात बनती, लेकिन उसको कट करने का उनका प्रयास था। इस प्रयास में बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर के हाथों में जाकर चिपक गई। तो इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन। बालसी स्मैशर्स 74 रनों का पीछा कर रहा है। 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 56 for 4। इक्वेशन आपको बता दें, 9 balls to go, 18 runs to get, 18 रनों की दरकार है। सात्विक दौड़ना शुरू कर चुके हैं। उनकी गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, टिप्पा खाने के बाद उछाल था, उस गेंद को ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया बैट्समैन ने, और प्रताप इस दौड़ को पूरा कर चुके हैं। 1 रन से उन्होंने अपना खाता खोल लिया। रन बढ़कर 57 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी 17 रनों की जरूरत है, और संक्षेप में अगर कहा जाए तो 3 छक्के बन सकते हैं, बात बना ली जा सकती है, लेकिन क्या ऐसा अवसर सात्विक देंगे? सात्विक उच्च छोर से, आर्च बैनर छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। आर्च एंड से, आर्च फार्मा एंड से गेंद को लेकर तैयार। उनकी गेंद इस ओवर की बालकृष्ण के लिए गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, और शायद बल्ले से लगी थी, और इस वजह से अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया, वरना राघु ब्रह्मावर जी बिल्कुल तत्पर, तैयार, हमेशा चुस्त और फुर्तीले रहते हैं। बड़ी पैनी निगाह से देखते हैं। गेंद बल्ले का सिरा लेकर गई थी, शरद ने शायद एक कैच छोड़ दिया, उनके हाथ से गेंद छूट गई है, और आसान नहीं होता है गेंद लेग स्टंप के बाहर जब अचानक आ जाती है उसको कैच करना। बैट्समैन थोड़ा सा बच गए, और रन 57 पर 4 विकेटों के नुकसान पर सात्विक एक और तरकश से तीर को निकालकर छोड़ने के लिए तैयार हुए। आर्च फार्मा एंड से उनकी गेंद बालकृष्ण के लिए, और विकेट, ये गेंद हवा में, गेंद को खेल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे। क्या इस गेंद को कैच किया जा सकता है? जी नहीं, फील्डर काफी वाइड खड़े थे, जब तक वो दौड़कर गेंद को कैच करने का प्रयास करते हैं उनके हाथ से गेंद छूट गई। 2 रन पूरे कर लिए गए। इन दो रनों के साथ ही ये ओवर समाप्त हो चुका है। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी सात्विक की गेंद, और उस गेंद को ऑन साइड पर घुमाकर खेलना चाहते थे। गेंद फील्डर की दिशा में, हालांकि फील्डर थोड़ा वाइड खड़े थे, कवर से दौड़कर जब तक वो एक्स्ट्रा कवर से दौड़कर जब तक वो प्रयास करते, गेंद उनके थोड़ा सा पीछे गिरी और कैच करने वो असफल हो गए। 15 रनों की जरूरत है, 6 गेंदें शेष बची हैं। 6 balls to go and 15 runs to get। 15 रन चाहिए, 6 गेंदें शेष बची हैं। इस वक्त वालालंग के फाइटर्स मुल्की के सारे फील्डर्स एकत्रित होकर मंत्रणा कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि उनको क्या करना होगा इस परिस्थिति में। 15 रन चाहिए, एक भी आक्रामक स्ट्रोक्स अगर लग गया तो परिस्थितियां बदल सकती है। इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण समय है इस वक्त उनके लिए कि कौन सा गेंदबाज आक्रमण पर लाना चाहिए और किस लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदबाजी करेगा, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि 15 रन चाहिए। आखिरी ओवर में एक छक्का भी लगा तो परिस्थितियां बदल सकती है, फिर 5 गेंदों में 9 रन बचे रहते हैं, और इस वजह से इस वक्त गेंदबाजी के लिए इस छोर से आक्रमण पर पंचम भट्ट आ चुके हैं, और युवा खिलाड़ी हैं, अनुभव की कमी जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर प्रतिभाशाली गेंदबाज है, इस वजह से कप्तान ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है। स्ट्राइक एंड पर प्रताप आ चुके हैं, क्या प्रताप अपने टीम की लाज को बचा पाएंगे? इस छोर से गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, पलटकर परब प्रताप ने गेंद को खेलने का प्रयास किया और मिस कर गए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अगर इस गेंद को नेचुरल स्टाइल में खेलने के प्रयास में जाने देते तो वाइड करार दे सकते थे अंपायर, लेकिन पलटकर खेलने की वजह से मिस कर गए। गेंद को लॉफ्ट किया, फील्डर वहां पर मौजूद है, सिर्फ 1 रन लेने का मौका, दौड़कर पूरा कर लिया 1 रन। इस एक के साथ अब और 14 रनों की जरूरत है। बहुत अच्छा मौका था प्रताप के पास कि उस गेंद को अगर वो नेचुरल स्टाइल में खेलते या फिर जाने भी देते तो अंपायर कार्तिक उस गेंद को वाइड करार दे सकते थे, लेकिन जैसे ही पलटकर रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, अंपायर के कान खड़े हो गए, आंख उनके खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि ये गेंद बिल्कुल लीगल है। 60 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 14 रनों की दरकार। इस छोर से पंचम का आक्रमण, गेंद को पुल करने का प्रयास, जी हां, स्विच हिट करना चाहते थे, पलटकर सिर्फ 1 रन लेने का अवसर है। दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े और बिल्कुल सुसाइड कहना चाहिए, क्योंकि
दौड़कर दूसरा रन लेने के लिए मजबूर कर रहे थे स्ट्राइक एंड के बैट्समैन को, और इस प्रयास में बैट्समैन वहीं पर रह गए। एक बैट्समैन तो स्ट्राइक एंड पर ही रह गया और एक और विकेट जो कि गिर चुका है। 60 रन को मिलाकर 4 विकेटों के नुकसान पर 60 for 5। अभी भी 3 गेंदें शेष बची हैं। 13 रनों की दरकार है। 13 रन टू गेट इन 3 बॉल्स। क्या होगा देखने वाली बात होगी। एक छक्का भी अगर लगता है तो रोमांच आ सकता है इस मैच में, मैं समझता हूं। पंचम भट्ट क्या ऐसा अवसर देंगे। अनुभव ज्यादा नहीं है लेकिन वो उत्साह, वो जुनून देखने को मिल रहा है। पंचम बड़ी योजना के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने वाले छोर पर अतुल इस बार पलटकर खेलना चाहते थे, मिस कर गए और अतुल ने फिर वही गलती को दोहराया। अगर वो नेचुरल स्टाइल में खेलते तो बात बन सकती थी, वाइड हो सकती थी, लेकिन मिस कर गए। वो जानते हैं कि हवा की दिशा उस तरफ जा रही है, इस वजह से वो पलटकर खेलना चाहते हैं। इस बार वाइड घोषित किया अंपायर ने और आखिरकार पंचम के इस गेंद को पहचान लिया। प्रताप ने, माफ कीजिएगा, और प्रताप ने उस गेंद को जाने दिया और अंपायर ने कहा कि जी हां वाइड घोषित किया जाता है। प्रताप स्ट्राइक एंड पर इस बार उछाल दिया गेंद को, हवा में होगा है, जी हां कैच हो सकता है। फील्डर के हाथ से गेंद छूट गई, लेकिन दूसरा रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास बन सकता है। पहला मौका था कि फील्डर के हाथ से गेंद छूट गई डीप में, लेकिन कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है क्योंकि बैट्समैन सिर्फ 2 रन, अगर छक्का निकलता तो शायद परेशानियों का सबब बनता। 2 रन के साथ अब 10 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद शेष बचा हुआ है, पंचम की गेंद, और पलटकर गेंद को स्विच हिट किया, हवा में तैरती हुई गेंद गई 6 रनों के लिए। अगर पहले जाता तो शायद कुछ परिस्थितियां और होती। अंपायर कार्तिक जी ने संकेत किया कि 6 रन इस जबरदस्त छक्के के प्रोजेक्ट थे जीपीएल 2024, लेकिन इस मैच को वोलेलंग के फाइटर्स ने शानदार तरीके से लगभग 3 रनों से जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, मैनी कंग्रेचुलेशंस। क्या शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण किया गया है वोलेलंग के फाइटर्स मुल्की की तरफ से। मालसी स्मैशर्स जो कि थोड़ा सा रह गए, ये छक्का अगर पहले लगता, 1-2 गेंद पहले, तो शायद परिस्थितियां कुछ और हो जाती, रोमांच और बढ़ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरी गेंद पर जो छक्का लगाया, बहुत खूबसूरती के साथ स्विच हिट किया था, उस छक्के के साथ ये मैच समाप्त हुआ। और अब समय है प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार देने का। तो आइए इस वक्त प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार देने का समय है। आयोजनकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, थोड़ा सा हमारे अतिथि हैं तो उनसे अनुरोध करें कि वो बड़ा अलग अलग विज्ञापन का जो बैनर लगा हुआ है वहां पर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार वो प्रदान करें। और इस मैच में चमकने वाला, जगमगाते वाला एक ऐसा जाबाज खिलाड़ी जिसको कहते हैं, कहें या न कहें, विघ्नेश भट्ट। क्या कमाल की बल्लेबाजी, अर्धशतक उन्होंने बनाया, 56 रन बनाए, रनों की बौछार की, चौकों और छक्कों की, और 2 शानदार विकेट उन्होंने अर्जित कर लिए हैं। उनको प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। तो विघ्नेश भट्ट जी से अनुरोध है, कृपया वो कमेंटेटर्स बॉक्स के बगल में जो बड़ा मंच है वहां पर आए और इस शानदार प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार को स्वीकार करें। तो आइए नया ताजा मैच जो कि शुरू होने जा रहा है और अब विवरण को, भाषा को बदलने का समय। माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनाने के लिए कन्नड़ में नयन जी से अनुरोध करूंगा कि वो जिम्मेदारी को संभाले। बहुत बहुत स्वागत है।
ಹಲೋ, ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವರ್ಸಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಎರಡು ತಂಡದ 12th ಪ್ಲೇಯರ್ ಅರ್ಥಾತ್ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಜೊತೆಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ 12th ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 12th ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಸತತ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಂಗುರಂಗಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಾಕರ್ಷಣೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸವ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗ ಏರ್ಪಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವರ್ಸಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಡುವೆ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ 12th ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ 12th ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿದ್ರೆ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನಂದೀಶ್, ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದ್ಯುಮ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ 30 yards ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೆಲುವು ಸೋಲುಗಳು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಫಲ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿದ್ದಂತಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಯವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 2 ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು 30 yards ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚವಿಭಾಗೀಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಬೌಲರ್. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. LBಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನವಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಯವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಕಾರಣ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಆರಂಭಿಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ GPL ನಂತ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳ ಹರಸಾಹಸದಿಂದಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ನೇರ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದು 6 ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಹಾಗೂ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಆದಿತ್ಯ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಸದ್ಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸುಹಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ನೇರ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು 9 ಅಂಕಗಳು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಹಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಸದ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನೇರ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೊಳಗಾದ್ರು. ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಂತ ಅಥವಾ ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇರ ಭಾರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಕಾರಣ. ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಆಟಗಾರನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸುಹಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೇವಲ 2 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೋಚ್ಛಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಹಾನ್. ವೈಭವ್ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಭವ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಳಿಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೌಹಾನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎರಡು ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಟು ರಕ್ಷಕನ ತಪ್ಪು, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೈಜಾರಿ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ. ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 13 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಬೇಗಿ ಪ್ರಹಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಕಾಕತಾಳಿ ಎಂಬಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದೀಶ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 19ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 19 ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಆದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ನೂತನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಕೂಡ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 3ನೇ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನ ತುಂಬಾ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಬಳಿಕ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನ 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ವೈಭವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎಡಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಭವ್ ಈ ಬಾರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡಾನ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಡಾನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ಕಳೆದ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಸಿಡಿಸಿದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ತಾನೋರ್ವ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ 3ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ. ಇವರು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಂಡನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಿಂಗಲ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 22ರ ಗಳಿಕೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ತಂದುಕೊಡಿದ 3ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ದಂಡ ತೆರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು, ಕಾರಣ
ಒಂದು ಇಂಚು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಅಂತೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, 2 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈಭವ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 24ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಆದರೆ ತನ್ನಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಬೇಸರವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ವೈಭವ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿತ್ತು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ, ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಮುಂದೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆದ ಬಾಕಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ 3rd ಓವರ್. 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಂದೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸಿದಂತ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 25. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 26 ಅಂಕಗಳನ್ನು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಆದಿತ್ಯ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 26 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನಂತೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸವಾಲಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ನೇರ ನಂದೀಶ್ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂದೀಶ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ. ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಷರಶಃ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ಈತನ ದಂಡಿನಿಂದ ಬಂದಂತ 2ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ನೇರ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಗಿ ಪ್ರಹಾರ, ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ. ಒಂದು ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಆದಿತ್ಯನ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ನಂದೀಶ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಾಗಿ ತಂಡವಂತೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೇರ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಆನ್ 38, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭಿಕ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 39 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಂದೀಶ್ ಎದುರಿಸಿದ 9 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 23 ಅಂಕಗಳನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಸದ್ಯ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಭವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಂದೀಶ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೇ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40, ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 40. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿದು. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಂತೂ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸ್ಲಿಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 41.
ಸಾರಿ, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ 41 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ವಿಘ್ನೇಶನ್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತ, ಸತತ 2 ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಿದಂತ ನಂದೀಶ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೌಲರ್ಸ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆರಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ 1 ಅಂಕ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭಿಕ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 42 ಅಂಕಗಳನ್ನು. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4th ಓವರ್, ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ moves on 42, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ. Thank you, Ryan. 3 more overs are remaining in the innings of Kodial United Sports Club now. Lakshmish Baliga is the new bowler. And he's out. Lakshmish Baliga kept that ball outside the off stump, and batter wanted to play that shot to the offside region, but the ball takes the outer edge of the bat and it has gone directly to the wicketkeeper. Wicketkeeper caught it easily. So wicket number 2 has fallen down here for team Kodial United Sports Club at the score of 42 runs. Lakshmish Baliga is a very experienced bowler of Jaika Strikers. He has played plenty of GSB level cricket tournaments. He's called Malinga. With a short run up, Lakshmisha bowls, and he can change the pace of the balls. He can change the direction of the ball. Very, very experienced bowler. So 41 for the loss of 2 wickets. 2 wickets after 42 for the loss of 2 wickets after 4.1 over. Very successful bowler. Lakshmisha has given the breakthrough what they were looking for. Nandish is still there at the non-strikers end, batting on 24 runs of 10 balls. Now Raghavendra is the new man in. Right-handed batter. That's almost a Yorker delivery. Loud appeal there. Loud shout by Lakshmisha. But umpire Sri Tiket says not out, because I think the ball was missing the stumps. Okay, it is from the bat. So they get one more run here. Score moves on to 43 here. 43 with 2 wickets down. This is a match between Jaika Strikers Moodbidri versus Kodial United Sports Club. Third round match between these two teams. Jaika Strikers have lost both the matches and they are playing the third match from Pool A, whereas Kodial United Sports Club, their first match ended up with the tie, so they have got 1 point in their points table. We come back to Lakshmisha now. Once again, the ball takes the thick edge of the bat and wicketkeeper caught it beautifully. Wicket number 3 has fallen down for Kodial United Sports Club. Lakshmisha strikes again. Second wicket for Lakshmisha in this over. Great comeback by Jaika Strikers Moodbidri. Jaika Strikers Moodbidri, after winning the toss, they had decided to field first here, and in reply to that, Kodial United Sports Club have scored 42 runs after losing 3 wickets in 4.3 overs. It's a 7 overs match. So terrific atmosphere here today at Sahyadri College ground. We can expect a huge crowd as the day progresses. Tomorrow being the final day of this tournament,
we can expect a jam-packed stadium here in Sahyadri venue. The final match of the tournament will be played tomorrow night. RK has come out to the center. Radha Krishna is all set to face. He will be facing Lakshmisha now. Crashing down, drive to the offside. Long chase for the fielder. Will they get 2 run? They come back for the second. Raghavendra was very quick. So RK is straight away off the mark. He opened his account. And their score now moves on to 45. Lakshmisha to RK. Played the shot into the vacant region. Nicely at mid-on. The fielder from the long-off region, Vignesh, comes across and collects the ball. But before the fielder collects the ball, there is ample time for both these two batters to cross over for an easy single here. Radha Krishna gets a single. His individual score moves on to 3. That's again a very fine delivery there by Lakshmisha. That ball beats not only the batsman but also the wicket keeper. Meanwhile, the fielder from the short third man region collects the ball. That's the end of the over. Very good over there by Lakshmisha. He was able to pick up 2 important wickets in that over. So after the completion of 5 overs, Kodiyal United Sports Club are now 47 for the loss of 3 wickets. They are having a current run rate of exactly 9.4 per over. And the projected score, it shows 65. That will be a respectable target for their team. They don't want to lose this match. They want to bounce back because they have got 1 point in their points table because they had played their first match yesterday against the UK Ekadash Saraswat, and in that nail-biting finish match, that match got ended up with the tie. So they have 1 point, whereas Jaika Strikers have lost both the matches so far. Sohan Kamath will bowl the next over. And it's clean ball. That is the beauty of the delivery. Fantastic, perfect delivery there by Sohan. Batter had no clue about that ball. Raghavendra wanted to go for a big hit. He wanted to play the shot onto the onside, but misses the line of the ball, and the ball hitting the top of the off stump. So Raghavendra departs. Wickets are now falling like pack of cards check. for Kodiyal GPL United Utsav Sports Club. 2024 अंतू विंच पॅरा सेलिंग स्टार्ट झालेलं असं तुम्ही बोटिंग झोनाला चमकाल्यार एन्जॉय करीता आणि काही कोणी पॅरासेलिंग करनी म्हणजलारी बोटिंग झोनाला वचायची थई एन्जॉय करीत. So 3 teams have already qualified for the quarter-final round. From Pool A, Mumbai Paltans played 2 matches and they have won both the matches. Auburn Diamonds. Meanwhile, batter goes for a big one, and Vignesh, the man standing at deep mid-wicket region, makes no mistake, caught it beautifully. So 1 more wicket has gone down. Kodiyal United Sports Club are losing their wickets in the regular intervals. One after another, they have been losing the wickets. Score still remains on 47. Over number 6 is in progress. So from Group B, Auburn Diamonds have played 2 matches and they have won both the matches. Whereas in Group C, Kodiyal Super Kings played 2 matches and they have got 3 points. Udupi Blasters played 2 matches. They have won 1 match. They have got 2 points. Similarly, Rising Stars Mangalore also got 2 points. And in Group D, Valalanke Fighters Mulki is in a topmost position. They played 2 matches and they have won both the matches. Ball is in the hands of the bowler Sohan, and he's going back to the bowling mark here. From the Arch Pharma Labs end, he's going to bowl the 3rd ball. I think he's on hat-trick here.
So Sohan is on hat trick. Can he pick up the hat trick wicket here? Well, that's a very fine delivery there. Ball hitting the legs of the batsman. There was an appeal by the bowler, but they were just trying to put some pressure on the umpire here. No damage done. Leg bye has been signaled by the umpire. Score slowly moves up to 48 now. Crashed away nicely to the covers. Ball is going to the gully region. The fielder from the short third man region comes across and collects the ball. Meanwhile, Radhakrishna picks up a single. Single to Radhakrishna. His individual score now moves on to 4. And Nagesh is yet to open his account. Runs on the scoreboard is 49. Played the shot all around the carpet. There is a protection. Vignesh is very quick. Collects it and throws it back to the bowler's end. Meanwhile, these two batters satisfies with only a single here, not more than that. That brings 50 for Kodial United Sports Club. In the 6th over of the innings, after losing 5 wickets, they have scored 50 runs. And that's a very, very fine delivery. Batter Radhakrishna had no clue about that ball. I think the ball has already hit the stumps, but the bails are not off. Very lucky indeed. So no damage done. Score moves up to 51 after 6 overs. Last over to go now. 8.5 per over is the current run rate for Team Kodial United Sports Club. Let's see how many more runs they will be able to score in the remaining 6 balls. We can see a beautiful, attractive Suzuki Avenis bike on the left side of commentary box. The man of the series player will be awarded with the attractive Avenis bike two-wheeler, which is being sponsored by Pi Sales of Suzuki. 16 different teams are participating in this particular tournament, and winners of this tournament will fetch a cash prize with an attractive trophy. At the same time, the runners-up team will also get a cash prize along with the runner-up trophy. And not only this, along with this, there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series, and man of the match. So from the Puzalana end, it's going to be Venkatesh to bowl the final over. And meanwhile, they have taken a single here in the first ball of the last over. Score moves up to 52 now. Venkatesh will bowl to Nagesh with a short run up in the right arm round the wicket fashion. Well, Nagesh goes for a big one. Ball is in the air. It could be out as the fielder is. Oh my goodness. This is very, very disappointment for there. The ball was quite high in the air, but Lakshmi Shah couldn't keep his eyes on the ball. Not a good judgment. So he has dropped down that catch. Fortunately, the batsman survives. This is good improvisation in the bowling by the bowler. This is the kind of bowling we need in the limited overs matches. That was a flighted delivery, and uneven bounce there. Batsman misses it completely. The ball defrauds the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage. Once again, ball is in the air. There is a fielder. Can he take the catch? My goodness, the ball has slipped away from his hands. He has put down that catch. In fact, it was very hard because he had to cover a lot of ground. He was standing in the deep long on, tried his best, but finally the ball has slipped away from his hands. So big reprieve for the batsman here. Once again, the ball is in the air. And what is happening out here? 3 catches have been dropped. And I think all these 3 catches were directly going to the throats of the fielder. This is very, very disappointment for
Jaika Strikers of Mudabidri. So here is the last delivery of the final over of the innings now. Venkatesh to Nagesh. That ball kept very low. Venkatesh wanted to go for a sweep shot, but misses the line. Wicket keeper also was not able to collect the ball. The fielder who was standing behind the wicket keeper was able to stop that ball. Meanwhile, they get a run in here in the form of leg by. That's the end of the innings of Kodial United Sports Club. So after the completion of 7 overs, Kodial United Sports Club have scored 59 runs. So 60 is the victory target for team Jaika Strikers Mudabidri to win this match in 7 overs. In 7 overs, Jaika Strikers Mudabidri have to score 60 runs. They have got a good batting lineup, especially they have a very strong man, the proudest player of their side, Vignesh Shannai Karkala, who is leading from the front, the icon player, and also they have got one more hard hitter, Shivanand. Archit is his nickname. So Shivanand is also a good timer of the ball. So lot of responsibility on these two batters. So we'll have to wait and see whether Jaika Strikers will be able to chase this target of 60 runs. And before the innings of Jaika Strikers starts, I'm going to hand over the microphone to Mr. Ajay Rajji to proceed the further commentary in Hindi language. कृष्ण को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि कौन सी लाइन और लेंथ होनी चाहिए। गार्ड बदलकर राधा कृष्णा ओवर द विकेट शायद वो गेंदबाजी करेंगे। राधा कृष्णा की गेंद राउंड विकेट करने में आपके दिया, दोबारा गेंद को उछाल दिया है। इस ओवर का ये तीसरा छक्का है। हैट्रिक सिक्सेस लगाए हैं, लगातार 3 छक्का जड़ने वाला ये बैट्समैन प्रसाद 26 रन के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर उसको पुल किया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए निकल गई। बड़े खर्चीले महंगे साबित हो रहे राधा कृष्ण। 34 रन से 1 विकेट के नुकसान पर अब रास्ता आसान बन सकता है। इस छोर से राधा कृष्णा की अगली गेंद। अभी 2 गेंदें शेष बची हैं इस ओवर में। प्रसाद स्ट्राइक एंड पर राउंड विकेट गेंद थी और प्रसाद शायद थोड़ा सा एकाग्रित नहीं हो पाए, दोबारा पीछे हट गए। अंपायर ने भी साथ दिया और कहा कि दोबारा से शुरू कीजिएगा। इस छोर से अगली गेंद, एक और गेंद है, गेंद हवा में तैरती हुई बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर पंछी की तरह उड़ती हुई जा रही है। 6 रनों के लिए जीपीएल का जबरदस्त सिक्सर। क्या कहा जा सकता है, प्रसाद को भला कौन रोकेगा। 32 रन वो बना चुके हैं अपने खाते में। 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया। जयकर स्ट्राइकर्स जीत की और अग्रसर होता हुआ क्या कमाल के स्ट्रोक्स लगाए जा रहे हैं, बेखौफ बेझिझक और बिल्कुल इतने विश्वास के साथ कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निश्चित तौर पर जाएगी। राधा कृष्ण आखिरी गेंद को लेकर तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी और आखिरकार बदला ले ही लिया, बैट्समैन बोल्ड हो गए। कमाल की गेंद थी ये गेंद, राधा कृष्णा की पैरों के बीच में से जाकर घूमती हुई स्टंप्स पर जाकर गिरी, गिल्लियां उड़ गई और आखिरकार ईंट का जवाब पत्थर से जिसे कहते हैं, उस अंदाज में राधा कृष्णा ने इस विकेट को प्राप्त कर लिया और बैट्समैन को चलता कर दिया। बहुत अच्छी गेंद थी, आखिरकार बैट्समैन को बीट कर ही दिया और विकेट प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार 3 ओवर के समाप्ति पर 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर का यह मैच है। अभी भी 4 ओवर शेष बचे हुए हैं। तो आइए उस बोटिंग जोन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करें। तो किरण जी ने आपको बताया पैरासेलिंग मौजूद है वहां पर। मुझे लगता है कि लगभग 1000 रुपए देने होंगे और आप उसका मजा लुफ्त उठा सकते हैं। उसके अलावा ऊंट की सवारी, घुड़सवारी भी कर सकते हैं। सारी उपलब्धियां मौजूद हैं।
तो आगे अगले मैच के लिए आभरण डायमंड्स और इरवतुर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कृपया वो टॉस के लिए जल्दी आए। 24 गेंदें बची हैं, 20 रनों की दरकार है। 20 रन टू गेट इन 24 बॉल्स। शिवानंद ने जो आज बल्लेबाजी की है, मैं समझता हूं कि पूरा दारोमदार पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है। पूरा दारोमदार उन पर था। बहुत आकर्षक लाजवाब स्ट्रोक्स उन्होंने लगाए। दूर वाले छोर से रामकृष्ण गेंद को लेकर तैयार। वो विकेट, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और घुमाकर गेंद को खेल दिया। फील्डर आ चुके, गेंद के ऊपर 1 रन चुरा चुके हैं। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं लेकिन मना किया शिवानंद ने। सिर्फ 1 रन से खुश होना पड़ेगा। और रामकृष्ण बैटे बॉय जो कि इस वक्त दोबारा गेंद को लेकर तैयार होना है, उनको सतर्क होना पड़ेगा कि जिस तरह से शिवानंद ने 1 रन चुरा लिया। विघ्नेश स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। वो चौथी ये गेंद रामकृष्ण की आज फरमाइन से विकेट इस बार धीरे से पुश पर कर दिया बैट्समैन ने, आने दिया, भले से टकराने दिया। फॉरवर्ड डिफेंस टू डिफेंसिव स्ट्रोक के अंदाज में गेंद को खेल दिया। Request KMC physiotherapist to please come near the stage. KMC physios, I request you to please come near the stage. तो रामकृष्ण की गेंद शिवानंद के लिए और बहुत अच्छी गेंद। क्या जादूगरी, क्या चमत्कारी गेंद थी। बैट्समैन को ललचा देने वाली गेंद, मानो कि वो गेंद को समझे कि फुल टॉस है या फिर हाफ वाली दुविधा में पड़ गए और उछालने के प्रयास में बीट हो गए। रामकृष्ण की गेंद शॉट ऑफ लेंथ ऑन साइड पर पुल कर दिया। दोनों फील्डरों के बीच में से निकालने का प्रयास, स्क्वायर लेग डीप में बैकवर्ड में गई, जब तक फील्डर गेंद को समेट पाते। शिवानंद ने 1 रन को बटोर लिया। वो बढ़कर पहुंच चुके हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थे, बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन देने का अवसर नहीं। तो अब प्रयास यही किया जा रहा है कोडियल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से रनों पर अंकुश लगाए। रामकृष्ण को उन्होंने आक्रमण पर लगाया है। रामकृष्ण थोड़े किफायती साबित हो रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी उनकी चल रही है। लगभग 2 गेंदें डॉट में 3 मात्र रन अब तक वो खर्च कर चुके हैं। ये गेंद ऑन साइड पर उछालने का प्रयास, पिछला पैर टच किया, बैकफुट पर मिस कर गए। इस बड़े बैकलिफ्ट के साथ स्विंग करने के प्रयास में विकेट कीपर ने गेंद को संभाल दिया है। ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर्स समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर अभी इक्वेशन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 17 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें शेष बची हैं। 17 रन टू गेट इन 18 बॉल्स। 17 रनों की जरूरत, 18 गेंदें शेष बची हैं। और जयकर स्ट्राइकर्स अब ऐसा लगता है कि बात बना सकते हैं, क्योंकि 18 गेंद 17 रन, 1 गेंद अधिक शेष बचा हुआ है। तो सिंगल्स में भी अगर रन बनाते हैं तो आसान सा लक्ष्य है, लेकिन परिस्थितियां क्या रंग बदलती है देखने वाली बात होगी। विघ्नेश ने 1 रन बनाए 3 गेंदों का सामना करते हुए। शिवानंद 3 बनाकर खेल रहे हैं 3 रन पर, जबकि 6 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है। शिवानंद स्ट्राइक एंड पर, आक्रमण पर इस छोर से फुजलोना एंड से आदित्य भट्ट आ रहे हैं। घुड़सवारी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कैमरामैन उस दृश्य को कैप्चर कर रहे हैं। आप भी इस घुड़सवारी का मजा उठा सकते हैं। और इस बीच गेंद राउंड विकेट पीछे हटे, थोड़ा सा आगे भी निकलना चाहते थे, शरीर से दूर थोड़ा इनसाइड आउट करना चाहते थे। गेंद को पंच किया, ज्यादा ताकत नहीं लगा पाए। स्ट्रोक के पीछे बदले का निचला सिरा लगकर गेंद गई। 1 रन आसानी के साथ लेने का अवसर शिवानंद के पास बढ़कर वो 4 पर पहुंच गए। राउंड विकेट ये गेंद पीछे हटते हुए गेंद को धीरे से कट भर करने का प्रयास किया। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, बच गए कि बल्ले का सिरा शायद लिया हो। बहरहाल आदित्य भट्ट की गेंद और लेग स्टंप के बाहर थी। पलट कर खेलने का प्रयास विघ्नेश का और फिर मिस कर गए। फिर कहीं ना कहीं अंपायर से अपील कर रहे थे कि इस गेंद को वो वाइड करार दें, लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि जब पलट कर खेलते हैं तो उस लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को अंपायर लीगल करार देते हैं।
ये गेंद फुल टॉस थी ऑफ स्टंप के सीध पर सीधे बल्ले का मुंह खोलते हुए धीरे से गेंद को पुश भर कर दिया कवर और पॉइंट के बीच में से गेंद को ड्राइव कर दिया। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास, इस एक के साथ रन बढ़कर 45 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में मात्र 2 रन अब तक बने हैं, 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, तो बहुत शानदार गेंदबाजी इस वक्त चलती हुई। आदित्य भट्ट की अगली गेंद, आदित्य भट्ट की ये गेंद ड्राइव कर दिया फील्डर की दिशा में, प्लेस नहीं कर पाए, कवर में फील्डर को थोड़ा सा शॉट रख दिया गया, शॉट कवर पर फील्डर मौजूद, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। 13 balls to go, 15 runs to get। एक और अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही, थोड़ा बल्ले को चला मिस कर गया। विकेट कीपर ने उत्तेजनात्मक अपील की है जिसको पुरस्कार नहीं मिला और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो 5 ओवर समाप्त हुए, 45 रन बन चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर 15 रनों की जरूरत, 12 गेंदें शेष बची हुई हैं और बहुत रोमांच की और खेल बढ़ता हुआ दूर से किस तरह से मैदान का दृश्य दिखाया जा सकता है। ये कैमरामैन के लिए स्क्रीन पर डाला गया है, वो भी इस तरह से कर सकते हैं और ड्रोन भी मौजूद हैं, जैसा आप जानते हैं दोपहर के शाम के पश्चात ड्रोन एक्शन में आ जाता है। 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर रामकृष्ण अपने कोटे का दूसरा पारी का 6वां ओवर लेकर आ रहे हैं। 3 रन उन्होंने पिछले ओवर में खर्च किए हैं। विकेट स्ट्राइकर पर उस छोर से ये गेंदबाज फार्मा एंड से रामकृष्ण की गेंद, बल्लेबाज की गेंद, आउट द विकेट। जोरदार अपील कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर ने इस अपील को बिल्कुल खारिज कर दिया। तेजी के साथ जोरदार अपील करते हुए विकेट कीपर ने कॉट बिहाइंड के लिए अपील की। रिप्ले में देखा जा सकता है कि किस तरह से गेंद निकली, उंगलियों के बीच में फंसाकर गेंद हवा में थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रही है और फ्लाइटेड गेंद थी, मिस कर गए। एक और गेंद आज फॉरवर्ड से रामकृष्ण गेंद को लेकर तैयार। इस बार फुल टॉस थी और फुल टॉस गेंद को पनिश किया बैट्समैन ने, स्क्वायर लेग के ऊपर से कोसों दूर गेंद जाकर बाहर स्टेडियम के 6 रनों के लिए जीपीएल का जबरदस्त सिक्सर। फ्लाइट ज्यादा देने के प्रयास में थोड़ा सा फुल टॉस रह गई, विघ्नेश ने बहुत खूबसूरती के साथ उछाल दिया 6 रनों के लिए। 9 रनों की जरूरत है, 10 गेंदें शेष बची हुई हैं। एक और फुल टॉस, उछाल दिया गेंद को, टिप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी, लेकिन फील्डर ने बहुत चुस्ती के साथ फुर्तीलापन दिखाया, टो पर उछलकर उस बाउंस को अंदर की तरफ ढकेल दिया, संभावित चौके को रोक लिया और बैट्समैन को सिर्फ 1 रन लेने का अवसर दिया बैट्समैन ने। इस 1 रन के साथ कुल योग बढ़ चुका है, जबकि उस छोर से रामकृष्ण की अगली गेंद, 2 विकेट। इस बार बीट कर गई बैट्समैन को, फ्लाइटेड गेंद जरूर थी लेकिन लेंथ में थोड़ा कम कर दिया, पीछे कर दिया गेंद को ताकि बैट्समैन उसे कनेक्ट न कर पाए। ऑफ स्टंप के बाहर थी, उछालने के प्रयास में बीट हो गए। 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर शिवानंद स्ट्राइक एंड पर। उनके लिए रामकृष्ण की अगली गेंद, 2 गेंदें शेष बची हैं 100 रुपए। दोबारा खेल दिया अनसाइड की दिशा में, मिड विकेट डीप में गेंद जा चुकी है, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। इस 1 रन के साथ रन 53 फॉर 2। इक्वेशन आपको बता दें, 7 गेंदों में 7 रनों की जरूरत, 7 रन टू गेट इन 7 बॉल्स। रामकृष्ण बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उस एक छक्के के अलावा अगर देखा जाए तो वो 2 विकेट। फुल टॉस थी, दोबारा पनिश कर दिया गया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए। जीएसबी प्रीमियर लीग का जबरदस्त छक्का, और रामकृष्ण अच्छा कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं कहना होगा कि फ्लाइट ज्यादा देने के प्रयास में फुल टॉस रह गई गेंद, उसका फायदा उठा लिया बैट्समैन ने और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया 6 रनों के लिए। तो अब जीत के काफी नजदीक जयकर स्ट्राइकर्स पहुंच चुका है, सिर्फ 1 रन की उनको जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए और 1 रन 6 गेंदों में। ऊंट की सवारी आप देख सकते हैं दूर, और बच्चों के लिए किस जोन है जहां पर अलग अलग उपलब्धियां उनके लिए मनोरंजन के लिए। इस बीच आखिरी ओवर को लेकर वैभव आक्रमण पर आ रहे हैं फजलोना एंड से।
मुझे लगता है शाम हो चुकी है, चाय का अगर बंदोबस्त हो जाए तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि आंख लग रही है हमारे स्कोरर और कमेंटेटर्स की। गर्मा गर्म चाय हो जाए तो बात बन जाए और मैच का आनंद कुछ और हो जाएगा। 59 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। वैभव पई गेंद को लेकर 27 नंबर के जर्सी में फजल नायन से तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर शिवानंद 5 रन बना चुके हैं। 11 गेंदों का सामना करते हैं। विघ्नेश 15 रन पर 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इस छोर से ये गेंद वैभव पई की, क्या वैभव कुछ चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि 6 गेंदों में 1 रन को उनको रोकना है। इस छोर से ये गेंद राउंड विकेट ड्राइव कर दिया, लेकिन फील्डर मिडॉन में बहुत जबरदस्त क्षेत्ररक्षण का फैलाव कर दिया गया है। मिडॉन काफी नजदीक रख दिया गया है, फील्डर के पास गए, उन्होंने जल्दी जाकर गेंद को उठा लिया। एक गेंद डॉट में तब्दील हो चुका है। क्या वैभव इसे जारी रखेंगे? 1 रन की दरकार, 5 गेंदें शेष बची हैं। इस बार फुल टॉस थी, ड्राइव किया लेकिन मिस कर गए। फील्डर की दिशा में गई थी, उनके हाथ से चूक हो गई, गेंद छूट गई और बैट्समैन ने 1 रन को पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ जयकर स्ट्राइकर्स ने इस मैच को शानदार तरीके से जीत दिया है। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, कंग्रेचुलेशंस। जबकि कोरियल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब ने अच्छे खासे रन्स बनाने के बावजूद इस मैच में वो परास्त हुए, लेकिन उनको अगले मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और अब प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार देना बाकी है। तो ये समय है प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार को देने का। और 32 रन बनाने वाला एक शानदार खिलाड़ी प्रसाद जी को आमंत्रित करते हैं। कृपया प्रसाद कमेंट्री बॉक्स के बगल में जो मंच है वहां पर कृपया आइए और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार आपको दिया जाता है। आयोजनकर्ताओं से अनुरोध है कि वो हमारे अतिथियों से किसी एक को अनुरोध करें, दरख्वास्त करें कि इस प्लेयर ऑफ द पुरस्कार को वो प्रदान करें। आइए समय विवरण को बदलने का। अब मेरे साथी कमेंटेटर तो इससे पहले कि नया ताजा मैच शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनाने के लिए सुरेश भट्ट जी। We need the 12th man of both the teams, Iruvatturu Sports Club as well as Aberrant Diamonds.
GPL वॉच करतसचे सक्कड विवर्सांक वापस एक पटी वेलकम बॅक. मॅच नंबर 18 ऑफ GPL टूर्नामेंट आता चलतर आसा तशींची दोन्ही दिसाचे संच मॅच आबरण डायमंड्स वर्सेस इरुवत्तूरू स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल. टॉस विन जावन इरुवत्तूरू स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल टीमाचे हांगा बॅटिंग चूज केला. आबरण डायमंड्साच्या फिल्डर्स फिल्डिंग सेटअप करता आसा ती तशींची दोग जण ओपनर्सय ग्राउंडाक एंटर जाता आसा ती. एक हॉड एक टार्गेट सेट करचे प्लॅन करून दोग जण हांगा आयिल्ले आसा ती पळोवपाक खंयची नमुन्याचे स्टार्ट तांगेल्या टिमाक दिता ती आनी खंयची नमुन्या टार्गेट आबरण डायमंड्साक दिता ती पळोवया. ग्रुप बीचे टॉप मोस्ट पोजिशनांत आसा आबरण डायमंड्स. येदोळ ते 2 मॅच या टुर्नामेंट खेळून आता 3 मॅच तांणी खेळता आसा ती 2 मॅच तांणी विन जालेली ती. तशींची इरुवत्तूरू स्पोर्ट्स क्लब 2 मॅच खेळला बट 2 मॅच तांकां तांणी लॉस्ट जाल्ली ती. सो आतां ग्रुप बीच्या ह्या 2 टिमां मध्य 3 राउंडाच्या मॅच चलता आसा. आबरण डायमंड्स लायक एक पोजिशनां येवन पावला. खंडीत जावन क्वार्टर फायनलाक एंटर जाल्ला म्हूण येता. सो दोग जण ओपनर्स क्रिसार आसा ती. ओपनर्स जावन इरुवत्तूरू स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल तर्फेन नागेश आनी श्रीनिवास रायट हँडेड बॅटर्स. स्ट्रायकर्स नागेश. सो अंपायर ग्रीन सिग्नल मेळटस फर्स्ट ओवराचेत फर्स्ट बॉल. विवेक नायकान गेल्यार फर्स्ट बॉल लायक करून ऑफ सायडाक जेंटली पुश करून 1 रन काडला नागेशान. सो नागेशाला इंडिविज्युअल अकाउंट ओपन जातस तशींची इरुवत्तूरू स्पोर्ट्स क्लब मणिपालाचे अकाउंट ओपन जाला. विवेक नायक दोन्ही ಪಟಿಕ ಪುಜಲನ ಎಂಡ ದಕ್ಕುನು. KMC ಫಿಸಿಯೋ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ KMC ಫಿಸಿಯೋಸ್ ಟು ಕಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. फुल टॉस जावन कन्वर्ट केले ऑफ सायडा मारले फिल्डरान येवन बॉल फील्ड करचे पयस फुडें हांगा भरपूर टायम आशिल्लो बॅट्समॅनाक 1 रन काडूक. नेक्स्ट बॉल बॉल बॅटाच्या एडजा लागून सीधा विकेट कीपराल हाता गेला. विकेट कीपर अनंतान खंयचे चूक करनी छंद करून कॅच धरला. सो फर्स्ट विकेट लॉस्ट जाला हांगा ISC मणिपालाक. तांगेल्या टिमाच्या की प्लेयर नागेश आउट जावन पेविलियन वतस खाली 1 रन मात ताण काडलेले. अनफॉर्च्युनेटली फर्स्ट ओवरान तुची तांगेले विकेट हांगा पडला. 2 रनाक 1 विकेट पडला ISC मणिपाल. एक सक्सेसफुल बॉलर म्हणून येतं विवेक नायक कोटा ऑलराउंडर प्लेयर आबरण डायमंड्साचे प्राउडेस्ट प्लेयर. सुरेंद्र पै सास्ताना आगेले कॅप्टन्सीची एक टीम. ह्या पटी क्रिस आयला विश्वनाथ चंद एक शॉट ऑफ सायडात ड्राईव्ह केले. हँडसम लुकिंग कवर ड्राईव्ह म्हणून येतं बट 1 रनान संतुष्ट जावका विश्वनाथान 2 रनां खंयचे अवकाश नाशिल्ले. सो विश्वनाथाल अकाउंट ओपन जाला. वट्ट स्कोर जाल्ले 3. ह्या पटी मुखार येवन मारचे प्रयत्न केला श्रीनिवासान बट बॉल गेल्ले सीधा फिल्डराल हातांत. सो खंयचे रन मेनी डॉट बॉल जाला. लायक कोण बॉलिंग घालतस विवेक नायक कोचा. अखेरीच बॉल एक बाकी आसा सुरवे ओवराचे लास्ट बॉल. स्टियर केल्ल्या 3rd मॅनाक बॉल पॉइंट आनी गल्ली मध्य वतस. लास्ट बॉलान तूं 1 रन काडून श्रीनिवासान तागेला स्ट्रायक रिटेन केला. सो फर्स्ट ओवर कंप्लीट जाता आशिल्ले म्हणके इरुवत्तूरू स्पोर्ट्स क्लब मणिपालाचे वट्ट स्कोर 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन हांगेले प्रस्तुती आर्च फार्मा लॅब्स GPL 2024चे 2 दिसाचे संच मॅच आतां आमी पळयता आसा ती. यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड ह्या टुर्नामेंटाचे लाईव्ह टेलिकास्ट प्रसार करता आसा यूट्यूब चॅनलांत.
सो देश विदेशातून विंगड विंगड गांवांतून ह्या टुर्नामेंटाच्या प्रत्येक लाईव्ह ॲक्शन्स पळयत आसती बॉलिंगान तो अनंत आनी एक एक्सपिरियन्स बॉलर लायक एक बॉल ब्लॉकला पडल्यार बॉल श्रीनिवासान ऑन सायडाक गून मारचे प्रयत्न केला बट बॉल बॅटा मेळ्ळी सीधा बॅटराला पांया लागल्या सो खंयचे रन यांनी डॉट बॉल जाल्ला फर्स्ट बॉल इज ए डॉट बॉल वापस बॉल हाताक घेवन अनंत मागशी वता ताका बॉलिंग मार्गाक आर्च फार्मा लॅब्स एंडा दखून राईट आर्म ओवर द विकेट जावन बॉलिंग घालता अनंत क्रीसारी वेट करतस श्रीनिवास फुल टॉस जावन पडल्यार बॉल ऑन सायडा मारल्या खंयचे फिल्डर नातील जाग्या मारल्या वेकेंट रिजनाक हाजे मदीं नो बॉल म्हणून डिक्लेअर केला अंपायरान बहुशा ते बॉल बॅट्समॅनाले एबोव दी वेस्ट लेवल आशिल्ले मित्र अंपायरान हांगा नो बॉल म्हणल्या तशें 1+1 टोटली 2 रन ॲड जाल्ल्या अजोटूची हांगा फ्री हिट मेळ्ळा बॅट्समॅनाक पळोवया विश्वनाथ फ्री हिटाची एडवांटेज घेता की ना म्हणून पांया लागेल बॉल खंयचे रन यांनी लायक एरियांत स्पॉटांत बॉलिंग घालतस अनंत बॅट्समॅन कंप्लिटली बीट जालो चिके नेलार येईल बॉल पिच जाल्ली मागीर ताणें एक्सपेक्ट केल्यार तितले रेज जायनी तशें जावन खेळू जायनी विश्वनाथाक सो स्कोर रबला 6 रन 1 विकेट लॉस जाल्या आउट जाल्यार बॅट्समॅन नागेश वापस क्रिसार वेट करतस विश्वनाथ नेक्स्ट बॉल फेस करूक अनंत फ्रॉम दी आर्च फार्मा लॅब्स एंड अनंतान केल्यार बॉल उबार मारला बॉल वाऱ्यार आसा हाजे मध्ये कॅच जावं चान्स आसा कॅच आउट विश्वनाथ इज आउट एक हॉड एक शॉट मारचे प्रयत्न केलेले बट पॉवरफुल ना आशिल्लो स्ट्रोक मस्त वेळ बॉल वाऱ्यार आशिल्ले लॉंग ऑन आशिल्ले फिल्डरान खंयचे चूक करनी चंद कोण जड्ज कोण कॅच धरला अजोटूची ISC मणिपाल टीमाच्या दोन्ही विकेट पडतस विश्वनाथ इज बॅक इन द पेविलियन दोन्ही ओवर प्रगतीन तसं 22 स्पोर्ट्स क्लब 6 रन काणू तांगेले दोन इंपॉर्टंट प्लेयर्स आउट जाली ती लायक एक बॉलिंग आभरण डायमंड्स टीमाचे बॉलर्सान हांगा प्रदर्शन करता आसा ती वापस नेक्स्ट बॉल नवे बॅटराक अनंताला नेक्स्ट बॉल ह्या फाटी चंदकोर मारला लॉंग चेस फिल्डराक बॉल बाउंड्री लायनार वतस ऑलमोस्ट व्हेरी क्लोज टू दी बाउंड्री ऑफ फिल्डरान बॉल राबयला हाजे मध्ये 2 रन धांवन कंप्लीट केला सो अश्विनान चंदकोरन खंयचे फिल्डर नातील जाग्या मारल्या पॉवर प्ले ओवर जावन आशिल्ले मित्र दोन फिल्डर्स मात्र आउटसाइड दी 30 यार्ड सर्कल रावचे अवकाश आसता तशें जावन खंयचे फिल्डर्स नातील जाग्या मारनो वेकेंट रिजना मारनो 2 रन काडून ताणें तेगेले अकाउंट ओपन केलेलो आसा अश्विनान ह्या फाटी पांया लागील बॉल लावड अपील अँड आउट म्हूण म्हणला अंपायरान राघू ब्रह्मावर तागेले फिंगर रेज करून अश्विन आउट ताणें पेविलियना वचूका म्हूण म्हणला इथे म्हणजे सीधा स्टम्प्सा वता आशिल्लो बॉल गून मारचे प्रयत्न केला अश्विनान जाल्यार बॉल बॅटा येनी बॉल सीधा ताका पांया लागला अजोटूची 3 विकेट पडला एट दी स्कोर ऑफ 8 ಖಂಡಿತ एक हॉड डिसअपॉइंटमेंट म्हणत 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल टीमाक तांगेल्या टीमाचे की प्लेयर्स त्याग जणे आता बॅक इन द पेविलियन सो मस्त एक रेस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेळका जाता वरल्याल बॅटर्सान विकेट कळवून घेवचे नज विकेट दोवर घेवन गॅप तूं सिंगल्स डबल्स काणू रोटेट करका स्कोर बोर्ड मूव करका जाता वापस बॉल चिक्के वाऱ्यार आशिल्ले हाजे मध्ये रन आउट मिसअंडरस्टँडिंग दोग जण बॅटर्सा मध्ये बॉल वाऱ्यार आशिल्ले बॉल सीधा फिल्डराल हाता वता आशिल्ले बट नवे बॅट्समॅनान रन काडचे प्रयत्न केले खंडित रनाक अवकाश ना आशिल्ले नॉन स्ट्रायकरान नाक्का मागशी वच म्हणले बट ताणें क्रिसा येवन पोच फुडें हांगा रन आउट जाला तशें जावन
चारी विकेट पडतस इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल टीमाक खंडितक या एक डिझास्टर स्टार्ट म्हणून म्हणूयात. आर्च फार्मा लॅब्स GPL ट्रॉफी 2024च्या क्रिकेट टुर्नामेंट चलतस. या GSB प्रीमियर लीगाच्या 8th सीझन वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट इव्हेंट म्हणून येतं. रिचेस्ट क्रिकेट टुर्नामेंटचं यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड या टुर्नामेंटाचे ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स. प्रतिवर्ष फेब्रुवारी जो मार्च महिन्यांत कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन अन्नी या टुर्नामेंट हांगा ऑर्गनायज करता आयली ती मस्त एक लायक रितीरी चंद रितीर कोलचित आसल्या टुर्नामेंट. सो 2 ओव्हर कंप्लीट जाला हांगा इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लबाचे वोट स्कोर 8. ह्या फाटी श्रीनिवासान रिवर्स शॉट मारचे प्रयत्न केले. मस्त रिस्की रन जावन आशिल्ले. बॉल फिल्डराल हाता वता आशिल्ले बट तागेल थ्रो येवन विकेट किपरा लागी रीच जावचे फुडें राईट टायमारी बॅट्समॅन क्रिसा येवन पावला. सो गिरीश लकीली सर्वायव जाला. गिरीश पंडित लेफ्ट हँडेड बॅटर आता स्ट्राईक घेतस. विवेक नायक कोटाले सेकंड ओव्हर आहे. तागेल कोटाचे दोन्ही ओव्हर फर्स्ट बॉलांत 1 रन दिला. दोन्ही बॉल राऊंड द विकेट. लायकोन ऑफ साइडा ग्लाइड केल्या. जेंटली पुश करून 1 रन आराम से काढला. दोन्ही रन खंयचे अवकाश नातय. सो 1 रन संतोष जत्तस बॅट्समॅन गिरीशान 1 रन काढून स्ट्राईक दिला. तर श्रीनिवास एक हार्ड हिटर ऑफ द बॉल. विस्फोटक बॅटिंग प्रदर्शन करत असल्या बॅटर खंडित जावन श्रीनिवासाला बॅट आदकून रन्स फ्लो जत सुका इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपालाक एक रेस्पेक्टेबल टार्गेट रीच जावका म्हणजे जाल्यार श्रीनिवासान हांगा तागेल नॅचरल गेम दाखोवचें जाता. ऑलमोस्ट यॉर्कर लाइन डिलिव्हरी म्हणत ब्लॉकला पडल्यार बॉल बहुशा बॅट लागली जाल्यार बॉल सीधा वचून स्टंप सापडत आशिल्ले. लकीली बॅट्समॅन सर्वायव जालो. 1 रन नागेशान काढून स्ट्राईक दिला श्रीनिवासाक. श्रीनिवास स्ट्रायकर्स राऊंड द विकेट जावन बॉलिंग घालतात विवेक नायक कोटा. पुजलाना एंड दखून फिल्डिंगांत थोडे चेंजेस केला. राईट हँडेड बॅटर क्रिस आरस. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन क्रिसा मध्यंतू श्रीनिवासान होगूर ऑल अलॉंग द कार्पेट कसं म्हणून म्हणता की आम्ही तशी खेळलो. लॉंग ऑन पुश केले. लॉंग ऑन दखून फिल्डरान मुखार येवन बॉल फील्ड करचे फुडें 1 रन श्रीनिवासा मेळतस. या 1 रनान वोट स्कोर जाल्यात 13. एक हॉट शॉट मारचे प्रयत्न केला लेफ्ट हँडेड बॅटर गिरीशान बट बॉल मिडल ऑफ द बॅट कनेक्ट जायनी. खाली 1 रनान संतोष जावका. दोन्ही रनां खंयचे अवकाश ना. आज जोटूची 3 ओव्हर कंप्लीट जाला. सो 3 ओव्हर कंप्लीट जाता आशिल्ले म्हणजे इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपालाचे वोट स्कोर 14. 4 विकेट कळवून घेवन वरल्या 4 ओव्हरांत कितली रन्स तांणी काडटा ती पळोवया. बॉलिंगान चेंजेस जातस तशींची कमेंट्रींतूय चेंजेस. मुखारची कमेंट्री सांगूक नयन इन कन्नडा. या ओव्हरा नंतर नयन कमेंट्री बॉक्स येता. सो 4 ओव्हर प्रारंभ जातस. 9वी ओव्हर आर्च फार्मा लॅब्स एंड दखून बॉलिंग घालूक बॉलर तयार जाला. प्रणव भट्ट अनेक लायक एक ऑलराउंडर प्लेयर. लास्ट इयर कोडियाल सुपर किंग्स टीमांत खेळ्ळलो. ह्या फाटी आबरन डायमंड्स टीमांत खेळतस. फ्रॉम दी आर्च फार्मा लॅब्स एंड रेडी जाला प्रणव भट्ट. राऊंड द विकेट जावन लेफ्ट हँडेड बॅटर नागेश पंडिताक. लायक एक बॉल कंप्लीटली बीट जाल्लो. बॅट आनी बॉलामध्ये खंयचे कनेक्शन ना. बॉल सीधा गेले विकेट किपराल हातांत. विकेट किपर
अनंतानं बॉल गॅदर केला आणि वापस केला प्रणवाक बॉल प्रणवाला हातास प्रणव ऑन इज वे टू गिरीश पंडित वापस तसले बॉल सिमिलर डिलिव्हरी आणि सिमिलर रिझल्ट म्हणून म्हणत गिरीश पंडिताक कशी खेळक पण कळतना इथे म्हळ्यार प्रणव मस्त चंद कोरन बॉलिंग घालतस एक राईट स्पॉटारी गुड लेंथ डिलिव्हरी म्हणून म्हणता ती तसल बॉलिंग घालला बॅटर कंप्लिटली बीट जाल्लो ह्या पटे बॉल वाऱ्यार असं कॅच जाऊ चान्स आसा बट बॉलर आल्या मात्या वयर दोकून मारल्या तशें जावन कॅच धरू जायनी एक रन मेळत सांगा गिरीशाक गिरीशान एक रन काणू आतां श्रीनिवासाक स्ट्राईक दिला श्रीनिवास खेळतस 6 रनांची गिरीशाला वैयक्तिक स्कोर 4 ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ 15 22 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ 4 ಓವರ್ चलतरस श्रीनिवास क्रीसार वेट करतस प्रणवाल नेक्स्ट बॉल फेस करक 4 ओव्हराच्या 4 बॉल लायक बॉल ऑलमोस्ट यॉकलँड डिलिव्हरी म्हणून म्हणत ब्लॉक होला पडल्यार बॉल फ्लिक केल्लो ऑन सायडान तो दोन्ही रन काडचे प्रयत्न करतस ती अज्जी मध्ये एक क्लोज कॉल डेंजर एंड धांवतस जिलो श्रीनिवास पळोक श्रीनिवास क्रिसा भितर आसा की ना म्हणून स्क्वॅलेग अंपायरान 3rd अंपायर रेफर केला पळोव्याक खंयची नमुना डिसिशन 3rd अंपायर थ्रू येत म्हणून मस्त एक क्लोज कॉल आशिल्ले डिसिशन सो अंपायराक विंगड एंगलान पळोवपाक जाता रिव्यू करपाक जाता सो M9 स्पोर्ट्साचे टेक्निशियन्स अंपायर वट 3rd अंपायर वटान कोऑपरेट करतस ती बॉल विकेट किपरान विकेटाक लगायतना श्रीनिवासाल बॅट क्रिसा भितर आशिल्ली की ना वाऱ्यार आशिल्ली की पळोवपाक दोन्ही राउंडाच्या मॅच चलतरस 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल वर्सेस आभरण डायमंड्स दोन्ही रन प्रयत्न करत आशिल्लो श्रीनिवास ज्याला लायक एक फिल्डिंग पळोवचें मेळ्ळें फिल्डरान क्विकली बॉल फील्ड करून विकेट किपर एंड थ्रो केला विकेट किपर अनंतान बॉल कलेक्ट करून स्टम्प्साक मार्च भितरी बहुशा एक एंगलान पळयतना बॅटर क्रिसा भितर आशिल्ल म्हणके दिसतस कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन हांगेल्या प्रस्तुतीच्या 8 सीझनाच्या GPL क्रिकेट टुर्नामेंटाच्या दोन्ही दिसा मॅच आम्ही पळयतस ती
ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರನ್ ಔಟ್ ಜಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈಸ್ ಔಟ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಔಟ್ ಜಲ್ಲ. ಇರುವತ್ತೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನೇಕ एक हॉर्ड ब्लो म्हणत 7 रन काणू श्रीनिवास पेविलियन भायर वतस. ताका रिप्लेस करूक नवे बॅटर जावन सुजीत क्रीसा येतस. विवेकान चंद कोर्न बॉल फील्ड कोर्न विकेट कीपर अनंताक थ्रो केलेला. सो अनंतान खंयचे चूक करना अशी विदिन ए फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स बेल्स पडायला. सो त्या टायमार श्रीनिवास क्रीसा दुखून भायर आशिल्लो. सो 16 for the loss of 5 wickets now. Pawanal next bowler, Pranavan Galal bowler, offside gently push corno gully region marno 1 run nanga kallalas. Nave batter Sujitana 1 run Sujitan Kano strike at left handed batter Girish Adilla. Like on bowling galtas Pranav over अंतु खाली 2 रन मात्र दिला. दोन्ही डॉट बॉल्स आशिल्ले. 1 विकेट मेळ्ळा आतां कडे बॉल. लायक एक बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पडला. बॅट्समॅन कंप्लीटली बीट जाल्लो. बॅट आनी बॉला मध्ये खंयचे कनेक्शन ना. बॉल सीधा गेले विकेट कीपर हातांतू. अजोटूची 4 ओवर कंप्लीट गेला. सो 4 ओवर कंप्लीट जाता आशिल्ले म्हणके इरुवत्तूರು स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल टीमाच्यान ಒಟ್ಟು 17 रन काडला. 17 for the loss of 5 wickets. सो 3 ओवर बाकी पळोवया. 3 ओवरांतू कशी तांगेले इनिंग्स तांणी बिल्ड करतात म्हणून हाजे मध्ये बॉलिंगान चेंजेस जातात. तशीची कमेंट्रींतूय चेंजेस. नेक्स्ट कमेंट्री सांगूक कन्नडांतू नयन कुमार. ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಇರುವತ್ತೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 17ರಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 4 ಓವರ್ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸತತ ಇದು 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವತ್ತೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸಲನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು ಕೇವಲ 17 ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಡಗೌಟ್ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡಾನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 18 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 4ನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಗಿರೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರ ದಂಡನೆ. ನೇರ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದಂತಹ ಜಾಗವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಸ 19 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ನೀಳಕಾಯದ ಆಟಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾರಣ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ 5ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು GPL ಉತ್ಸವ್ ಅಥವಾ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಶ್ರಮ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ
ನೇರ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ನೋ ಬಾಲ್ +4 ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಅಂಕಗಳು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಉಚಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 5 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟ್ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದಾವಕಾಶ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಬಹುದು. ರನ್ಔಟ್ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದೇ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 5 ಅಂಕದ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಜಾನ್ 26-26 ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಗನೈಸರ್ನ ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸದ್ಯ ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಸದಾವಕಾಶ ದಂಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಹೋ, ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. 27 ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಾರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಇರುವತ್ತೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 28 ಅಂಕಗಳನ್ನ. 28 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 5 ಓವರ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 28. ಬಹುಶಃ 4 ಓವರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೇವಲ 17 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ +4 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 28ರ ತನಕ ಇಳಿದು ತಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಗ್ರಪಂಥೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 5 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅನಂತ ಶೆಣೈ ಎಸ್ದಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತೂ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಓರ್ವ ನೀಳಕಾಯದ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 29ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ. ಅದರೊಂದಿಗೆ 1 ಅಂಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು 30 ಅಂಕಗಳು. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ ಅನಂತ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ನಾನಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇರುವ ನೀಳಕಾಯದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ 6 ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನ ಬೀಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 6 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಲಾಚಾಲವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ 36ರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಗ್ರಪಂಥೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನಂತೂ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವತ್ತೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ 6ನ ಬಳಿಕ ಓಹೋ 6ನ ಬಳಿಕ ಸೇಡ್ ಅನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಂತ್. ಬಹುಶಃ 6 ದಂಡಿಸಿದ್ದಾಗ ಅನಂತ್ಗಾಗಿದ್ದ ನೋವು ಸದ್ಯ
ಶ್ರೀಧರ್ಗೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಮುಯಿಗೆ ಮುಯಿ, ಸೈಡ್ಗೆ ಸೈಡು ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದಂತ ಆಟಗಾರ ನೇರ ಫೆವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾಗ ಇರುವತ್ತೂರು ತಂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿತು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಿಕ ನೇರ ಫೆವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 36 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7 ವಿಕೆಟ್. 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಶ್ಲೇಷ್. ಬಹುಶಃ 5ನೇ ಓವರ್ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಆದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ 1.1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅನಂತ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು 37 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ 22 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ದಂಡಿಸಿದಂತಹ 1 ಸಿಕ್ಸರ್, ಜೊತೆಗೆ ನೋ ಬಾಲ್ 4 ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 37 ತಲುಪಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರೂ ಕೂಡ 22 ತಂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 37 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಿಡಿದು ನಿಂತದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಹರಿದು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ವೇದಾಂತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಭರವಸೆ ನೆಟ್ಟು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೇದಾಂತ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಂತೂ ಸುಂದರತೆಯ ಡ್ರೈವ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ 38 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 38ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವೇದಾಂತ್ ಭಟ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 11ರ ಮುಂದೆ 11 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆ ಡ್ರೈವ್. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಚೆಂಡು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ 1 ಅಂಕವಂತೂ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ 22 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸದ್ಯ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ನ ಮಾತ್ರ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಡಾನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಬಹುಶಃ ವೇದಾಂತ್ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆದ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದು. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿನ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಚೆಂಡು ಬಹು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಗಡಿದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು 8ನೇ ವಿಕೆಟ್
ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಓರ್ವ ನೀಳಕಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 40ರಲ್ಲಿರುವಾಗ 8 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವೇದಾಂತ್ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ. ಸೂರಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತರಾತುರಿ ದುಡುಕಿ ಧುಮುಕಿದರೆ ದುಃಖಿಸಬೇಕಾದಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 41, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 8 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಆದರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೇದಾಂತ್ ಭಟ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. 41 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು. 42ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ 22 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 41. ಟಾರ್ಗೆಟ್ 42 ಆಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 42ರ ಮುಂದೆ 42 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಶಕಗಳಿಂದಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಡುಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸರಗೋಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಕಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರನ ಸದಾ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದ ಜಯರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ
थैंक यू। तो बहुत खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक। फील्डर गेंद के नीचे आ गए, हालांकि कैच का मौका हो सकता था, और जब तक वो गेंद को दोबारा फील्ड कर पाते बैट्समैन के पास समय था कि वो कुछ रनों को बटोर ले। इन रनों के साथ कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 3 पर। 42 का लक्ष्य इस मैच को जीतने का। और आभरण डायमंड्स जो बहुत अच्छा कर चुकी है अब तक इस सीरीज में, इरवत्तूर स्पोर्ट्स जो कि थोड़ा सा पिछड़ती हुई 2 मैच में वो परास्त रहे। राउंड विकेट छोर से गेंद डाउन साइड पर घुमाकर खेलने का प्रयास दैविक नायक का, और मिस कर गए। 1 रन लेने का अवसर। ऑफ द बैट बल्ले से लगकर गेंद गई, रन बढ़कर 4 पर पहुंच चुका है। विवेक नायक स्ट्राइक एंड पर। श्रीधर फजलोना एंड से दौड़कर शुरू कर चुके हैं, मैंडेटरी पावर पे चलता हुआ। ये गेंद लेग स्टंप के सीट पर थी, थोड़ा सा पीछे हटे विवेक नायक, और रूम बनाने के प्रयास में थोड़ा बल्ले को तिरछा करते हुए गेंद को मोड़ दिया, जब तक फील्डर आकर गेंद को उठा ले पॉइंट क्षेत्र से। 1 रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने, इसी के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। तो 5 रन बगैर किसी नुकसान के। लक्ष्य 42 रनों का, अभी 6 ओवर्स शेष बचे हैं। और अगले मैच के लिए कृपया टॉस के लिए आइएगा। दोनों टीमों से अनुरोध करते हैं, कोडियाल सुपर किंग्स और राइजिंग स्टार मैंगलोर। कोडियाल सुपर किंग्स और राइजिंग स्टार मैंगलोर दोनों टीमों के कैप्टन कृपया टॉस के लिए बड़े मंच की ओर आए। इस मैच में संघर्ष पूरा इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब कर रहा है, लेकिन कभी कभार हो जाता है। आपका परिश्रम अपनी जगह होता है, लेकिन किस्मत का साथ देना बहुत जरूरी है। दोनों मैचेस में परास्त हो गए, ये तीसरा मैच उनके लिए, और इस मैच में रन्स कुछ ज्यादा नहीं बने। 42 रनों का लक्ष्य जो कि रखा गया है। आज फॉर्मेट से ये गेंद, सूरज की गेंद को उछाल दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। फील्डर वहां पर है मिड विकेट क्षेत्र में, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही पहला विकेट जो कि गिर चुका है, बैट्समैन आउट हो गए। श्रीनिवास ने बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को कैच कर लिया। फुल टॉस गेंद थी और मौका अच्छा था कि गेंद को वो कहीं और तिरछा खेल सकते थे, लेकिन ठीक उसी दिशा में उन्होंने गेंद को पुल किया जहां पर फील्डर तैनात था। मैंडेटरी पावर प्ले में आप अंदाजा लगाइए, 2 खिलाड़ी आउटफील्ड में रहते हैं, और इस वक्त जो दृश्य दिखाई पड़ता है उसमें मिड विकेट डीप में है और लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा वाइड और पीछे कर दिया गया है। ये 2 खिलाड़ी सिर्फ तैनात है बाउंड्री लाइन के बाहर। इसके बावजूद जो फुल टॉस गेंद मिली थी उसको विवेक पूरी तरह से खेल नहीं पाए, हालांकि प्लेस नहीं कर पाए। गेंद को अगर थोड़ा सा और स्क्वायर लेग या लॉन्ग लेग क्षेत्र में वो पुल करते तो शायद गेंद छक्के में तब्दील हो सकती थी, लेकिन सिर्फ उसी दिशा में जहां पर फील्डर तैनात था गेंद को उछाल दिया और वो कैच कर लिए गए। इस कैच के साथ ही पहले विकेट का पतन। 42 रनों का लक्ष्य क्या कुछ होता है। एक सफलता को अर्जित करने के पश्चात दूर वाली छोर से सूरज आक्रमण पर लंबे कदकाठी वाले आज फार्मा एंड से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। और विकेट उनकी गेंद ऑन दी अप गेंद को ड्राइव कर दिया। अच्छा ऑन ड्राइव पूरा विश्वसनीय नहीं था क्योंकि बल्ले के बीचों बीच पूरी तरह से नहीं ले पाए। 1 रन लेने का अवसर सुरेंद्र पाई का, वो अपना खाता खोल चुके हैं। रन बढ़कर 6 पर दैविक नायक स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। तो आभरण डायमंड्स ने अपना सफर जो है इस क्रिकेट श्रृंखला में काफी अच्छा उनका रहा है। इस मैच में भी अगर जीतते हैं तो निश्चित तौर पर तीनों मैच को जीतने का श्रेय उनके ऊपर जाएगा। क्या ऐसा होगा? लक्ष्य बड़ा नहीं दिखाई पड़ता है, 42 रन को बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त 1 विकेट गिरने के पश्चात हल्का सा दबाव आ चुका है। सूरज कामत गेंद को लेकर तैयार, उनकी गेंद, और क्या अच्छा स्ट्रोक था दैविक का। गेंद को देखा और बहुत खूबसूरती के साथ कलाइयों को इस्तेमाल किया उन्होंने। बहुत स्टाइलिश अंदाज में गेंद को उन्होंने शरीर से दूर फ्लिक कर दिया पॉइंट क्षेत्र में, जब तक फील्डर, हालांकि रन लेने का अवसर नहीं है, रन सभी भी वहीं पर से रहे। सूरज की अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव कर दिया। गेंद को लेंथ में ज्यादा, लगभग मिडल लेग स्टंप के लाइन पर थी, उसको ड्राइव कर दिया फील्डर। इस बीच गेंद और छोर से ड्राइव किया गेंद को फील्डर की दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 1 रन लेने का अवसर। तो कास्ट्रीट के लिए बस तैयार खड़ी है। जो कोई दर्शक यहां पर यहां से कास्ट्रीट जाना चाहते हैं उनके लिए
अनुरोध है कि वो बिल्कुल तैयार होकर जाएं, बस बिल्कुल इंतजार करिए, कार स्ट्रीट में बस जा सकती है यहां से, उसके लिए खास तौर पर आयोजन किया गया है। तो बस तैयार है, जो कोई लोग यहां से कार स्ट्रीट जाना चाहते हैं वो जल्दी जाकर बस में बिराजें, क्योंकि अभी कुछ ही देर में बस निकलने वाली है। ओवर समाप्त हुआ, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में मात्र 1 रन जो कि खर्च किया सूरज कामत ने, 2 रन खर्च किए हैं। क्या बात है, शानदार गेंदबाजी है। वो जानते हैं कि पूंजी ज्यादा नहीं है, आमदनी अठन्नी हो तो खर्चा रुपया नहीं किया जा सकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 2 रन उन्होंने खर्च किए इस ओवर में। और हैरानी की बात यह है कि मैंडेटरी पावर प्ले का उपयोग आभरण के खिलाड़ी नहीं कर पाए। इस सीरीज में वो बहुत अच्छा कर चुके हैं और शायद इस योजना के साथ के सिंगल्स में वो काम चलाएंगे। और रन्स मात्र 7 2 ओवर के समाप्ति पर। 5 ओवर सभी शेष बचे हुए हैं। 5 ओवर्स में अगर आपको बता दें इक्वेशन, 35 रनों की जरूरत है। 35 मोर रन्स टू गेट इन 30 बॉल्स। 30 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। और ऐसे में दैविक नायक स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, 5-4 रन बना चुके हैं। 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया। जीपीएल उत्सव 2024 इस वक्त चलता हुआ। 5:15 शाम के हो चुके हैं और शानदार दृश्य दिखाई पड़ता है। प्रकृति के गोद में बसा हुआ ये महाविद्यालय का मैदान, सह्याद्री महाविद्यालय का मैदान। हर साल जीपीएल की रचना यहां पर की जाती है और एक नया आविष्कार हो जाता है। गेंद को लेकर ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और अंपायर कार्तिक जी ने अपने अलग अंदाज में संकेत किया कि वाइड है। आश्लेष की ये गेंद थी ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर निकलते हुए। गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा स्विंग था और उसको कट करने का प्रयास किया था बैट्समैन दैविक ने, चूक गए, लेकिन कहीं ना कहीं अंपायर की तरफ से पुरस्कार मिला। आश्लेष गेंद को लेकर तैयार, फजल एंड से राउंड विकेट। ये गेंद थोड़ा सा ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक था, हवा में थी और फील्डर थोड़ा डीप में जब तक वो गेंद तक पहुंच पाते वो गेंद नीचे गिर चुकी थी। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास आ चुका है। दौड़कर उन्होंने पूरा कर लिया। 1 रन बढ़कर 9 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6.83 का औसत रिक्वायर्ड रन रेट है। करंट रन रेट 4.15 का। आश्लेष गेंद को लेकर तैयार। सुरेंद्र पे इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और अक्सर होता है जब छोटा टारगेट हो जाए तो बैट्समैन डिफेंसिव बल्लेबाजी अपनाते हैं। फजल ऑन एंड से ये गेंद राउंड विकेट, ओवर द विकेट। इस बार स्टंप्स के दिशा में बेडलर लेग स्टंप के लाइन पर थी, इसको धीरे से पुशबर कर दिया, टकराने दिया, थोड़ा आगे निकलकर पुशबर कर दिया बैट्समैन ने। सुरेंद्रन ने 1 रन चुराकर अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी। रन बढ़कर 10 पर पहुंच चुका 1 विकेट के नुकसान पर। अभी और 32 रनों की जरूरत है। और शुरुआत में जैसा मैं कहता हूं कि इस वक्त जो बाएं हाथ के बैट्समैन है उनके लिए ऑन साइड पर अच्छा मौका हो सकता है। राउंड विकेट ये गेंद और बल्ले को चला बहुत तेजी के साथ, बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई विकेट कीपर के दिशा में थ्रो आ चुका है, लेकिन बैट्समैन ने अपना रास्ता पूरा कर लिया। 1 रन जोखिम भरा दौड़कर पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर 11 पर पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जी हाँ, रेखाओं को थोड़ा सा दुरुस्त करें। और अंपायर हालांकि कार्तिक जी सचेत कर रहे हैं आश्लेष को कि वो थोड़ा सा ध्यान दे। और ऐसे में आश्लेष गेंद को लेकर तैयार। सामने वाले छोर पर सुरेंद्र पै आ चुके हैं। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऑफ साइड पर दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी है, थर्ड मैन शॉट में है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कवर पर 1 खिलाड़ी मौजूद। बाकी सारे खिलाड़ी जो कि बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, 3 बाउंड्रीज ऑफ साइड पर रख दिए गए। आश्लेष फजल होना एंड से ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को। क्या जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है। बैट्समैन को बीट करती हुई गेंद, छकाती हुई गेंद, धीरे से कट करने का प्रयास जिसमें चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। गली में खिलाड़ी डीप में तैनात कर दिया गया। कवर में डीप में है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद। ऑन साइड पर दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी है, जबकि इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट। इस बार जी हाँ, पंच किया, गेंद को हल्के हाथ से ड्राइव किया जब तक फील्डर पॉइंट में आकर गेंद को उठा लें। 1 रन लेने का अवसर था बैट्समैन के पास। इस 1 के साथ कुल योग बढ़कर 12 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 12 for 1। काफी धीमी गति से रन्स बन रहे हैं और
शायद यही योजना आभरण डायमंड्स बना चुका है कि वो ज्यादा जोखिम नहीं उठाएंगे, लेकिन कभी कभार देखने को यह भी मिलता है कि जब आप ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हो तो वो रन्स जो छोटे हैं वो बड़ा बनकर आपको परेशान करने लगती हैं। राउंड विकेट, यह गेंद उछालने का प्रयास किया, मिस कर गए इस बार। बहुत ताकतवर तरीके से गेंद को उछालने का प्रयास किया, गेंद पैरों से टकराई, थोड़े आधे अधूरे मन से किया गया अपील, जिसको अंपायर ने पुरस्कार नहीं दिया। गेंद स्टंप्स को छोड़कर लेग स्टंप के बाहर निकल रही थी और इस वजह से इस अपील को खारिज किया अंपायर ने और रन्स बढ़कर 12 पर 1 विकेट के नुकसान पर, 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पैरासेलिंग का दृश्य आप देख रहे हैं, कैमरामैन थोड़ा सा ध्यान उधर भी आकर्षित करें दर्शकों का। एक महानुभाव जो कि अपनी मौज में पैरासेलिंग का आनंद उठा रहे हैं। हालांकि देखने में अच्छा लगता है, जब आप खुद ऊपर जाते हो तो थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, लेकिन निश्चित तौर पर कहना होगा कि प्रकृति में जो सुंदरता बसी है, जो हवा आबो हवा यहां पर है, वो जिसको बयां नहीं किया जा सकता है और पैरासेलिंग का मजा आप भी उठा सकते हैं। वहां पर उसके लिए सारी उपलब्धियां मौजूद हैं। दूर वाले छोर से सूरज आक्रमण पर, उनकी गेंद फुल टॉस थी, गेंद को प्लेस किया, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद गई है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन्स। जीपीएल का शानदार चौका, इस बेहतरीन चौके के प्रायोजक थे जीएसबी प्रीमियर लीग। खूबसूरती के साथ गेंद को प्लेस किया ऑन साइड की दिशा में, विकेटों को पहले कवर किया, ऑन साइड की दिशा में बल्ले का सिरा देकर फ्लिक के अंदाज में गेंद को खेल दिया, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ रन्स बढ़कर 16 पर 1 विकेट के नुकसान पर 16 फॉर 1। सूरज थोड़े से इस ओवर में महंगे साबित हो रहे हैं। उनकी गेंद लॉफ्ट कर दिया, कैच होगा, फील्डर गेंद को कैच कर चुके हैं और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है। सुरेंद्र आउट होकर लौट रहे हैं। लेंथ में ज्यादा थी, लंबाई ज्यादा थी गेंद में, उसको लॉफ्ट करने के प्रयास में सीधे लॉन्ग ऑन के फील्डर की दिशा में खेल दिया और फील्डर ने वहां पर गेंद को खूबसूरती के साथ कैच कर दिया। अश्विन ने खूबसूरती के साथ गेंद को कैच कर लिया। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी गेंद, शायद इन स्विंगर कर रहे थे और उसको लपेट कर लॉन्ग रन की दिशा में उछालने का प्रयास और कैच के साथ ही 1 और विकेट का वतन। इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। 16 रन तो विकेटों के नुकसान पर। अनंत आ चुके हैं इस वक्त अगर कहा जाए कि आभरण डायमंड्स की ऊपर काफी दबाव है और इवतुल स्पोर्ट्स के पास अच्छा अवसर है कि जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारा जाता है। इस वक्त लोहा गर्म दिखाई पड़ रहा है और परिस्थितियां नाजुक बन सकती है। सूरज कामत गेंद को लेकर तैयार हुए, उनकी गेंद ऑन साइड पर घुमाकर खेल दिया, गेंद को मिड विकेट डीप में गेंद जा चुकी है। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास, रन बढ़कर 17 पर 2 विकेटों के नुकसान पर, 17 फॉर 2। सूरज पहले जब चौका लगा पहली गेंद पर तो लगा कि शायद वो इस वक्त इस ओवर में शायद थोड़ा सा महंगे साबित होंगे, लेकिन अचानक दूसरी गेंद में उन्होंने एक जानबूझकर एक ऐसी लेंथ लंबाई वाली गेंद की जो लॉफ्ट करते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बैट्समैन लपक लिए गए और उसके साथ ही 1 और विकेट का पतन हुआ। दैविक नायक स्ट्राइक एंड पर, आर्च फॉर्मैन से गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, बहुत अच्छा स्ट्रोक था, मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, उसको बहुत जल्दी पहचानते हुए सीधे ड्राइव कर दिया, अच्छा ऑन ड्राइव था। 1 रन लेने का अवसर मिलेगा दैविक को, वो बढ़कर 7 पर पहुंच चुके हैं। 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अनंत और दैविक के बीच में अगर भागीदारी बनती है तो शायद बात बनेगी, जबकि सूरज कामत 1 और विकेट की तलाश में आज फार्मा एंड से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। ऑफ साइड पर दायरे को घेरकर 4 खिलाड़ी तैनात है। ये गेंद ड्राइव किया, गेंद को हवा में थी, सूरज अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कैच नहीं कर पाए। दूसरा रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने। शानदार रनिंग है और जब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गेंद आ जाती है, इतने जल्दी कहां पर अवसर मिलता है बैट्समैन गेंदबाज को जो फॉलो थ्रू में आकर गेंद को वो कैच करें। रिप्ले में आप देख सकते हैं कि कितने तेजी के साथ उनके पास गेंद आ गई और वो बस फॉलो थ्रू में शरीर का संतुलन बनाने में लगे ही हुए थे कि गेंद आकर उनके हाथ से टकराई। उस छोर से एक और गेंद, इस बार गेंद को हवा के रास्ते खेल दिया है। गेंद जारी है मिड विकेट के ऊपर से, दर्शक दीर्घाव में 6 रनों के लिए। जीपीएल का जबरदस्त सिक्सर,
कमाल का स्ट्रोक है। ये गेंद ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, टिप्पा खाने के बाद अप्रत्याशित रूप से उछल कर आई, उस उछाल का फायदा उठा लिया, खूबसूरती के साथ गेंद को पोजीशन बनाते हुए पुल किया मिड विकेट के ऊपर से, ये हवा के रास्ते बाउंड्री लाइन के बाहर का रास्ता दिखा दिया 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ अचानक अब ऐसा लग रहा है कि आभरण डायमंड्स लय में आ चुका है, रन्स बढ़ रहे हैं, ओवर समाप्त हुआ। 26 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 16 रनों की दरकार है। 18 गेंदें शेष बची हुई हैं और 3 छक्कों से काम जी नहीं, 18 गेंदों में 16 रनों की दरकार, लगभग 2 छक्के 1 चौका भी चल सकता है। लेकिन इस वक्त इरवत्तुर के गेंदबाज प्रयास कर रहे हैं कि बैट्समैन को किस तरह से बांधा जाए। अश्विन के आक्रमण पर लाए गए हैं, कप्तान की जिम्मेदारी है कि वो कौन सा ऐसा गेंदबाज कहां पर किस समय चुनकर आक्रमण पर डालने मोर्चे पर लगाएं। ऐसे में अश्विन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और दैविक नायक स्ट्राइक एंड पर। इस छोर से फजल नारायण ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ पुल किया गेंद को, लेकिन ज्यादा प्लेस नहीं कर पाया, स्क्वायर लेग डीप में गेंद जा चुकी है, फील्डर वहां पर गेंद के ऊपर आ गए। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास, इस 1 के साथ रन बढ़कर 27 पर 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। तो बड़ा सुहाना मौसम, हवा तेज चलती हुई, बीच बीच में रंग बिरंगे ध्वज हवा में बल खाते हुए लहराते हुए वातावरण को चकाचौंध कर रही है। और विकेट, ये गेंद और कैच हो सकता था, फील्डर काफी वाइड खड़े थे, दोबारा अवसर मिला नॉन स्ट्राइक एंड पर, अगर थ्रो निशाने पर गिरता तो बैट्समैन चलता हो सकता था, बच गए अनंत 2 बार। एक बार उन्होंने कवर की दिशा में गेंद को थोड़ा हवा में खेल दिया था, फील्डर थोड़ा वाइड और पीछे खड़े थे, फिर रनआउट का मौका नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में, लेकिन दोनों बार बचकर निकल गए। 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं दैविक अप स्ट्राइक एंड पर। फजल नारायण से ये गेंद हवा के रास्ते, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया, सूरज ने गेंद को कैच कर दिया। इस शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हो चुका है। इस शानदार, इस कमाल के विकेट के प्रोजेक्ट है जीएसबी प्रीमियर लीग 2024। अश्विन की ये गेंद और ओवर थ्रो के, माफ कीजिएगा, ओवर द विकेट ये गेंद थी, लेंथ में लंबाई में ज्यादा, जिसको ताकतवर तरीके से लॉफ्ट करने का प्रयास था, लेकिन प्लेस पूरी तरह से नहीं कर पाए। सूरज वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बहुत आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ गेंद को कैच कर लिया। तो यह सफलता अश्विन को प्राप्त हुई। 28 के कुल योग पर 3 बहुमूल्य विकेट जो कि गिर चुके हैं और परिवार सहित कुछ बच्चे, इस वक्त मुझे लगता है कि किड्स जोन का दृश्य है वहां पर, जी हाँ, घुड़सवारी का दृश्य है। घुड़सवारी आप कर सकते हैं, ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं और पैरासेलिंग, जिस तरह से किरण जी ने आपको बताया, उसकी भी उपलब्धि यहां पर मौजूद है। तो ये सब आपके मनोरंजन के लिए और होता है सिर्फ और सिर्फ जीएसबी प्रीमियर लीग में होता है। 2024 में है इस वक्त। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर कार्तिक ने, दिशाहीन गेंद थी, ऑफ स्टंप लेग स्टंप के कुछ ज्यादा बाहर निकलती हुई गेंद, और अश्विन अच्छा करने के बाद अचानक एक गेंद लेग स्टंप के बाहर उनकी निकल गई और अंपायर को बाध्य होना पड़ा इस गेंद को वाइड करार देने के लिए। फजल नारायण से ये गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील कर रहे हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड हो गए, ऑफ स्टंप की लाइन पर आ गए, गेंद को धीरे से बल्ले और पैर को साथ में ले आते हुए फ्लिक करने का प्रयास, पैरों से टकराई, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने कहा कि इस रन को लेग बाई के रूप में लिखना होगा। 30 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 12 रनों की जरूरत है। अनंत इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और ये 5वां ओवर प्रगति पर चल रहा है। अश्विन की गेंद ड्राइव किया बहुत इत्मीनान के साथ, अनंत ने कोई ज्यादा जोखिम नहीं उठाया, तो अनंत ने गेंद को ड्राइव कर दिया। 1 रन चुराकर नॉन स्ट्राइकर बन गए, रन बढ़कर पहुंच चुका है 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हमने बॉल्स टू गो, 1 गेंद शेष बचा है, लास्ट बॉल टू गो। अश्विन की इस ओवर की आखिरी गेंद, फजल नारायण से ये गेंद और बल्ले का अंदरूनी सिरा लगकर गेंद गई, ड्राइव करने के प्रयास में 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन को, ग्लांस, लेग ग्लांस कहा जा सकता है,
1 रन के साथ ही ओवर समाप्त। 5 ओवर के समाप्ति पर 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हो जीएसबी प्रीमियर लीग 2024। तो ऊंट की सवारी, बच्चे बड़े आनंदित हैं इस वक्त। ऊंट के ऊपर 3-3 बच्चे सवार हैं और उस छोर से ये गेंद बहुत जोरदार अपील की गई है, लेकिन अंपायर राघु ब्रह्मावर जी ने कहा स्टंप्स को छोड़कर साफ साफ निकल रही है, तो इस अपील को खारिज किया जाता है। लेग बाय के रूप में 1 रन का इजाफा हो चुका है। रन बढ़कर 33 पर। और विष्णुभट्ट जी कैमरा में दिखाई पड़ रहे हैं। माइकल जैक्सन के नाम से बिल्कुल प्रचलित है। यह गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड की दिशा में गेंद को पुल कर दिया। मिड विकेट में डीप में गेंद गई। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। इस एक के साथ रन बढ़कर 34 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। 34 for 3, 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। श्रीधर गेंदबाजी कर रहे हैं। कोटे का दूसरा ओवर उनका चल रहा है और अब तक 84 छक्के लगे हुए हैं और 48 चौके। जी हां, आभरण के डगआउट में विष्णु भट्ट इस वक्त बिराज रहे हैं। ये गेंद ड्राइव किया ऑन साइड की दिशा में। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में गेंद गई और थ्रो होता, इस वजह से कार्तिक जी थोड़ा सा झुक गए, कहीं उनके सर से न टकराए। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन ने पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 35 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। धीरे धीरे जो कि जीत की और बढ़ता हुआ आभरण डायमंड्स उस छोर पर श्रीधर गेंद को लेकर तैयार। ये गेंद उछाल दिया, गेंद को हवा में तैर रही है। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, उन्होंने लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद को कैच कर लिया और इस कैच के साथ ही एक और बड़ा विकेट गिर चुका है। बैट्समैन आउट हो गए। श्रीधर जो कि बहुत लंबे कद वाले हैं, हाई आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद शायद लेग स्टंप को टारगेट कर रहे थे, लेंथ में लंबाई में ज्यादा थी और उसको बहुत खूबसूरती के साथ उछाला था, लेकिन प्लेसमेंट शायद थोड़ा सा गलत समय नहीं था कि गेंद को पूरी तरह से वो प्लेस कर पाए, क्योंकि लेंथ में ज्यादा थी, थोड़ा नजदीक शरीर की आई थी और लॉन्ग क्षेत्र में खूबसूरती के साथ फील्डर ने अश्विन ने गेंद को कैच कर लिया। तो इस कैच के साथ ही चौथे विकेट का पतन। 35 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। लक्ष्य है 42 रनों का इस मैच को जीतने के लिए, यानी कि अभी और 7 रनों की जरूरत है। इस ओवर के पश्चात 1 ओवर शेष बचा हुआ है, यानी कि अभी 8 गेंदें शेष बची हैं। 7 रनों की जरूरत है। प्रणव भट्ट स्ट्राइक एंड पर और श्रीधर आक्रमण पर 1 विकेट वो अर्जित कर चुके हैं। 7 रन खर्च कर चुके हैं। कोटे का दूसरा ओवर उनका चलता हुआ, कद काठी में बहुत ज्यादा लंबे हैं उनकी गेंद। और विकेट, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या अंपायर जी राघव जी ने विश्वास के साथ उंगली को उठाते हुए कहा कि बैट्समैन लेग बिफोर द विकेट है, आउट हो गए। तालियां बज रही हैं, दर्शक तालियां बजा रहे हैं कि क्या कमाल की गेंद थी। बिल्कुल ब्लॉक होल में डालने का प्रयास सफल हो गए और विकेटों के सामने पाए गए। अंपायर को मजबूर होना पड़ा कि इस अपील को वो स्वीकार करें और क्या कमाल की गेंद थी। बिल्कुल एक एंगल डिलीवरी, बहुत बाहर से अंदर की तरफ हवा में घूमती हुई, ड्रिफ्ट होती हुई, स्विंग होती हुई, माफ कीजिएगा, स्टंप्स की दिशा में आती हुई, मिडलर लेग स्टंप का टारगेट बनाती हुई। अंपायर को बिल्कुल विश्वास के साथ उंगली को उठाना पड़ा कि बैट्समैन आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही 1 और विकेट का पतन। धीरे धीरे दबाव को बनाने का प्रयास इस वक्त इरवतोड स्पोर्ट्स क्लब का चल रहा है और 35 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। श्रीधर ने 2 विकेट्स प्राप्त कर लिए। आखिरी गेंद उनका शेष बचा हुआ इस ओवर में और मात्र 7 रन वो खर्च कर चुके हैं 2 विकेटों को अर्जित करने के पश्चात। 35 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की। रन 7 और जरूरत है, जरूरी है 7 रनों की इस मैच को जीतने के लिए। आभरण डायमंड्स को खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ और नए बैट्समैन का आगमन हुआ।
दूसरे बैट्समैन ने नए बैट्समैन को समझा दिया। सुभाष स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और वो बाएं हाथ के बैट्समैन है, तो कहीं ना कहीं अच्छा है उनके लिए। उस छोर से श्रीधर राउंड विकेट, ये गेंद हवा में खेत को खेल दिया, क्या बात है। मिड विकेट शॉट में फील्डर तैनात, नागेश ने गेंद को शानदार तरीके से कैच कर लिया, हैट्रिक विकेट प्राप्त कर दिया है। श्रीधर ने मुस्कुरा रहे हैं, क्या कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है। 3 लगातार विकेट प्राप्त करने वाला ये गेंदबाज ऐसे समय पर जहां पर जीत निश्चित थी आवरण डायमंड्स की, क्या अब कुछ परिस्थितियां बदलेंगी। शानदार कैच के साथ ही 6ठा विकेट गिर चुका है। आवरण डायमंड्स इस वक्त बिल्कुल डगमगाती हुई स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। 6 गेंदें शेष बची हैं, आखिरी गेंद में 7 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। एक छोर पर रविचंद्र है और रविचंद्र और वेदांत भट्ट जो कि पारी की बागडोर को संभाल रहे हैं, यानी कि अब टेल एंडर्स कहा जा सकता है कहीं ना कहीं इस विकेट के गिरने के पश्चात। क्या परिस्थितियां बदलेंगी, क्या इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब कम से कम एक जीत अर्जित कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उनके सारे चाहने वाले थोड़ा सा निराश हैं क्योंकि इरवत्तूर टीम बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय का साथ देना बहुत जरूरी हो जाता है। जब समय साथ नहीं देता है तो अक्सर कहावत भी है कि अगर आप पेड़ पर ऊंट के ऊपर भी बैठो कुत्ता आकर काट जाता है। 35 रन 6 विकेटों के नुकसान पर इस छोर पर आखिरी गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे, थोड़ा सा वार्म अप स्ट्रेच करने के पश्चात सुजीत आक्रमण पर अपने कोटे का पहला पारी का आखिरी ओवर लेकर 7 रनों की दरकार। और विकेट, गेंद हवा में, गेंद को खेल दिया, कैच, एक और कैच हो सकता था लेकिन बच गए। फील्डर ने दौड़ लगाकर गेंद को रोका, लेकिन अचानक मुझे साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स याद आ गए। अगर ऐसा मौका होता तो वो हवा में छलांग लगाकर गेंद को कैच कर जाते। बहरहाल अच्छी कोशिश थी, शानदार फील्डिंग की गई है। 2 रन बैट्समैन को लेने का अवसर मिला। 37 रन 6 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। रविचंद्र 4 पर खेल रहे हैं। सुजीत गेंद को लेकर तैयार। 5 गेंदें शेष बची हैं और 5 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। सुजीत आक्रमण पर तैयार, फजल ऑन एंड से उनकी गेंद जड़ से निकालकर गेंद को खेल दिया है। बहुत खूबसूरत सो के 1 रन चुरा लिया। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई, रन आउट का मौका बनेगा या नहीं देखना होगा। कार्तिक जी ने संकेत किया टीवी स्क्रीन का, यानी कि एलईडी स्क्रीन का, यानी कि थर्ड अंपायर का, यानी कि तीसरी आंख का उन्होंने संकेत किया कि जिम्मेदारी अब तीसरे अंपायर को दिया जाता है कि वो देखें और बताएं कि आखिर गलती किसकी है, कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। ये गेंद स्टंप्स के सीट पर थी, फुल टॉस होकर आई, उसको खेलने के प्रयास में बल्ले का अंदरूनी सिरा लगकर गई। फील्डर थोड़ा सा तेजी के साथ गेंद के ऊपर आ गए, माफ कीजिएगा, और अंडर आर्म थ्रो उन्होंने कर दिया और दूसरा रन लेने के प्रयास में थोड़ा सा मुझे लगता है कि जोखिम भरा रन था। इसकी क्या दरकार थी, आवश्यकता थी, यह समय बताएगा और रिप्ले में देखा जा रहा है। तीसरे अंपायर जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और कैप्चर किए गए दृश्य को उसको रिप्ले में देखकर निर्णय निकालेंगे। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा क्रीज से रह गए और बैट्समैन जी हां आउट हो गए, संकेत किया कार्तिक जी ने। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ और शायद मुझे लगा कि अंपायर ने हाथ ऊपर करते हुए संकेत किया है, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि रुक जाइए। जी हां, थोड़ा सा धीरज धरते हैं। आउट हो चुके हैं, अंपायर कह रहे हैं। तीसरे अंपायर ने कहा कि आउट है। जी हां, और ये कम्युनिकेशन गैप है थोड़ा सा। जी हां, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आउट हो चुके हैं, दोनों अंपायर इंतजार कर रहे थे और श्रीनिकेत जी ने तीसरे अंपायर के जी हाँ जिम्मेदारी को निभाते हुए संकेत किया कि आउट, और उसके बाद हालांकि यहां से बताया गया दोनों अंपायर्स के पास वो जी हाँ कहीं मुझे लगता है कि वायरलेस है, तो उसमें थोड़ी सी शायद खराबी हो, पहुंच नहीं पाया और आखिरकार बैट्समैन आउट हो गए। 38 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। क्या बात है, कैमरामैन ने शानदार दृश्य को कैप्चर किया है। जी हाँ, इस बार हवा में गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता है, एक और कैच लपक लिया गया है, एक और बैट्समैन आउट हो गए। विकेटों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 8 पर। तो दिनेश शनाय जी इस वक्त बिल्कुल दोनों हाथों को उठाकर जश्न मना रहे हैं कि उनकी टीम अच्छा कर रही है। एक और विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिया और इस विकेट के साथ ही शानदार विकेट के प्रायोजक थे जीपीएल 2024, जिस देखा जा सकता है कि थोड़ा शरीर से दूर थी, स्ट्रेच किया गेंद को खेलने का प्रयास, हवा में थी और इस शानदार कैच को लपक लिया फील्डर ने। श्रीधर मेंडन ने बहुत खूबसूरती के साथ झुककर गेंद को कैच कर लिया। 8 विकेट्स गिर चुके हैं। इक्वेशन आपको बता दें, 3 गेंदें शेष बची हैं और 4 रनों की जरूरत है। रोमांच धीरे धीरे अपने चरम सीमा की ओर बढ़ता हुआ 38 रन 7 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। सुजीत तो बिल्कुल जादूगर साबित हो रहे हैं, गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। फजल रन से उनकी गेंद श्रीनिवास के लिए, श्रीनिवास ने गेंद को हवा के रास्ते थोड़ा खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को ड्राइव कर दिया, 1 रन चुरा लिया। दूसरा रन चुराने का मौका जोखिम भरा था, स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हुआ जरूर लेकिन थोड़ा सा बच गए और 2 रन पूरे कर लिए गए। इन 2 रनों के साथ अब 2 और रनों की जरूरत है 2 गेंदों में। जी हाँ, सूरज और श्रीकांत हमारे साथ मौजूद हैं, बार बार सहयोग कर रहे हैं और उनकी बदौलत हम आपको रनों का लेखा जोखा सुनाते हैं। तो 2 गेंदों में 2 रनों की दरकार। रन आउट का मौका बहुत अच्छा था, देख सकते हैं आप, अगर गैदर करके स्टंप्स पर लगा दिया जाता तो बात बनती। बहरहाल सुजीत गेंद को लेकर तैयार हुए, दौड़ना शुरू हुआ। उनकी गेंद, कदमों का सही इस्तेमाल, कलाइयों का बहुत खूबसूरती के साथ दृश्य देखने को मिला। फ्लिक किस तरह से करते हैं, 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने। 41 रन बन चुके हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। अब सुहास कामत पर जिम्मेदारी है कि वो आभरण डायमंड का एक चमकता हुआ डायमंड बनकर दिखाएं इस आखिरी गेंद पर। क्या वो 1 रन बना पाएंगे, देखने वाली बात होगी। सुजीत चुनौती से गुजर रहे हैं, अब तक उनकी टीम जीत नहीं पाई एक भी मैच। क्या इस एक गेंद को वो डॉट में तब्दील करेंगे? कम से कम डॉट टाई तो हो सकता है, पॉइंट शेयर तो हो सकते हैं और उनकी टीम के नाम पर कोई तो अंक आ सकता है। इस छोर से गेंद, हवा में गेंद को खेल दिया, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही है और ये शानदार 4 रन जी इस चौके के साथ इस मैच को आभरण डायमंड्स ने बहुत संघर्षपूर्ण तरीके से जीत लिया है। क्या शानदार जीत, फुल टॉस थी, ऑन साइड पर गेंद को घुमाकर खेल दिया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाद थोड़ा सा धीमी गति से निकल गई, आखिर में धीरे धीरे लुढ़कती हुई जाकर बाउंड्री लाइन को, सीमा रेखा को जाकर छू लिया उस गेंद ने और बाहर खड़े दर्शक बस इंतजार करते रहेंगे कि छूने के बाद वो गेंद को उठाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। आवरण डायमंड्स जीत चुकी है इस मैच को, बधाई हो, अभिनंदन, मेनी कांग्रेचुलेशंस। और इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब को निराश होना पड़ रहा है, 3 मैचेस वो हार चुके हैं। बहरहाल ये किस्मत का लेखा जोखा है जिसको कोई बदल नहीं सकता। हो सकता है कि आने वाले साल में आप बहुत ज्यादा उभर कर आए और श्रृंखला को जीते। हमारी तरफ से आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं।
तो विष्णु भट्ट जी कैमरा में दिखाई पड़ रहे हैं मुस्कुराते हुए, माइकल जैक्सन के नाम से जाने जाते हैं। क्या बात है। दोनों टीमों के 12th मैन आइए प्लीज। और इस स्विच मैं आमंत्रित करता हूं प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार। हालांकि आयोजनकर्ताओं से अनुरोध है कि मैन ऑफ द मैच का, प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार वो प्रदान करें। और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार आनंद शनाय को जाता है। कृपया आनंद शनाय जल्दी आइएगा बड़े मंच की ओर। दो कैचेस पकड़ लिए, 12 रन्स बनाए और 3 शानदार विकेट अनंत ने प्राप्त कर लिए, अर्जित कर लिए। तो बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन के पात्र हैं वो। उनसे अनुरोध करते हैं कि बड़े मंच की ओर वो आए और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान स्वीकार करें। तो इससे पहले कि नया ताजा मैच शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर सुरेश भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वो विवरण को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Ajay ji. Welcome back to this Sahyadri College ground. The next match will be now played between Kodiyal Super Kings versus Rising Stars of Mangalore. Kodiyal Super Kings team, after winning the toss, they have decided to field first here. Meanwhile, the two openers for Rising Stars Mangalore are already in the middle. Prajwal Shanai is the opener batsman who will take the strike. Deepak will be the non-striker. Prajwal Shanai is a technically sound batsman, one of the backbone of Rising Stars Mangalore. He is the icon player. He will take the strike. And the opener bowler for Kodiyal Super Kings will be Ganesh Nayak Kota, a right-arm medium-face bowler. Ganesh Nayak Kota is also the icon player of team Kodiyal Super Kings. Kodiyal Super Kings is the only one team which has participated in all the GPL seasons so far. Even though they have not lifted the trophies, now in this match they are looking forward to clinch this GPL trophy. So Ganesh Nayak Kota will start the fresh over, that is the first over of the innings, and he will be operating the over from the college end, which is called as Puzalana Edge. Everything seems to be ready here. We have the green signal there by umpire Sriniket, and here is the first delivery of the first over now. Ganesh Nayak Kota will bowl to Prajwal Shanai. Prajwal Shanai meanwhile taking guard from umpire and watching the field placement carefully. First 2 overs will be mandatory power play overs. Only 2 fielders will be allowed to stand outside the 30-yard circle. Here is the first delivery of the first over now. Straight down the ground he played. The fielder from the mid-on region comes across and cracks the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single before he collects the ball and throws it back to the bowler's end. There is ample time for Prajwal to pick up a single here. With that single, Prajwal is straight away off the mark. He opened his account and Deepak will take the strike now. Four men on the offside and 5 on the onside for Deepak. There is a fielder on the long off. It was going down the leg side and wide has been signaled there by umpire. That should be a wide. In the limited overs matches, the umpires are very, very strict. Anything down the leg side will be declared as wide balls. So 1 extra run has been added to the total of Rising Stars Mangalore now.
Score moves up to 3 now. We come back to the bowler with a short run up from the Puzalana end. Played the shot all around the carpet. Non-striker was looking for a single, but Prajwal sends him back, rightly sent back by him because he didn't want to take any risk there. So no runs resulted. That's a very, very fine delivery there. That ball keeping very, very low. I think the ball attacks the leading edge of the bat and it was going to the wicket keeper, but unfortunately the ball slipped away from his hands. So he has put down that catch. A big reprieve for the batsman Prajwal here. Ganesh once again to Prajwal now. Again back to the bowler. Good piece of fielding of his own bowling. He picks up the ball on his follow through. So no runs resulted. Ganesh Nayak Kota is bowling in the right spot here. And Prajwal will have to improvise his batting now. Prajwal is finding some difficulty in facing his deliveries. Well, he played the shot over the head of the fielder. Long chase for the fielder. Will they get two? Yes, they completed the second run as well. Good running between the wicket here. Aggressive running between the wicket. So couple of runs have been added to the total of Rising Stars Mangalore, which takes their full score to 5 now. So at the end of first over, Rising Stars Mangalore are 5 without any loss. Left-hander Prajwal is batting on 3 and Deepak is on 1. This is the third round match between these two teams. Kodial Super Kings have played 2 matches so far and they have won 1 match and 1 match got ended up with the tie, so they are having 3 points in their points table, whereas Rising Stars played 2 matches and they have won 1 match with 2 points. Played the shot all around the carpet. That was the shot mid-wicket region. Good piece of fielding there by the fielder. Diving to his left, stopped that ball. Otherwise, the ball could have gone for the boundary rope. So he has saved a couple of runs. He was very quick in collecting the ball and throwing the ball to the wicket keeper. Meanwhile, Ganesh Nayak Kota is making some change in the field placement here for this left-handed batter. Prajwal Shanai is taking guard from umpire. Gurudas is ready to bowl the next delivery. The second ball of the second over from the Arch Farmer Labs edge. And the man on strike is Prajwal. Gurudas on his way to Prajwal now. Converted that into full toss. Played that shot all around the carpet. Didn't take any risk. But meanwhile, Prajwal will have to satisfy with only a single here. They are not finding any big hits. What they are doing is they are rotating the strike. That is very important. When you are not finding any loose deliveries or full toss deliveries, what you should do is just work the balls into the gap, pick up singles and doubles to keep it on the strike. Keep the scoreboard moving. That's what they need to do now. And the same thing they are doing here. These two batters are trying to build a good foundation for the rest of the team. They are building a good platform here. This is a must-win situation game for Team Rising Stars Mangalore to get 2 more points in their points table here. They had lost 1 match yesterday. Now Prajwal Shanai is all set to face Gurudas now. We come back to Gurudas in the over the wicket fashion he bowls. Well, that's a very, very risky run. And we'll have to wait for umpire decision. He's given him out. Prajwal was short of his ground. His bat was in the air. And what a great piece of fielding there by the bowler of his own bowling. Collected the ball and threw it very quickly to the stumps. Unfortunately, Prajwal was looking for a single. And wicketkeeper made no mistake in taking off the bails here. So trump card of Rising Stars Mangalore. Prajwal Shanai is now back in the pavilion. This is going to be a big blow for the team. Prajwal has lost his wicket unnecessarily.
So you are watching GSB Premier League 2024, proudly organized by Kodial Sports Association. This is the 8th season of GSB Premier League. We'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament to lift this attractive Arch Pharma Labs GPL Trophy 2024. The final match of this tournament will be played tomorrow night. 16 different teams have participated in this particular tournament, and now we are in the second round match between Rising Stars and Kodial Super Kings. He goes for a big one. The ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath this. My goodness, he has put down that catch. Desperate effort there by the fielder at the end. The ball has slipped away from his hands. He couldn't keep his eyes on the ball. Couldn't judge the ball. Meanwhile, the batter survives here. Very, very lucky indeed. The bowler is not happy with that. Oh, it's clean ball. That is the beauty of the bowling. Fantastic, perfect delivery there by Gurudas. The batter was thinking that it will go down the leg side. All of a sudden, the ball has taken a turn and the ball hitting the bales of the leg stump, and second wicket has gone down. Deepak is out. Rising Stars Mangalore have lost their second wicket here at the score of 9 runs. Wicket number 2 has fallen down. Deepak is moving back to the pavilion. To replace him, new batsman now joining is Siddesh. Siddesh Ramani is the newcomer. Another all-rounder player. Siddesh Ramani, basically he's from Goa. Played plenty of matches for Goa and Maharashtra. He's a part of the Ranji team as well for Goa. Now he has come to the crease. Lot of responsibility on the shoulder of Siddesh now. Siddesh will have to play his natural game here. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact. 2 overs gone. Only 9 runs on the scoreboard. In the power play session, they were able to score only 9 runs. Now, third over is going to start. Gautam is in action. Gautam will start the fresh over now from the Puzalana end. Another experienced player, a young man having lot of future. Gautam is ready to bowl. Played elegantly onto the onside. Aditya Pai played that shot nicely at long on. The fielder from the long on region comes across and collects the ball. But before he collects the ball, there is ample time for Aditya to pick up a single here. And that single will bring new man Siddesh on strike. Almost all the fielders on the offside are standing very close to the boundary ropes here. Have a look at the field placement, because Siddesh is a good timer of the ball, one of the pinch hitter of this side. So he has come to the crease. So after taking guard from umpire, after watching the field placement, he's all set to face Gautam now. Here is the next ball. Flicks the ball onto the onside. Steers it down to third man region, angling the pace of the bat. Siddesh quickly realized that there is no slip, so cuts it off down to third man. And before the fielder collects the ball, there is ample time for Siddesh to pick up a single. With that single, Siddesh is off the mark. He opened his account, and Aditya will take the strike now. Room outside the off stump. Aditya played the shot into the gaps. Ball is rushing towards the boundary ropes. Will they be able to cut it off? No, all the way to the boundary ropes for 4 runs. No chance for any fielder to stop that ball. Treated the ball on merits. No risk taken. There is no need of running for that, because the timing was good and the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by Aditya Pai.
So welcome boundary for Rising Stars Mangalore. 4 valuable runs have been added to the total. Score now jumps up to 15 with that boundary. We come back to Gautam Pai for the 4th time. Aditya gently pushes the ball to the fine leg region, towards the short fine leg region. There was a protection, but before the fielder picks up the ball, these two batters were very quick. They completed that run easily here without any problem. That single will bring Siddesh Ramani on strike now. Once again, there could be a chance of run out. We'll have to wait. Yes, he's out. This is very, very misunderstanding there. I mean, this was not at all required because the ball was directly going to the fielder there. And Aditya Pai was looking for a single. He was rushing towards the danger end. And unfortunately, Rising Stars will have to lose the wicket of Aditya Pai. Aditya Pai is moving back to the pavilion here. 3rd wicket has fallen down at the score of 16 runs. So everything is good going for team Kodia Super Kings. Their captain Ganesh Nayak Kota, after winning the toss, he had decided to field first, and their bowlers have done an excellent job. At the same time, their fielders are also very, very smart. So they have restricted the batsmen of Rising Stars Mangalore to the score of 16 runs, and they were able to pick up 3 important wickets in 2.5 overs. Last ball to go of this over now. We are in the 3rd over of the innings. Vignesh Bhatt Mulki will be the newcomer who is going to join with the Siddesh Ramani now. As I mentioned earlier, they have lost 3 wickets. They shouldn't lose any more wickets. They must keep their wicket intact. They need to build a good foundation. They need a partnership now. What they should do is just work the balls into the gap, pick up singles and doubles, keep rotate the strike, keep the scoreboard moving. That's what they need. Again, steers it down to 3rd man region. Once again, it's a risky run. But I think, well, the square leg umpire has referred it to the 3rd umpire. I don't understand why these batters are trying to take those risky runs, because the ball was directly going to the fielder there. And even though it was going to the fielder, they were looking for a run. And meanwhile, we'll have to wait and see whether the batsman is safe or not. Square leg umpire has referred it to the 3rd umpire. So 3rd umpire will review the decision in the television screen now. Let's see what kind of decision will come from the TV umpire. So you are watching the match between Rising Stars Mangalore versus Kodial Super Kings. 3rd round match between these two teams. Youth of GSB Worldwide is hosting the live broadcast of this tournament. It's a 3 days of cricket festival here in Sahyadri College ground. And the decision from the 3rd umpire is not out. So batsman is safe. Siddesh Ramani survives here. Very, very lucky indeed. So single has been taken here. So 3 overs completed. After 3 overs, Rising Stars Mangalore have scored 17 runs by losing their 3 important wickets. 4 more overs are remaining in their innings. Let us see how many more runs these two batters will be able to score in the remaining overs. Before the next over starts, I'm going to hand over the microphone to Nayan Kumar to proceed the further commentary in Kannada language. Over to Nayan. ಎಸ್ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುದಾಸ್ ಸಿದ್ಧಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ
ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 17 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ದಾಖಲಾಗಿರುವಾಗ ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುರುದಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದು ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬೇಡದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಬಹುಶಃ ಇದು ಗುರುದಾಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವಿದು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 17ರಲ್ಲಿರುವಾಗ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಕೌಸ್ತುಬ್ ನೇರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುರುದಾಸ್ ಆರಂಭಿಕ 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಸೆದ ಎಸೆತ ನೇರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌಸ್ತುಬ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 17ರಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರಿ 19 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುದಾಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮುಖೇನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬಲ್ಲಂತ ಓರ್ವ ಚಾಣಕ್ಯ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುರುದಾಸ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಬ್ ಸಮಯದ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಓಡಾಟ. ಬಹುಶಃ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಭಾಗಶಃ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 20ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟಗಳು. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ. ಪಂಚಮಿ ದಾಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಗುರುದಾಸ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ 21ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಗುರುದಾಸ್ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಗುರುದಾಸ್ ತನಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ 4ನೇ ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 21 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ 21 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೌಸ್ತುಬ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಸತೀಶ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಸದ ಹೊಡೆತಗಳು, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 24 ಎಸೆತಗಳು 4 ಓವರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌಸ್ತುಬ್. ಆರಂಭಿಕ 4 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇದೀಗ ರೋಹಿತ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೌಸ್ತುಬ್ಗೆ ತಕ್ಕದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಟು ಕೌಸ್ತುಬ್. 5ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೇರ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ರು ಕಾರಣ ಅಂತಿಮ 3 ಓವರ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು 21. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಓವರಿನ ಗುರುದಾಸ್ ಓವರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ರೋಹಿತ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತಿರುಗು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಅಂಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 23ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ರೋಹಿತ್ ಮುಖೇನ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ. ಕವಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ ಓಡಿದ್ರು. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 23 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ. ಬಹುಶಃ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಿರತೆಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಗೆಲುವಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು ಸುಲಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 5ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮುಖೇನ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗ, ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 25ರ ಗಳಿಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 5th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 25, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ 25 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಅಗ್ರಪಂಥೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಯಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಡೆಯದೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 25ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಸತೀಶ್ ಸದ್ಯ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನ ಇದೇ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಕೇವಲ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರ ಶೈಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪು. ಬಹುಶಃ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣ ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 26. ಅಂತಿಮ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಹ್ವಾನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 26 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಬಹುಶಃ ಅವಕಾಶಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾನ ದೊರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ದಂಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಡಾಟಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ, ಯಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ, ಈ ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನ ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸುದೀಶ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 33 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಬೌಲರ್ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಹುಶಃ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ, ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 6 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 34 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು. 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 34 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು GPL ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ GPL ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆರುಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಇದು. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 34. ರೋಹಿಶ್ ಎಸ್ದಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬಹುಶಃ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿಶ್ ಎದುರಾಳಿಯ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಅರಿತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ 95%, 100% ಅವಕಾಶಗಳು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಂಡ. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಆದರೆ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಇದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಂದ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 34, 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಯಾವೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೂಡ ರೋಹಿಶ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಂಡಿತ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಂದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಬೌಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನೋ, ಆದರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಂಡ ತೆರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಹುಶಃ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೌಲರ್ಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಫಲ ದೊರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಗಳ ಗೊಂಚಲನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಮತ್ತೆ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿಶ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 35, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ನಡುವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿಶ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಅಂಕವನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಥರ್ವ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥರ್ವ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 36 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪರವಾಗಿ. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಥರ್ವ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ರೋಹಿಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ತಂಡದಿಂದ. ಕಾರಣ ಎಸೆದದ್ದು 6 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಅಂಕವನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು 36, 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 36 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, 37 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕುಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 36 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 37 ಅವಶ್ಯಕತೆ, 42 ಮುಂದೆ ಕುಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂಥ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. थैंक यू नयन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए स्वागत है इस वक्त इस शानदार क्रिकेट श्रृंखला में जीपीएल 2024 कोरियन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की शानदार प्रस्तुति जीएसबी प्रीमियर लीग 2024। क्या शानदार दृश्य है। कैमरामैन ने इस बार आसमान की और कैमरा को ले जाकर इस सुनहरे दृश्य को कैप्चर किया है। डूबता हुआ सूरज अपने सुनहरे रंगों को फैलाता हुआ आकाश में दूर दिखाई पड़ता है। क्या शानदार दृश्य है, मन को मोहने वाला और वातावरण को चकाचौंध करने वाला ये दृश्य, बहुत खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। और डीजे तैयार हो रहे हैं शानदार धुन को बजाने के लिए। इस वक्त शाम के समय आपको बता दूं टाइम हो चुका है लगभग 6:20 हो चुके हैं। और कैमरामैन ने आज अगर कहें, हालांकि पिछले कल के दिन से जो शुरुआत की है उन्होंने, बहुत शानदार तरीके से वो दृश्य को कैप्चर कर रहे हैं, चाहे वो आसमान में सूरज का डूबने का दृश्य हो या फिर पंछियों का घोंसलों की और जो उड़ते हुए
झुंड में वो दौड़ जाते हैं, उस दृश्य को कैप्चर करने का हो, या फिर ऊंट की सवारी, घुड़सवारी, हर एक दृश्य को वो कैप्चर करते हुए दृश्य को आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और दर्शकों में भी कभी कभार उन्होंने कैमरा की आंख को ले जाकर कुछ ऐसे दृश्यों को कैप्चर किया जो आपको मन मोह लेंगे, आपका मन मोह लेंगे। ऐसे दृश्यों को कभी कभार दर्शक अपने ख्यालों में खोए हुए दर्शक भी देखने को मिले, और कुछ चीयर्स करते हुए वीआईपी स्टैंड में कुछ ऐसे दर्शक बैठे हैं जो बहुत क्रिकेट का शानदार तरीके से आनंद उठा रहे हैं, जीपीएल में हर साल अपना योगदान देते हैं। दर्शकों से जीपीएल कहना चाहिए कि सफल हो रहा है उनकी सहयोगिता से, और उनकी बदौलत ये क्रिकेट श्रृंखला कहना होगा कि कामयाबी के पुल बांध रही है। इस वक्त मैदान पर दोनों टीमों का जो द्वंद्व हो रहा है उसके लिए दूसरी पारी के लिए दोनों बैट्समैन मैदान पर होता है, चूंकि स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन विनायक पई और गणेश नॉन स्ट्राइक एंड पर दूर वाले छोर से यानी कि फजलुल्लाह एंड से गेंद को लेकर 18 नंबर के जर्सी में कौशिक आ रहे हैं, गेंद को लेकर वो तैयार हुए। राउंड विकेट, पहली गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ लॉफ्ट कर दिया, बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है, लेकिन फील्डर ने गेंद को दौड़कर रोक लिया। शानदार फील्डिंग है, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया गया। थ्रो को रोक कर विकेट कीपर ने प्रयास किया गैदर करते हुए, वो स्टंप्स को न उड़ा पाए क्योंकि बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए। कौशिक गेंद को लेकर एक और बार तैयार हो रहे हैं, फजलुल्लाह से वो गेंदबाजी करेंगे। मैंडेटरी पावर पे चल रहा है, ऑन साइड पर दारी को 3 खिलाड़ी घेर कर खड़े हैं, हवा में कैच होगा, इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। क्या बात है, कौशिक को पहली सफलता प्राप्त हो गई। विनायक भाई आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो स्मिथ आ चुके हैं और वो नंबर्स को तैयार रख चुके हैं, वो जानते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। चौके छक्के विकेट्स पर जो धुन बजाने हैं, दर्शकों का मन मोह लेना है, उस प्रयास में वो बिल्कुल तत्पर हैं। तो केएस के 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य उनके सामने 37 रनों का 37 का टारगेट है। ऐसे में किड्स जोन का दृश्य कैमरामैन इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। बच्चे बड़े खुश हैं कि इस महोत्सव में, जीपीएल के इस महोत्सव में उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है कि वो एंजॉय करें, और क्यों ना हो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको ये अवसर देना चाहिए। और ऐसे में परिवार सहित इस महोत्सव में हिस्सा लेकर अलग अलग जो कार्यक्रम हैं, जो उपलब्धियां हैं, उसका लाभ उठाएं। राउंड विकेट छोर से गेंद, इस बार ये गेंद मिडलर ऑफ स्टंप की लाइन पर थी, थोड़ा चेक करना चाहते थे, पहले फ्रंट फुट पर गेंद को खेलना चाहा, फिर गेंद की गति को देखकर थोड़ा सा पीछे बल्ले पर आने दिया, टकराने दिया, तेजा गेंद को खेल दिया, फील्डर की दिशा में पुशवर करते हुए रन चुराने का कोई मन नहीं बनाया, रन सभी भी वहीं पर स्थिर है। और ट्रॉली में बैठकर कैमरामैन पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं, शानदार दृश्य है। राउंड विकेट छोर से कौशिक की अगली गेंद, फजलुल्लाह से इस बार ऑन साइड की दिशा में गेंद को धीरे से पुशवर कर दिया, और दूसरे फील्डर ने दौड़कर फुटबॉलर की तरह गेंद को किक किया है। रन लेने का जो अवसर था, ये देखिए क्या खूबसूरत दृश्य है। उस छोटी सी ट्रॉली में बैठकर कैमरामैन मैदान के चारों ओर घुमाकर इस कैप्चर किए दृश्यों को आपको दिखा रहे हैं। क्या सुंदर दृश्य है, क्या बात है। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर कौशिक दोबारा तैयार हो रहे हैं। फजलुल्लाह से धीरे धीरे सूरज डूबता हुआ और वातावरण धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। इस छोर से गेंद, राउंड विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसको ड्राइव किया, लेकिन पूरा विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था। जैसे तैसे गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में ड्राइव करते हुए 1 रन को पूरा कर लिया बैट्समैन ने, बैटर ने। रन बढ़कर 4 पर 1 विकेट के नुकसान पर
और गौतम भाई इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं। गणेश नाइक ने 1 रन बनाए। दोनों बैट्समैन एक एक की व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कौशिक इस ओवर की अगली गेंद को लेकर राउंड विकेट, ये क्या कमाल की गेंद थी। अपील कर रहे हैं विकेट कीपर, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज कर दिया। बहुत अच्छी गेंद, रुक कर थोड़ा सा धीमा फेंक दिया था गेंदबाज ने गेंद को। टप्पा खाने के बाद धीमा उछाल और बैट्समैन को जिस तरह से आप देख रहे हैं राउंड विकेट ये गेंद थी, हवा में बहुत खूबसूरती के साथ घूम कर गई और बैट्समैन ने गेंद को धीरे से कट करने का प्रयास किया। बच गए कि बल्ले का सिरा नहीं लिया। विकेट कीपर को यह अंदेशा था, शायद वो उम्मीद लगा रहे थे कि इस अपील को अंपायर पुरस्कार देंगे। जोरदार अपील उन्होंने किया, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज कर दिया। तो बाल बाल बच गए बैट्समैन और वो गेंद कौशिक की बहुत कमाल की गेंद थी। ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर के समाप्ति पर 4 रन से 1 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। दूसरा ओवर आज फार्मा एंड से लेकर गेंद को नए गेंदबाज आदित्य आक्रमण पर आ रहे हैं और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर गणेश नायक एक के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए। रन 37 की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। स्कोर इन ऐप के किरण आ चुके हैं। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आपको। 4 रन से 1 विकेट के नुकसान पर वो छोर से गेंद ड्राइव कर दिया इस बार गेंद को और आदित्य के पैर से टकरा कर गेंद निकल गई। जब तक पॉइंट क्षेत्र में आकर फील्डर गेंद को समेट पाते, 1 रन 23 कदमों के साथ बैट्समैन ने पूरा कर लिया। रन बढ़कर 5 पर पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 5.49 का औसत चाहिए इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट, जबकि रन 5 बन चुके हैं। गौतम पे स्ट्राइक एंड पर ये गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया गेंद को। खूबसूरत शो के स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में गेंद गई डीप में। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। रन बढ़कर 6 पर। 5 पंछियों का एक झुंड आकाश में दूर तैरता हुआ अपने घोंसलों की ओर बढ़ रहा है। क्या खूबसूरत दृश्य है। और शो से आज फॉर्मेट से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। ये गेंद हवा में गेंद को खेल दिया, कैच होगा। कवर क्षेत्र में फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही प्रज्वल ने कैच लपक लिया है और इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हो चुका है। शानदार कैच और इस कार्बन कमाल कैच के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। तो सारे फील्डर्स एकत्रित हो रहे हैं। डीजे स्मिथ थोड़ा सा धुन को बजाए हुए। थैंक यू। तो आप थैंक यू डीजे। तो कैमरामैन अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि दर्शकों को वो अलग अलग दृश्य दिखाकर थोड़ा सा अलग कुछ करने का उनका प्रयास। 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और दर्शक बड़े उत्सुक होकर आनंदित होकर मैच का आनंद उठा रहे हैं। नितिन के स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। अंपायर से ज्ञान देने के पश्चात तैयार हो रहे हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। 37 रनों का लक्ष्य। 6 रन बन चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद इस मैच में भी काफी रोमांच देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 विकेट 6 के कुल योग पर गिर चुका है। और उस छोर से इस ओवर की गेंद आदित्य गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को ऑफ स्टंप के बाहर। आदित्य की यह गेंद बिल्कुल बैट्समैन को बीट करती हुई। इस गेंद को नितिन ने फ्रंट फुट पर थोड़ा सा डिफेंसिव फॉरवर्ड डिफेंसिव अंदाज में पुश करने का प्रयास किया था, मिस कर गए और विकेट कीपर के पास गई। उन्होंने गेंद को गैदर कर लिया और जोरदार अपील जिसको खारिज किया अंपायर ने। 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक और गेंद। सारे फील्डर्स एकत्रित होकर इस वक्त अंपायर को शायद थोड़ा सा दबाव में लाना चाहते हैं। अपील की गई, आधे अधूरे मन से इस अपील को नजरअंदाज कर दिया अंपायर ने। रन अभी भी वहीं पर सिर है। तो पेड़ के पीछे, पेड़ों की शाखाओं के पीछे आप देख रहे हैं डूबता हुआ सूरज। क्या सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। कैमरामैन ने बहुत खूबसूरती के साथ इस दृश्य को कैप्चर किया। आदित्य के गेंद को लेकर
आज फैनमैन से ये गेंद इस बार नितिन को नितिन ने देखा, थोड़ा बैकफुट पर पीछे हट गए, टो पर उछलकर गेंद को उस उछाल को कवर किया, पुश बर कर दिया और अपने साथीदार को जिम्मेदारी के लिए बुला लिया। रन बढ़कर 7 पर पहुंच चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर स्कोर इज ऑन 7 for 2। अगले मैच के लिए दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कृपया वो टॉस के लिए आए। वड़ोलैंड के टीम के कैप्टन, वड़ोलैंड के फाइटर्स, कृपया कैप्टन से अनुरोध है वो कमेंट्री बॉक्स के बगल में टॉस के लिए आइए प्लीज। प्रज्वल शनाई आक्रमण पर आ रहे हैं तीसरे ओवर के लिए और कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पर 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 7 for 2। ये दृश्य भी इस वक्त कैमरामैन दिखा रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स के पीछे का हिस्सा है। एक और दूर आकाश में उस चोटियों के और पंछियों का झुंड जाता हुआ, बहुत सारे पंछियां एकत्रित उड़ रही हैं हवा में और इस बीच जी हां ये दृश्य देखने को बड़ा लुभावना लग रहा है। फ्लडलाइट्स की रोशनी जल चुकी है और खूबसूरत दृश्य, धरती पर धीरे धीरे चांद उगाने का दृश्य आपके सामने दिखाई पड़ेगा और अलग अलग विज्ञापन एलईडी में देखने को मिल रहे हैं जो हमारे स्पॉन्सर्स डोनर्स हैं, उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इस छोर से गेंद को लेकर 12 नंबर के जर्सी में गेंदबाज तैयार हुए, फजल एंड से उनकी गेंद ओवर द विकेट। यह गेंद पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी जिसको थोड़ा पंच के अंदाज में ड्राइव किया, लेकिन फॉलो थ्रू में खुद गेंदबाज ने गेंद को उठा लिया, बिल्कुल अंपायर के सर के ऊपर, जी नहीं थोड़ा सा पीछे। आधुनिक ड्रोन जिसे कहते हैं वो इस वक्त तैर रहा है और हर उस दृश्य को वो कैप्चर करके आपको दिखा रहा है। क्या सुंदर दृश्य है। तो ड्रोन के जरिए हर उस दृश्य को कैप्चर किया जाएगा। इस छोर से ये गेंद, प्रज्वल की गेंद को पुरस्कार मिल ही गया। क्या कमाल की गेंद थी, स्विंग होकर गेंद हवा में साथ देती हुई बैट्समैन का बल्ला चूम कर विकेट कीपर के हाथों में कैद कर ली गई। ड्रोन जो कि इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा है। थैंक यू डीजे, थैंक यू। इस शानदार कैच के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। वो गेंद प्रज्वल की मानो बैट्समैन को मजबूर किया कि आप इस गेंद को खेलें, टिप्पा खाकर ऑफ स्टंप के सीध पर थी, उछलकर थोड़ा नीची रहेगी, माफ कीजिएगा, उसको खेलने के प्रयास में बल्ले का सिरा दे बैठे बैट्समैन बैटर और विकेट कीपर ने गेंद को कैच करते ही जोरदार अपील के साथ उत्साह मनाया। अंपायर ने विश्वास के साथ निर्णय किया जिन्हें कहा कि बैट्समैन आउट हो गए और इस कैच के साथ ही तीसरे विकेट का पतन हो चुका है। तो इस मैच में कहना मुश्किल है कि कोरिया सुपर किंग्स क्या इस मैच को जीत पाएगा, क्योंकि 3 बहुमूल्य विकेट वो गवा चुके हैं। और पैरासेलिंग का ये दृश्य, क्या सुंदर दृश्य है, क्या बात है। उस बड़े पेड़ के पीछे पैरासेलिंग का दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत दृश्य। इस बीच प्रज्वल आक्रमण पर तैयार, फजल नाइन से उनकी गेंद, इस बार पीछे हटे अजय भट्ट ने गेंद को धीरे से पुश करते हैं, नॉन स्ट्राइक हैंड की दिशा में थ्रो, अगर स्टंप्स की दिशा में आता तो शायद प्रज्वल जी नहीं, जो फील्डर आ चुके थे वो गेंद को गैदर करते हुए स्टंप्स को उड़ा सकते थे, लेकिन बच गए। और वॉलोलिंग के फाइटर्स के कैप्टन कृपया जल्दी कमेंट्री बॉक्स के बगल में आइए टॉस के लिए। वॉलोलिंग के फाइटर्स के कैप्टन जल्दी आइएगा प्लीज टॉस के लिए। इस बीच एक और गेंद बैट्समैन को बीट करते हुए छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। क्या कमाल की गेंदबाजी प्रज्वल कर रहे हैं और इसीलिए कप्तान ने उनको यह जिम्मेदारी सौंपी है। राइजिंग स्टार का ये चमकता हुआ उगता हुआ स्टार, सितारा जिसे कहते हैं, उगता हुआ सितारा, इस छोर पर प्रज्वल के नाम से जाना जाता है। गेंद को लेकर फजलोना एंड से एक और गेंद लेकर तैयार हुए, 1 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, 4 गेंद फेंक चुके हैं, मात्र 1 रन अब तक उन्होंने खर्च किया है। फजलोना से उनकी गेंद, एक और गेंद बीट करती हुई बैट्समैन को, क्या अच्छी गेंद थी और बैट्समैन बस गेंद को
खेलें या न खेलें इस दुविधा में पड़कर अंतिम क्षणों में बस देखते रह गए। बल्ले के पास से हवा डालती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में समा गई। विकेट कीपर थोड़ी देर के लिए हालांकि उत्साह के साथ अपील कर रहे थे। रन आपको बता दें कुल मिलाकर 8 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये पिछली गेंद जो रिप्ले में आप देख रहे हैं क्या कमाल की गेंद कर रहे हैं प्रज्वल। एक और गेंद को लेकर वो एक और कौन सी गेंद को ढूंढ कर निकालते हैं। फजलाना एंड से देखने वाली बात होगी। 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर ऑफ साइड पर। ये गेंद फ्रंट फुट पर ड्राइव कर दिया गेंद को, लेकिन बहुत तेजी के साथ फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गेंद को उठा लिया और नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में जाकर स्टंप्स पर लगा दिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो बोटिंग का दृश्य आप देख रहे हैं। पैरासेलिंग, बोटिंग और घुड़सवारी, ऊंट की सवारी, ये सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। जीपीएल प्रीमियर, हालांकि जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 इस वक्त चल रहा है। 8वां सीजन है। हर साल कुछ और अच्छा ऐसे करते 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 इसका स्तर इतना बड़ा हो चुका है कि देश विदेशों में इस क्रिकेट श्रृंखला की चर्चा हो रही है। हर कोई चाहता है कि क्रिकेट श्रृंखला जीपीएल जैसे बनाए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि लोहे के चने छपाने के बराबर है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। ये गेंद बोटिंग का दृश्य, ये दृश्य बोटिंग का आप देख रहे हैं इस वक्त। बीच में कैमरामैन गेंद को कैमरा को मैदान की ओर ले आ चुके हैं। 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। अजय भट्ट स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। एक गेंद का सामना किया, 1 रन वो बना चुके हैं। आदित्य भट्ट अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर दूर वाली छोर से, आज बैनर छोर से, आज फार्मा एंड से गेंद को लेकर तैयार होने। अब तक 3 रन खर्च करते हुए 1 विकेट उन्होंने अर्जित कर लिया और उस छोर से उनकी गेंद और विकेट ऑन साइड की दिशा में गेंद को हवा में खेल दिया। फील्डर गेंद के नीचे आ गए, घुटनों को झुका लिया, हाथों को आगे कर लिया, हथेली में गेंद को कैद कर दिया। इसी के साथ बैट्समैन आउट। तो अजय आउट होकर पवेलियन लौट गए। थैंक यू डीजे, क्या जबरदस्त धुन। ये दृश्य अगर आप देखें तो आपको विराट कोहली याद आ सकते हैं। क्या जोश के साथ उन्होंने कैच के बाद जो बर्ताव किया, उसे लगता है कि उत्साह उमंग के साथ एक जोशीलापन आपको देखने को मिला। और औसम के बाहर की गेंद जिसको बहुत खूबसूरती के साथ पुल किया था, बड़ा स्मैक लिफ्ट था, स्विंग के साथ गेंद निकलती हुई हवा में तैरती हुई गई, लेकिन फासला कम पड़ गया बाउंड्री लाइन को क्लियर करने का। फील्डर ने गेंद को घुटनों को झुकाकर गेंद को कैच किया और बहुत ही जोश के साथ उत्साह मनाकर उन्होंने दिखा दिया कि उन्होंने कैच टपक दिया। 1 और विकेट उनको मिल चुका है, उनकी टीम को। 8 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आदित्य की 1 और गेंद, 2 शानदार विकेट वो अर्जित कर चुके हैं। घुड़सवारी का दृश्य, आदित्य भट्ट 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। उस छोर से उनकी गेंद आज फार्मा एंड से। तो कार्तिक स्ट्राइक एंड पर है, उन्होंने गेंद को उछाल दिया। 1 और कैच हो सकता है और क्या बात है, गेंद को कैच किया, पीछे की ओर लुढ़क गए, पलट कर अपने आप को संभाल लिया, संतुलन बना दिया। 1 और कैच। थैंक यू डीजे, बड़े जी हाँ उमंग के साथ वो धुन को बजा रहे हैं। थोड़ा सा रुक ले। और एक नन्ना मुन्ना बच्चा जो कि इस वक्त नाचता झूमता हुआ धुन के ऊपर देखने को मिला, बहुत शानदार दृश्य था। वो कैच लाजवाब था। आदित्य को 1 और सफलता मिली। कार्तिक आउट होकर लौट गए इस वक्त, जो कि विशाल स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं।
आदित्य की गेंद फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव कर दिया, कवर, जी हाँ, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक रन लेने का अवसर। बहुत खूबसूरती के साथ कैच को लपक लिया गया था अथर्वा के जरिए। लगभग मिड विकेट डीप में थे, पहले आगे निकल गए, फिर गेंद उनके ऊपर से जा रही थी, पीछे की तरफ झुककर उन्होंने गेंद को कैच कर लिया, पीछे लुढ़क गए, फिर पलटकर अपने शरीर के संतुलन को बनाकर उत्साह मनाया कि उन्होंने कैच लपक लिया है। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, जी हाँ, इस बार वाइड घोषित किया अंपायर ने। आदित्य, जब अच्छी गेंदें चल रही हैं तो उस मोमेंटम को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि अतिरिक्त दिशाहीन गेंदें करने के पश्चात वो कहीं ना कहीं लय जो खो जाए। बहरहाल आदित्य एक और गेंद को लेकर और दो विकेट उनके गेंद। इस बार बहुत अच्छा स्ट्रोक था, योजना के अनुकूल, बिल्कुल सवाल का जवाब उसी अंदाज में दिया जिस तरह से गेंद टिप्पा खाकर मिडल ऑफ स्टंप के लाइन पर आ रही थी। थोड़ा पीछे की तरफ हटते हुए बल्ले से टकराने दिया, कलाई के सारे से गेंद को लगभग पॉइंट के दिशा में मोड़ दिया, एक रन चुराकर अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया, रन 10 पर। यह गेंद ऑन साइड की दिशा में फील्डर के ऊपर से गेंद निकल गई, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन के साथ रन बढ़कर 12 पर 5 विकेटों के नुकसान पर 12 for 5। फ्लडलाइट की रोशनी से मैदान धीरे धीरे नहाता हुआ, दूर आकाश में अलग अलग फासलों पर पंछियां तैरती हुई लहराती हुई दिखाई पड़ रही है। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई। आदित्य 3 विकेट अर्जित कर चुके हैं उस छोर से, एक और विकेट की तलाश में। इस बार धीरे से टकरा दिया आदित्य की इस गेंद को बैट्समैन ने पुश पर कर दिया, फॉलो थ्रू में आदित्य ने खुद गेंद को उठा लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है, तो 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर के समाप्ति पर 12 रन 5 विकेटों के नुकसान पर कोडियाल सुपर किंग्स बना चुका है, पीछा कर रहा है 37 रनों का। और इसे इस पहले पैक के 5वां ओवर। चलो माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनाइए हमारे साथी कमेंटेटर नयन को मैं आमंत्रित करता हूं। और इस वक्त कोडियाल सुपर किंग्स कहा जाए तो थोड़ी नाजुक स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, रन्स कम बने हैं, मुश्किल से बन रहे हैं, विकेट्स 5 गिर चुके हैं, यह दबाव की स्थिति कहा जा सकता है। और राइजिंग स्टार मैंगलोर के गेंदबाजों का क्या कहना, वो दबाव को और मजबूत, ज्यादा दबाव बढ़ाते हुए मैच पर मजबूत पकड़ बना रहे हैं। तो इससे पहले के 5वां और शुरू माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनाने के लिए जी हां सुरेश भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Ajay ji. So very interesting match is going on here between Kodial Super Kings versus Rising Stars Mangalore. 25 more runs required in the remaining 18 balls. They need a run rate of exactly 8.33 per over. 5 wickets have fallen down. 12 runs on the scoreboard. Kodia Super Kings are really struggling now. Prajwal Shana has been brought into attack. That's a very fine delivery there which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper, so no possibility of any run there. The ball pitching on the off stump and batsman Vishal Kamath didn't get the line of the ball. Ball went straight to the wicket keeper's hand. Wicket keeper corrects the ball behind the stumps and the rest of the job is done by the wicket keeper. Once again the ball is in the hands of the bowler Prajwal Shana and he's back to his bowling mark now. On his way to Vishal. Crashing drive to the offside, tremendous shot to the cover point region, but he will have to satisfy with only a single here. There is no possibility of going for the second run. Vishal Kamath gets a single here. With that single, scorecard of Kodia Super Kings now slowly moves on to 13 on the board after losing 5 important wickets. So all the backbones of Kodia Super Kings are already back in the pavilion now. Gautam will have to take the full responsibility of this game on his shoulder now. Let's see what kind of strategy he will adopt. Here is the next ball to Gautam. And the umpire's finger goes up. Gautam is out. The ball takes the leading edge of the bat and wicketkeeper makes no mistake. Caught it beautifully. One more wicket has gone down. Wicket number 6 has fallen down for Kodia Super Kings and they are in trouble now.
15 balls to go, 24 more runs required for Kodial Super Kings to win this match and to get 2 points in their points table here. What a great comeback by Rising Stars of Mangalore team. They had lost their first match yesterday against Udupi Blasters, and this morning they defeated ASKB Bangalore and they have got 2 points now, and this is a must-win situation game here. Ball chipped up in the air, and is out. Prajwal Shedai has picked up one more important wicket here. Wickets are falling like pack of cards for Kodial Super Kings, and they are in deep, deep trouble now. Match is slipping away from the hands of Kodial Super Kings. So brilliant piece of fielding there by Atharva. We will have to really appreciate Atharva because he has taken 3 catches, brilliant catches in this match. And Atharva has become really hero. And Prajwal Shana is on hat-trick now. Can he pick up one more wicket here? Prajwal Shana is the icon player of Rising Stars Mangalore. He's leading from the front, playing a sheet anchor role for his team, Rising Stars. Kodial Super Kings are in big, big trouble now. Runs are really dried up. Things are slowly down. Score remains on 13. They need a run rate of more than 10.2 per over now. Prajwal Shana is on hat-trick. Here is the next ball. Prajwal for the 5th time in this over. From the Puzalan end. Right arm over wicket. Past the umpire. Full toss delivery. The batter played that shot elegantly to the silly mid-off region, and some kind of misunderstanding there between the two batters. Fortunately, he's well home, so no damage done here. That was a full toss delivery, and the batsman wanted to play that shot through the covers. The ball has gone directly to the fielder. Good pace of fielding there by the fielder standing at silly mid-off region. He was very quick and collected the ball and throws it back to the bowler's end. Meanwhile, no runs resulted here. Dot ball there by Prajwal. Prajwal has just conceded only 1 run in this over. Here is the last ball. Prajwal on his way to Rohit. That's again a very fine delivery there which beats the batsman Rohit. The ball went straight to the hands of the wicket keeper, so no possibility of a run there. The ball pitching on the off stump and batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicket keeper collects the ball neatly. That's the end of the over number 5. After the completion of 5 overs, runs on the scoreboard is 13 with 7 wickets down. 37 is the victory target for Kodial Super Kings, and Kodial Super Kings are really struggling now because only 2 more overs to go and they need 24 more runs required. The equation is 24 runs required in the 12 balls. 12 balls to go, 24 runs required. They need some big hits now. Only 3 wickets in hand. As far as the fielding team Rising Stars is concerned, they desperately need wickets. Picking up wicket is key for them. Great comeback by the bowlers as well as all the fielders of Rising Stars Mangalore. Outside the off-stump delivery, room outside the off-stump, crashed away nicely to the covers before the fielder collects the ball. These 2 batsmen had got enough time in completing that single. So Vishwanath, Rohit will take the strike now. Rohit is a newcomer. Vishal is batting on 4. Score moves up to 14 with 7 wickets down. Kodial Super Kings. We come back to Samir Shanbag now. From the Arch Pharma Labs end, batsman gently pushes the ball to the offside, just giving the touch and going for a cheeky single here. Meanwhile, the bowler himself comes across and collects the ball, but before the bowler Samir Shanbag collects the ball, there is ample time for both these 2 batters to cross over for an easy single. With that single, Rohit is off the mark. He opened his account and Vishal will take the strike now. Score slowly moves on to 15 for the loss of 7 wickets. 37 was the victory target. 22 more runs required.
10 balls to go. That ball keeping very, very low, surprised the batsman. The batsman, Vishal, doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball, misses it completely, and wicketkeeper collects the ball behind the stumps, and the rest of the job is done by the wicketkeeper. He returns the ball back to the bowler. Once again, the ball is in the hands of the bowler, Samir Shanbaga, and he will be on his way to Vishal Kamath now. Here is the fourth ball of the sixth over. Samir to Vishal. Well, he goes for a big one. He played the shot in between, long on and long off. But very good presence of mind. Good piece of fielding there. And meanwhile, the batter is out. Kodia Super Kings have lost one more wicket here in the form of run out. What a disaster for their team. The frustration continues here for Kodia Super Kings. This is a great piece of fielding there by the fielder who was standing at long off region. Kaushik, the fielder, was very, very quick, collected the ball and threw it very quickly to the bowler's end. Unfortunately, the batter was short of his ground. Kodia Super Kings have lost one more wicket here at the score of 15 runs. 9 balls to go, 22 runs required. So Kodia Sports Association of Mangalore are organizing this most prestigious cricket tournament for GSB community. 60 different teams have participated, and meanwhile we are in the second day of this tournament. Samir Shanbag continues from the Arch Pharma Labs bench with a long run up, and the man on strike is Vishal Kamath, who is batting on 5 runs. Hello, check. GPL Utsav 2024 ಅಂತ ಆಜಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ अलगी बिझनेस मीट जावचार आसा रात्री तश जावन तुम्ही वॅर करता असल्यारी तुमकां एक बिझनेस मीटांत भाग घेवको जाल्यारी 8:30 घंट्याक बोटिंग झोन अलगी आयल्यारी तुम्ही तांतू भाग घेवयता. तुम्ही खंयचे एक वॅर कोर्नसाची तुमकां तुमगेल वॅर ग्रो करका मस्त रितीर व्हरका विंगडाल ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್का म्हण जाल्यारी आमगेल ಒಟ್ಟು मस्त बिझनेसमॅन आमचेगेल समाजाचे होडोड बिझनेसमॅन जॉइन जाताची तश जावन तुमकां आमी मोगान हे बिझनेस मीटाक आपयतासच. थँक्यू. Well, meanwhile, the umpire has given it to the third umpire. Have a look at the replay here. What a great presence of mind there by the fielder. It was almost going out of the park, and this is a brilliant effort. He stopped that ball, and immediately soon after that, Vignesh Bhatt Mulki takes that catch, and I think the batter will have to move back to the pavilion here. This is outstanding fielding there. Kaustup is the man there who has become the hero by taking that, by saving that. Even though Vignesh collects that catch, we will have to really appreciate Kaustup here because the ball was almost going out of the park and very, very close to the boundary ropes. Kaustup was able to stop that ball and push the ball inside, and soon after that, Vignesh Bhatt comes across and he converted that into an amazing catch. 9th wicket has gone down. Last wicket is in hand now for Kodia Super Kings. Match is slipping away from the hands of Kodia Super Kings now. They are really losing their hopes here. What a great comeback by team Rising Stars Mangalore. 21 runs required. Turned away nicely onto the onside, worked away the ball to the deep square leg region, but they will have to satisfy with only a single here, not more than that. Good over there by Samir Shanbaga. He has considered only 3 runs in that over. 4 runs he has considered, and he picked up one important wicket also. That's the end of the over number 6. So last over to go now. 17 runs on the scoreboard. 37 was the target for the team. That means 20 more runs required for Kodia Super Kings to win this match. Kodia Super Kings needs 20 runs from 6 balls. That means Rising Stars in a driver's seat now. Everything is good going for the team. Match is slipping away from the hands of Kodia Super Kings because 20 runs in 6 balls is a
difficult target in front of Korea Super Kings. Only the tail enders are there for their team. Last wicket is in hand. And I think Vignesh is going to bowl the final over of the innings. Here it goes. That ball kept very, very low. Surprised the batsman. The batsman doesn't know much about delivery. He misses it completely. The pace deceives the batsman. Ball defrausts the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage. And wicketkeeper does the rest of the job. First ball is a dot delivery. 5 balls to go now. 20 runs required for Korea Super Kings to win this match. With a long run up in the right arm round the wicket fashion, Vignesh bows to Rohit. Punched the ball onto the onside, but there was not much of power behind that shot. He played the shot with the loose hands. They have completed the second run as well. Good understanding there, good running between the wickets, but they will have to satisfy with only 2 runs here. The batter wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball properly, not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. He played the shot with the loose hands, and hence the ball went to the long off region. Meanwhile, before Prajwal collects the ball, these 2 batters have completed 2 runs. With those 2 runs, their score now moves on to 19. That means 16 runs away from their victory. He goes for a big one. Ball is in the air, but just falling short of Shamir Shanbag, who was standing at long on region. But Rising Stars Mangalore will not mind unless and until they give away any boundaries or sixes, because everything is good going for the team. Last 3 balls are remaining. 16 runs required. Ball is in the air. I think that's the end of the match. What an amazing, magnificent and deserving victory for Rising Stars Mangalore. In fact, it's a great victory for the team. They have pulled a sensational victory over Korea Super Kings. Unfortunately, Korea Super Kings have lost this match. This was an important match. It was a crucial game for Rising Stars because they had lost their first game yesterday. And in this match, all the players have given immense contribution and they have won the match. What a great victory for Rising Stars Mangalore here. Rising Stars Mangalore have won the match by 15 runs. GPL Utsav 2024 अंदाज रात्री बोटिंग झोना लगी बिझनेस मीट जावचार आसा. आमचेगेल समाजाचे मस्त जन बिझनेसमॅन आमगेलो येवन जॉइन जाताची. तुम्ही खंयचे वेर करता असल्यारी तुमकांय बिझनेस मिटांतू विंगड बिझनेसमॅन कसं सांगताची म्हणून आयकूंक जाल्यार तुम्ही बिझनेस मिटाक येता. 8:30 गंटेका बोटिंग झोना लगी येवन तुमगेल नाव रिजिस्टर करून भितरी बिझनेस मिटा येवन भाग घेता. तुम्ही विंगड वेर करून आसताची जाल्यार आमकां त्या विशयी गोत आसना. तशें जावन तुम्ही आज येवन बिझनेस मिटांत भाग घेतल्यारी भारी एक छंद जाता. तशें जावन उडगासरी तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्स कोणेय हांगा आसल्यारी वेरेली बिझनेसमॅन तांकां हे विशय पावयाच. धन्यवाद. Thank you. So Rising Stars Mangalore have won the match by 15 runs. They have defeated one of the hot favorite team, Korea Super Kings. And now it's time for us to announce the Man of the Match award. The Man of the Match award goes to the bowler Prajwal, who picked up 2 important wickets by just conceding 2 runs in 2 overs. So the Man of the Match award goes to Prajwal Shanai, the icon player of team Rising Stars Mangalore. Well, Prajwal bowled economically well. He has picked up 3 important wickets in 2 overs by just conceding 2 runs. So I would request Prajwal, if you can please come on to the presentation area and collect the Man of the Match award from our chief guest.
Thank you, DJ. So match number 20 of this Arch Pharma Labs GSB Premier League 2024 is going to begin now, which will be played between Vadalanke Fighters of Mulki versus Royal Challengers Ballambettu team. And the news from the center is Vadalanke Fighters have won the toss and they have decided to field first here. Meanwhile, I request the 12th man of RCB team, Royal Challengers Ballambettu team, please send your 12th man to the commentators box. And it's time for us to change the commentary. With me, Mr. Nayan Kumar, who is going to start the commentary in our state language. Thank you very much. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಇದೀಗ ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಸದ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಲ್ಲಂಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಲ್ಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಚಂದ್ರನ ಶುಭಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಆರಂಭವಾಗಲಿ. RCB ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ವಳ್ಳಲಂಕೆ ತಂಡ ನಾಣಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ RCB ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಅಮಯ್ ವರ್ಸಸ್ ವರುಣ್. ಅಮಯ್ ಜೊತೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ವರುಣ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ. ಸುನಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ 2 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಮೈದಾನ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸುನಿತ್ ಭಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮಯ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಷಡ್ಕ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. RCB ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದ ತುಂಬ ಕಾರಣ. ಅಮಯ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಹುಚ್ಚಿದ್ದು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರೆ RCB ಪರವಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಅಮಯ್ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 8ರ ಗಳಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಫೀಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದು ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 8 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 9ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ 1 ಓವರ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಅಮಯ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ವರುಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ RCB ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಭದ್ರವಾದ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. GPL Utsav 2024 ಅಂತ आज रात्री बोटिंग जोन लगी. बोटिंग झोन लगी बिजनेस मीट रात्री 8:30 गंटे तक आरंभ जाता. ओवर टू कमेंट्री.
तशीची आता 7 गंटे दुखून 7:30 गंटे ताई एंट्रन्स लागी अशी तसल एक राम मंदिराचे कलाकृती आम्ही केला थंय आमगेल स्वाम्यान पेटून दिलें तसले अयोध्येचे तीर्थ तुमकां मेळूक आसा तशें जावन तुम्ही राम मंदिराचे कलाकृती आम्ही स्टेज मेन स्टेजा लागी आशिल्ले तसले एंट्रन्सा लागीची आमगेले गोपी भटमाम तुमकां तीर्थ दिताची दयकोर न्हू पुरजनांनी येवन घेवका म्हण आमी निमगून घेता आसाची आनी 5 मिनिटान आरंभ जाता तशें जावन अयोध्येचे तीर्थ तुमकां मेळका म्हूण सांगून काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान आमगेल थंडाक पेटोवन दिलेलो आसा तशें जावन तुमी तें घेवूक राम मंदिराचे कलाकृती लागी येवका म्हणून निमगून घेता आसाची ಬಹುಶಃ ನಾಟ್ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಅಧಿಕೃತವಾದ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. तशीच एक आमकां कारा बिगातू पोण मेळल आसा बोटिंग झोन वचे कडेन आर्च फार्मा लॅबाचे एक एंड आसा क्रिकेट पेविलियन एंड थंय एक काराचे हुंडय काराचे बिगातू पोण मेळल आसा कोणी हाजे ओनर्स असल्यार येवन कलेक्ट करून घेविता. तशीच नेत्रावती हॉला एद्राक लागीची आर्ट एग्जिबिशन अँड सेल जाता आसा आर्टांतू इंट्रस्ट आशिल्ल्यांनी थंय वचून एग्जिबिशन पळयत तशीची सेलांतू भाग घेवीत.
ಎಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೀಗ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು. ಆರಂಭಿಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಬಹುಶಃ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಡಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಸರಿ ಸುನೀತ್, ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ RCB. ಅಮ್ಮಾಯಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಭರವಸೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕವಚ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ RCB ತಂಡ. ಸದ್ಯ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಗೋ ವಲಯದೋರ್ವ ಅದ್ವಿತೀಯ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸದ್ಯ RCB ಪರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವಿರುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಸದ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನೀತ್ ಭಟ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕಗಳು. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 10 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಸಮುದಾಯದ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ 1 ಇಂಚು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಳ್ಳಂಕಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 30 yards ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮುಖೇನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. RCB ತಂಡದ ಮಗದೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಕುದುರೆ ಇದು. ಹೆಸರು ವರುಣ್. ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ IPL ನಲ್ಲಿ RCB ಇರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೊಂದು RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಗಿತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಅಂಕಗಳು. ಡಿಜೆ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಡು ಅದೇ ರಾಗ. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಇದು ವರುಣ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಬಂದಂತ ಸತತ 2ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್. IPL ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಪ್ಪನ್ನು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ RCB ತಂಡ ಮನರಂಜನೆಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಖುಷಿಯನ್ನಂತೂ ಹೇಳ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು RCB ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 22
ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟು ವರುಣ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರ ಹಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಂಡು ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಬೌಲರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಕಾರಣ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 23 ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನಂತೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 23 ಗಳಿಕೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ 4ನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಜಾರಿ. ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ. 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನಂತೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾದದ್ದು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ, ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಬಹುಶಃ ಆ ಗೆರೆ ಏನಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಇದ್ದಂತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದಂಡ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 28. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ದಂಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಇರುವಾಗ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ದಂಡನೆಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವಿರಾಮೇಶ್ ವರುಣ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನತ್ತ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಸದಾವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವರುಣ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 29. 29ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 80ರ ದಶಕದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 80ರ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೋಚಕತೆಗಾಗಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಪಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಅಥವಾ ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ನೇರ ಬಾರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರುವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2 overs ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 29. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 29 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಲ್ಲಂಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ಬಂದಂತಿದೆ. ಕಾರಣ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಅಮೈ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಚಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಚಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವಿದು. ಇದೀಗ RCB ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅತುಲ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿ 8 ಕಾಲರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರಣ ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಳಲಂಕೆ ತಂಡದ ಚಿನ್ನದ ಕುದುರೆ ಇದು. ಕಾರಣ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಡಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಕಳೆದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಟಗಾರ ಆಡುವಂತ ಮಿನುಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅತುಲ್ ಪ್ರಭು ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವರುಣ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ವರುಣ್ ಎದುರಿಸಿದಂತ 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ಅಂಕಗಳನ್ನ. RCB ತಂಡದವರು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವರುಣ್. ಅದೀಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 31ರಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವರುಣ್. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಾರಣ 3ನೇ ಓವರ್ನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. 32ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಅತುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಓರ್ವ ಎಂಥ ಬೌಲರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಳಲಂಕೆ ಡಗೌಟ್ ನಿಂದ ಚೀರಾಟ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 33ರಲ್ಲಿ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 33. ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ RCB ತಂಡ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದು ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. 33ರಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರಣ ಗಡಿಯಾರವನ್ನಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಸಮಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮಯ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ 8 ಕಾಲರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವಾಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಚಂದಮಾಮನ ಶುಭ ಕೋರುವಿಕೆ. ಇದೀಗ ಅತುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆ. ಅತುಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಟ್ಟ ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇರುವ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇದು ಗರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 37ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವರುಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಎದುರಿಸಿದಂತಹ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ವರುಣ್ ದಂಡಿಸಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಷಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೀಗ 38ರಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ವರುಣ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವರುಣ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ
ಇವರು ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈತ. ಮುನ್ನಡೆ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಡಿಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಾದರೆ 39ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಸಾತ್ವಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ಹನಿಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಷಡ್ಕ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ವರುಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಸಾತ್ವಿಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ತಪ್ಪು. ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮುನ್ನೋಟದಲ್ಲಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ವರುಣ್. ಆದರೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಟಗಾರ ಅತುಲ್ ಅವರಿಂದ. ಆ ಕಾರಣ ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 40 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 41 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ RCB ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 41 ಅಂಕವನ್ನ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ವರುಣ್ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವರುಣ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂತು. ಆ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅತುಲ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 41ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैन. और इस छोर से अगेन फजल एंड से और लक्ष्य की ज्यादा बाहर थी, पलटकर खेलने का प्रयास. अंपायर ने कहा कि वाइड है. वाइड के इस रन के साथ रन बढ़कर 41 पर 2 विकेटों के नुकसान पर. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला वोलालंग के फाइटर्स मुल्की का. हालांकि सशक्त गेंदबाजी और बल्लेबाजी का क्रम रखते हैं. इस छोर से ऑन साइड पर क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक. बहुत अच्छी तकनीक के साथ वरुण ने देखा गेंद स्टंप्स की दिशा में आ रही थी. टप्पा खाने के बाद लगभग जांघों तक का उछाल था, उसको ऑन साइड की दिशा में आड़े बल्ले से हॉरिजॉन्टल बल्ले से मोड़ दिया. जब तक फील्डर आ जाते अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया और अतुल प्रभु को जिम्मेदारी सौंपी है. रन 43 पर 2 विकेटों के नुकसान पर. और विघ्नेश भट्ट की अगली गेंद, ये गेंद और बहुत कुछ हुआ, लेकिन जुगनू की तरह टिमटिमाते हुए गिल्लियां माफ कीजिएगा, जो कि स्टंप्स के ऊपर जो है और वो चमकने लगे. विकेट कीपर ने गेंद को उठाकर स्टंप्स की दिशा में थ्रो करने का प्रयास किया और इस दौरान बैट्समैन बच गए और रन अभी भी वहीं पर से रहे. बहुत अच्छी गेंद थी. टिप्पा खाने के बाद स्विंग होकर निकली, बैट्समैन थोड़ा सा आगे निकल गए. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और स्टंप्स की दिशा में थ्रो करने का उनका प्रयास. विघ्नेश भट्ट आक्रमण पर तैयार. फुलर एंड से ये गेंद और स्टंप की ज्यादा बाहर थी, ड्राइव कर दिया गेंद को. कवर क्षेत्र में गेंद में डीप में जा चुकी है, पॉइंट क्षेत्र में माफ कीजिएगा. जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, पर्याप्त समय था दोनों बैट्समैन के पास कि वो दौड़कर 2 रनों को पूरा करें. रन बढ़कर 43 पर 2 विकेटों के नुकसान पर. समय आपको बता दें रात के 7:31 हो चुके हैं और दूर दूर मैदान के बाहर अगर देखा जाए पूरा अंधेरा सा छा चुका है. विघ्नेश भट्ट एक चमकता हुआ सितारा जो कि गेंद को लेकर फजल रन से उनकी गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को पंच किया, खूबसूरत स्ट्रोक प्लेस नहीं कर पाए. पॉइंट क्षेत्र में फील्डर तैनात कर दिया गया ऐसे स्ट्रोक्स को रोकने के लिए.
तो बिडिंग में सबसे ज्यादा बिड में चुने गए विघ्नेश भट्ट, अर्धशतक बनाने वाला वो विघ्नेश भट्ट, जबरदस्त जादूगरी करने वाला विघ्नेश भट्ट फजल ऑन से गेंद को लेकर तैयार, सामने वाले छोर पर अतुल प्रभु 10 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार पुरुष है, आकाश अंधेरों में डूबा हुआ है और दर्शकों की तादाद ज्यादा संख्या में उपस्थित दर्शक इस वक्त शांत होकर स्तब्ध होकर मैच का आनंद उठा रहे हैं। फजल ऑन से एक और गेंद को लेकर तैयार, अतुल स्ट्राइक एंड पर है, क्या योजना बनाते हैं? 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और विकेट लेंथ में ज्यादा थी, लंबाई ज्यादा थी गेंद में, मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थे, उसको ड्राइव कर दिया। अच्छा ऑफ ड्राइव था, जब तक फील्डर गेंद के ऊपर आ जाते हैं आसानी के साथ दोनों बैट्समैन 1 रन को दौड़कर पूरा कर चुके हैं। 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। करंट रन रेट अगर देखा जाए तो 9.52 का औसत इस वक्त चलता हुआ। विघ्नेश भट्ट वरुण को गेंदबाजी करेंगे, क्या योजना बनाते हैं? वरुण थोड़ा सा घूमकर ऑन साइड पर खड़े रहते हैं, मुझे लगता है कि जल्दी ट्रिगर ऑन हो जाते हैं। और विकेट उनके गेंद ऑन साइड पर घुमाकर खेल दिया, लेकिन क्या योजना बनाई है? फील्डर जहां पर ड्राइव लगा वहां पर फील्डर देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। कप्तान और गेंदबाज की जो सूझबूझ है वो बहुत अच्छी है और उस पुल स्ट्रोक को रोकने के लिए फील्डर को तैनात कर दिया गया था। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास, रन बढ़कर 47 पर। 47 for 2 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। 5 ओवर समाप्त हुए, 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। कार्तिक और राघु ब्रह्मावर ऑन फील्ड इस वक्त जिम्मेदारी को निभाते हुए और बड़ा अच्छा माहौल है। दूर दूर आपको दर्शक ही दर्शक देखने को मिलेंगे। इस मैदान के बाहर दूर जो डगआउट्स बनाए गए हैं उसमें वो विश्राम हालांकि इत्मीनान के साथ बैठकर मैच का आनंद ले रहे हैं। खचाखच भरे हुए दर्शक, जीपीएल 2024 से क्रिकेट का महोत्सव चलता हुआ। कैमरामैन तैयार है हर उस दृश्य को कैप्चर करने के लिए, जबकि विकेटों के पीछे शरत अपने फील्डरों को थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं कि कहां पर किस फील्डर को रहना चाहिए। और ऐसे में गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है। पहली बार पंचम भट्ट को ला रहे हैं दूर वाले छोर से आक्रमण पर, वो आर्च फॉर्मेट से गेंद करेंगे। उनकी गेंद हवा में, गेंद को उछाल दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद होता भी नहीं तो कैच पकड़ नहीं सकता था। गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। डीजे क्या करारा स्ट्रोक है, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी गेंद, एक बड़ा बैकलिफ्ट था, एक बड़े स्विंग के साथ लपेट कर गेंद को कौसों दूर बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शक दीर्घाव में भेज दिया 6 रनों के लिए। और इस कैच लपकने के प्रयास में दर्शक थोड़ा सा गिर गए, ये गेंद हवा में खेल दिया, इस बार कैच हो सकता। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे, क्या वो गेंद को कैच कर पाएंगे? हाँ, उन्होंने कर लिया कैच, शानदार कैच। इस कैच के साथ ही एक और विकेट गिर चुका है। वरुण आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। जबरदस्त छक्का जड़ने के बाद एक और स्लॉग स्वीप के अंदाज में गेंद को उन्होंने उछाल दिया था, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा ऊंची उठी, फ्लैट शॉट होता तो बात बनती। फील्डर गेंद के नीचे आ गया और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन। तो ध्वज लहराते हुए वो दर्शक दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े आनंदित हैं और इस माहौल में अपना योगदान दे रहे हैं। जी हां, बल्लेबाजों से अनुरोध है थोड़ा सा जल्दी करें। 8:15 या लगभग 8:30 के अंदर ये मैच अगर समाप्त होता है तो स्टेज कार्यक्रम अभी बहुत बाकी है और इसीलिए आयोजनकर्ताओं की तरफ से अनुरोध किया गया कि वो अंपायर से भी अनुरोध करें कि वो थोड़ा खेल को जल्दी जारी रखें। तो इस प्रकार जी हां, चीयर बेबीज हमारे पास मौजूद हैं, क्या बात है। 2 नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत खूबसूरती के साथ नृत्य कर रही है और इधर उधर उछल कूद करते हुए जिम्नास्टिक का दृश्य भी आपको देखने को मिल रहा है। खूबसूरती के साथ वो धुन पर नाचेंगी। हालांकि धुन बजाने वाले हमारे डीजे इस वक्त थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं जा चुके हैं, अगर कोई हो तो उनको बुला लें, शानदार नंबर 100 लगा लें। और रेस मैच आरसीबी 53 for 3, चौथा जी नहीं छठा ओवर प्रगति पर है। दूर वाले छोर से
और इस बार ये गेंद बीट कर गई बैट्समैन को, पंचम भटकी ये गेंद, लेग बाय का संकेत राघु वर्मावर जी ने किया और बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी की बात है, बहुत अच्छा मौका हो सकता था अतुल के पास कि वो गेंद को ऑन साइड पर घुमाकर खेलें। गेंद में काफी धीमापन था, उस धीमे गेंद को वो खेलने के लिए जी हाँ लपेट कर खेलना चाहते थे, मिस कर गए और फिर अपने आप को शायद कहीं ना कहीं मन ही मन कोस रहे होंगे। एक रन लेग बाय के रूप में, रन्स बढ़कर 54 for 3, 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, छठा ओवर प्रगति पर है। दूर छोर से पंचम भट्ट आर्च फार्मा एंड से गेंद को लेकर दोबारा तैयार हो रहे हैं। विकेट उनकी गेंद इस बार लॉफ कर दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे नहीं आ पाएंगे, गेंद दर्शक की दिशा में गई, दर्शक दीर्घाव में 6 रनों के लिए जीपीएल का जबरदस्त सिक्सर। थैंक यू डीजे, थैंक यू। स्मिथ तैयार हो गए शानदार धुन बजाने के लिए और रिप्ले में देखा जा सकता है कि किस तरह से वो गेंद की गई थी, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, उस गेंद को क्या जबरदस्त पावरफुल स्ट्रोक लगाया बैट्समैन ने, बैटर ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर लुढ़क गई 6 रनों के लिए। उस छोर से पंचम दोबारा तैयार हो रहे हैं, उनकी एक और गेंद हवा में, विकेट कीपर शरत, ऐसा मौका क्या गवाने देंगे, जाने देंगे, उन्होंने गेंद को कैच तो कर लिया, अब कैच है या नहीं देखने वाली बात होगी, स्टंप्स की दिशा में थ्रो कर दिया। दोनों बैट्समैन जी नहीं, दोनों का माफ कीजिएगा, दोनों अंपायर जो कि इस वक्त चर्चा में वो देखना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है, इस वजह से उन्होंने संकेत किया तीसरे अंपायर की ओर। तीसरे अंपायर की ओर वो संकेत कर रहे हैं, शायद कॉट बिहाइंड के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो बॉल के लिए। जी हाँ, अबाउट द वेस्ट का संकेत उन्होंने किया, कमर से ऊंची उठी हुई गेंद जो फुल टॉस थी, बीमर थी, आमतौर पर उस गेंद को नो बॉल करार दिया जाता है, इस वजह से दोनों, हालांकि यहां पर जो तीसरे अंपायर है वो इस वक्त कैप्चर किए गए दृश्यों को देखेंगे, रिप्ले में फिर अंदाजा लगाएंगे, हालांकि उनका अनुभव झोंकेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या ये नो बॉल थी या नहीं। 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और डीजे स्मिथ इस वक्त धड़कनों की धुन बजा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी इस धुन की आवश्यकता न होगी क्योंकि ये आउट का संकेत नहीं है, इस वक्त सिर्फ नो बॉल को चेक करने के लिए अंपायर ने तीसरे अंपायर को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अतुल प्रभु 17 पर 11 गेंदों का सामना उन्होंने किया, गौतम पै ने 1 रन बनाए, 1 गेंद का सामना उन्होंने किया है। सारे फील्डर्स मैदान पर, सारे खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों अंपायरों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि पहले चेक करते हैं कि गेंद नो बॉल थी या नहीं, उसके बाद वो शायद निर्णय लेंगे। साठ रन कुल मिलाकर 3 विकेटों के नुकसान पर 10.59 का औसत इस वक्त चल रहा है।
तो इस प्रकार अंपायर ने कहा कि बैट्समैन आउट है। जी हाँ, तो ये एक बहुमूल्य विकेट गिर चुका है। बैट्समैन अतुल आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 60 रन कुल मिलाकर 3 विकेटों के नुकसान पर अतुल प्रभु आउट होकर लौट गए। बीमर थी, हालांकि दुविधा में पड़ गए, लेकिन अंपायर ने देखा कि बैट्समैन थोड़ा सा बैटर क्रीज के बाहर निकल आ चुका है। लोअर फुल टॉस थी, लगभग कमर तक ऊंचाई, जिसको अपने अनुभव को झोंकते हुए देखा कि बैट्समैन बैटर क्रीज के थोड़ा सा बाहर निकल आ गया है। इस वजह से फेयर डिलीवरी कहीं ना कहीं अंपायर ने यह नतीजा निकाला। जी हाँ, झुक गए हुए थे और बिल्कुल सही। उस छोर से गेंद इस बार उछालने का प्रयास और बल्ले से लगी विकेट कीपर शरद झपट पड़े गेंद के ऊपर और रन देने का अवसर नहीं। तो बैट्समैन के घुटने थोड़े झुके हुए थे, क्या बात है। और इसको देखते हुए बहुत बारीकी से मुआयना किया अंपायर ने, श्रीनिकेत जी ने। तीसरे अंपायर का जो जिम्मा होता है, दूध का दूध और पानी का पानी करना जरूरी है। और इस वजह से देखा कि बैट्समैन बैटर का घुटना जो कि झुका हुआ था, उस गेंद को जब डिलीवर करते हुए गेंद उनके पास आई थी और उस वजह से उन्होंने इस गेंद को फेयर डिलीवरी करार दिया और बैट्समैन आउट हो गए। 60 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 7वां और आखिरी ओवर इस वक्त शुरू होने जा रहा है। और रात के 7:45 हो चुके हैं। अभी भी वातावरण शांत होकर, क्या खूबसूरत दृश्य है। धरती पर एक चांद उगाया हुआ है, यानी कि सह्याद्री महाविद्यालय का ये दृश्य बिल्कुल धरती पर चांद उगाने वाला दृश्य देखने को मिल रहा है। फ्लडलाइट की दूध और रोशनी में, सुनहरी रोशनी में मैदान जगमगा रहा है। और दूर दूर जो डगआउट्स बनाए गए, जिसमें खचाखच दर्शक भरे हुए हैं और कहीं और जुगनू की तरह टिमटिमाती हुई वो एलईडी लाइट्स दिखाई पड़ रहे हैं। इस छोर से ये गेंद ओवर द विकेट, फजल और एनसी ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। गेंद वाइड घोषित किया कार्तिक जी ने। बहुत ज्यादा दिशाहीन गेंद थी, बहुत ज्यादा बाहर निकल गई। थैंक यू। इस चोर से सात्विक गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। और विकेट पलटकर उछालने का प्रयास, स्विच हिट करना चाहते थे, चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। सात्विक की ये गेंद और गौतम पै ने पलटकर गेंद को स्विच हिट करने का प्रयास किया, चूक गए, बच गए। कमेंट्री बॉक्स के बगल में आइए आपको याद दिला दें, और गोपी भट्ट जी की तरफ से ये संदेश आया है। पहले इस गेंद पर आते हैं। सात्विक गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। फजल और एनसी ये गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद थी और गिल्लियां बिल्कुल चमकने लगी, जुगनू की तरह टिमटिमाने लगी। बैट्समैन आउट हो गए। यू मिस मी, आई हिट यू। क्या बात है, क्या गेंद, जबरदस्त सात्विक की ये गेंद। और ब्लॉक होल में डालना चाहते थे, कुछ ज्यादा आगे निकली और बैट्समैन चारों खाने चित हो गए। पलटकर घूमकर गेंद को खेलने के प्रयास में बोल्ड हो गए। तो आइए उन सारे भक्तों के लिए जो इस वक्त यहां पर विराज चुके हैं, उनसे जी हाँ, गोपी जी ने खास तौर पर ये निवेदन किया है कि अयोध्या श्री राम मंदिर का तीर्थ जिसे कहते हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। जो दर्शक वो उसे लेना चाहते हैं, कृपया आकर कमेंट्री बॉक्स के बगल में उसे रखा गया है, आकर सभी वो भक्तगण आकर उसे ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। इस छोर से ये गेंद फुल टॉस थी, हवा में गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और उनके हाथ से छूट गई है। क्या मौका हो सकता था, एक और शानदार विकेट गिर सकता था। स्ट्राइकर की दिशा में दोबारा थ्रो हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि विकेट कीपर गेंद को गैदर कर पाते,
बैट्समैन ने रन दौड़कर पूरा कर लिया। रिप्ले में दोबारा दिखा रहे हैं किस तरह से गेंद बहुत ज्यादा ऊंची उठी थी, स्ट्रोक खेला गया, गगनचुंबी स्ट्रोक था, फील्डर गेंद के नीचे आ गए लेकिन उस गेंद को हथेली में कैद नहीं कर पाए, उनके हाथ से गेंद छूट गई और फिर इस दौरान 3 रन्स बटोर लिए बैट्समैन बैटर्स ने। 64 रन कुल मिलाकर 5 विकेटों के नुकसान पर। इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद फजल नाइन से सात्विक गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। 3 गेंदें शेष बची हैं इस ओवर में। स्ट्राइक एंड पर केदार कुड़वा आ चुके हैं, अभी अपना खाता नहीं खोल पाए। पहली गेंद का सामना कर चुके हैं, दूसरी गेंद का वो सामना इस वक्त करने के लिए जा रहे हैं। फजल नाइन से उनकी गेंद, सात्विक की गेंद माफ कीजिएगा, विद विकेट। इस बार उछालने का प्रयास किया, शायद उनके बल्ले से लगी, फिर स्टंप्स पर जाकर टकराई, फिर वो आधुनिक गिल्लियां चमकने लगी और ऐसे के साथ एक और विकेट का पतन हो चुका है। क्या बात है। Thank you, DJ, thank you, DJ, thank you. 64 for 6, 64 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। इस छोर से गेंद और उछालने का प्रयास, गेंद गई नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में, थ्रो हो चुका है लेकिन फील्डर बैकअप कर रहे थे, उन्होंने गेंद को समेट लिया। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 65 पर 6 विकेटों के नुकसान पर 65 for 6। आखिरी गेंद शेष बचा हुआ। तो भक्तगण गेंद के लिए जो भक्तगण यहां पर मौजूद हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, कमेंटेटर बॉक्स के बगल में आप वो पवित्र तीर्थ जल जिसे कहते हैं अयोध्या श्री राम मंदिर का आपको प्राप्त हो सकता है। एक एक करके आप ले सकते हैं, यहां पे स्वीकार कर सकते हैं। इस छोर पर आखिरी गेंद को लेकर आ रहे हैं सात्विक। 7वें ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक एंड पर सत्य प्रभु, फुल टॉस थी, उछाल दिया गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, मिड विकेट पर उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही 7वें विकेट का पतन हो चुका है। अच्छा मौका हो सकता था लेकिन मिस कर गए इस मौके को, सीधे फील्डर की दिशा में उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। जी हाँ, तो अंपायर, दोनों अंपायर वहां पर मौजूद हैं पिच में। कृपया जल्दी करें,
मैदान पर सारे फील्डरों से अनुरोध है कि वो मैदान पर उतर जाएं और दोनों बल्लेबाजों का इंतजार, वो भी जल्दी जल्दी उतरें। जीपीएल उत्सव 2024 चल रहा है, दूसरी पारी शुरू होने जा रही है और इससे पहले कि दूसरी पारी शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे के विवरण सुनाने के लिए अंग्रेजी में सुरेश भट्ट जी से अनुरोध करता हूं। इलेक्ट्रिशियन कृपया ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिशियन कहीं पर हो यहां पर आइएगा प्लीज। तो आइए आगे के विवरण सुनाने के लिए अंग्रेजी में सुरेश भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है। थँक यू अजयजी. अंगशिला सक्कड विवर्सरागी एक विज्ञापन कमेंट्री बॉक्साच्या सायडाक अयोध्ये श्री राम मंदिराच्या तीर्थ दित सती गोपी भट मामालागे तुम्ही पुराणाने येऊन हांगा स्वीकार करूयेत. अयोध्ये श्री राम मंदिराच्या पवित्र जावन आशिल्ल्या तीर्थ सक्कड जनांकय मेळता. तुम्ही हांगा कमेंट्री बॉक्साला मागशे आशिल्ले एक त्या रामचंद्राला भावचित्र स थंय येवन गोपी भट मामा लागी त्या तीर्थ स्वीकार करूयेत. तशींच इलेक्ट्रिशियन्स थंय कोरून थंय पैसेल्स सुजुकीच्या एवेनिस बाईक आसा थंय येवन त्या ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕೊರಕ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೈಸೆಲ್ ಸುಜುಕಿ ಹತ್ರ ಇರುವ ಎವೆನಿಸ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 66 is a victory target for Varalanke fighters to win this match of 7 overs. That means they need a run rate of more than 9 per over. 9.43 per over is the required run rate for Varalanke fighters Mulki. And meanwhile, the two openers of Varalanke fighters are already in the middle. Left-handed batter Vignesh Bhatt is on strike. Ashwin will be the non-strikers. And the opener bowler for Royal Challengers Ballambittu will be Vikrant, a right-arm medium-face bowler. Vikrant is going to bowl the first over of the innings and he will be operating his over from the Puzalana edge. So everything seems to be ready here. We have the green signal there by the umpire and here is the first delivery of the first over now. Left-hander Vignesh, after taking guard from the umpire, is all set to face the bowler. LED ಬೋರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ LED ಬೋರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. So terrific atmosphere here today at Sahyadri College ground. So you are watching Arch Pharma Labs GPL Trophy 2024 third round match is going on here between RCB versus Varalanke fighters Mulki. Vikrant for the first time in this over. Some problem for Vikrant during his bowling run up and he's moving back to his bowling mark here. Left-handed batter Vignesh is on strike. Mangalore दक्षिण क्षेत्राचे शासकीय प्रतिनिधी आमचे फुटबॉल स्पोर्ट्स असोसिएशन आपल्या गाडीचं सपोर्ट करणारे श्री दी वेदव्यास काउंट झालेले जोर फ्लॅग्स मास मुखांतर पूर्ण जणांना स्वागत करूया. त्यांना मोगाना वेदिकेवर येऊन म्हणून निमंत्रण देतात. So Vignesh played that shot to the offside region and he picked up a single easily here. With that single, Vignesh is straight away off the mark. He opened his account and Ashwin will take the strike now. The meantime, we watch Vikrant to bowl the second over of the innings and he's making some change in the field placement here for the right-handed batter Ashwin. Steers it down to third man region. Ball is going down to the fielder at third man. But before the fielder collects the ball, there is ample time for Ashwin to pick up a single here. Vignesh Bhatt was very quick. So they've got a single here comfortably. With that single, Ashwin is off the mark. He opened his account. So both the openers have opened their account here.
We come back to Vikrant here. एक अनाउन्समेंट ते ॲडव्हर्टायझिंग बोर्डचा मुखार बशिल्ल्यान दैकोन भायर बसुका बाउंड्री लायना लागीं बसचेनच ॲडव्हर्टायझिंग बोर्डचा मागशी बसून सहकार दिवका म्हणून तुमगे लागीं ऑर्गनायझर्स रिक्वेस्ट करता आसत. Vikrant once again ready to bowl the next delivery for the fourth time in this over. On his way to the left-hander Vignesh Bhatt, an explosive batsman. Vignesh punches the ball onto the outside. Ball is in the air, and I think Vignesh is out. What a great piece of catch taken by the fielder there. Amay is the fielder. Brilliant piece of fielding. Very, very good presence of mind. And you can't do anything whenever you have got fielders with such a good presence of mind. Have a look at the replay in the television screen. The ball was about to fall just in front of Amay, but Amay caught it beautifully here. That's really a brilliant piece of fielding there by Amay. Vignesh Bhatt is not at all happy with that. So Vadalanke Fighters Mulki have lost the vital wicket, the backbone of their team, the key player of their side. Vignesh will have to move back to the pavilion here. Vadalanke Fighters have lost the trump card of their team. The key man, Vignesh, is out for one. Brilliant piece of fielding there by Amay. And this is a big, big blow for team Vadalanke Fighters Mulki. There is a LED screen in the ground. You can see what kind of catch it was. Amazing catch. Amay kept his eyes on the ball, diving to his front, almost jumping like a bird, caught it beautifully. And this is going to be one of the best catch of this tournament. Terrific atmosphere here today at Sahyadri College ground. Crowd is more than expected. We can see some colorful advertising boards, colorful flags all around the ground. And we are thankful to those who have supported us in giving these kinds of advertising boards. And we are also thankful to our donors who have made this tournament a grand success. And we hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. So umpire says Vignesh is out. After checking with the third umpire, umpire's finger goes up. So Vignesh will have to move back to the pavilion here. What a disaster for team Vadalanke Fighters. Vadalanke Fighters have already played 2 matches so far in this tournament. And they have won both the matches. And this is the third match for them. Whereas RCB has lost 1 game yesterday. Now this is a must-win game for RCB, and great comeback by the batters of RCB. And meantime, the fielders are also very, very smart. And the new man in is Sharat Prabhu. Converted that into full toss, played elegantly onto the onside. The ball is going to the fielder at long on region. Fielder comes across and collects the ball, but before the fielder collects the ball, there is ample time for Sharat to pick up a single. With that single, Sharat is off the mark. He opened his account. Score slowly moves on to 3 now. Lot of responsibility on Sharat Prabhu now. Turned away nicely onto the onside, worked away the ball to the mid-wicket region. The fielder from the deep mid-wicket region comes across and collects the ball and returns the ball to the bowler's end. But before the throw reaches the bowler, there is ample time for both these 2 batters to cross over for an easy single. So one more single has been added to the total of Vadalanke Fighters
Mulki, that's a pretty good over there by Vikrant, conceded only 4 runs in that power play over, and he was able to pick up one vital wicket also. So after the completion of first over, runs on the scoreboard is 4 with 1 wicket down, Varalanke Fighters Mulki. Kodiyal Sports Association of Mangalore are organizing this most prestigious cricket tournament for GSB Samaja Bandhava. 16 different teams are participating in this particular tournament, and the winners of this tournament will fetch a cash prize with an attractive GPL trophy, and at the same time the runners-up team will also get runner-up trophy. And not only this, along with this there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series and man of the match. Ball is up in the air, it could be out, the fielder is underneath it. Oh my goodness! The ball slipped away from the hands of the fielder. He has put down that catch. The fielder was not able to keep his eyes on the ball. A big reprieve for batter Ashwin here. Very, very lucky indeed, and he has got a good life here. Atul is the bowler there. Operating is over from the Arch Pharma Labs end. The icon player of RCB. Atul, basically a player from Kumta. Straight down the ground he played. Sharath played that shot all along the carpet. Driven it beautifully, elegantly to the mid-on region. And Sharath picks up a single here. As I mentioned earlier, Varalanke Fighters have lost their first wicket early in their innings. So they shouldn't lose any more wickets. They must keep their wicket intact. Played the shot over the head of the fielder, and once again the same fielder has dropped it. Sumit, the fielder, drops that catch for the second time in this over. So 2 big lives for the batter Ashwin here. The bowler is not happy with that. In fact, the entire team is not happy, because each catches are very, very important. As we all know, catches wins matches. So you have to be ready to take all kinds of catches. But unfortunately, he has put down that catch. So 7 runs on the scoreboard for the loss of 1 wicket. That's a very fine delivery. They are pitching right in the block hole at the batsman. Sharath Prabhu played it defensively forward, giving full respect to that delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there, and the ball went straight to the bowler. Good piece of fielding off his own bowling, followed through and picks up the ball. So no runs resulted. Score remains on 7. Converted that into full toss, but Sharath Prabhu didn't want to take any risk, so he couldn't take the advantage of that juicy full toss. Just taps the ball to the mid-on region. The fielder from the long-on region collects the ball. Meanwhile, Sharath gets a single. Sharath's individual score now moves on to 3, and Ashwin, the opener batsman, is batting on 4 after facing 4 balls. Runs on the scoreboard is 8. He played the shot through the covers. Lovely cover drive. Excellent shot. Crashed away nicely through the covers. Tremendous shot over the deep extra cover region. Meanwhile, a good piece of fielding there by the fielder. So Vikrant was the fielder that stopped that ball almost very close to the boundary ropes. Otherwise the ball would have been gone for the boundary ropes here. Definitely he has saved a couple of runs for his team. So a couple of runs have been added to the total. I think that's the end of the over number 2. After the completion of 2 overs, Varalanke Fighters are now 10 for the loss of 1 wicket. $56 more runs required for Varalanke Fighters to win this match in 5 overs. Anything may happen here, because cricket is called an unpredictable game. So everything depends on Sharath Prabhu now. Sharath Prabhu is called as a superstar of GSB cricket history. Varalanke Fighters were the winners of GPL 2022
And before that, in 2019, they were the runner-up team. And as far as Royal Challengers Balambittu team is concerned, they had got the runner-up trophy last year. Now this is going to be a very good contest here. We can all expect a nail-biting finish match for this. Satya Prabhu is the new bowler. Once again, very intelligent cricket there by Sharat Prabhu. Played the shot all around the carpet, drives the ball to the offside region towards the mid-off, and meanwhile the fielder collects the ball. Sharat gets a single. 11 runs with 1 wicket down after 2.1 overs. Varalanke Fighters Mulki. The meantime, watch Satya for the second time in this over with a short runner. Bounce this one. That's a very fine delivery there. That ball keeping very, very low, and I think it's out. Umpire's finger goes up. That ball kept low, and the batter wanted to play the ball onto the onside, but the ball takes the leading edge of the bat, and wicketkeeper makes no mistake here. Caught it beautifully. Second wicket has gone down for Varalanke Fighters Mulki. Ashwin is back in the pavilion, and Varalanke Fighters are in trouble now. The final match of this Arch Pharma Labs GPL trophy will be played tomorrow after 8 o'clock in the evening. We'll have to wait and see which team is going to clinch this trophy to become the champions of GPL 2024. In fact, this is the 8th season of GSB Premier League. The man of the series player will be awarded with an attractive two-wheeler Suzuki Avenis bike, which is being sponsored by Pi Sales of Suzuki. Sunit Bhatt is a newcomer. He has come out to the center to join with Sharat Prabhu now. 11 runs on the scoreboard for Varalanke Fighters Mulki for the loss of 2 wickets. Satya Prabhu continues. Very successful bowler who has picked up that important wicket of Ashwin. Now is on his way to the newcomer Sunit. Outside the off-stump delivery, that was again a similar delivery there. Meanwhile, the ball went straight to the hands of the wicket-keeper. Wicket-keeper collects the ball behind the stumps, so no runs resulted. Dot delivery there by Satya. We come back to Satya for the 4th time in this over with a short run-up. This time again a loud appeal, and umpire's finger goes up. Umpire has no hesitation in raising his finger. One more wicket has fallen down for Varalanke Fighters. Wickets are falling like pack of cards for Varalanke Fighters. So after the dismissal of Vignesh Bhatt, things are slowly down. Runs are dried up for Varalanke Fighters. The batters of RCB team played very well. Especially we will have to appreciate the batting performance of Varun Shanbag, who contributed 30 runs with the help of astonishing knock of 30 runs from the bat of Varun Shanbag. RCB were able to reach this respectable target, and chasing this target of So chasing a target of 66, Varalanke Fighters are struggling now. Loud appeal once again, loud shout for leg before the wicket by the bowler. But I think the ball was clearly missing the off stumps there, so no damage done. Meanwhile, the batter gets a single here. Subhas Prabhu is the newcomer, and he opened his account. So Suhas Prabhu and Sharat Prabhu are the two brothers out there in the middle. Sharat Prabhu is on strike, the icon player of Varalanke Fighters Mulki. And Suhas, the elder brother, is at the non-striker's end. Full toss, played elegantly, nicely at long on. The fielder from the long on region comes in and collects the ball, but before the fielder collects the ball, the batter Sharat Prabhu gets a single here. That's the end of the over number 3
after the completion of 3 overs. It is 13 with 3 wickets down. Volalanke Fighters Mulki are playing against Royal Challengers Balambettu. Now 53 more runs required in remaining 4 overs. 24 balls to go. 53 runs required for Volalanke Fighters Mulki. That means they will have to go for big hits now. They desperately need some boundaries or sixers in order to accelerate their score. Let's see what is going to happen, who is going to win this match. Meanwhile, changing the bowling position here, at the same time changing the commentary position as well. And for further commentary, we have got Mr. Satish with us in the commentary box, who is going to proceed the further commentary. Thank you very much. Thank you so much, Suresh Bhatji. And 13 for the loss of 3 wicket. Struggle time continues here for Volalanke Mulki. Nicely played that one by the horizontal bat down to deep third man reach, and they're looking for the second. Difficult to get the second there, and both the batters have managed to complete the single there. 14 for the loss of 3 wicket. Chasing a total score of 66 to win this match. And Volalanke looks like they are in trouble because they not only lost to 3 wickets, but asking run rate is really going to be a big headache here for the chasing team, because it's climbing up to more than 13 runs per hour here on out. But having Sharath Prabhu in the middle, definitely they got a last hope of winning this match from the far end. Atul Prabhu, looks like the batter Suhas Prabhu just wanted to tie his lace, so that he's not ready to face the ball. So the bowler going back to his bowling mark from the Netravati river end. Right arm over the wicket. This was a lovely delivery outside the line of off time, but looks like the ball is just coming inside the line of the delivery. After that ball pitched almost on the off volley, the batsman couldn't manage to take the advantage of that delivery, and that's going to be a dotted delivery. Each and every dot ball will going to create the problem for the team Volalanke Fighters. Of course, then they need to justify the name why they got fighters. They need to fight back strongly. And from the far end, Atul Prabhu. Right above, okay, the full toss delivery, and a little bit misfilled by the fielder at a short extra cover region. But there is a backup in the deep extra cover region, so that Suhas Prabhu managed to complete that single. 15 for the loss of 3 wicket. Now Sharath Prabhu back on strike. So far he's so cool and so calm. He just wanted to get his eye in. So far he's batting on 6 by facing 7 deliveries. But he's a key player, and he's a very dangerous player as far as opposition is concerned. The man who's got a lot of success in the GPL, the winning 2 consecutive man of the series, 2-wheelers, and he will go into face from the far end. Atul Prabhu, right above the wicket, cuts that one off the backward down to short third man region. Just wanted to know what kind of strategy from Sharath Prabhu. He's just waiting for the loose delivery so far, and they're just playing a waiting game here. But he need to get some support from other end. That's a big problem here for Volalanke Fighters, that wickets are tumbling in a frequent intervals. So that's why very hard to combine the runs against a disciplined bowling performance. Atul Boss nicely plays it down to cover point region. This is a sensible batting which is required in the early stage of the innings. Of course, chasing a 66, definitely need to take some initiative of getting a big shots in the beginning. But if you are not able to get the big shot, at least you need to look for the rotation of the strike, and so that the scoreboard is keep ticking. Otherwise, the dotted deliveries, economical overs will going to create the problem for the chasing team. Atul Boss, nice looking drive down to deep long off region. In fact, it's into mid off region. Before that, fielder from short mid off to run across its right. Ample time for the batter to complete the single. Both the batters are dealing with the single, even though it is over number 4, which is comes to an end. 4 overs completed, chasing at 66 to win this match. 18 for the loss of 3 wicket. Still, team Volalanke Fighters Mulki searching for the right track, struggling in the middle. And you are watching absolutely fantastic GPL 2024 edition 8 in this most beautiful Sahyadri Engineering Cricket Ground here in Adyar. So, jam-packed stadium out here in this most beautiful venue, and this is what shows the popularity of GPL, isn't it? Each and everyone, they are really keen to come here and enjoy the game of cricket. Along with they are going to enjoy the game of cricket. This is the only one stadium you can enjoy simultaneously cricket as well as the beauty of the nature. And this is one of the most beautiful cricket ground situated here in South Kendra district. 18 for the loss of 3 wicket.
After this match, there will be inaugural ceremony of this prestigious cricket tournament. We have already dignitaries in our main stage. Respected MLA Vedivas Kamath already arrived here, is enjoying the game of cricket. So Sumakpi brought into attack from the commentary box and bowling right arm over the wicket to the Sharat Prabhu. This time Sharat Prabhu, what we are talking about, he's just waiting for the loose delivery. He's just playing the waiting game. This is what Sharat Prabhu is all about. He is such a good striker of the ball. Have a look at the position he took very quickly. Nothing much wrong with the delivery. Just like a left-hand batsman hitting the shot down to deep square, deep backward point boundary for us youth 6. That will going to give some kind of oxygen here for the supporters of Valalanki Fighters. Have a look at the dugout now. Because of that 6, they are alive. Valalanki are still not given up this match. 24 for the loss of 3 wickets. Sharat Prabhu at last waiting, and he just sending the messages that strong message for the opposition. He is not given up this match. Bowling right arm. Over the wicket to Sharat Prabhu. Sharat this time wanted to tap the ball in front of the field. Oh, bowler is it's a stump, but I think the batsman should be safe in the Tigers' end. Risky run, but the risk is a part of cricket. Without taking risk, I think it's very difficult for team Valalanki to win this match. Have a look at it on the replay. Just taps the ball in front of bowler, and a very good response coming from his brother Suhas Prabhu. They got a very good understanding. I think he's the brother. Yes, certainly they are having a more as understanding, the brothers, and because of their very good understanding, they managed to complete that quick single and risky single. 25 for the loss of 3 wicket. Again, the bowler seeming away from us. Right arm over the wicket time. After that, Sharat Prabhu went for the switch it, got a success. Now his brother Suhas Prabhu trying for the switch it, but this is a clever thinking from the bowler's point of view. Sumak bowled that one little bit wrong line. In fact, he bowled outside the line of leg stump so that he can defeat the bat of Suhas Prabhu, and he succeeded. Good comeback from the bowler's point of view after he conceded 6. I bowled 2 very good deliveries, and that's what the bowlers need to do. Comeback is very, very important. One more delivery which is almost in the block hole. The ball just certainly going to miss the leg stump. Umpire just suggesting umpire Dinesh Acharya as well as umpire Shriniket, the 2 umpires out there in the middle as a field umpires. So far done a great job, all 4 umpires, for the success of this cricket tournament in the 2 days of cricket. This is day number 2 is in progress. After this still 4 matches remaining. 26 for the loss of 3 wicket. Required run is really climbing up. It's 17.14 runs per hour. Badly required on or 2 big shots. Here we go. Again, lovely delivery indeed. Batsman just making room to play the shot. Picked up a single down to backward point region, and with that single scored moves on to 27 for the loss of 3 wicket. That means in remaining 2 overs, Valalanki Fighters have to get 39 runs, I think so. Yes, 39. Yes, 39 runs required in 2 overs, and 2.1 overs. 13 balls remaining. They need to get a huge amount of runs, 39. That means they needed some big hits straight away. Suhas Prabhu is on strike. There's a fielder at square leg, 1 fielder down at deep square leg, 1 fielder down at mid wicket and long on. Long off is their short cover point, short extra cover, deep backward point, the fielders in the offside region. This time Suhas Prabhu wanted to go for the switch it, but not quite getting hold of that stroke properly. A fantastic piece of fielding there by the fielder. The fielding of team the fielding team absolutely fantastic so far. One outstanding catch which is taken in the beginning of this innings. And Royals Challengers Balambetto making things a little bit harder here now. 2 overs remaining. And they need to get 38 runs to win this match, and asking run rate climbing up exactly 19 runs per over. This is maybe the big problem. The 19 runs per over required run rate, especially under the floodlight, it's a big ask, but not impossible in cricket. You can't say anything in cricket. The cricket is a game of glorious uncertainty. Anything can be possible in the present cricket. Just knock the tee from count, then you can. That is what these 2 batters have to believe with their strength. Of course, having 2 brothers are in the middle, this can be achievable. For that,
brave and gutsy batting badly required from these two batter. But so far, I think Royal Challengers Balambeto, they are absolutely in a driver's seat of winning this match. Unless and until these two batsmen definitely if he fails to get any big shots, it's going to be very difficult for them to win this match. Wait and see. Suhas Prabhu is on strike. Vikrant is on attack from the far end. Right over the full toss, driven that one up. Is the chance here for the catch and missed by the fielder. Not only missed the catch, ball went into the fence for 4 runs. That boundary definitely will going to open the gate a little bit here for Volalangi fighters Smolky. Have a look at the fielder. The same kind of catch attempt which is made in the previously were taken very well by the fielder. One catch, fantastic catch, the catch of the tournament. But this time the fielder fails to collect that catch. And ball went into the fence for 4 runs. With that boundary score numbers on to 32 for the loss of 3 wickets. What a fantastic match is in progress. One boundary which is not good enough. Vikrant balls wanted to go for the switch hit. Appeal for caught behind. More than the confidence, just an excitement behind the wicket. The wicket keeper knows, bowler also knows that the huge gap between bat and the ball. No damage done, but it's a very important dotted delivery ball by Vikrant. From the far end, Vikrant. Right on wicket, driven upishly, but coils safely down to deep long off region. Sharath definitely will going to keep the strike because he knows that not a huge deliveries remaining. There's only 9 deliveries remaining, but need to climb the mountain of runs, isn't it? 33 runs. That means half of the job completed. They need to complete another half of the job. That 33 more runs required for the victory. Deliveries remaining only the 9. Badly required 1 or 2 big shots in this over if they wanted to take this match into the final over. Vikrant again, seaming from the far end. Right about they get beautifully ball, perfect delivery. This is what you need to see from the great bowlers. Reading the mind of the batsman is so important in the slog overs. You know exactly what Sharath will going to do here. He definitely wanted to go for the switch hit. He's just changing the line cleverly, not giving any room, not giving any width for the batsman to go for the switch hit. Balled a little bit outside the line of leg stump, defeated by the beautiful delivery. Vikrant again from the far end. Right on the block all. Fantastically bowled there by Vikrant. What a good comeback. Absolutely great comeback here by Vikrant. And just a single which is taken. Scoreboard numbers on to 34 for the loss of 3 wickets. (34) on the board and another 32 more runs required for the victory. Vikrant final time. And this over, switch it comes into play. Will it go into a 6? No, catch has been taken in the deep backward point region. That's the end of Suhas Prabhu in the last delivery of the over number 6. It's 34 for the loss of 4 wickets. My goodness, once it looks at the ball which is left the bat of Suhas Prabhu, it might be a maximum, but unfortunately ball definitely not really getting the distance. He got the elevation but fails to get the distance, and wicket number 4 which is back into pavilion. Suhas Prabhu, have a look at that one. Absolutely, he's got a proper connection, no doubt at all, but because of that no wind in the ground in the evening, in the night, it's definitely going to be very difficult for him to get the distance. 34 for the loss of 4 wicket. Over number 6 which is comes to an end. Last over remaining. 32 runs required for the victory. What a fantastic catch which is taken by Mahesh. And the age is just a number. The player like Mahesh, isn't it? Even though is above 40, maybe I think is a 46 or 47, but it's absolutely the perfect example for the youngsters. With that, he is putting 100% in the game. And now he's came into ball here after taking a very good catch in the deep backward point region. Now we'll go into ball last over. He will going to depend 32 runs. Right over they get driven that one down to deep long on region.
35 for the loss of 4 wicket. Of course, what we are talking about age is just number. The player like Mahesh K, absolutely it's not so easy. And playing under floodlight, and he's the absolutely perfect example, putting 100% in the game. Now last 5 deliveries remaining, 31 runs required for the victory. It's going to be a final opportunity. At least they managed to tie this match with 5 sixes. No, it's going to be just a single. Looks like just a formality left in the game, because 4 balls remaining and they have to get 30 runs. That means even 4 sixes in 4 deliveries will not going to help Valalanki Fighters Mulki to win this match. Unless and until bowler will going to bowl any no balls and white balls. That's also very important in cricket. You cannot deny. No ball 6 definitely going to be one more opportunity going to created. But here is going to be a next delivery. Driven nicely, but lack of placement. Ball went straight to the answer, deep mid-wicket, deep cow point region. In fact, batter trying for the switch it. He got a couple of runs with that couple of runs score, but moves on to 38 for the loss of 4 wicket. We can see that if the team going to win the match, Royal Challengers Balambetu with a huge margin, definitely will going to benefit them to get the place in the playoff rounds. That's why they are wanted to restrict runs as much as possible. Here we go. Right above again, splashes just over that of the extra fielder, but not more than a single. They're coming back for the second chance of run out, and it's gone. Just like I mentioned that it's certainly the chance of just a single there, but they wanted to get a couple of runs here. And both the teams, of course, the team Valalanki Mulki knows that they're going to lose the match, but they knows that each and every run going to be very crucial for them to get the place in the playoff round. The fielding of Royal Challengers Balambetu absolutely outstanding today. The way that committing and way that they fielded, way that catched, way they stopped the boundaries, absolutely they deserve the victory against a formidable Valalanki Fighters Mulki. But unfortunately, Sharath Prabhu still there in the middle, and he's just witnessing the huge defeat. And scoreboard is now remain 39 for the loss of 5 wicket. Last 2 deliveries remaining. Just a formalities which is they need to complete. But Sharath Prabhu back into strike. Of course, he couldn't manage to win the match, but at least he wanted to get 1 or 2 big shots from his bat. Have a look at the celebration here in the dugout of Royal Challengers Balambetu. This time improvising cricketing stroke down to 5 leg, but not more than a single. They come back for the second. Sharath Prabhu wanted to retain the strike, and new batsman will go into sacrifice his wicket. Just a single. And scoreboard moves on to 40 on the board for the loss of 5 wicket. 26 more runs required for the victory. Just have a look at the dugout. I want to see that cameraman, kindly request you to please turn that your camera into that dugout of supporters of Royal Challengers Balambetu, because this you can see that they are celebrating there. They know that they're going to get a huge victory against the big teams. Have a look at the crowd here. They're celebrating. Dugouts of Royal Challengers Balambetu. They're on their feet. They know there's just one delivery remaining for the celebration. And absolutely fantastic performance. They deserve the victory. And here is the last delivery. Mahesh will go into ball to Sharath Prabhu. Right arm over the wicket balls. Driven, obviously, it's going to be a U6 or not. Wait and see. And oh, he dropped the catch and ball went into the fence for a... Is it a 6 or a boundary? Umpire have to clarify. Absolutely, now umpire signaling. Here is a 6. And Sharath Prabhu at last managed to get the 6 here for the team of Valalanki Mulki Fighters. And wait and see, will it going to help the team to get some very good net run rate here? Sharath Prabhu knows that each and every run is going to be very crucial in this league stage matches, because the net run rate definitely will going to play a huge role to getting the place in the playoff round. Have a look at that scoreboard. Royal Challengers Balambetu putting up a huge total of 65, setting us a target of 66 to win this match, but not a good reply coming from the team Valalanki Mulki Fighters, and unfortunately they are short of runs, even having Sharath Prabhu in the middle, but he couldn't manage to finish the match because they're chasing a huge target
And that's it. And it's going to be a comprehensive victory in the end for the team Valalanki Fighters Mulki. And congratulations Valalanki Mulki. Little bit correction. Royal Challengers Balambetu. They won the match against Valalanki Fighters Mulki. Congratulations Balambetu for your wonderful performance. Being the runner-up of the edition 7, they started their journey in this particular season 8 very well. Thank you very much. It's now over to for the inaugural ceremony. Thank you very much. Thanks a lot. आर्च फार्मा लॅब्स GPL ट्रॉफी 2024च्या नेक्स्ट मॅच मुंबई पल्तान्स वर्सेस UK एकादश सारस्वत दोन टीमांमध्ये जावचेर आसा. दोन्ही टीमाचे रेडी आसूं का तशींची आतां एक सान स्टेज प्रोग्राम आसा. त्या स्टेज प्रोग्रामा नंतर दोन टीमाच्या कॅप्टन्साने हांगा स्टेजा मुखार येवका टॉसाक रेडी जावन आसूं का तुमी. इमिडिएटली स्टेज प्रोग्रामा नंतर स्टेजा मुखारी टॉस जाता. तशें जेवन कॅप्टन्सान रेडी आसूं का आत्तां चेंग येवन राबल्यारी चांग.
कोणी असल्यारी देखोरनु ವೇದಿಕೆ ವೇರೆಯುಕ श्री रंगनाथ भट तुम्ही असल्यार देखोरनु ವೇದಿಕೆ ವೇರೆಯುಕ सद्गुरू एंटरप्राइजेसाचे योगेश अण्ण संविती कॅपिटल दकोनु अतुल कुडवಣ್ಣ आमगे टस हांगा ग्राउंडारी देखोरनु तुम्ही येवन ವೇದಿಕೆ ವೇರಬೇಕು श्रेया स्वीट्साचे रमेश मल्लिमाम तुम्ही असल्यार देखोरनु ವೇದಿಕೆ ವೇರೆಯುಕ श्रीदेवी कैशूस उल्हास आईस्क्रीमाचे कोणी असल्यारी देखोरनु ವೇದಿಕೆ ವೇರೆಯುಕ विजय मसाला हांगा देखून कोणी असल्यारी देखोरनु येवक राघवेंद्र भक्ता आर्बेट संजय कामत लमिना सस्पेन्शन्साचे कोणी असल्यार देखोरनु तुम्ही ವೇದಿಕೆ ವೇರೆಯುಕ गुरुप्रसाद कामत अण्णा कानेंगाड सुप्रीम सोलार देखून कोणी असल्यारी याची जगन्नाथ कामत CA गौतम पाई तुम्ही देखोरनु स्टेजा वयर येवक म्हूण नेमून घेता सची अश्विनी कामत अभय इंजिनियरिंग असल्यारी देखोरनु ವೇದಿಕೆ ವೇರೆಯುಕ गुरुदत्त शानबाग तुम्ही ವೇದಿಕೆ ವೇರೆಯುಕ आर्च फार्मा लैब्स ठीक हेलो चेक
आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड GSB प्रीमियर लीग 2024चे सभा कार्यक्रम आयलेले सक्कड आमगेले मोगाच गेस्टांक आत्मीय जावन कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन अंदकून तुमका स्वागत करता आसा मस्त वेळ करनातिले आमगेले मोगाचे शासक आणि कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन तशेंच यूथ ऑफ GSB कೈ मार्गदर्शक म्हणका हांवें मंगळूरू दक्षिण क्षेत्राचे शासक श्री वेदव्यास कामत तुमको पूर्ण जनके मोगान तन्नी स्वागत करू असची जोर क्लॅप्स मार्ची मुखांतर आमगेल्या शासकांक हांव मोगान स्वागत करतास तशीच 16 टीम्साचे ओनर्स आनी दयकोर्नो स्टेजा लागी येवका म्हणून आमी निमगून घेता असची तुमगेल खातीर मोमेंटो रेडी आसा दयकोर्नो 16 टीम्साचे ओनर्सान स्टेजा लागी येवन राबोका RK एसोसिएट्साचे श्री राघवेंद्र कुडवा तुम्ही वेदिके वयर येवका म्हणून आमी निमगून घेता असच सर्वांक नमस्कार कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाच्या GSB प्रीमियर लीग 2024 GPL 2024च्या काल इतकून सह्याद्री कॉलेज या ग्राउंडांतू 16 टीमाचे यशस्वी झालेले क्रिकेट पंद्याट प्रारंभ झाला जाल्यार आज आमगेले ह्या सभा कार्यक्रम मुखांतर हाका विद्युत जावन एक उद्घाटना समारंभाचे ह्या सभा कार्यक्रमांत आमी मेळ्ळेची आज कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन म्हळ्यार आमगेल समाजाचे सर्व बंधूंक विशेष जावन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ताका विशेष जावन अवकाश करून दिवका म्हळ्या दृश्टीर प्रारंभ झालेले आमगेल्या संस्था कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन आज 8 वर्ष चुकून हे एक क्रिकेट प्रति वर्ष चुकून वर्षक विजृंभणेंतू मस्त अद्धूरी जावन यशस्वी जावन आमगेल समाजाच्या सर्व आत्मीय बंधू मित्रांगेल्या सहकार निमित्त ह्या क्रिकेट मॅच यशस्वी जावन चलता आसा आज कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाच्या केवळ एक क्रिकेट मॅच मात्र नाही मस्त रीतीरी आमगेल्या समाजाच्या नाना रीतीरी विंगड विंगड स्पोर्ट्स अंतू मुख्यवाहिनीक येवका म्हणून सांगून आमगेल समाजाचे खंयचे बंधुवर्ग तांगेल निरंतर प्रयत्नस्की त्या प्रयत्नाक पूर्ण रीतीरी सहकार दिवत तसल कामां कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन करता आसा आज क्रिकेट मॅच मात्र नाही ह्या क्रिकेट मॅचाक आयल जनांक चेडूवांक विंगड रीतीरी गेम्साक अवकाश ताजोटोची वाटर गेम्स बिजनेस अंतू नाना रीतीरी ಏಳಿಗ ಪಾವುಕ म्हणून सांगून लेखील तसल बंधूंक लायक
ಉನ್ನತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ತಂಗೆಲ್ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡ್ತಸಲ ಅವಕಾಶ ह्या 8 days दिवसांतू नित्य निरंतर यशस्वी जल फूड कोर्ट कार स्टेट मागीर विंगड विंगड भागातून येताल हांकां अवकाश करून दिवन हे क्रिकेट मॅच मस्त एक अधुरी चांग रितीर चलता आसा आम्ही आज ही क्रिकेट मॅच 18 वर्सां चलता जाल्यार आमगेल्या समाजाचे विंगड विंगड नमुने प्लेयर्स शटल बॅडमिंटन अशें बरो ना रायफल अंतू मस्त आमगेल राज्याक कोडूक दिवन तसले आमगेले समाजाचे बंद अशें बरो ना कुस्ती ना तो विंगड वेट लिफ्टिंग असले विंगड विंगड कोडूक दिलो तसले आमगेल समाजाचे बंधूंक आमी गुर्तुसून हे कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशना मुखांतर आमी तांकां नाना रितीर अवकाश करून दिता आसा तांकां संपूर्ण तनुमन धन सहकार दिवन तांणी आनीकय मस्त स्पोर्ट्सांत मुखार येवका म्हणल्यार एक चिंतन घालून घेवन आमी काम करता आसा आज ही मंगळुरांत तो एक हार्ट ऑफ द सिटीन तो लगलगी एक 75 सेंट्स जागो आज आमी कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशना मुखांतर ते डेव्हलप करता कार्यक्रम प्रारंभ केला थंय शेटलाशे बरो विंगड विंगड रितीचे आमगेल्या समाजाच्या अवकाश दिवत जाल्यार एक लायक एक व्यवस्था आमी आज ऑलरेडी तयार करून घेवन आज आमगेले ते जाग जाल्यार आमगेल्या हातांत आज आयिल्लो आसा ताका आमी विशेष जावन ते जागो आमी आमगेल्या संस्थे मुखांतर घेवन ताका मुखारसून आमगेले नाना रितीर प्रोजेक्ट घालचे आसात आमी त्या प्रोजेक्ट घालतना सगळे आमगेले समाज बांधवांना पुनरपी सहकार की आमी निमूत जाले संदर्भ येवचे आसा तशी हे स्पोर्ट्स एसोसिएशना मुखांतर हे कार्यक्रम जाल्यार आमगेले समाजाचे नाना रिती कार्यक्रम धार्मिक अशें बरो सामाजिक अशें बरो वैद्यकीय व्यवस्थेंत अशें बरो ना क्रीडा व्यवस्थेंत अशें बरो हे पुरा निरंतर जावन देश विदेशांतू अस्तसल जनांक हाजे लाईव्ह टेलिकास्ट करता कार्यक्रमूय आमगेले प्रमुख जाल्ले यूथ ऑफ GSB आमगेल्याची संस्थे मुखांतराची हे यशस्वी जावन आज आमगेले सगळे देश विदेशांत आशिल्ले समाज बांधवांक पळत असलो अवकाशूय करता आसा आज सगळे देशांत आशिल्ले ना विदेशांत आशिल्ले आमचे गेले समाजाच्यांक यूथ ऑफ GSB म्हळ्यार आयकनातील मनुष्य कोणे नाची हे एक वर्ल्ड वायड चॅनल जावन आज कोडूक दिता आसा ताजे वटोची आमगेले कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन अशें बरो ना आमगेल्याची शैक्षणिक शिकताल्या चेडवांक अवकाश करून दिवका एक वैद्यकीय नेरव दिवका ना प्राय जाल्यांक कसले तरी एक पेन्शन स्कीम करका म्हळ्यारಗೋಸ್ಕರ आमगेले संस्था सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हळ्यार ताका सर्व गव्हर्मेंट एक्झम्पशन आशिल्लें तसलें एक ट्रस्टय आमी चलोवन यशस्वी जावन 20 वर्स चुकून समाजाचे कार्य करता आसात तशी ह्या सगळे कार्य यशस्वी जावका जाल्यार सर्व समाज बांधव आमगेल्या समाजाच्या देश विदेशांत आशिल्ल्या जनाले सहकार मस्त व्हड रितीर आसा आज येदोड क्रिकेटाचे व्यवस्था करता म्हण जाल्यार व्हड एक अवकाश ताका सुरवेक जावन आमकां हे ग्राउंड व्यवस्था करून दिलेले सह्याद्री शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष जावन आशिल्लो मंजुनाथ भंडारीन आमकां ग्राउंड एक विशेष जावन अवकाश करून दिला ताकाय हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता एक मंगळुरांत असले एक ग्रीन क्रिकेट ग्राउंड खंय ना एक भारी एक चंद क्रिकेट ग्राउंड मुखारसून असले क्रिकेट ग्राउंड कोरका म्हळ्यार एक उद्देश आमगेल्याची कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशना मुखांतर त्या मात्र हांगा लागीं जायना मुल्की लागीं ऑलरेडी ताका एक 7-8-10 एकरे वयर जागो व्यवस्था करता आसाची ताका नरेश शेणै संपूर्ण ताची जबाबदारी घेवन मुखारसून आमगेल्या समाजाचे एक क्रिकेट ग्राउंड कोरका म्हळ्यार एक उद्देश दवरून घेवन ताजे कार्यप्रवर्त ऑलरेडी जावन आनीकय 10-15 एकर जागो थंय केला आनीक एक 10-15 एकर जागो ताजे सुತ್ತमुत्तंतू ताका व्यवस्था तो प्रयत्न करून करता आसा त्यावेळी अशीच 9th भागांतू आशिल्लो तसले ग्राउंड आमी 9th भागांत आशिल्ले ग्राउंड खंय ऑस्ट्रेलियान सिडनींत पळोवन अशें बरो मंगळुरांत आमी आमगेल्या समाजाचे तसले ग्राउंड जावका म्हळ्यार चिंतन समेत आज कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशना प्रमुख जावन नरेश शेणै तांगेल्या तंडान करून घेतला हांव
असल प्रयत्न नवनवे एक व्हड प्रेरणादायक उद्देश हाजे निमित्त आमगेल समाजाक भर जावका म्हळ्यार चिंतना आमगेल संस्थे मुखांतर निरंतर जावन चलता आसा. आज सगळे आमगेल समाजाचे विंगड विंगड गांवचे जन हांगा येवन मस्त एक एन्जॉयमेंट चेडू बाळां पुरा घेवन येवन हांगा एक कुशेरी आज एक कार्यक्रमांत भागवहिसला. आज आमकां मस्त खुशी आसा. आज हे एक कार्यक्रम एक चंद रितीर आमकां व्हड रितीर सहकार करून दिवचो आमगेले एक कार्यक्रम इतले व्हड यशस्वी जावका म्हण जाल्यार एक मस्त सहकार दिलेलो तसलो मनीस आर्क फार्मा लॅब्स लिमिटेड मुंबई. ताजे मालक जावन आशिल्ले अजित कामत अशें बरो ना दीपक शेणे जावन अशें बरो हांगेले संपूर्ण व्हड रितीर सहकार आज इतलो व्हड चंद रितीर इतले यशस्वी जालेले क्रिकेट पंद्याट आनी ಇನ್ನಿತರ आमगेले स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे कार्यक्रम आमकां जावच्याक फाटीमागशी राबिले तांगेले एक विशेष जालेलो सहकार. आनी थोड्या वेळान तांणी आमगेले मध्य वेदिकेर येता असं तुम्ही स्टार्ट करा म्हणून सांगला. आज त्या कार्यक्रम तांगेले सहकारार तशीच स्मार्ट बाजार अशें बरो फुजलोना अशें बरो आभरणा अशें बरो DBS अशें बरो अरुणा मसाला अशें बरो जयलक्ष्मी अशें बरो अशी विंगड विंगड संस्थेचे मागीर वेदिकेर बशिल्ले गेले मालगड हांगेले सहकारा निमित्त आज येदोड यशस्वी जाल्लो कार्यक्रम आज हे एक क्रिकेट यशस्वी जावन चलता आसा. आज हांव तुमगेले एक विशेष जाल्लो एक व्यक्तीक परिचय करून दिवचेक हांव तुमगेले मध्य राबला. आज आमगेले मध्यान तो आमी कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन मागीर सर्व आमचेगेल समाजा तर्फेन आयच्या वर्साचे विशेष जाल्लो एक सन्मान करता म्हणून सांगून तांगेले निमगून घेतना तांणी आज आमगेलो टू वेदिकेर आसाची तांगेले कोडुगे सांगल्यार सर्व समाज बांधव हांगा मेळ्ळेले भारी खूश जाता. तांगेले कोडुगे आज मंगळूरान तो हे आमगेले वेदिकेर आसाची तांगेले नांव मागीर सांगता तांगेले कोडुगे हांव तुमगेले मध्यान सांगता. आज आमगेल्या समाजाचो एक व्यक्ती जावन GSB समाजातून आज तागेले कोडुगे आज आमगेले ह्या वेदिके मुखांतर सांगचे मस्त खूश जाता आसा. आज दिल्लीन तो कन्स्ट्रक्शन जालेले नवे इंडियन पार्लिमेंट ताजे कन्स्ट्रक्शनाचे नेतृत्व वहिस्कोतिले मनीस आज आमचेगेले समाजाचो म्हणून सांगचे मस्त खुशी जाता. हक्का इतले क्लॅप पावना इंडियन पार्लिमेंट नवे पार्लिमेंट मधील मनुष्य नेतृत्व घेतील कोण म्हणून सांगले रे आमचेगेले समाजाचो म्हणून सांगतना आम्ही खुशी बघू का आमकां मस्त खुश जावं का हो आमगेले मनीस आज थंय मोदील मध्य बसून नवे पार्लिमेंट लोकार्पण करता आसा. आज नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट समेत आज नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ताणेची भारत देशाक तागेले नेतृत्व रे ताजे कन्स्ट्रक्शन व्यवस्था जबाबदारी ताण घेवन आज लोकार्पण केलेलो आसा. तशीच मुंबई ट्रान्समलबार लिंक ह्या लिंक रोड समेत केलेलो जाल्यार यशस्वी जालेले लिंक रोड मुंबई ह्या समेत आज कोडुगे दिलेलो जाल्यार मनीस आज आमगेले मध्यान तो तुमगेले पुरा जनाल तर्फेन सर्व आमगेल्या भारतांत आशिल्ले आमचे गेलेले जनाल तर्फेन आज तो हांगा ताका अभिनंदन करचें आसा. तो आनी कोणेय न्ही आज वेदिकेर आसले मनीस सन्मान घेवचे आशिल्ले मनीस मिस्टर विनायक पै. हांव विनायक पै MD CEO टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. आज ह्या पुरा प्रोजेक्ट केलेले कंपनी खंयचे म्हळ्यार टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी ताजे टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ताजे MD CEO जावन आशिल्लो मिस्टर विनायक पै हांगा मेळ्ळेले सर्व जनाल तर्फेन हृदयपूर्वक स्वागत करता. तांकां आज मस्त खुशी जाता की आज तांकां आमगेले सर्व समाज बांधवा तर्फेन तांकां एक सन्मान दिवचे आसा. ह्या सन्माना मुखांतर तांणी आनीकय हे देशांत देश विदेशांत एक आमचेगेले समाज बंधू जावन पार्लिमेंटांत चलयची नवनवे योजना आमगेले प्रधानमंत्री मुखांतर तांगेले एक नेतृत्व जावं जावो म्हळ्यार शुभ हारैक हांव आज तांकां दिता आसा. तांकां आमगेले सर्व जनाल तर्फेन हृदयपूर्वक स्वागत करता आसा. तशीच आज आमगेले माजी गोवा आनी कर्नाटका रणजी प्लेयर
तन्नी आजी वेदिके आमगेलो टसाची तंगेले नाव आम्ही दिनेश म्हण मांत्र पळयता म्हळ्यार नंतर वेळ थोडे वलजीत नेकाड तेकाड जावत नाका म्हूण तन्नी आजी दिनेश आजी गोवा रणजी प्लेयर जावन एक आमगेलो समाजाचे बंधू जावन क्रिकेटांत मस्त कोडूग दिलेलो तसल मनीसू आजी दिनेश माम आमगेले वेदिकेर आसा तांकांय हांव रथपूर्वक जाल्लें स्वागत आनी तांकां अभिनंदन करता तुमगेले क्रिकेटाक दिलेले तसल कोडुगे हांव केन्नाय मेच्चूक व्यक्तपडीत करता आनी मुखारी तुमगेले क्रिकेटांत मस्त नमुने नाना रीती मार्गदर्शन आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाक जावका तुमगेले सहकार जावका म्हूण निमून घेताची तुमकां स्वागत करता आज आमगेले ಒಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮನಸ್ಸು आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे एक वेलविशर आमकां पूर्ण सहकार दितलो मनीसू आमकां केन्नाय खंयच्याय कार्यक्रमाक आमगेले पाठीमाग शिरप तसलो मनीसू हंग्यो आयस्क्रीमाचे मालक प्रदीप पैमाम तांकां हांव हृदयपूर्वक स्वागत करता तांगेले संपूर्ण सहकार आज आमकां दिलेलो आसतना तांकां हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता अनेक मंगळूरची एक प्रतिष्ठित संस्था देश विदेशांतू नाव पाविल तसल संस्था आजी भारत बीडीचे मालक गौरवान्वित सुब्राय पै अन्नी आजी वेदिकेर आसाची तांकां हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता आजी भारत बीडी मालक जावन आशिल्ले सुब्राय पै मामाकय हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता आजी तुम्ही हांगा मेळ्ळे सर्व जाण एक जोरदार चप्पाळ मारका दयकोर आज आर्क फार्मलॅब्स लिमिटेडचे मालक जावन आशिल्लो आमगेलो समाजाचो दीपक शणै आज आमगेलो वेदिकेर आयला आज येद्दोड क्रिकेट पंद्याट अशें बरो कोडियाल स्पोर्ट्साचे खंयचेय कार्यक्रम अशें बरो मठ मंदिराचे खंयचेय कार्यक्रम अशें बरो यूथ ऑफ GSB खंयचेय कार्यक्रम आसल्यार आमकां व्हड रितीन तनु मना धना सहकार दिवन तुमी करा आनी कसले उण पडल्यार मिगेला सांगा हांव आसा म्हणून सांगून आमकां पाठीमाग शिरपतालो तसलो मनीस ताण तशें सांगला म्हणून सांगून आमी तागेले सांगची न्हय जाल्यार सर्व समाजाची आमकां जबाबदारी आसा खाली दीपक शेणे मामू ताणें कितलेय सांगले तो कितलेय दिता जाल्यार सर्व समाजाच्या जनालय सहकार आनी मुखारी पूर्ण रितीन जावका दीपक शेणे मामाले व्हड कोडगे व्हड सहकार आज ह्या क्रिकेट मॅच यशस्वी जावचे तांगेले आसा आज तांकां हांगा मेळ्ळेले सर्व समाज बांधवा तर्फेन आज येद्दोड कोडगे दिवन आमकां यशस्वी जाल्यार क्रिकेट मॅच करच्याक सहकार दिलेले तसले आर्क फार्मलॅब्स लिमिटेडाचे मालक दीपक शणै तशीच तांगेले पार्टनर जावन आशिल्ले अजित कामत तांणी हाजी अनुपस्थितीर तांकांय हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता तशीच वेदिकेर उपस्थित आशिल्ले आमगेले गौरवान्वित नित्यानंद पै आजी नित्यानंद पै म्हळ्यार कारकाळचो मनीसू कोंकणी फिल्म प्रोड्युसर डायरेक्टर फिल्मांतू मस्त कोडगे दिलेलो तसलो मनीसू धार्मीक जावन मस्त चिंतन जावन गॅसाचे बिझनेस करून आशिल्लो तसलो मनीसू आजी ताणें संपूर्ण आमकां ह्या कार्यक्रमाक सहकार दिलेलो आसा ताकाय हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता अनेक मनीसू आमगेलो समाजाचो हे कोस्टल कर्नाटकांतू जल्मा येवन मुंबय तसल शहरांतू एक व्हड तसल कोडगे दिवन देश विदेशांतू मस्त कंपनी यशस्वी जावन मुखारसून व्हरता जाल्यार नेतृत्व घेतिल्लो तसलो मनीस तोवय आमगेले दीपक शणै मामाले आत्मीय मित्र SR वायलाचे प्रमुख जावन आसा आजी जयंत माम आमगेलो वेदिकेर आसा तोवय तागेले कंपनी नेतृत्व घेवन ताणें एक प्रमुख जावन तागेली जबाबदारी तांगेले कंपनी तांगेले देश विदेशांतू 100 चड देशांतू तांगेले कंपनीचे जबाबदारी वयसून घेवन काम करता आसलो मनीस जयंत माम आजी वेदिकेर आसा तांकां कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशना तर्फेन हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता तुमगेले सहकार आनी मुखारी अशीच आसो आमगेले कार्यक्रम यशस्वी जावचे तुमगेले सहकार आनी चड जावन मेळो म्हण सांगून हांव तुमगेल्याक मागता आसा त्या मात्र न्हय अनेक मनीस आमगेले आजी वेदिकेर उपस्थित आशिल्लो तसलो मनीस श्रीदेवी कॅश्यूज कारकळाचे मालक कोडू गैदानी खंयच्याय टायमार कसले सांगल्यार ना म्हूण सांगना
आमी ताका मोगान अन्न माम म्हणटात आजी गणेश कामत हांणी अन्न माम म्हणटाची तांणी आजी वेदिकेर उपस्थित आसाची तांकांय रथपूर्वक जलाल स्वागत करता आणि मुखारी आम्ही केन्ना फोन करताची तेन्ना तुम्ही सहकार दिया म्हणून सांगून निमून घेताची तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करतास वेदिकेर उपस्थित आशिल्ले मनीसो V2 पटाकीचे मालकू तांगेले पटाकी उद्यम जावन आमगेलो टू नित्य निरंतर आमकां प्रत्येक वेवस्थेन सहकार दिलेलो तसलो मनीसो V2 अनंत कामत आमगेले देवस्थानाचे फुल ट्रस्टी माधव कामत मामाल पूतू आज तो वेदिकेर आसा तुमगेले सहकाराक हांव धन्यवाद सांगताची आनी मुखारी अशी निरंतर सहकार व्हड रितीन मेळ्ळो म्हणून सांगून सांगताची तुमकांय स्वागत करता आनी मंगळूरचे यशस्वी जाल्ले लेख परिशोधक चार्टर्ड अकाउंटंट SS नायक माम तुमगेले सहकाराक हांव धन्यवाद सांगताची तुमकां ह्या कार्यक्रमाक रथपूर्वक जावन स्वागत करतास वेदिकेर उपस्थित आसले जाल्यार आमगेले कोडुगै दानी मुल्की वेंकटरमण देवस्थानाचे ट्रस्टी जावन धार्मिक जावन मस्त चिंतन करून समाजाच्या प्रत्येक व्यवस्थेन तूं पूर्ण प्रमाणात आमकां सहकार दिवची मात्र न्हय एक कोडुगै दानी जावन आमगेलो टू वेदिकेर उपस्थित आसले जाल्यार अतुल कुडवा हांकां कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन तर्फेन हांव रथपूर्वक जावन स्वागत अभिनंदन करता आनीकय तुमगेलो सहकार अशीची मेळत जावं म्हणून सांगून मागतास आज आमगेले अनेक वेदिकेर यशस्वी प्रमुख बेळतंगडीचे उजिरे प्रदेशाचे ಹೆಸರಾಂತ ಉದ್ಯಮಿ एक मंगळूर बेळतंगडी भागांतू दिसाक 10 लोड 15 लोड सक्कर एक विक्का तांदूळ विक्का म्हळ्यार सामर्थ्यशील तसलो मनीसू आज उजिरे राजेश पै आज वेदिकेर तो आमगेलो आसा व्हड एक व्यापार असतो ग्रॉसरी बिझनेसमॅन ताणे आज संपूर्ण सहकार दिला आणि मुखारी तुगेल सहकार आसा म्हळ्यार विश्वास आमकां आसा राजेश माम तुका ह्या वेदिकेक कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन तर्फेन रथपूर्वक जावन स्वागत करता आसा आज यजमाना इंडस्ट्रीज आज नाव विष्णुवर्धन तोंड ह्या पळयनातील खंयचेय एक मनीस ना यजमानाचो मालकू वरदराज पै मामा आमगेलो आसा ताणें संपूर्ण आमकां सहकार दिला प्रति वर्स सहकार दिता आसा हाजे प्रारंभ देखून आमगेले क्रिकेट मॅचाक सहकार तूं दिला आनी मुखारी तूं दिता आनी मुखारी तुगेले सहकार जावका म्हणून सांगताची ह्या कार्यक्रमाक तुका रथपूर्वक जावन हांव स्वागत करता आसा अनेक आमगेलो समाजाचे व्यक्ती आज आमगेले स्किल डेव्हलपमेंट अँड इंडस्ट्रियल व्यवस्थेन तूं कर्नाटक सरकाराचे एक व्यवस्थित जावन जबाबदारी घेवन एक अधिकारी जावन काम करता आशिल्ल्या बाळेरी मामू वेदिकेर आसा समजवा बाळेरी मामू वेदिकेर आसा तोय आमगेले समाजाची मंगळूरांतू रपता कार्स्टेटांतू रपता एक सरकारी अधिकार जावन तागेले संपूर्ण सहकार आसा तो आमगेले विनायक पै मामाक बारी लागीं संबंधिकू म्हणून सांगून आयकला बाळेरी मामू तुकाय हांव ह्या एक कार्यक्रमाक रथपूर्वक जावन स्वागत करता आसा श्री ग्रामोद्योगाचे प्रमुख जावन आशिल्ले जनार्दन आज वेदिकेर आमगेलो आसाची तांकांय हांव रथपूर्वक जावन स्वागत करता आसा तशीच आज वेदिकेर आसता जाल्यार आमगेले प्रोफेशनल कोरियराचे नकवा आनी विंगड खंयचे सांगले कळना नरेंद्र नायक मस्त आसा प्रोफेशनल कोरियराचे मालक कोडुगै दानी आज आमकां सहकार दिलेलो आसा नरेंद्र नायक हांकां हांव रथपूर्वक जावन स्वागत करता आसा तशीच वेदिकेरी हांग्यो आयस्क्रिमाचे मालकी प्रदीप पै मामाले धर्मपत्नी दीपा पै माय आसा तिकाय रथपूर्वक जावन स्वागत करता आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन अशें बरो आमगेले सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट अशें बरो आमगेले यूथ ऑफ GSB अशें बरो ना आमगेले चुनावणे वेळार मिगेल सगळे लेखपत्र व्यवस्थित जावन सरकाराक लोकायुक्ताक सबमिट करता आशिल्लो एक तर्क कोण म्हळ्यार CA गौतम पै तो आमगेले संपूर्ण लेखाचार ह्या सगळ्याची आमी आमगेले कुडला सांस्कृतिक प्रतिष्ठान म्हणून एक संस्थे मुखांतर आमी वर्साक एक व्हड रितीन वागावेसाची कॉम्पिटिशन करता आसा तशीच स्ट्रीट फूड फेस्टिवल करताची ते कुडला सांस्कृतिक प्रतिष्ठान म्हळ्यार तेवे आमगेले संस्था बट ते सर्व समाजाच्यांक घेवन करता आसलो कार्यक्रम केवळ आमचे गेले समाजाचे कार्यक्रम म्हणून सांगून न्ही सर्व समाजाच्या कोटकोन करता कार्यक्रम कुडला सांस्कृतिक प्रतिष्ठान ताजे लेखपत्र ताणें पळोवचें आनी एक खुशी कसं म्हळ्यार तो जेवो तागेलो बॉस जेवो तागेलो माव जगन्नाथ कामत आज थंय खंयचेय कामकारी खंयचेय वेवस्था केल्या का तांणी फीज म्हणून आमगेल्या घेवची ना आमी दिवची ना तांणी निमगूची ना आमी दिवची ना तांगेले लेखार सेवा
आम्ही निरंतर असल काम करताना सेवा ತಂಗೆಲ್ಲ ಕರಿ असल मस्त जनाल सेवे निमित्त असल कार्यक्रम यशस्वी जाऊचे. आज ही पैसेलचा मालकन त्यांनी व्हेकल मॅन ऑफ द सिरीज व्हेकल देतात ತಂಗೆल सेवा त्याची प्रत्येक सेवा निमित्त त्याच्यावर प्रत्येक अंग बेशिले ह्या माध्यमारी यूथ ऑफ GSB मुखांतर कोण कोण पळयता की तन्नी वैल वर्ष तन्नी आलोचना करू का हांवें कसले दिवू का मिगेल आता आशिल कसले जायत हांवें एक दिवू का आर्थक अयोध्येंतू प्रभू श्रीरामचंद्राला देवस्थानांतू त्या अयोध्येंतू रामाला प्रतिष्ठापन जातना कितली लोकांना रामाला हत्र रपून वचून रप्तना बंगार काचिताळी दारिमणी ब्रासलेट मुद्दी काणू देवाला डब्बे घाललिके मग घालण्यात आलोचना करताना हो हांव ह्या रामाला समर्पण केलं तशीच प्रत्येक मनांतू आणि प्रतिवर्ष कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन असे बरो यूथ ऑफ GSB असे बरो कुठला सांस्कृतिक प्रतिष्ठान असे बरो हक्का आम्ही काय पुणे दिवू का म्हणाले एक मानसिकते रे ह्या कार्यक्रम यशस्वी जाऊचे तुमगेल सहकार आसा ताजोटूची आज ही रिलायन्स स्मार्ट बाजार ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಹಜ್ಜೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಾವನ್ ವಿಶಾಲ್ ತಾವು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬಂದು ಈ ತಮ್ಮನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ अकील एसोसिएट्स आज मालक जल्ले दिनेश पै आज अन्नी वेदिके रसाची तंका आणि तंगेल धर्मपत्नीके हांव हृत्पूर्वक जावन स्वागत करता आसा तुमगेले सहकार मुखांतर निरंतर आसो म्हण सांगून आणि आमी आज आमगेल वेदिकेर एकलो सान चल्लो एकलो वेदिकेर आसा दोग जण दैकोर मुखार येवका यो दोग जणे आज मंगळूरचे सायबीनाचे मालक सायबीन बिल्डिंगाचे मालक मंगळूरचे वी बाजाराचे राबूका तुमकां म्हळ्यार येद्रापोत तितले हांव मालगड जालें देखून आपयलें तांकां कोणाक पळय सायबीनाचे मालक वी बाजाराचे मालक विजेंद्र भट्ट मंगळूर ऑड रितीर सहकार खंयच्या टायमार खंयच्या संदर्भाचेर आमी फोन करून भटमाम तुमगेले सहकार जावका म्हळ्यार हांव संपूर्ण तुमगेलो टच म्हूण सहकार दितलो मनीस आनी तागेले कोडूक कशें म्हळ्यार तो खंयचे वेदिकेर येवचें ताका इच्छिना तो खंयचे वेदिकेर येना आतां थंय ताजितले खंय तरी भोंवता जाल्यार हांगा वेदिकेर येना ताच्यावन तो मेळ्ळी म्हूण सांगून तागे पुत्ता हांगा आमी वेदिके बसकार आयला कित्याक म्हळ्यार आमी उडगास दवरून घेवका जाल्यार आमगेलें कर्तव्य तागेले सहकार विजेंद्र भट मामाले तागेले पुतू आजी सुमित भट हांकां हृत्पूर्वक जावन स्वागत करता तुगेले अन्नाले तुमगेले कुटुंबाचे सहकार आनी मुखारी अशी आसो म्हूण सांगून हांव देवाले मागता तुमगेले मागता ताजे अनेक चल्लो आज इंजिनियरिंग करता आसा तो चल्लो कोण म्हळ्यार RK एसोसिएशन मालक राघवेंद्र कुडवा म्हळ्यार 24 hours 365 days आमगेलो ओट आसता मनीस आज कर्नाटक गव्हर्मेंट अशें बरो पांडिचेरी गव्हर्मेंट अशें बरो विंगड गव्हर्मेंटाक नबार्ड लोन ABD लोन इंटरनॅशनल बँकांतून लोन घेवन दिवचो जाल्यार कर्नाटक गव्हर्मेंटना विंगड राज्याक सहकार करून दिवचो जाल्यार कन्सल्टन्सी फर्म RK एसोसिएट्स आज ही मंगळूरांतू 24/7 1000 कोटीचे वॉटर पाइपलाइन काम जाता जाल्यार आज ही राघवेंद्र कुडवा नेतृत्वार जाता आसा तशीच तोवे हांव तुमगेलो दोस्ती हांव वेदिकेर येना मिगेल संपूर्ण सहकार आसा आनी तुमी मिगेल चेड नांव सांगलें वयर वर्सा ताजे डबल सहकार आसा हांव वेदिकेर येना मिगेल पूत बसता म्हूण सांगून तागेले पूत ताका आज वेदिकेर राहुल कुडवा हाका आज वेदिकेर ताणें पेटोवन दिवन मिगेल संपूर्ण सहकार आसा म्हूण सांगला राहुल कुडवा आणि मुखारी सुमित भट मामाने तुमगेले अन्नाला सांगून आनीकय चड सहकार दिवं तशी अन्नाक सांगका येद्र राबून आज तुमकां मस्त स्वागत केला म्हळ्यार अन्नाक सांगका म्हणून सांगताची तुमकां स्वागत करता दय करून वेदिकेर बैसा आनी आज मोटल कंपनीचे प्रमुख जावन आशिल्ले नागेंद्र पै आज आमगेलो वेदिकेर आसा नागेंद्र पै मामो ताकाय हांव हृत्पूर्वक जावन स्वागत करता तागेले सहकार हांव धन्यवाद सांगताची ताकाय हृत्पूर्वक जावन स्वागत करता आसा अनेक कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ना आमगेले खंयचे एक समाजाचे आमगेले चरक्यांगेले कार्यक्रम कसा आसा
ताका फाटीबला मागची राबून हांव आसा म्हूण सांगून आमकां मार्गदर्शन करतलो मनीस कोण म्हण हनुमंत कामत गुरुपूर हनुमंत कामत तो आमगेला सगळ्याची एक 200 तुकून 300 चरकेल तंडल अंतू मलगड मनीस